एक और तो आपका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मानिक जी के बारे में बताऊं तो सर्टिफाइड ग्रूमिंग और एटिकेट ट्रेनर हैं। ब्रिटिश स्कूल ऑफ एटिकेट से उन्होंने ट्रेनिंग ली और अब आप जैसे बहुत सारे किड्स को, जितने यहाँ पे बच्चे हैं, उनको वो तैयार कर रही हैं फ्यूचर के लिए। उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है माइंडफुल लिविंग विद मानिक कौर, लॉन्च बाय हर जस्ट 2 years ago, और ऑलरेडी 3,25,000 से ज्यादा लोग अक्रॉस द ग्लोब उनके उस पे फॉलोअर हैं। तो ये सेशन वो ही मॉडरेट कर रही हैं। तो मानिक, ओवर टू यू। Thank you so much, Kavya. And thank you all for being here on a Sunday morning. I know it's not easy. Whoever's mustered courage to be here, or I would say just, left the laziness behind and have come here, I will really make sure that it's totally, totally worth your effort and time. And I can't wait to get started and get into a conversation with our lovely panelists. And guess what? Today's session is all about espionage thrillers. And the first thing that I want to ask the audience is how many of you have always felt very intrigued about espionage or spies, or ever thought of, becoming a spy? And then I'll share my own story because this genre is very close to my heart as well. And I think it takes a lot of courage to be a spy. Has anyone here ever thought of that? Lovely. And suddenly now a lot of people, lot of kids. Okay, it does interest you. I think I'll come back to that. Maybe if we can give one mic to the first boy who raised his hand. Good morning. Morning. Just tell a little bit about what you think of espionage, or the whole concept of being a spy. Actually, the spies are somewhat the country sends them to another country or to just camouflage with the people and then take a view of the people what they are doing. Okay, it's like a free travel. No, No, okay, just kidding. No, but that sounds good. Yeah, I think that's one reason. Is that the reason you want to be a I spy? actually wanted to go to other countries and look how the people really lived over there. All right, that's great. What's your name? Amish Bansal. Thank you so much, Amish. And I think let's get now started with now I think everybody's now keen and ready to listen and understand spies' life, or I would say more about espionage as thrillers genre from our esteemed panelists, because all the three panelists that we have today have been predominantly writing about this genre. And I would like to start with, Siddharth, you, and you. So I would want, each one of you to give your input about what you think as espionage as a genre, and how it kind of, how important or how significant or how relevant it is in terms of writing in today's day and age. Like, if you want to be an author in the same genre, what is the scope like, and what views you have of this particular genre? So I do feel that espionage as a genre is very thrilling and very challenging to write about. Firstly, because we don't have a lot of information about our spies. We don't have a lot of information about what they do, how they exactly operate, and the kind of clandestine lives that they live. So that makes it even more thrilling to to write about, to explore, and to see. Plus, the entire geopolitics that comes into play because of we have some very cantankerous neighbors in and around India. And when the entire geopolitics comes into play, so then it becomes a very niche subject which needs to be researched, very well researched, and then written about. That's what I feel. Yeah, that makes a lot of sense, right? Over to you, Mr. Murli. Yeah,
Let me start with how I first got interested in it. It obviously was as a schoolboy when I started to read. In our days, there was no TV and internet and so on, so books were the source of entertainment. And Alistair MacLean was the first author whom I read. Alistair MacLean was the first author whom I read, which had something to do with spies and so on. And then, of course, the time that I was growing up, the James Bond novels and the films and a whole lot of others, etc. So a lot of us in our time were very interested. And as I went through life, I also started getting interested in writing. And I thought that this is something that I would like to write about because those authors were fantastic. From the language point of view, if you read Ian Fleming or Alistair MacLean, for instance, the language is superb. It's as good as the study of literature. And I was also fairly fortunate that I also met a lot of people who were associated, with the security agencies and so on. And so the contrast between what was there in fiction and what was there in real life started to get very intriguing. And also how this plays out for individuals on the ground who actually have to do the job. That started to, it started to intrigue me and interest me a lot. But I finally started writing only when I did my PhD because it takes guts to write. And when I submitted my thesis with 80,000 words and it was accepted, I told myself that yes, if I can write a thesis, I can write a book. So that's how I wrote my first book, which is Supersonic, which is about against the backdrop of the Indian supersonic project. I don't think kids, at least these days, would know that India was one of the first countries which started to make its own supersonic jet fighters. It was one of the 4 countries in the world when we first started, but unfortunately our progress has not been so good. So the question is, why? Is there a mystery behind it? My book is also about the assassination, as I put it, or the strange deaths of a former prime minister and a former head of the Indian atomic energy program. So that's the thrill and that's the wow factor of it. But ultimately, it's about people who do the job. All right. I think I'm going to come back to your journey in detail because you've come from a corporate background and, you're still working with a company. Yeah, that's right. For you to have written something alongside is very interesting. We would like you to shed more light on that in a bit. Sure. And in the meanwhile, I'm going to ask Ruby ji that please tell us, because you've been writing, ever since I know you, and this is mainly your genre, like you write horror, I think horror also. No. Is it like just thriller? Mysteries and Mysteries, non-fiction. right. So, yeah, I think there is a thin line between the two. I totally get that. And that's, I think, one genre that I have really not picked up to read because I'm a scary poo. That really, in fact, I also wanted to add that, when this session was given to me, I was very happy because I want to tell these kids also that I at least thought that maybe I will start reading. Otherwise, I'm quite a voracious reader, and this genre somehow just got left out. In my time, there used to be books like Nancy Drew and Thomas Hardy. How many of you have heard of these two? Nancy Drew and right, few of them. Remember, these were the books we Yes, I had, remember. and now so many. We have some esteemed writers like you who have picked up the genre, and I really want to go back to those days. So tell me, what is your perception about espionage as thrillers, as a genre? Espionage, yeah, in particular. Okay, so the thing is that I too started reading mysteries, like you mentioned, Nancy Drew, Hardy Boys. Then I graduated to Agatha Christie, and of course, Alistair MacLean and Ian Fleming and John le Carre, whose Tinker Tailor Spy. All these novels are there, and of course, many other novels. And what I realized was that the entire focus is on spying in the Western world, USA, Russia. That was the main kind of focus. And then I started doing research into India and whether people are actually bothered about spying in India. And I realized that wars are not only what we find on the battlefield, there are covert wars happening
underhand things happening which we do not know about right from pre-independence era. There have been these powers which did not want India to progress at all, and a very close eye was being kept on the developments in India vis-a-vis the scientific developments, technological developments, and the defense capabilities which we were trying to acquire. And the international community did not want us to acquire those capabilities. So I started doing research on that in order to sensitize people, in order to make people aware that, listen, there's a lot of spying, covert, insidious spying happening against India. And the genesis of this, it goes back to the time of Homi Bhabha, who Murli has also talked about. And Homi Bhabha, being the father of nuclear energy, he was the first person who said that we must rely on thorium for our energy generation, because as compared to uranium we have to import, but thorium, we have got 25% of the world's reserves of thorium in India. So if thorium is used in the advanced heavy water reactor for generation of electricity, that is a cleaner fuel and more easily available. So he was the first person to say, let's go in for thorium for power generation. And he was also the first person to tell Nehru, way back in the 1950s, that we have the capability to develop the nuclear bomb. But neither Russia nor China nor America wanted us to develop the nuclear bomb at that point of time in 1950s. And then these covert, insidious events started happening, spying at its peak. And here I'll draw your attention to something which I've written in this espionage thriller. Of course, this is my 9th book. And I begin with the fact, which perhaps you have not heard about, that there have been 4 assassination attempts on Jawaharlal Nehru. And one assassination attempt I have given in detail. The book starts with that. It is a true event, and I have given a blow-by-blow account, which I have taken from the Gettysburg Times, all from archival newspaper reports. And there was this attempt to kind of finish him off, the reason being, he was the one who wanted us to have a scientific temper. He laid the foundation for our scientific institutions, and CIA, etc. They never wanted us to become a developed country. That is one reason. And of course, because of the nuclear bomb capability which he was toying with. And then came the very suspicious plane crash in which Homi Bhabha died. And there is the black box, etc., research being done. There was no way that plane could have crashed over the Mont Blanc mountains, over Switzerland. And at that point of time, Lal Bahadur Shastri, who was working on a permanent solution between India and Pakistan, he died under mysterious circumstances. He was lodged in a hotel which was far from the city center. There was no help. He tried to reach out. He could not do so. There was no kind of telephone in his room or some such thing. When his body came back, there were blue marks on his body, there were injury marks on his abdomen, and his son said that he seemed to have been poisoned, but no post-mortem was carried out. So these are the insidious events. So I'm going back to so many years. And more importantly, today we are leading in space research. But it was stifled way back at the time of Nambi Narayan. At that time, we were trying to have the cryogenic engines, which are responsible for our satellites going into space. And we bought these 7 cryogenic engines from Russia. And US got very upset. They told Russia that we are going to ensure embargo against Russia. So Boris Yeltsin got afraid and he said, okay, fine. But the contract for transfer of the 7 cryogenic engines was already done. And those 7 cryogenic engines were transferred to India. But whenever engines or anything is transferred, there is a transfer of technology. So they did not transfer the technology. But see the brilliance of our scientists like Nambi Narayan and his colleague Sasi Kumaran. They developed the cryogenic engine from scratch, doing reverse engineering on the existing cryogenic engines which we had got from Russia. Now what happened, they wanted to stifle this. How can India develop self-sufficiency and develop their own cryogenic engines? And they were trapped in a false honey trap case in which
the Indian police, the IB chief was involved, and he got a high post later on, which I shall not comment upon. And so they were trapped in this honey trap, and they didn't even know the lady who was kind of, trapped, and this honey trap thing happened, and they were jailed, and the ISRO chief, it did not say anything about it. So a rather long-winded answer that why and the importance of espionage related to India. We keep thinking, oh, Cold War espionage, Russia, and US. My dear friends, look to the espionage happening against India. The powers want to scuttle our defense developments, our scientific developments, and our technological and nuclear and space developments. So this is what I want to bring to light, hence the importance of espionage books and books involving spying, etc. Wow, what a wonderful, wonderful input. It was, actually, I was getting goosebumps, Ruby ji. Seriously, I think it really deserves an applause of what you just shared with us. Who could have thought that all these things are so closely related? Like even going back to something like nuclear reactors, and investing in something like developing nuclear energy, and spy world and espionage, and how the top notch bureaucrats are involved, how things just are brushed under the carpet. I think it was beautiful the way you actually shed light on all of that, and it definitely gives me the inclination or the motivation to pick up a book by an Indian author to delve deeper into what all happened in the past and maybe what all is happening even now. Yes, At many levels. And you are so right, children, don't you think she's so right that all these years we've just been, busy with, or I would say, looking at the Western aspect of the spy world. When we have such, I would say, intriguing information and something to actually ponder on, which is not just fiction. So, bravo. I mean, that was a great, great input. Thank you so much for that. Thank you, Manik. And Siddharth, over to you now. I want to know what is the USP of your writing when it comes to the same genre of espionage, because you definitely write about that, and your book, Veil of Shadows, has become such a rage, and it's doing so phenomenally well on Amazon. What is it that, you bring to the table in terms of this genre, and what is the USP of your writing? So in today's day and age, one thing that I feel is that when we are telling a story, and anybody who picks up a fiction knows that it's a story, but as storytellers, it becomes our job to make it as close to reality as possible. So the little nuances that I do is that all my locations are real, all places, street names, there are timestamps. Those are the smaller things to make the reader feel that they are very much in the scene. Part of the story. Part of the story. Then real world instances, like when I was writing Veil of Shadows, a coup had happened in Myanmar. So I'd use that. I know for a fact that because from various interviews of spies and of journalists, so the Punjabi faction of Pakistan has a huge hold over the entire country, and the other people are not quite happy about it, and they are vying for power. So I used that in the story. The importance of Siachen for India on, it's so the entire geopolitical situation becomes very concurrent. That's right. With this kind of a writing, and you feel almost as if this story is plausible, and that's the magic that you bring to the table through your story writing. Yeah, right. That sounds really interesting. In fact, I think a lot of Bollywood movies have also, especially with India and Pakistan, these, like you mentioned about this area. So I think this whole spy thing, because somehow our neighbors, when it comes to securing your boundaries, like geopolitical scenario that you're talking about, it becomes so much more relevant in that case.
And one thing that I also want to share here is that all my life, like through my childhood, I used to think about, all these looking at Mission Impossible and all these spies. I always felt they are those hot looking guys, and, the scenarios are like so over the, what do I say, like larger than life, and all of that is all about spy world. It's only when Bollywood, I would say, or I would say writers like you who started putting this out there, that this is very much a part of every country's, I would say, political and somewhat political and so many other aspects, a part of that. And these people, these spies can look like ordinary people, totally unassuming. Anybody standing at the pawn shop could be a spy or a raw agent, something which was not talked about when I was a kid, All we had was this fancy image, like Ruby ji also mentioned, like Nancy Drew and even Hardy Boys and all these things. They had a very Western, we had a very Western view of it. So I think thank you all for bringing all of these components to the table. And I would now want to, pose a question at Mr. Murli again, because your journey has also been very inspiring in a way that you have a corporate job going. You had this whole, journey of your life in terms of your academic career and professional career, and then you chose to write a book. Yes, of course, you talked about it in a bit, that if I can write 80,000 words like that, so might as well pen a book as well. But would you like to share something more about your professional journey, sir, with all of us, Okay, so in terms of writing a book? yeah, in terms of writing a book, as I said, my job, which was in the IT industry, I'm an engineer from IT Bombay and an MBA from IIM. I spent a lot of time in the Indian IT industry and travel, and I've done a good deal of travel. It's always been amazing to me why there are certain areas in which our country does well and a lot of areas in which our country does not do so well, despite the fact that we have all the resources, we have the people, etc. Right? And this was something which has to do with the concept of innovation. And so I started wondering about why is it that innovation is less evident in India as compared to other countries, especially in the past 30 years or so. If you take a look at how China has gone, it is very obvious that as far as technological innovation is concerned, China has really been able to go ahead. So that became a focus of interest to me, also from the corporate point of view, because it is technology and technological innovation which makes successful companies and which leads to economic development and good of the people, right? So it is very important that we also start doing that, but we didn't seem to do it. That was how I got to doing my PhD in the National Institute of Advanced Studies in Bangalore. The topic of my PhD was a comparison of innovation between India and China. In fact, the PhD was under the School of Security Studies. So it was specifically had to do with comparing India and China from a security and strategic studies perspective. Now, NIAS, as it so turns out, has a lot of people from ISRO, DRDO, Department of Atomic Energy, IFS, etc. And I met them and I got to know more and more about them. And there were some issues which I thought should be taken to as many people as possible. One was the fact that we were one of the first countries to start to develop a supersonic fighter aircraft, but it has taken us 60 years for it to actually fly. The second was also, as had been mentioned by Ruby, we were the first country under Homi Bhabha to say that thorium should be used for atomic energy. And all of these was in the 50s and 60s where nobody in the world was thinking about them. And yet there was something which had stopped that from happening. So that's when I started to realize that maybe there was more to it than just lack of resources, wrong people, etc., and there was something more at work. And as I researched it more and more, and the name of my novel is Supersonic. Unfortunately, I don't have a copy with me right now. But the story of Supersonic is set against the background of India's supersonic fighter aircraft, and it focuses specifically on the deaths of Lal Bahadur Shastri and Homi Bhabha. It's not, unlike in the case of Ruby, where she has covered a lot of ground, I focused on this because this was a seminal event which really set us back
by a lot of time. Now, what is the connection between atomic energy and supersonic fighter aircraft? Not many people realize that although today we talk about the Agnis and the Prithvis and our missile deterrent and so on, till about the year 2000, it was a plane which had to deliver a bomb. So therefore, the aircraft was all important to it. So that was the connection. And in this, I had two choices. I could write a journal article or a newspaper article, and I could put it out there. It would get almost no readership. But if I wrote a fiction novel, it would go to a much larger audience. And that was essentially the objective of why I did it. So obviously, when you fictionalize it, you have to have a character. So I picked up on a very common trope in films and books, which is you take a person who is otherwise not involved, who finds himself involved in events which are much larger than him. And so that is the main protagonist in the novel, and the story is about him, the second part of it. But the first part of it is essentially just a fact-driven story of the HF-24 Marut, the initial days of our atomic energy program, and the deaths of Lal Bahadur Shastri and Homi Bhabha. So I think it's very important to use fiction to get these messages across through film, through books, or in any media to as large an audience as possible. I totally agree with you, sir. And I really think that these stories need to be told. I wonder if you've used the same names or you've changed it. I mean, you've made it sound as fiction. No, I go a good deal by the kind of book which was first written by Frederick Fawcett. Those of you who read Frederick Fawcett and The Day of the Jackal and the Odessa File and so on, it is the use of real names, it is real people, and the story is set against that backdrop. That is what gives it its authenticity. All right. So I really request everybody to pick up your book, Supersonic. It has been acclaimed also. And I really think that all of us need to know what actually happened. And especially when, you become an author to tell something for a purpose. I feel in whatever profession we all are, if there is a purpose behind it, which is a good purpose, a good intention, it really needs to go out there and reach maximum people. I really would want everybody to give an applause to Sir for this. Thank you very much. He could have not written anything about it. He had a comfortable career and a professional life going for himself. So thank you so much. Over to you, Ruby ji. I mean, you've had such an illustrious journey, and being a woman, I know it's not easy. It's not easy at all. I've also started working once, everybody told me, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुम काम कर सकती हो. You know how it is for a woman. I mean, there are very few women here in the crowd, and I know them personally. I really admire them. And it takes a lot of courage for a woman to make a mark, and the way you have made it, Ruby ji, internationally as well. Would you just like to give us a brief, because we are just left with 5 more minutes. I've been just told. So I think I would also, maybe maximum 10 we can stretch it to. I would want some questions from the audience as well towards the end. So we would like to know a little bit about your journey and how, and how many years you've reached where you've reached and how you've kind of coped up, because it's very inspirational. Okay, so actually I wanted to talk about the Arihant submarine because that was in continuation to what he said, but since a paucity of time. Anyway, Arihant's nuclear submarine also, there was a sabotage. The chief engine room officer and the chief engineer were poisoned, and their dead bodies were placed on the railway tracks. And the reason being that, India's defense capability depends on the 3 triads to deliver nuclear bombs. That is, of course, like he talked about, and we have the fighter jets and land, and then we need the nuclear submarine. So that was also being sabotaged. So that is just an aside, because I was so keen to talk about that as well. And there have been 73 suicides, so to speak, in Bark between 95 to 2016, which is again a cause for great concern. So I wanted to expound on all these things which I have covered in my book, but I think you go ahead with it. Please take 3-4 minutes, and we would like to know. Okay, so these are the insidious events which I have covered about these scientists being found under mysterious circumstances,
dead, and where it is a clear cut. I mean, I ask you, 73 suicides in Bark alone between 95 and 2016. Is it possible for 73 of them to be depressed? I don't know. Then I'm giving you the example of these two. Then also, the main developer of the MBT Arjun tank, Mark Battle Tank 2, for our Indian Army, which was for a long time on the drawing board. And the chief designer of it, on his way to Pokhran for the trials, the final trials before the tank was inducted into the Indian Army. And this was a tank really required for our Thar Desert area. And he was killed in a hit and run truck case. So that is also another insidious thing. Then we have the air squadron of HAL, Hindustan Aeronautic Limited, who was responsible for many of the developments. He is going to the airport. Suddenly he tells his driver, you stop here, I'm just going to come. And he goes, supposedly, very weird. He stops midway to the airport, gets down from the car, tells the driver, I'm coming, goes a long distance, and his body is found hanging on a tree near a temple. I my ask God, you, this isn't this sounds strange? And a man on top of his game. So these are very, very mysterious things. Another top scientist who was working on thorium energy, like I was talking about the importance of thorium for the development of clean nuclear fuel. This person, he was working on thorium, he disappeared, and he was in Kalpakkam nuclear power plant. At that point of time, once he had disappeared for 10 days. It is believed he was compromised way back then. And then he had shifted to Kaiga nuclear power plant. He was on his morning walk, and then he disappeared. And then his wife went to the police, and naval divers came. And finally, his body was found in the Kali River. Now, if a man jumps into a river and commits suicide, the body will flow downstream. His body was found lodged upstream. And it was, I mean, this is really mysterious. I don't know how each and every case was closed, saying that it is inexplicable. Another top scientist, he was found dead, his room locked from inside. And when the door was opened, it was found he had extensive hemorrhaging in his brain. No fingerprints found, nothing at all. And the door locked from inside. Expert assassin at work? I don't know. You tell me. So there are all these, the more research I did, the more insidious events I found. Our DRDO computers hacked. So a lot of these spying is taking place, and the CIA has also been on the trail. And I feel that the Pakistani, Muslim terrorism has been done to death, but we have to take stock of the fact that it is the Chinese who have a hold over the entire, not only the subcontinent, but they have been hacking into the systems in USA, in Australia, in Japan, in Canada, all these places. So we have to understand the hold which they have. And this is what my book is all about. The Li Feng Pagoda is a place in China where the finale is kind of based on. And we need to understand, and do you know, in the last decade or so, all the CIA operatives who are working in China have been assassinated or murdered by the People's Liberation Army. And the CIA is at its wit's end. So there are these double agents also who are working for China on one side and CIA on the other side. So all these things I have covered in my book. And I feel that there needs to be a debate and talk about the threats which India is facing. We really should not think that war is only on the battlefield. There is an internal war going on. So I was very keen, and I'm very passionate about this topic, which is why I've written this book. Took me several years to write. And now to answer Manik's question about Rubichi, being a woman. I'll tell you, that is, I Yeah, just want yeah. to add something to So- what you just said. Right. And I will come back to your journey for this because, what you just said, I think resonated with a lot of us here. In fact, it reminded me, and I thought, let me first ask another question related to what you just spoke about. Because I don't know how many of you, but I would want to see with a show of hands, when Ruby ji was talking about all these incidents, those mysterious incidents, especially happening with, these people of authority at some, whatever places she was mentioning, did it remind you of these movies that we see where, the truck comes and, all of those, especially those scenes just came into my mind where we see people getting killed,
at authorities because they're supposed to be removed from the way or cleared from the way. How many of you actually thought of some Bollywood movie or some scenes flashed in your head? Can you just raise your hands and give me a show with a show of hands? Okay, all the kids. Because again, from books, I would say this visual medium of Bollywood, or I would say films or cinema, has become a integral part of espionage thrillers. And I would first want to pose a question at Siddharth and then come back and maybe wind up the session after you speak about your journey. Siddharth, what do you think? I mean, of course, all of us have a take on this, whether we enjoy reading a thriller book or whether we enjoy watching a movie on it. What is your take on it, and how do you think that literature or books has its own place in spite of seeing it on the celluloid, which is like a very convenient way, so to speak, or has a more impact on your mind? How do you think, a book is better? So, of course, I mean, a movie or a talkie will give you that instant gratification, or an instant hit of dopamine with the film playing in front of you. But I do feel that when you read a book, it is a much more immersive experience. It allows your imagination to run. Okay, right. Right. So it allows your imagination to really delve into what is being said. It is much more descriptive. It is much more enhancing. It is much more enriching to read as compared to just seeing something in a 2D format. I feel that if you are reading and if it's a decently well written book, then you have almost like a 4D feel. Like, for example, even if a food item is explained, you can almost taste the flavors and almost smell the food in front of you. Just Right. But that's something that of course is missing in the movies, which it doesn't happen. So Okay. that's my take on it. Right. So anybody here would like to just give me one reasoning, or let's just forget about the reasoning. We are very short on time. Just let me know if you enjoy a book more. Anybody who has enjoyed the book more on a subject or and as compared to the movie made on it. Yes, sir. There's just one question to Dr. Gupta. Sure, actually, we're just taking questions in one more minute, and I think you can be the first speaker or first person to pose the question. Just give me 1 minute. I'd already asked a question to the audience. Is anybody here who's enjoyed a book more than a movie on it? The book more? Oh wow, quite a few of us here who've enjoyed the book more, and when they watched the movie, they said, it's not as good as what, because I think your own imagination takes it to the next level. So now we are opening the, audience questions round, where Q&A, and sir, please go ahead with your question. Dr. Gupta, there's a question to you. You mentioned that one of the scientists was found hanging, Yes. right? Yes. And then again, you mentioned one of the scientists was found upstream and not downstream. Yes. So was that hanging ante-mortem or post-mortem? Actually, the post-mortem details are not available. All my research is based on the documents which are available publicly. So I have not managed to get those, because you come to know that in the post-mortem, whether it was ante-mortem or post-mortem. So those details I could not get in the public domain. Even again, the same question, was that drowning post-mortem killed and thrown in the river? Or did he die Actually, of drowning? yeah, so the body was found after 3 days and it was all bloated and everything. And I agree with what you are asking. Again, those details are not available. I could not get anything from the archival material. Just that the police were not able, they called his wife to identify the body, and she said, yeah, could be, because she couldn't recognize it. It was bloated and, almost decayed. What happened from the post-mortem, it is not published. That is what is Agreed. most vital. Agreed. Right. Agreed. Thank you for a great question. So anyone? Yes, please. And one in, I think, okay, the boy also after this. Sorry, after this. My name is Amar Pandey, and Dr. Gupta,
the incidents that you referred regarding Kaiga. So I inquired into that incident. because Wow. I was heading internal security of Karnataka, and the scientist was found fully ready for his morning jog. He was used to jogging in the morning. And you know Kaiga location if you have Yes, visited I know. there. So it's very near to the forest Harur area. Forest, Kaiga Harur Forest. Yes. Yeah, around all along the river Kali. Yes. And his body was found, and the injuries were all Sir, just keep the mic closer to yeah, you. injuries were all found to be in order. And there were some different stories were there, but by virtue of being a very high sensitive assignment working on, as well as the location and being atomic energy, so a lot of things have to be done in a with certain protocol. Correct. So just to share with you, as a police finding, that it was found to be absolutely natural, though we all suspected. And another related incident happened there in Kaiga. Just after few days, there was leak of radioactive materials. Again, in a very small And the head confine- of security was also found dead? I read that also. Yeah, sorry not to- the head of the security, this scientist. And this leakage was there in a very limited part of the plant. So we investigated that as well and tried to find out whether there's any connection between the two. But our investigation, we could not proceed further because as you have thoroughly researched on the subject that the organization is very protective about what comes out. So I thought I must share this being a part of the situation which you mentioned. Thank you. Thank you so much for sharing. I'm so excited to know this. Yeah, I And, think it you know, it deserves an kind of applause. correlates It does. whatever I've said. So thank Yeah, God. Thank please, you. applause for this input. Thank you so much, sir. Thank you. It just brought so much more life to the whole session. Yes, Thank you so I'm much. so I think happy. even the question by him, and now we have the student. This is the last question. Last question. please. Yes, we'll have to wind up. Hello, I am Amish Bansal and I want to ask the question from आपका क्वेश्चन हम बाहर करवाते हैं भी अलग से, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, बिकॉज कल भी काफी डिले हो गया था एंड कल के कुछ सेशंस जो हमें आज इंक्लूड करने हैं, तो इसलिए हम आपसे माफी चाहेंगे. एक बार जोरदार तालियां. Yeah. And I just want to say, you know, I'm an etiquette coach by profession. I just want to tell you one small thing that we all have been waiting here since 10 o'clock in the morning for the audience to show up. And for me, I could have moderated and left. So it's just that, you know, for the, you know, I feel this esteemed panel, at least there should have been someone in the audience listening to them. And each one of us is as important as everybody. I think every single person in the audience is also as important as every single person on the panel. Thank you so much to all of you and my esteemed panel, and Kavya to you, and have a great day. Thank you so थैंक much. यू वेरी मच. मैं हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर लाल सर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सभी पैनलिस्ट और मॉडरेटर, उनको आप मोमेंटो भेंट करेंगे. मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा क्विकली, क्योंकि अगले इस सेशन की तरफ हमें बढ़ना है. तो आइए, सबसे पहले मुरली मूर्ति जी, डॉक्टर रूबी गुप्ता, सिद्धार्थ माहेश्वरी और मानिक कौर. प्लीज गो. मुरली मूर्ति सर, जोरदार तालियां एक बार उनके लिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही कमाल तरीके से आपने अपनी बात रखी. डॉक्टर रूबी गुप्ता हमारी टीम का भी हिस्सा हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा है एंड आई एम श्योर जो बच्चे यहां पे सुन रहे हैं उनको बड़ा मजा आया होगा. इसके बाद सिद्धार्थ माहेश्वरी हमारे पैनलिस्ट. थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ.
और अब हमारी कमाल की मॉडरेटर यहाँ पे मानिक कौर, जिन्होंने बहुत ही कमाल का ये सेशन यहाँ पे मॉडरेट किया। थैंक यू वेरी मच। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया देहरादून में पहली दफा ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और यहां से शुरुआत है, तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे सभी पैनलिस्ट और मॉडरेटर, आपको थैंक यू। अब हम हमारे आज के दूसरे सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। के विजय कुमार सर कल ही यहां पे आ चुके थे, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत कीजिए। साथ में आलोक लाल सर यहां स्टेज पे मौजूद हैं और डीवी गुरु प्रसाद सर, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी मंच पे आएंगे। गुरु प्रसाद सर के बारे में जी अगर मैं आपको बताऊं कि एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 3 बहुत ही खतरनाक कम्युनली सेंसिटिव जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे उन्होंने काम किया है। वर्कड विद 4 चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका और एक बहुत ही अच्छा उनको अनुभव रहा है स्टेट सीआईडी और स्टेट इंटेलिजेंस का। उसके अलावा विजय कुमार सर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि भाई आईजी बीएसएफ रहे हैं कश्मीर में उस दौरान जब करगिल वॉर और फियादीन अटैक हुए थे। हेडेड एसटीएफ इन ऑपरेशन कुकून और वीरप्पन पे लिखी उनकी किताब बड़ी प्रचलित है। आलोक लाल सर से आप वाकिफ हैं, जिनकी ये दूरदृष्टि थी और जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि भाई इस तरह का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए, तो सर को आप लगातार सुनते आ रहे हैं। उसके अलावा सृष्टि, डॉक्टर सृष्टि जो है मॉडरेट कर रही हैं इस सेशन को और पोस्ट डॉक्टरल फेलो एट साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस वक्त पे वो हैं रिसर्च फेलो। लबासना आप जानते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को वो तैयार करता है, वहां पे वर्किंग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को लेके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टिस मुंबई में और इस वक्त पे चाइना का जो बॉर्डर उत्तराखंड से लगता है उन जिलों में भी काम कर रही हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर सृष्टि। Thank you, and once again, good morning to a very coveted audience and a dedicated audience. My gratitude and big thank you to our esteemed panelists, I think who need absolutely no introduction. The work and the regulatory experiences that they have, I think will speak for itself. So without further ado, I would like to redirect your attention to our panelists, and this is the book that is the book of the hour, and I think it's only right to hold it up for people to buy a copy and have our authors discuss it. I would like to turn to Sir Vijay Kumar sir. If you could, for our young audience, summarize the content of the book, but also I think that would summarize this very vast and esteemed service that you've had, sir. That would be an honor to listen to set the ball rolling. Thank you. I would say, since a lot of youngsters are there, you know the VIBGR, VIBGYOR, what does it stand for? The rain. V stands for what? Violet. Here it stands for violent crime. Imagine. I stands for what? Indigo. Blue collar crime. Means, cheating, burglary and smaller thing. And next is what? Sorry, I is indigo, then comes blue collar. Indigo is invisible crime. You know, recently for cryptocurrency, one fellow was sentenced for 110 years. His name is Sam Bang Friedman. He was really deep fried in the court. Then, next is what? G is for green crimes, ecology, other crimes. Then you got yellow, pornography, child, various things, body part selling and all. Then orange is ambient crime, husband and wife, boss and employee crime, and this kind of crime. And red is for terrorist crime. Supposing you have the entire spectrum of rainbow, yes. I would summarize Veerappan as a man who bent the rainbow. He started with violent crime and ended up with ideological terrorists and that kind of thing. So he ended up with the R. Yes. He became a radical. To summarize his life into 3 small phases, he was a prodigious child, but his prodigy was a negative prodigy. All his art and science and everything went into shooting the monkey from one tree to another tree. He was a trap shooter, born shooter. At the age of 12, 13, he was a precocious child. So he was recruited into the hunting team of a man who was wanting tusk. Then later on, he found that he was being chased by the police for keeping an illicit gun and shooting a wild boar. So the chase of the law
made him a fugitive. He went further away from the law and became a lawbreaker. And he was a magnetic personality, charismatic man, and audacious leader. He was able to increase the size of the team from 3 to 4 to 5 and kill all his enemies. Something like what Prabhakaran did, LTTE. So he became the one topmost man in the forest. And the second phase of his life is when Madam Jayalalitha became the CM. On a Good Friday, 9th of April 1993, he killed 22 people in a landmine blast. That was a turning point in his life. He had 2-3 major turning points. This was one. The next one was abduction of a famous, iconic actor called Rajkumar. So when he killed 22 people, Virendra Patel, the Chief Minister of Karnataka, and Jayalalitha ji, Chief Minister of Tamil Nadu, they combined to form a special task force. An iconic officer called Walter Devaram created that force. He asked for volunteers from a 65,000 police force and took only the first 200 people who offered. This is very important. In a fight like this, you have to take the people who's willing to go for a high-risk mission. You cannot force somebody to go and say, you go and die there. A man willing to die, even die, and making it a passion, he should be recruited in any special force. So that was the kind of STF. Similarly, from Karnataka, his side, a very leading Bidri, Shankar Bidri, who volunteered. And before that, one K.U. Shetty was the IPS officer. So all these people tried to hunt him and whittle down his team from 150, nearly 200 to a small single-digit number. The third phase of his life began when Jayalalitha ji lost the elections. The next government came, and he had spoken against Jayalalitha ji and in favor of the other party in television. So the new party, he expected a lot of support from them. That did not happen. He made 9 demands, very atrocious demands, like Pablo Escobar in Colombia. He wanted his own on 9 terms, open prison, visitors can meet him, kind of a lot of other perks he wanted. The government was not able to handle it. At that time, he made token kidnappings of Senani and few scientists, some people who went into the reserves there, Bandipur, and negotiations began. Then, finding that he was not making headway, he started getting the radical fellows. I told you the red stands for terrorist and ideologues. He started bending them to his way, and that was when they advised him to do a major abduction, and Rajkumar was abducted. So this, in short, is the 3 phases, and I entered into the 4th phase when already the teams have been reduced because of the good work done by my predecessors, both from Karnataka and Tamil Nadu. I'll come to that later. Sure, sir. Thank you so much. And I know the amount of planning, research, thinking, and organizing that goes into a project of this sort. It's also not just the front end, but also the back end, and hence the huge number of personnel, police personnel involved. I would like Alok sir to shed some light on his perspective on the task force that was set up. And I think that would make for an interesting perspective for the audience. Thank you, Srishti. A little before we came up here, the introduction given by Kavya gave a huge amount of credit to me for having conceptualized this. I agree. To answer your question, this little idea is now seeing fructification because of all those factors you mentioned. Teamwork, distribution of duties, sticking to what has been given to you, people like Kavya, and so many others. Ashok is sitting here. He was so very active in the entire process despite his busy schedule otherwise. So all these things get together to bring to you some product. I'm glad that in this product we have some fantastic people participating. And if this is the start of the product, I'm sure this is only going to go up. So having said this, organizing any serious efforts against, say, an established criminal, be it a brigand of the old times or be it a white-collar criminal of today, is not easy. Things get complicated in many ways. Some of those things were mentioned here.
So one of the complications arises because we have the wrong person at the wrong place. Some of those wrong persons are posted and some others are elected. So we can't do much about who is elected. But those who are posted can certainly be chosen with greater care and be given at least some free hand in acting according to the law, according to the Constitution's requirements, and according to the oath that all of us police officers take. So I know the two panelists here have faced the same problems I have in organizing sufficient support within the political system. And in any case, in Indian police, we work with very severe handicaps because the wherewithals are missing mostly. The infrastructure is missing. We don't have the correct weapons. We don't have communication equipment. We don't have vehicles. Yes. We don't have helicopters. I need a helicopter, I'll have to go through so many channels to get a helicopter, and by then the bird would have flown away. Yes. So this is how that my bird takes off so much later than the real bird. Indeed. This is what happens. Indeed. I think, sir, a story of resilience and a story of determination is what our police force really reinstates, not just in the past, in the 1990s and 2000s, but even today. And I think it's quite inspiring for our young audiences, as well as the seniors sitting in the crowd, to really understand how that is negotiated in the everyday. The professionalism that one displays, but at the same time balancing that professionalism and strategic balance, both outside the house as well as within the household. Just a small anecdote, sir. I was representing the Uttar Pradesh team for basketball. We were doing a cross-country train travel. And I remember when we were crossing the Vindhyachal and across the forests, Mysore and Bangalore, we were warned that the Virappan jungles are going to approach, so you also have to shut down the windows because they would take anything from a bed sheet to a bag. And of course, we know of major abductions that Sir highlighted. So that was my first interaction, so to speak, of, with the bandit, Virappan. It was middle school, 8th grade. To sit here and really understand what went through in terms of strategy, sir, from your personal capacity as a leader of the task force, if you could shed some light on that, whatever is allowed. I know a lot of it is classified information, but... You're talking about strategy which finally upended the man? Sir. In sum, I would say very briefly, he had a 10-foot tall image. He was a titan among the people. Everybody in the forest or the fringe of the forest do not have a love for the government officials, whether you are from the police or the revenue or from the forest, because they necessarily have to depend on the minor forest produce, which they think belong to them because his father's father, 10 generations back, have been owning it. Now, the recent intrusions of the last 150, 200 years have not made a big impact on them. So he's a potential thief made by our recent laws, and he is hostile to the authority, and therefore anybody who sticks up for that man becomes a popular man. As I told you, Veerappan ran away because he had a gun and he shot a wild boar, very small offense to start with. One infringement led to another, one violation led to another, and he started gathering a team around him. His prime enemy, he finished him off and he became the only man. So he was a go-to man in the entire area, and he used to do some small help to the shepherds, to the local people. If somebody had a water pump and motor was under repair, he couldn't even afford $50 he used to give. But he was not a Robin Hood across the board at all. He was not a great charitable man, universally charitable. He was selectively good to people because he had his eyes and ears in about 400 villages, which we didn't have. Then the second factor was a fear factor. One was a loyalty to some extent, because there was a big Tamil community living in Kollegal area. Because of Mettur Dam being constructed, a lot of, after 1956 partition of the state, entered into that area, and willy-nilly he had good dens and harbor and support. So his information system was fantastic. When Karnataka government stopped the quarrying,
best of the quarries of granite, red granite and black granite, one of the best in the country is in that area. Best of the sandalwood in the world is in that area. Best of the tusks are in that area, not internationally the best, but nationally the best. So he started as a tusk agent, killing for one Zevi Counter, who was a notorious forest offender. And he started killing the elephants because he was an expert in approaching the elephant from the correct direction. Because hunting an elephant and with one single bullet here is not an easy thing. If the elephant senses you, you're in trouble, but you have to go fairly. Otherwise, you have to shoot about 100 bullets sometimes. In one case, I know 30, 40 bullets did not kill the elephant immediately. It died after a few days. So therefore, he was a good shot, talented fellow. He had information system, and he outbeat our system. But in the beginning, as I told you, my predecessor slowly brought his team into smaller sizes, and I had a big quandary, means difficulty on my side. His team was only 4, but his eyes were millions. When a man becomes invisible, light and mobile, it becomes extremely impossible or difficult target for us. So find him was a problem. So we devised one simple thing. I said, intelligence will be 90% and operations 10%. It doesn't mean operations will stop, but your focus will be on intelligence. We created intelligence team, multiplied the number by 10, and told the intelligence 12 teams spread over 240 kilometers in the forest, which is not equal to here to Delhi at all. It will be multiplied 20 times the distance, because in the jungle the distances get multiplied because of the gradient. 1 gram weight on your body is equal to 1,000 grams in the plains. That is what it is roughly. I'm putting it crudely. Okay, these equations are not vital, but just to make you understand the sensitivity of the problem. After making 12 teams, they were told not to find Veerappan, whether he is there, at least tell Veerappan is not here. So 10 teams came back to me and said, we are more or less sure Veerappan is not here. So I will stop here and tell you later what happened. Thank you, sir. So you get closer by reducing the possibilities of a conclusion, and then you reach the prime target eventually. Also, sir, I think since we are talking about behind the bandit's mask, which is the theme of this session, very interestingly, sir's book was translated in several languages. It's already sold several copies. And Kannada was one of those primary language best-selling. Yes, and we have the translator amongst us also, Guru Prasad sir, who himself was involved with the, setting up initially in the state of Karnataka. And I'd like to know from your own experiences, sir, the translation process of such a vastly enriching book, but also your personal experiences with the task. Before I talk about this, before I took up the translation of Vijay's book on Veerappan, I had already translated my batchmate Neeraj's book, Dial D for Dawn. And then Vijay approached me and asked me whether I would be interested in translating his book. I straight away said yes, because I knew something about Veerappan. When I was the Superintendent of Police of Kodagu district, Veerappan had killed 2 elephants, and I even now remember, when the elephant dies, the smell is so foul. It took almost 2 days for me to wash off that particular smell. So, and then when Karnataka first started operation against Veerappan, I was at that time the additional DGP of Reserve Police. 80% of the Karnataka STF comprised of the Reserve Police. So I knew a little bit of it. And the first Superintendent of Police that the Veerappan killed was Hari Krishna, SP from Karnataka. And he was my co-probationer. He was from the Karnataka State Service, I was from the IPS, we trained together. So when he came and asked me whether I would like to, I said yes, because I knew something about Veerappan, something about the subject. And to tell the audience, Veerappan operated in two states, Karnataka and Tamil Nadu. He is a Tamilian who was born in Karnataka, operated in Karnataka mostly, and he would go whenever, the two states, in fact, all the 22 police officers whom Vijay Kumar said were killed, they were killed not in Tamil Nadu, they were killed in Karnataka.
So out of the 123 cases that have been registered against Veerappan, many not recorded, almost 80% of the cases happened in Karnataka. So it was very, very difficult for us to catch Veerappan, because people will ask the question why it was so difficult to catch Veerappan, because he operated in 2 states. And it's a thick jungle, and the river Kaveri separates the 2 states, and he will just go across the river in a small boat in a coracle and then operate from there. Unless and until there was a proper coordination, it was very, very difficult. And the coordination came, as Vijay Kumar said, when both the chief ministers met and decided to put an end to this, and we started a joint STF. The joint STF, till the joint STF came into operation, there was no coordination between the 2 states. Secondly, even after the joint STF came into operation, many police officers are here. In the police, we don't want to give the information we have to another person. The credit taking. Karnataka wants to take credit for killing Veerappan first. Tamil Nadu wants to take credit for killing Veerappan first. Ultimately, it happened in Tamil Nadu. Vijay Kumar was responsible for his killing. Even now, Karnataka people the police officers in Karnataka are very, very unhappy that it happened there. But Vijay Kumar was able to achieve that because he had an excellent rapport with the Karnataka team. That's what he has written. In his book, I still remember the last paragraph. He says, Veerappan operation was like playing a game of football. Who wins or, so many people may score goals, but ultimately it is the team that wins, not the person who strikes the goal. So it was so very difficult. And now, I also want to mention here that after reading and translating Veerappan's book by Vijay Kumar into Kannada, I knew there were so many gaps which for some reason he could not mention something. Probably he was not able to get everything from Karnataka. So what I did was I started doing research on Veerappan. For 4 years I did research on Veerappan, and I have written a book on Veerappan in English, which is likely to be published very shortly. Suffice it to say that if one person is being targeted by 2 different, even within the same state, let us say within the state of Uttaranchal, if you are going to catch one person, if there is no proper coordination, at least there is a DGP here who can coordinate. They are 2 different states. Police is a state subject. It was very difficult, and I must compliment here the tenacity, the resilience of Vijay. He came 3 times. He worked for 3 times in STF. The 3rd time he was able to catch, and because of 2 things, he was successful because he could carry along everybody with him. Number 2, intelligence operation. Yes. And why it had to take a long time was because at that time we could not operate, any cell phones were not there in the forest. We could not have drones. If there were drones, if there were cell phones, Veerappan would have been finished long, long ago. Yes. So it was all based on human intelligence, and that's it. Yes. Thank you so much, sir. I think as a student of international relations, I'm very, very lucky to be sharing this podium, and the significance of, internal borders, especially as, human, which is such a crucial element. And thank you for highlighting, Vijay sir, that intelligence and operations, the percentage at which they worked. Without appearing presumptuous, cutting into moderator's turf, I want to mention there is a tributary of the Kaveri. Kaveri has got several tributaries. That's right. That's a major river south of India. Krishna is there, other Godavari is there, but deep south, that is the most important river. Hemavati, Kabini, hundreds of rivers flow into it, Bhavani and so on, Moyar and so on. But there is a Urdhva Halla, which my counterpart was always to say, which means it's a narrow gorge. Mm-hmm. I have gone through the gorge, and if you're walking there, if somebody is there 6 feet away, you will not be able to see him. Right. And there many times, must have been hundreds of raids have been conducted by my predecessors, by my teams. And Shankar Bidri always used to say, my counterpart, go and search Urdhva Halla. But Urdhva Halla was the impossible place to search. Right. We don't know how many times we went very close to him, but at least once. Yes. We were 10 feet, not me, my predecessor's team, but 10, 12 feet from him. He was just about that much away. Mm-hmm. Talking about drones, we didn't even have good sniffer dogs. Right. We carried the sniffer dogs, but we had to virtually carry them. The weight of the sniffer dog is about 28 to 35 kg average. Yes.
After walking 1 kilometer, the dog will have to be carried by the man. I told you 1 gram is equal to 1 kg in the forest. So imagine 25 kilograms penalty. And these handlers started shamming. They Yes. didn't want, they said the dog is sick or they were sick. Yes. Finally, we got the dogs of the local hunters, which were doing so well when we were in the private sector. But Yes. moment they came into our government ration, they stopped performing well. Right. So we had to return. I mean, this Yes. is in lighter vein. We had to Yes. return those dogs. This was Yes. a sidelight. Absolutely. So there was also a dog within the Virappan gang that was captured, I believe, and that was a small anecdote somebody had, I think, came as a news piece somewhere that to capture the dog was equally important, alongside the team and the kid along the way. Yes. So would you like to say 2 lines? I think just to on a lighter vein. You know, Veerappan, people say that Veerappan used to have a dog. Veerappan himself, you know, was like, Tamil Nadu police always used to say that Veerappan was not a man, he was more like an animal. Yes. Because he had lot of animal instincts. He could easily see if there was any intruder in his area. And he, you know, by listening to the sounds of birds, etc., he could know if somebody was coming. He also had a dog. He also had a pariah dog. Yes. And that particular dog, if he were sleeping, if the gang was sleeping, the dog would always give a signal to him. Yes. That many of our Karnataka police officers think that Veerappan could escape Karnataka STF because of the alert by this dog. So once what it so happened, there was an inspector called Nagaraj. We used to call him Mise Nagaraj because he had a big mustache. So Nagaraj went to catch Veerappan. Veerappan was taking bath in he was bathing in a small stream, and he had not kept his weapon. And these people went, and unfortunately, a constable who fired at Veerappan, he missed his shot. And the entire gang ran away without wearing any of those clothes. Yes. And these people, you know, our STF team fired on the running gang. Right. Unfortunately, none of the gang members, because, you know, police are very bad shot. Vijay Kumar is an exception, but normally people like me, you know, if we fire 10 bullets, only one will hit. So like that, you know, the bullets fired by one of our Karnataka officers, instead of hitting Veerappan gang members, it hit the dog. Ultimately, the dog died, and it became easier for his team later. Yes. The emotional effect, I think, it would really break somebody. And The bird, you said the signals are available in the forest. Supposing a tiger is approaching, the bird or the monkey on top of a tree will make a signal and alert the deer. So there is a triangulation between the animal. That is one side. But there is actually a bird called lapwing, Lapwig, which behaves in a funny way the moment the human beings come there. It is very happy when the animals are there, the bees are there, birds are there, no disturbance. The moment the hunters are there, the lapwing. So it is called Alkati in Tamil. That means pointing the man's presence. He was very sensitive to the lapwigs. He was watching them. so very interesting. I think this is sort of heading into disciplinary areas of botany, zoology, security studies. So as an IPS officer, I feel you're straddled across disciplines within disciplines, really. Yes, absolutely. And I think these are those sort of cult cases that we've obviously grown up listening and thinking about, and that have inspired us to pursue the careers that we do now. But a similar case with the other bandit in question, which is also a bit of it could straddle between the good and the bad. And I'd like Alok sir to share some viewpoints on Phulan Devi and the role and the characterization there and the community that came across, and if you see any similarities and challenges that one faced. Well, Phulan Devi is much talked about, and for the simple reason that she rose at a time when women dacoits were not known. She might have set a trend, but then one can also look at the other side of the picture, that she was forced into what she was doing. So this is the story of many of them. Dealing with a person like her was difficult on two accounts. One was that the male-dominated government, the male-dominated police force,
the male-dominated society was not willing to accept that you could have such a threat to the overall picture from somebody who's just a woman. So this is how this was perceived. The second problem was that we didn't quite have the wherewithals. I don't know how many of you have seen the area in which she operated. The area which is in the Kanpur district, the rural Kanpur district, where I was posted at that time, adjoining the Chambal ravines. Now, those ravines are some of the most accessible places in the world. And very often in my earliest part of the career, I used to think that the only way to deal with dacoity in this area is to have two things. One is to raise this particular topography to a level which can be made accessible to ordinary human beings. I say ordinary human beings because local residents of that area know how to negotiate those. And second thing was that do enough development there so that people have employment. One more very important factor which has to be taken into account in that particular area is that the dacoits are not called dacoits there. They are called कि वो बागी हो गया. So he has sort of become a rebel, not exactly a criminal. Why that person has become an outlaw or rebel is because there is zulm, there is atyachar. And the fact remains that zulm and atyachar is everywhere. But in those areas where deprivation is of a level which you cannot imagine unless you have seen it, is something that makes these people more susceptible to take to crime. Now, since the society approves of it as an act of, in a way, bravery, that you become somebody who is taking it on, the people who have it, and since you do not have it, the have-nots, in a way, support this action. In the case of Phulan Devi, her story was known to a lot of people, that a lot done by the male-dominated society to her, and by the well-heeled people of that area to the poor peasantry of that area. Now, this family to which Phulan Devi belonged did not even have 4 bighas of land. So it was not possible for a large family to subsist on that. So they were dependent on a lot of well-to-do families in the area to eke their... Sorry? Hello? Yeah. So eke their livelihood was a challenge for her, for the family, and so they were dependent on the local. So ultimately, it happened one day that after all that had happened, she took it upon herself. I'm sorry, this is not working, and I must take responsibility for anything goes wrong, okay? So, when Phulan Devi, had the advantage of local support to some extent, she was also pitted against a very strong adversary. And in that area, the one caste that dominates is Thakurs, Right. who are powerful Yes. because they are landowning. Absolutely. Then Brahmins, like other parts of the country, have a lot of say in what happens. So, all said and done, coming from the Mallaha community, which is very backward, Yes. in very poor shape, she was some sort of a hero to represent that particular segment of society. And she had a personal grudge. Therefore, on that particular morning, I heard news that 21 people had been shot dead by her and her gang. Now, these were all from the same caste, Yes. and all because they had a connection to some unfortunate incident that had taken place with Phulan Devi. And the fact is that
the person who she was closest to, called Vikram Malla, had been killed by this particular group of strong people. And thereafter, she was raped by a lot of them. So she decided that the time had come to, pay back in kind. So Yes. this is what happened. Absolutely. Madam, I want to say something here. Sure. Because immediately my mind is leaping to some association of thoughts Yes, between please. Poolan and what a modest demand she made. She was in the prison and Malkan Singh was very unhappy that she was given so much importance. Her surrender was given so much importance by the Chief Minister, Arjun Singh, I think, Chief Minister. I'm sorry, I didn't get Yeah. the question. When she surrendered, Arjun Singh was the Chief Minister. When Poolan Lot of Devi- importance was given to her surrender. Whereas Balkan, feeling insulted, he was in Gwalior jail. Now, the demands, you know about both the stories, the demands made by Poolan were very, very modest, including accommodation for a mother, ordinary hut kind of thing, including take care of my cow, Yes, yes. things like that. Whereas Veerappan was very audacious in his thinking, very ambitious. He wanted 1,000 crores Right. and he felt very foolish because it came in the front lines of the papers. 1,000 crores and NSG, Black Cat commandos to protect him. Yes. These are all not so well known, but his imagination was boundless. He asked funny things. And he was also an admirer of Poolan Devi. He asked when Poolan Devi was killed, he released an audio tape saying, why should Poolan Devi be killed like this? Has she done anything atrocious? So many politicians who have done worse and who are rapacious, who are making money, they should be shot. Because he also had a political ambition. He wanted to become a Yes. politician himself, given a chance. Such is the system, Vijay. Now, after having been branded as one of the most fierce persons, she killed 21 persons in one go. And with all the depredations that were leveled against her, and many of them very rightly also, a person like that gets the approval of the constituency, becomes a popular member of parliament. Think of the political party which thinks that since she is from a certain community, she will go to such and such constituency, which is not in the area where she lives or even close to that. From Kanpur Dehat to Mirzapur, which is the other end of Uttar Pradesh. And you know, Uttar Pradesh is not a state, it's a country. So from one end to the other, she goes only because the Malla community is strong there. And she was definitely going to win because she came from the then ruling party of the state and she had the caste factor in her advantage. So let us look at the whole system, Vijay. Yes. That despite all that somebody does, it ultimately counts if you are from one caste or the other. So I don't know, a lot has to be done about this, and who can do it, I am not sure. Yes. Even Gandhi could not do it, who else can? In fact, I want to Please, add to what sir. Mr. Alok Lal has said. You know, Veerappan, as Vijay Kumar mentioned, Veerappan has sent a cassette in which he has admired Poolan Devi. Veerappan used to listen to the radio every day, you know, including BBC. Every day he used to, 3 times a day he would listen. He was an admirer of Poolan Devi. You know, I very well remember what he said in the cassette. What, as Mr. Lal said, he admired Poolan Devi because of her caste. Veerappan said that Poolan Devi belongs to a weaker section. She belongs to an OBC. I also belong to an OBC. And she is disliked by upper caste. I am also disliked by upper caste. What is happening in the north is a caste conflict. What exactly is happening in Tamil Nadu is also a caste conflict. Because I belong to the lower caste, they will not allow me, they will kill me. You know, somebody, when he kidnapped a former minister called Nagappa, people asked him, you know, why don't you release him? He said, I will release him provided I am given a pardon by the President of India. And this lawyer, you know, who was there, he asked, how can you get pardon? He says, when Poolan Devi can be given a pardon, why can't I be given? And when Poolan Devi was killed, exactly what Mr. Alok Lal said, same thing he said,
Poolan Devi has become a member of parliament. She wants to become the chief minister. This is what Veerappan says. She wants to become the chief minister of UP, but the upper caste persons of UP will never allow her to become the chief minister, and that is the reason why she was killed. This is what exactly he has written in his case. So, Yes. you know, he was a great admirer of Poolan Devi. Absolutely, sir. And thank you for pointing that out. I think it's the age-old discussion and debate between tradition and modernity, as well as the bourgeois and the proletariat, which the ramifications and projections in the South Asian context we see through the caste conflict, even during contemporary times and in the past, surely, sir. And I think these resonance that we see between crime and criminality and what lies behind in the fundamentals of the mind of the bandit or the dacoit. I think it's an interesting mindscape. And I think, Vijay Kumar sir, as you had highlighted in the strategy response, I think that's where you went. You went deep into Veerappan's mind to gather what his thoughts and ideas were on a day-to-day basis to eventually reach a capture of such an astounding, in such an astounding manner, in fact, because otherwise one does believe the practicality and the execution of events, but what emotions and the affect, the social affect that really creates a dacoit and the bandit in the first place. I think if one can understand that, one can, lead these special task forces in a remarkable manner. And I think with that, we also have this sort of ultimate philosophical question, and where we think about human progress, which is neither automatic nor inevitable. Every step towards the goal of justice requires sacrifice, suffering, struggle, the tireless exertions and passionate concerns of dedicated individuals such as the panelists on this session. So a final response around the idea of justice and ultimate justice is each of you could take a turn and we could really appreciate a response from you on that, sir. This is a philosophical question not to be posed to an ordinary policeman like me. However, I believe in one thing: the guns are not given across the board to every person. The guns are given specifically to the people who face threat if you're a civilian. Otherwise, it is only to the police or the enforcement agencies the government has entrusted a weapon. Once you give a man a gun or a stick, it means they expect you to use it wisely, sagaciously, in time, and not ruthlessly and indiscriminately. That's all. I believe in that. Guns are not your adornments. So I am a marksman, not exactly, I'm an above average shooter. I like to teach my boys 10 batches of IPS. I've taught them shooting, 96 to 2006 of the IPS. Only because as a philosophy, not to tell them use the bullet here and there, but whenever you have to use the bullet, which shall be very, very seldom, it should hit the right target. I believe in that. Yes. So to that extent, when you're talking about justice, he was funneled into a system in which we ambushed him, just like he has ambushed multiple times many of our gallant good men of Karnataka and Tamil Nadu. The Supreme Court judges, including Sabharwal, told the two governments, you are disgrace to us, you should quit. If you're going to give him pardon, what's the point in your staying? Which means the Supreme Court got absolutely thoroughly disgusted and said the state government should quit. S.M. Krishna on that side and a veteran like Mr. Karnanidhi on this side. They were feeling absolutely ashamed. Now the entire task of the law, the burden of justice, fairness, jurisdiction, constitution falls upon the ordinary constable right in the jungle. There is no umbilical cord connecting him to the Prime Minister and saying, you decide when to shoot. That is the situation. And against you, juxtaposed on the opposite side, nearby, anytime you may be dying, is a man who is ruthless, bloodthirsty, and who has a consistent record of success, who has got the support of the public. Now, in this odd situation, the best option is to give him the window of opportunity like to any ordinary civilian. He is also a man, he is a human being. Though he is a beast with a human brain, like you are trying to describe. We were fairly decent when we funneled him into our ambush to give him that minimum opportunity to surrender, which he did not accept because he couldn't believe that he was into our ambush, because that was the dicey spider's web which we have woven around him to make him believe that the people who are driving him are his man. Actually, they were our man. So it is ultimate
kind of a deception of the mind, and we were turning the table against him, just like he has been duping us all along. We duped him for one final time. That brought to an end a 20-year hunt in 20 minutes, as I described in my book. Yes. That's it. Absolutely, If I'm not sir. trying to look immodest or something, my approach to justice is that you are a simple cop. You have been told that be fair and just and use your gun wisely. Yes. If at all you have to use it, and that's what we did. Thank you. Thank you so much, sir. If we may invite a question or two from the audiences, and if there are curiosities that are sitting with the younger audiences or the senior members, we welcome them now. On the book as well as the, yes, sir, please. On the right, could we pass a mic, please? Doctor. Yes. First of all, thank you, Lotsa, for organizing a beautiful event, the first of its kind. And let's hope that the next year we'll have more and more of it. Congratulations to Kumar Saab. I've read your book now. Now I need your autograph. I bought it last time when you were here. So that promise is still on. And Guru Prasad Saab, it was wonderful listening to you. We have a problem, interstate problem. You know, guy committing a crime in this state and going to another state. While in US, if he crosses two-state border, it becomes a federal crime. So anybody can go after him. So that's a lacuna with which our police works, apart from all the shortfalls which Lal Saab just pronounced. And then you have the Justice Department breathing down your neck. Why didn't you shoot him in the leg? Why didn't you shoot him in the arm? While in US, they shoot for effect. Means they virtually shoot at the chest area, so the guy comes down and the policeman doesn't get hurt. Because at the end of the day, no police wala comes out of his house to kill anybody. And definitely he doesn't come out of his house to get killed either. So if it has to be a cop and the other guy, it has to be the other guy, not the cop. That's what I said, but K. Vijay Kumar gave a very, very lenient view of dispensation of justice to the criminal, which ought to be what it is. But in Badlands, it may not always be true. Thank you. You're saying that US is more seamless. Yeah, across the two states federal crime, and each state has got its own laws. Like, for example, if you're carrying a gun, you should display. It should be openly outside your court in some states in US. In some states, it should always be concealed. So, moment you enter another state, you have to either lift it up or close it or something. You have to be very quick in understanding the laws. As far as our constitution is concerned, it's a police subject under the constitution. One of the important glue is the Indian Police Service, which, and also the other next services of the state, because of the informal network and understanding, even if the central government is not fully into it, the states do coordinate. But like he rightly said, there is a proprietary feeling, my turf, my intelligence, I want to do it, one-upmanship sometimes. One way we tried to solve it, I don't think we solved it completely. Mirji was my counterpart. He was a very generous man. The actual quotation belongs to him. He only said it's like a football team, 11 play, but finally one man scores the goal. But it is the achievement of the whole team. What we did was, among the many attempts we tried to do, combination of teams is a complex thing. I always cite this, even between a spouse, husband and wife, after 40 years of being togetherness, there will not be a concurrence of views on everything. Imagine, McChrystal in a book called Team of Teams mentions, in Iraq, this was a problem. The Marines were good, the SEALs were good, the local Iraqi police was good, and the Rangers were good. But to put them together to operate as a single laser-like attention and single-like focus was very difficult. So he did a lot of exercises. I didn't read McChrystal at that point of time because he had not written that. But what we did was we imposed 2 people from my team into 8 people of their team and changed the composition of a joint team. A joint team is more of a notion, a concept, a philosophical idea. To actually, the 8-member will lead and 2 members are like your spies or eyes or a component to blend into that. This was more like a cosmetic exercise. I don't think it completely delivered the purpose, but a psychological effect was very huge. Second point we did was,
the brain will lead the leg, which means the intelligence if we have, the leg will follow. Supposing I have intelligence to go into Karnataka side, earlier there was a physical or psychological barrier. Before I go, I should tell the Karnataka team. Here we said, because the brain is superior, the intelligence is there with you, that he's in Karnataka village and there is no China wall of China there. It's only a notional barrier in the forest. Often we would be crisscrossing into Karnataka without even realizing what is Karnataka, what is Tamil Nadu. So we said, if you have intelligence, you are welcome to go and raid. Only thing is inform the neighborhood so that those fellows sitting in ambush will not shoot you. In fact, we were about to be shot by each other. It happened more than 3-4 times. Across Kaveri, our team was going. Kaveri is a dividing river. Our people were in Korakul. Yes. Our people means I will not say whether it's Tamil Nadu people or Karnataka people, but I will say some STF team was in the Korakul. Korakul is like a wicker basket, this big, made of bamboo and other things. Yes. So he was going and LMG fire, light machine gun fire came over them from the other STF thinking that they are Veerappan's man. This was one. Like that several ambushes were there. To sum up your point, the coordination happens in the minds of the leaders first. But to make it percolate down is very, very difficult because the hardship is more faced by the lower ranks, and for the head constable to accept that binding is very difficult. So we had to rub it in over, we had about 20-30 meetings only for court. I don't have a fancy for meetings at all, but we conducted 20 such meetings to get up pepper over this problem, to iron out the wrinkles. And even then we did not have a perfect blend, but we had an optimal blend. That's how I would put it. Thank you. Thank you so much. So, if you would like to add. His question and Madam raised something about justice. You know, I remember a scene when our SP Hari Krishna and 4 other people were brought, their bodies were brought to the DGP's office. Exactly he was killed a day before Independence Day. A widow came and asked the Chief Minister, I still remember, I have become a widow, Veerappan has killed, and what will you do? You are talking about human rights, you are talking about justice, you are talking about and our police officers, Vijay Kumar knows, Karnataka, several police officers had to face inquiry by the Human Rights Commission for years and years and years, and 90 crore rupees, 90 crores were paid as compensation. You know, I really don't know, as a person who did research on Veerappan, I really do not know what is justice, what is not justice. Yes. Whether killing a policeman is justice, whether killing Veerappan and his informant justice, I really don't know. It's a very difficult subject. Fine line, sir, that you straddle. Yes, absolutely, sir. And I would like to also congratulate once again with your current role, sir, and the team building. I think post the Kargil Review Committee, the Joint Civil Military Relations, I think these are case studies that have contributed, and your role as the NSA advisor is also much, much appreciated, sir. And we very much look forward to that. And I think it's only fair. I think there's one last question, sir. Parag sir, please, could we pass on a mic? And with that, we will conclude the session. Thank you, sir. Very good morning, sir. I just have 2 parts to the question, sir. The first question is that, you know, as humans, we are very fond of creating our lists, you know, top 10 cities to live in, top 10 places to visit. Similarly, we always have these top 10 most notorious criminals. Interpol has a list of criminals, you know, this is exactly how the things work. So when you are really going after a criminal who features in this top 10 list, does it change the way you think? Does it change the way you approach the issue? That is the first part of the question, sir. Should I be louder, sir? The second part of the question is, sir, do you ever in retrospect think that there could have been something which was different so that the operations could have concluded much earlier? So no, the general idea was that, you know, Veerappan for a very long time was part of a list of amongst the top criminals of India, you know. So once you are approaching that kind of a criminal who is already there in that list, does it change the way you think?
The second part is, sir, do you ever think that there was something which you would have done different retrospectively? Okay. I told you, he's seen as 10 feet tall. He was a titan. And more murders successfully he did. His image started bloating. It ballooned. To that extent, there is a diminishing of the opposition, notionally. But thankfully, most of the people in the STF were diehards. They were volunteers willing to die, and they have seen the colleagues falling. In spite of that, minor desertions happened. Some Durbokes, the fellows were scared. Pusillanimous fellows ran away. Lily-livered fellows ran away. But the gutsy fellows dug in. In one case, when they were carrying the dead body, they were chanting the slogans, "We'll come back and fight, we'll come back and fight." Sendil, the best essay of Tamil Nadu, when he died, they were carrying the body. The body becomes heavier once it dies. Naturally, I think doctor will know. So carrying the body of your own colleague, the weight multiplies 3 times. And carrying it from the jungle, the journey becomes endless. So they were cathecizing themselves, self-indoctrinating themselves, "We'll come and fight back." But true, you underlined a point. In the absence of the Chambal dacoits like Malkan Singh, Tasildar Singh, Pan Singh Tomar, Pulan Devi and Pulan Devi's Malan and all these people, there were no big names, and he filled that vacuum. He was among, not top 10. He was the top 3 among the top 10, you can say. I don't know who can be compared with him because he had a shelf life of more than 2 decades. So he was the number 1. And he really went to the pinnacle because he appeared in Time magazine and international Chinese papers, and international papers started mentioning this sandalwood smuggler. Yes. So his image, as you saw through the press and through the people or favorite pressmen, was a big image of himself. Actually, he was not that brainy. His number 2 was more brainy than him. But he had that image. So when you're approaching a man with that image, that feeling that we have failed so many times, whether we will fail this time also, because when you go to a war, a general will have only 2 things. Either he's going to win or lose. There is no draw. Draw is only, it can happen in some epics. Sundown, and the Indian law says that, okay, after sundown, we will follow the ethics. Not otherwise. So therefore, that feeling definitely was impinging, that was impacting our minds. But in the leadership of STF, both the sides, this is what exactly we were trying to inject and give the counter effect to that kind of psychology. Second point you mentioned was, if you had been given better wherewithal, I think he answered the point. If you had been given good drones, if you've been given good helicopters, if you had a better technology of the foliage penetration devices, we had night vision devices, we had the best of the guns, we had the best of the jeeps. But helicopters were under the central government. In spite of a person like Advani, who was a deputy prime minister. Dhirendra Singh was a home secretary. Wonderful man he was, from Karnataka cadre, incidentally. He understood the problem. The moment I went, he promised. So I will tell you how the bureaucratic, I'm not criticizing the bureaucracy because I was part of the bureaucracy till yesterday. Delhi will say, Tamil Nadu will send a requisition, STF me, I will send it to my DGP, my intelligence chief to my DGP. Please see the connection. Yes. My DGP will send to the Home Secretary. Home Secretary will further send it to the Chief Secretary, who can only correspond with the Defense Secretary in Delhi. Defense Secretary will put it to the Defense Minister. He will clear it, and then it will come down the levels. And finally, the Southwest Command in Trivandrum will be told, you can spare a helicopter from Sulur, which is only 11 minutes. If it takes off in 11th minute, we can come to the jurisdiction. Supposing we had been given the freedom to directly interact with Sulur Air Base, this 12, 13 channels and delays would have been avoided. If such a thing had happened, Shailendra Babu, who became DGP later, and your own boys would have captured him years ago. Right. So we were not in that position. We were still in antediluvian old scheme of things. I hope now the gadgets are better. Yeah. I think the whole complexion of the combat, of the fight, would have completely changed with the modern gadgets, modern thing. There was a place called Bodamalai in which he was sitting with 168 people or so, men, women, and kids and old people, like Geronimo in the West in America. But we are still not able to capture him because we didn't have those wherewithal and gadgets. So I think I have tried to answer both your queries. Srishti, if I may add just one sentence to what you said. Absolutely, sir. See, the idea of having the top 10 criminals in front of you and working from the point of view of that particular criminal who is in front of you
is sometimes counterproductive. I'll draw an analogy from cricket. Most of the teams that face India today want to know how to get Kohli out. And so they are all concentrating on Kohli during their practice sessions, during their discussions on how to, the team discussions. But the fact remains that while Kohli may fail in that particular innings, some Shubman Gill or some Shreyas Iyer might make a century. So this is one thing that has to be kept in mind while planning your action against your adversary. And secondly, it does certainly help to know your adversary and know what are the operations that that person has carried out and how to deal with the kind of strategy that the opponent employs. So all this is helpful. Yes. Thank you so much. With that, I invite Kavya to initiate the felicitation ceremony. And in the most humblest form of thank you and gratitude, I think a standing ovation for Mr. Vijay Kumar for his exemplary work. If you are not presumptuous, let me thank all of you and Alok and all the organizers for the wonderful this thing of putting the thing. Ashok Kumar, the local DGP and the host. And I'm immensely grateful to you, Alok, having thought of me. And please convey my thanks to everybody who was involved with this. And you, Srishti, for being the model. Thank you very much, sir. And felicitation के लिए I would like to invite VN Rai sir and Karnail Singh sir. आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप मंच पे आएंगे और फेलिसिटेट करेंगे हमारे दोनों जेंटलमैन जिनको हमने सुना कि विजय कुमार सर और डीवी गुरुप्रसाद सर, उन्होंने इनसाइट्स आप लोगों को दी बिहाइंड द बैंडेट्स मास्क, फूलन देवी एंड वीरप्पन, किस तरह से ज़बानी तौर पे उन्होंने बताया आप लोगों को यहाँ पे कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या तैयारियां हो सकती हैं और क्या बेहतर किया जा सकता था और जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में। एंड जितने बच्चे आप बाहर जाने को तैयार हैं आगे आ जाइए प्लीज। अगला सेशन भी बहुत जबरदस्त आपके लिए हो रहा है। एक दो बच्चे जो बीच में सो गए थे मैंने देख लिया है, उनको तो यहीं रखना है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आगे आगे की तरफ आ जाओ। वो शेर है ना कि ये न सोचना कि तुम पे नजर नहीं, मसरूफ हम रहते हैं मगर बेखबर नहीं। तो आगे आओ, मैं दिखता रहता हूं आगे पीछे। तो अगला भी सेशन बहुत ही कमाल का आप लोगों के लिए यहां पे होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, श्री प्रकाश शुक्ला इनकाउंटर सर आगे से बता रहे हैं, अशोक कुमार सर उसके बारे में। यहां पे जो अगला सेशन है आर.के. गोस्वामी और राजेश पांडे जी, सुहेल माथुर इसको मॉडरेट करेंगे और ये ऑपरेशन अपने आप में बहुत ही कमाल का रहा था। इसके अलावा बाकी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगा अगले सेशन के लिए आर.के. गोस्वामी जी और राजेश पांडे, और इसको मॉडरेट करेंगे सुहेल माथुर। आर.के. गोस्वामी सर जो की फाउंडिंग मेंबर थे यूपीएसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स जिसको हम कहते हैं उसके, और श्री प्रकाश शुक्ला मर्डर जिसके बारे में, एनकाउंटर के बारे में अशोक सर बात कर रहे थे, उसको लेके बात करेंगे। राजेश पांडे, एन आईपीएस ऑफिसर हु रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड 4 times बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस तरह का उनका काम पुलिस फोर्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर रहा है और मेजर कुछ टेररिस्ट अटैक्स थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उनके हाथों में थी, उसको लेके भी बात करेंगे। और सुहेल माथुर जिनको आपने कल भी सुना है, एन अवार्ड विनिंग बेस्ट सेलिंग ऑथर वे हैं, साथ के साथ में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, टेडेक्स स्पीकर तो हैं ही, साथ के साथ लिटरेरी एजेंट भी हैं वाया उनकी एजेंसी। कल शाम को आपने उनको सुना था और इस वक्त पे आज के इस सेशन को वो मॉडरेट करने जा रहे हैं। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा आप पीछे मत बैठिए, थोड़ा आगे आइए, कम ऑन आइए। वहां पे कोई सीनियर उनके साथ में तो थोड़ा सा उनको गाइड कर दीजिए, आगे आ जाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए हैं जीवन में। जब आप आगे बढ़ेंगे, ये लिटरेचर जो फेस्टिवल क्राइम को डेडिकेटेड पहली दफा यहां देहरादून में आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप आगे आएं। तो चलिए आज डे 3 पे ये 3rd सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुहेल, ओवर टू यू।
Thank you so much for the wonderful introduction. So it's wonderful to be sitting in this lovely audience and hearing one spectacular session after the other. So as I was telling some people yesterday, my first introduction to the world of crime was actually through a literary joke. So as it goes, there were a couple who were having a conversation, and the husband told his wife that there is this author who took 7 years to complete a book. And he was expecting the wife to be quite surprised, but she was rather nonchalant and she said, "Well, that's nothing. I know someone who took 14 years to complete a sentence." And he said, "How's that possible?" So he said, "Well, he went to jail." So that was how crime and literature came into my life. And today as well, crime and literature would be the two things that we would be talking about. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में मैं हूँ, क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट है जो मेरे साइड दो जेंटलमैन बैठे हैं उनको सेपरेट करता है. एक तरफ है राजेश जी, एक तरफ है राकेश जी. सो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है. और मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस है राजेश जी और शाहरुख खान में. तो दोनों को नंबर 70 कनेक्ट करता है. तो जहाँ तक शाहरुख खान की बात है, उनके पास 70 मिनट है और राजेश जी के पास 70 एनकाउंटर्स हैं. तो पूछना मैं आपसे ये चाहूँगा राजेश जी, दैट इतना वास्ट, इतना ग्लोरियस आपका कैरियर रहा है, तो ये जो केस है जहाँ पर श्री प्रकाश शुक्ला का पूरी टीम उनके पीछे लगी और इवेंचुअली you were able to eliminate him. What makes this case so different than any of the other cases that you've worked on? क्या ऐसी चीज है जो इस केस को दूसरों से अलग बनाती है? Maybe. थैंक यू सोहेल जी. सबसे पहले हमारे सीनियर्स, सब बड़े सीनियर्स अपने अपने क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है, विजय कुमार सर, कर्नैल सिंह साहब, वीएन राय साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं. मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, ऑडियंस को भी. आपने ये पूछा कि ये कैसे डिफरेंट है. जी. विजय सर ने ये बताया आपको कि कैसे वीरप्पन को टैकल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, सर्च करने के लिए एक यूनिट बनाई गई. ऑर्गेनाइज क्राइम में जब श्री प्रकाश का उदय हुआ, एक फैक्ट और है इसमें कि 90s जो 90 का दशक है, ये पुलिस के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट था. यही वो पीरियड है जब जगह जगह ऑर्गेनाइज माफिया डिफरेंट स्टेट्स में, कम से कम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, इन्होंने क्राइम किए, छूट गए, पनिश नहीं हुए और धीरे धीरे वो लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच गए. जी. क्योंकि कोई डिजिटल एविडेंस उस समय नहीं था, ना सीसीटीवी थी, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना एंड्रॉयड फ़ोन थे, ना जीपीएस लोकेटर थे, कुछ नहीं था. सब कुछ राइट फ्रॉम राइटिंग एन एफआईआर अप टू द ट्रायल सब मैनुअल था. जी. इसका फ़ायदा उस समय लोगों ने उठाया और जितने बड़े क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए, आप अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो ये सब 90s की उपज हैं, 90 के दशक की उपज हैं. तो एक क्रिमिनल ऐसा आया जिसके लिए द देन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह साहब, उनको एक यूनिट बनानी पड़ी, सिर्फ एक आदमी और एक क्रिमिनल के लिए. अजय राज शर्मा साहब उस समय लखनऊ में पोस्टेड नहीं थे, बाहर थे. उनको बुलाया गया, उनसे कहा गया कि साहब अब बहुत हो गया, और मुश्किल कर दी इस आदमी ने, एक यूनिट बनाइए. तो एक यूनिट बनाई गई एसटीएफ. अजय राज शर्मा साहब, अरुण कुमार साहब और मैं उस यूनिट में 3 पोस्टिंग की गई. कोई ऑफिस नहीं था, कोई जगह नहीं थी. धीरे धीरे सब इस्टेब्लिश किया गया और टाइम भी गवर्नमेंट ने दिया 6 महीने का, कि 6 महीने में इसको आप पकड़िए, न्यूट्रलाइज करिए, जो मर्जी हो करिए, बट इसका आतंक खत्म होना चाहिए. और 6 महीने में ही इस टीम ने, इस डेडिकेटेड टीम ने, और बहुत कम लोग थे, कुल 17 लोगों से ये यूनिट बनाई गई थी. और फिर हम लोगों ने उसको न्यूट्रलाइज किया,
98 में 23rd सितंबर। तो ये वजह थी, ये इसको अलग करती है बाकी सब चीज़ों से, बाकी सब क्राइम से, उस समय के क्रिमिनल से। और फिर एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो इसको 6 महीने और बढ़ाया गया, फिर इसे परमानेंट कर दिया गया। आज एसटीएफ की तरह जानी जाती है और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की तरफ। कर्नल सिंह साहब खूब अच्छी तरह जानते हैं, जब सर दिल्ली में थे हम लोग बराबर आपसे बातचीत करते थे इस सिलसिले में। वीएन राय साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वजह से ये क्रिमिनल, ये यूनिट एसटीएफ और ये ऑपरेशन बाकी ऑपरेशन से अलग था। जी नहीं, बहुत ही आपने इंसाइटफुल आंसर दिया। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां हो जाएं इस जवाब के लिए, बिकॉज एक इस तरह के क्रिमिनल माइंड को पकड़ना इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी फाइंड टुडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक वन लाइनर जोक कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था कार्टूनिस्ट वाज मर्डर्ड बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द क्रिमिनल बिकॉज द डिटेल्स वर स्केची। तो वो तो स्केच था, यहाँ पर तो शायद वो भी नहीं था, फोटोग्राफ भी नहीं थी श्री प्रकाश शुक्ला की। आज तक एक फोटो है जो ऑपरेशन बाजूका के कवर पे भी है। मैं दरख्वास्त करूंगा आप सभी से कि ऑपरेशन बाजूका मिल रही है बाहर, आप खरीदें। दोनों ऑथर्स यहाँ हैं, वो साइन भी करेंगे किताब पर। प्रश्न मेरा ये है कि जब आपको पता नहीं है कि जो आपका एडवर्सरी है वो दिखता कैसा है, लगता कैसा है, तो और कितना डिफिकल्ट हो जाता है उसको पकड़ना या उसके बारे में जानना कि ये वो व्यक्ति है। क्योंकि बुक के अंदर आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन की है कि ये जो व्यक्ति था ये बहुत शातिर था। एक किडनैपिंग उन्होंने की और लाल बत्ती लगा के वो चले गए, तो वहाँ पे जो लोग थे वो उनको सलाम कर रहे थे, जबकि जो व्यक्ति किडनैप हुआ था वो उनके साथ बैठा था। तो कितना और चैलेंजिंग हो जाता है, और कैसे ये प्रोसेस पे आप आए कि वो फोटो मिली। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं चाहूँगा कि आप हम सबको बताएं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई फोटोग्राफ नहीं थी। एक नई तरह की यूनिट इस क्रिमिनल को डील करने के और इसके गैंग को डील करने के लिए बनाई गई थी। और जब भी कोई काम इस तरह से शुरू करते हैं क्राइम में, तो कम से कम जानकारियां सब इकट्ठा की गई, लेकिन सबसे दिक्कत थी कि उसकी कोई फोटोग्राफ नहीं थी। और मीडिया फ्री है, समय समय पे लिखता रहा कि साहब अभी तक इनके पास फोटोग्राफ नहीं है, पता नहीं कैसे इनसे सरकार कह रही है कि उसको मार देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। फोटोग्राफ कोई नहीं थी, ये सही है। गोरखपुर में जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ इससे पहले भी गोरखपुर पुलिस ने, एसएन सिंह साहब उस समय वहाँ डीआईजी रेंज थे, उन्होंने कोशिश की, उनसे कहा गया कि भाई फोटोग्राफ ढूंढ के लाइए। तो ये ढूंढा गया कि किस किस फंक्शन को इसने अटेंड किया है। उस समय वीडियोग्राफी का दौर चलता था और शादी में बाकी सब जगह वो बड़े बड़े कैमरे वाले वीडियोग्राफी के इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे। और ये कहा गया कि सब जहाँ वीडियोग्राफी जिस फंक्शन में गया हो उससे फोटोग्राफ निकाली जाए, सो दैट हमारे पुलिस वाले तो ये देख सकें, पहचान सकें कि ये किस तरह का है, कैसा देखने में है, क्या हाइट है, क्या और कैसे कपड़े पहनता है। वहाँ जब कोशिश की गई, ये बात उसको और उसके गैंग को पता लग गई। गोल मार्केट में एक बड़ी फेमस वहाँ की दुकान है फोटोग्राफी की। किसी ने उसे ये बताया कि साहब इसके यहाँ पुलिस वालों ने अप्रोच किया है, ही हैज प्रॉमिस्ड टू गिव द फोटोग्राफ। शाम का समय था, 3 या 4 बजे थे। ये 3-4 लोगों के साथ गया और उसे उसकी दुकान से खींचा। गोल मार्केट वहाँ का सबसे, गोरखपुर का सबसे बिजी बाजार है। इट वॉज इन 1997, और उसे खींचकर वहीं उसे 10, 20, 15 गोलियां मार दी। बहुत दिन तक ये पता नहीं लगा क्या वजह थी, क्यों मारा, किसने मारा। लेकिन जब बातें धीरे धीरे खुली तो सिर्फ फिर ये पता लगा कि साहब इसकी फोटोग्राफ अगर किसी ने देने की कोशिश की, प्रॉमिस किया और इसको पता लग गया तो ये मार देगा। तब ये और डिफिकल्ट हो गया कि इसकी फोटोग्राफ आखिर कहाँ से हासिल की जाए। कोई फोटोग्राफ नहीं थी और करीब करीब 3 महीने बीत चुके थे। अजय राज शर्मा साहब, अरुण कुमार साहब, सब जितने सोर्सेज जिसके थे पुलिस में, सब हम लोगों ने अप्लाई किए, लेकिन बहुत मुश्किल हो गई, फोटोग्राफ नहीं मिला। एक रेड में हम लोग उसके एक रिश्तेदार के यहाँ गए। ये सर उस समय सूचना मैनुअल ही थी, मोबाइल थे नहीं, सर्विलांस का कोई स्कोप नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे,
सीसीटीवी उतना प्रचलन में नहीं थे, सिर्फ सर्राफा या बड़ी दुकानों में अपने कैशियर के ऊपर लोग सीसीटीवी उन पर नज़र रखने के लिए रखते थे, ऐसा उस समय वक्त था। तो मैनुअल सूचना ये मिली मुखबिर से कि साहब अपने बहनोई के यहाँ वो आया हुआ है। सारे लोग गए, सीनियर ऑफिसर्स भी गए, घेरा गया। वहाँ बालू अड्डा एक जगह है हजरतगंज में, पराग डेयरी के पास उसका बड़ा सा मकान था। लोकल फोर्स भी ली गई और पता किया गया तो पता ये लगा कि नहीं साहब आया नहीं था यहाँ पे। और ये भी पता लगा कि वो रिश्ते का बहनोई लगता है उसका, श्री प्रकाश का। तमाम पूछताछ की गई उससे भी और उसकी पत्नी से भी। वो उसने कहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है। एक बच्ची थी वहाँ, उम्र होगी कोई 12-13 साल 14 साल। हमारी टीम में से किसी ने पूछा कि बेटा आए थे क्या? बताया उसने कि मामा हैं हमारे। तो बोले आए थे? बोले हाँ आए थे, 3 महीने पहले मेरी बर्थडे थी तो उसमें आए थे। तो उसने पूछा उनकी कोई फोटोग्राफ तुम्हारे साथ है? बोले हाँ अंकल है हमारे पास। वो भीतर से एक किताब ले आई, उस किताब में 3 फोटोग्राफ उसके रखे हुए थे, बर्थडे के थे नेचुरली, केक कटिंग के, और ये परिवार था पूरा। फोटो मिली, हम लोग सब बहुत खुश हुए। चलिए एक आरोप के साहब अभी तक पुलिस ने उसकी फोटोग्राफ नहीं ली है। फोटोग्राफ मिली, तब तक वो माँ बाप उसके पीछे पीछे आ गए और उन्होंने कहा साहब अब हम लोग मारे जाएंगे, हमारी सुरक्षा का इंतजाम करिए, हमें हर हाल में मार देगा। अरुण कुमार साहब ने कहा भाई तुम साले बहनोई हो, तुमको कैसे मार देगा? बोले साहब वो किसी का नहीं है, वो मार देगा। हम लोग वापस ऑफिस आए, अरुण कुमार साहब ने कहा कि ऐसा करो, इससे तो ये पहचान में आ जाएगा कि कहाँ से फोटो मिली है, तो कुछ इसका ऐसा इंतजाम किया जाए कि उसे ये पता लगाने की मुश्किल हो कि फोटोग्राफ मिली कहाँ से। वो फोटोग्राफ लेके मैं हजरतगंज गया। उस समय मैं हजरतगंज में मैं पोस्ट रहा था, सीओ हजरतगंज था जी। वहाँ पे जहाँ प्रेजेंट कॉफ़ी शॉप है उसके कॉर्नर में एक दीवार पे उस समय पोस्टकार्ड चलते थे जिसमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइन सब इनकी फोटोग्राफ होती थी जी। उस फोटो से मिलाने की कोशिश की कि किसकी बॉडी से मिलेगा, तो वहाँ सुनील शेट्टी की एक फोटोग्राफ दिखाई पड़ गई। अच्छा। तो उससे ये लगा कि शायद ये उसमें फिट बैठेगा। दिक्कत थी कि वहाँ सिर्फ एक ही दुकान उस समय 98 में 97 में अमर फैक्स करके थी लखनऊ में, जिसके पास कलर्ड फोटोकॉपी की मशीन आई थी। मैं वो सुनील शेट्टी का वो कार्ड और जो फोटोग्राफ हम लोगों को मिली थी वो दोनों लेके उसके पास गया। चूँकि सब वहाँ जानते थे, हजरतगंज जैसा बाजार भी शाम को 8 बजे बंद हो जाता था। बड़े बड़े उद्योगपति किडनैप हुए, मूल राज अरोरा किडनैप हो गया, और सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी जो सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी थी उसके के रस्तोगी जो उसके मालिक थे उसको मार के उसके लड़के कुणाल रस्तोगी की किडनैपिंग की सुबह मॉर्निंग वॉक के समय में। तो बहुत दहशत थी उसकी। तो उसको ये बिना बताए हुए ये कहा गया कि सिर का ये हिस्सा और सुनील शेट्टी की ये धड़ का हिस्सा, इसको कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि देखने में ऐसा न लगे कि जोड़ा हुआ है जी। खैर उसके पास चूँकि ये था कलर्ड फोटो प्रिंटर था, उसने कंप्यूटर पे बनाया, बना के निकाला। बोले साहब ठीक है? मैं कहा ठीक है। 100 कापियाँ उसकी निकाली गई। शाम को अरुण कुमार साहब ने प्रेस की और ये फोटोग्राफ बांट दी। डेनिम की जैकेट और वही आपको सब जगह वही फोटोग्राफ मिलेगी। उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, बड़े बड़े काम कर चुका था, बड़े बड़ी रैंसम ले चुका था। और आपको शायद पता होगा कि उसने चीफ मिनिस्टर को मारने की बात कही थी जो पब्लिक डोमेन में आ गई थी कल्याण सिंह साहब के पास। तो इसकी वजह से पुलिस में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ा इसको लेके बड़ा तनाव था, बड़ा टेंशन था कि ये कैसे उसको चीफ मिनिस्टर के ऊपर वार करने की या मारने की उसने सोची कैसे, क्योंकि इस तरह का काम वो कर चुका था। गोरखपुर के ही बहुत बड़े माफिया वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की जो लड़ाई है वो उत्तर भारत में मशहूर थी, और उन दोनों में जो गैंगवार थे करीब 150-200 लोग मारे गए थे। उन्हीं के लिए गुंडा एक्ट वीर बहादुर सिंह साहब देन चीफ मिनिस्टर वो ले आए थे। तो खैर पब्लिश हुई। नेक्स्ट डे नंबर हम लोग सुनते थे उस ज़माने में डीपी बॉक्स में पैरेलल लाइन लेके टेंट लगा के, और उससे पहले क्योंकि लैंडलाइन थे उस समय, बस नया नया मोबाइल फ़ोन आया था 98 में, उसके 3-4 टावर लगे थे लखनऊ में, वो भी हजरतगंज कवर करते थे। तो खैर
ये पता लगा कि किसी ने उसको ये बताया कि भैया आपकी फ़ोटो निकली है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, क्या पहना है? उनका साहब डेनिम की शर्ट पहनी है। बोले मैंने कभी पहनी नहीं, किसी और की होगी। उसने कहा नहीं भैया फ़ोटो तो आप ही की है। उन्होंने कहा ठीक है, अखबार, सारे अखबारों में फ़ोटो छकी, टीवी में चली, तो कटिंग उसने मांगी। और जब तक उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया था, तब तक उसे इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी कि फ़ोटो आई कहाँ से। और वही एक फ़ोटोग्राफ उसकी उपलब्ध थी, किसी दूसरे को, तमाम इसमें अरेस्ट हुई, तमाम लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन फ़ोटोग्राफ नहीं मिल पाई। तो उसी एक फ़ोटोग्राफ से फिर सबके पास गई। हालांकि ये उसने ही कहा था, जो रिकॉर्डेड है, कि साहब फ़ोटो से आदमी को नहीं पहचाना जा सकता। जब लोगों ने कहा फ़ोटो निकल गई, थोड़ा बच के रहिए, ये करिए वो करिए, उन्होंने कहा फ़ोटो में किसी को देख के, फ़ोटो देख के तो आदमी पहचान सकता है कोई, आदमी को देख के फ़ोटो पहचान सकता है कोई, लेकिन फ़ोटो देख के आदमी नहीं पहचाना जाता। जिन जिन के पास फोटोग्राफ है, मैं उनके बगल से निकल जाऊं नहीं पहचान पाए। हुआ भी यही। एक हमारा सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह, जिसने उसका पीछा किया, उसकी जेब में उस समय फोटोग्राफ भी थी, एंड ही शॉट हिम 10 शॉट्स इन हेड और ही डाइड ऑन द स्पॉट, दैट टू इन हजरतगंज। तो बात उसकी फिर हम लोगों ने कोशिश की इसको देखने की, प्रूव करने की कि ये बात सही है कि फ़ोटो को देख के भीड़ में से किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है, लेकिन आदमी को देख के फ़ोटो में उसको लोकेट करना आसान है थोड़ा। तो ये एक फ़ोटोग्राफ मुश्किल से मिली और वही आज तक है भी। नाइस, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि जब इन्होंने सुनील शेट्टी से मैच किया उसे, तो इन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि ये मेरे हाथ से निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, और कोई और इसे पकड़ ले, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो कहने की बात है। अब एक और कहावत है दैट द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, प्रॉब्ली इन दिस केस मे बी माइटियर देन द गन। और जो मेरे लेफ्ट पे जेंटलमैन बैठे हैं, राकेश भाई, वो शायद इस बात को सिद्ध करते हैं। तो हमारे साथ इस लिट फेस्ट में कई सारे जर्नलिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्राइम राइटिंग की है, जैदी साहब थे, और आज आप यहाँ पर हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे दैट वो क्राइम में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इंटरेस्ट करती, एक्साइट करती, दैट मेड यू टेक द जॉब ऑफ a crime journalist, or made you read and research about all these crime cases happening across the country? क्योंकि बहुत ही आपका एक वास्ट करियर रहा है, सारे नामी गिनामी आपने पेपर्स के साथ काम किया है। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई और ये इंटरेस्ट कहाँ से बना आपका? Thank you, Sohail. So far as the interest is concerned, I don't have an answer. क्यों interest develop हुआ crime में? जी। But राजेश सर के साथ when I was in Lucknow, तब से even though I was not covering crime in Lucknow, I was a health correspondent. But because of my interest in crime, I would often tug along with the crime reporters और सर के ऑफिस में बैठ के किस्से सुनते रहते थे। जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि श्री प्रकाश में इतना क्या खास था, that out of his entire career he decided to write the first book on Shri Prakash. जी। You know, when I heard this story, the first incident जहाँ से book शुरू होती है, if you read the first opening chapter, how can somebody kill somebody by hitting him 112 times? There were 112 entry and exit wounds on one body. I was like, you know, how can somebody be so brutal, so gruesome? और वहाँ से मेरा interest हुआ। फिर you know, we collaborated, and although we were operating out of two different geographies, I was sitting in Jaipur, he was Bareilly, IG Bareilly, several kilometers apart from each other. But we were talking on the phone almost every day. I was a working journalist at that time. I was heading Hindustan Times in Jaipur. So it was only at night that once the newspaper went to bed that I decided to work on the book. I would talk to him at length for several nights, and then I you know, did the first manuscript in 17 days. The first draft was ready in 17 days, and then I decided to go to Bareilly. It was COVID time. So when I called him, मैंने कहा सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो उनका यार यहाँ तो अभी कोविड है, कैसे क्या होगा? You know, there were a lot of restrictions on travel also. But that's the advantage of knowing somebody in the police. So he could obviously organize everything.
I was there with him in Bareilly for 2 days. And then we started fine tuning, several corrections, additions, deletions, etc. But मुझे crime में interest, I don't know, I have no answer क्यों रहा, क्योंकि मैं अपना जो मेरा, my initial journalistic career was never as a crime reporter. I was always a medical correspondent. I covered railways and whatnot. But I was always spending more time on the crime beat than spending time on my own beat. I would always go to the SSP's press conference every day in Lucknow. There was this practice that every evening the SSP would hold a press conference. सर आपके समय शायद वो बंद हो गई थी वो प्रथा, when you became SSP लखनऊ, जो शाम को कमांड में पत्रकारों का जमघट लगता था, तो बट उसके पहले ही होता था, तो मैं डिस्पाइट बीइंग अ मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट आई वाज ऑलवेज प्रेजेंट अमंग द क्राइम रिपोर्टर्स. तो वो एक इंटरेस्ट था. इंटरेस्ट हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. तो इसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन जल्दी से पूछूंगा मैं. कल मेरे सेशन में मैंने ये बात बोली थी दैट पुलिसमैन एंड जर्नलिस्ट ऑफन ब्रिंग आउट द बेस्ट बुक्स बिकॉज उनकी जो रिसर्च होती है वो अनपैरेलल्ड होती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और जर्नलिस्ट के पास सोर्सेज होती हैं टू ब्रिंग आउट बुक्स. इन दिस केस वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. प्रश्न आपसे ये है कि एज अ जर्नलिस्ट आपको सेकेंडरी सोर्सेज निकालने का बहुत खास अनुभव रहा होगा. यहाँ पर मामला थोड़ा अलग था, वेयर देयर वाज अ प्राइमरी सोर्स. सो एज समवन हु इज डैबल्ड इन बोथ फील्ड्स, आपको क्या ज़्यादा पसंद है कि आप खुद इंफॉर्मेशन निकालें और उसे लिखें, या फिर कोई आपको अपनी कहानी सुनाए और आप उसको अपने शब्दों में ढालें? Sure, obviously the second option is easier because like I told you, the first draft was ready in 17 days. अगर मैं खुद रिसर्च करूं, प्राइमरी सोर्स को ढूंढूंगा, तो ऑब्वियसली दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. तो सेकंड ऑप्शन हमेशा आसान होता है व्हेन यू हियर द स्टोरी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. मतलब इट वाज नॉट समबडी हु वाज टॉकिंग अबाउट एन ऑपरेशन, इट वाज द पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इन द ऑपरेशन राइट फ्रॉम द मतलब STF के जो फाउंडिंग मेंबर STF बनी, हाउ इट वाज कॉन्सेप्शुलाइज्ड, हाउ द एंटायर स्ट्रैटेजी वाज प्लान्ड, हाउ दे वेंट आफ्टर हिम, हाउ दे इवेंचुअली किल्ड हिम, एंटायर somebody telling the entire story who's been part of it through and through. So इसलिए वो it was a very easy option, low hanging fruit कि ऐसा व्यक्ति आपको कहानी बता रहा है. मैं खुद रिसर्च करूं because this all another interesting thing about Sri Prakash Shukla is that he arrived on the crime scene at 21 and he was gone at 26. In 5 years, he became one of the most dreaded gangsters, probably the only gangster in the country for whom one specialized force was formed. तो ये बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि राजेश सर ने और इतने सर का एक ही इज़ अ क्राइम स्टोरी टेलर ऑल्सो, तो ही हैज़ दैट नैक फॉर डिटेल्स. इतना डिटेल्स बताते हैं कि मेरा जॉब पुटिंग दोज थिंग्स इनटू वर्ड बिकेम वेरी इजी. Had I researched it myself through primary sources, probably would have taken much. नहीं, बट यही खासियत है जो अच्छा तालबे इल्म हम बोलते हैं. और 17 दिन के अंदर इन्होंने किताब फिनिश करी, बहुत काबिल तारीफ है. मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां हो जाएं. 17 दिन में महाभारत के युद्ध को ख़त्म होने भी 18 दिन लगे थे, इन्होंने 17 दिन में किताब कर ली. तो ये बहुत ही खास चीज़ है. आपसे मैं 2 चीज़ें जानना चाहूँगा बहुत जल्द. एक तो ये टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑपरेशन बजूका. तो ये ऑपरेशन बजूका क्यों पड़ा? और अब यू आर वन पर्सन हु हैज wielded द गन एंड wielded द पेन बोथ. तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दोनों में और क्या चैलेंजेस रहते हैं उसके, वो आप प्लीज हम सबको बताएं, क्योंकि यहाँ पे क्राइम की भी बात है और ये लिटरेचर फेस्टिवल भी है. सुहेल जी, आपके पहले सवाल का जवाब कि ऑपरेशन बजूका कैसे पड़ा, जी मैंने आपको बताया कि वो टाइम ऐसा था कि सब मुखबिर बेस्ड था. मैनुअल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल ट्रायल, गवाह बेस्ड. गवाह जितने पुलिस ने बनाए बाद में कभी भी होस्टाइल हो सकते थे. गवाह जितने पुलिस ने बनवाए FIR में होस्टाइल हो जाते थे. पावरफुल लोग अगर सामने हैं तो मारे जाते थे. इसीलिए कुछ होता नहीं था. और क्रिमिनल्स की हमेशा कोशिश ये रहती है कि वो पुलिस में इन्फिल्ट्रेट करे, जो भी यूनिट काम कर रही है. अजय राज शर्मा साहब का इतना ज़बरदस्त नेक था इस पे. जब पहले टाइमलाइन दी गई थी कि फलां तारीख को ऑफिस बन जाएगा, फलां तारीख को काम शुरू हो जाएगा, फलां तारीख को गाड़ियाँ आ जाएंगी. गाड़ियाँ हम लोगों के पास महिंद्रा की जीप थी.
कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। तो टाइमलाइन में जब ये रखा गया कि जब हम लोग बात करेंगे तो कोई ओवर हियर न करे, कोई उसको समझे नहीं कि हम क्या बात कर रहे हैं। और उस समय तक श्री प्रकाश ने AK-47 से कई एक बड़ा क्राइम किया था। असेंबली चल रही थी, असेंबली से 100 मीटर की दूरी पर दिलीप होटल में AK-47 की 2 मैगजीन उसने खाली की थी। और श्री रामवरण साहब उस समय हमारे DGP हुआ करते थे, वो बेचारे मौके पर आए। इतना सेंसेशनल किलिंग थी, हाउस चल रहा हो और हाउस के पास ही किसी होटल में AK-47 चली हो। तो बजूका वो है जो आप देखते हैं ये अफगानिस्तान में तालिबान वो कंधे पे लेके चलते हैं, जिसमें आप ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। तो उनके दिमाग में ऐसे आया कि साहब ये बजूका अगर रख दिया जाएगा तो कोई नहीं समझेगा कि हम किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये उन्होंने ही ये नाम सजेस्ट भी किया था, उन्होंने ही ये नाम बताया भी था और उसी को हम लोगों ने कैरी किया, बजूका का। दूसरा, आपने जो दूसरा सवाल है कि कैसे लिखा, देखिए हमारी कमी इस समय सब इमिनेंट हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। हमारी कमजोरी क्या है? हमारा जो पुलिस के साथ जो सबसे बड़ी दुखद बात है, हमारा फेल्योर तो फ्रंट पेज पे निकलता है। हम जहां जहां फेल होंगे वो फ्रंट पेज पे निकलेगा। पुलिस देखती रही, पुलिस ये करती रही, पुलिस वो करती रही, और हमारी सक्सेस वो 6वें 7वें पेज में लॉटरी समाचार के नीचे निकलती है। इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी विभाग का नहीं है सिवा पुलिस के। विजय सर ने तो क्या क्या नहीं झेला है, जो मैंने अपने एज स्टूडेंट लाइफ में भी और बाद में भी सर्विस में, कैरियर में, हर जगह पढ़ा है। क्या क्या नहीं निकलता था पुलिस के लिए। तो हम वाहिद डिपार्टमेंट हैं, तनहा डिपार्टमेंट हैं, जिनका फेल्योर फ्रंट पेज पे आता है, जिनकी सक्सेस 7वें 8वें पेज पे लॉटरी समाचार के नीचे मिलेगी आपको कि फलाने गिरफ्तार हुए, इनके साथ फला इतना सामान बरामद हुआ। बहुत अच्छी शुरुआत की है क्राइम पे लिखने की। पुलिस ऑफिसर्स को लिखना चाहिए, यही सोच के मैंने भी सोचा था। पहली किताब जो अभी रिसेंट टाइम में सर ने लिखी, हमारे जो ADG थे शर्मा सर ने, वो बाइटिंग द बुलेट लिखी। उसके बाद सर की किताब मैंने पढ़ी, अपने एक्सपीरियंस विद वीरप्पन एंड ऑल दैट। लेकिन सबसे पहले जो जिसको आप लिटरेचर कहते हैं, क्राइम का लिटरेचर, बड़ा इसकी रिच हिस्ट्री है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पुलिस वाले नहीं लिखते थे। पहले पुलिस पर्सनल जिन्होंने क्राइम पे उपन्यास लिखा था, सामने बैठे हैं VN राय साहब। रामगढ़ में हत्या ये लिखी थी ना सर आपने, कर्फ्यू लिखी थी आपने। तो जब पुलिस ऑफिसर लिखेगा और एक लेखक या पत्रकार लिखेगा, उसमें बहुत अंतर है जी, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। माइन्यूट डिटेल्स पुलिस, कर्फ्यू सर ने जो लिखी, पुलिस की वर्किंग अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, और जो रामगढ़ में हत्या जो सर ने लिखी, उसमें हमने क्या किया, हम कैसे पहुंचे, हमें क्या दुश्वारियां आई, हमें क्या फेस करना पड़ा, हम कैसे कैसे वहां पहुंचे, ये जरूर लिखना चाहिए। देखिए पहला जो क्राइम लिटरेचर में उपन्यास उपलब्ध है वो देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता है जी। मैं सर जहां गलत हूं बताएं, मैं साहित्यिक आदमी नहीं हूं सर, चंद्रकांता है। चंद्रकांता के बाद चंद्रकांता संतति आई। उसमें जासूस को, या जो अभी एक सेशन बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया सेशन था वो, स्पाइंग के ऊपर, तो उसमें उनके लिए अय्यार शब्द इस्तेमाल किया गया। उसके बाद गहमरी साहब हमारे पहले क्राइम लिटरेचर के गाजीपुर के थे, एम आई राइट सर? उन्होंने पहली किताब लिखी जिसमें अय्यार को रिप्लेस किया जासूस से, और फिर उसके बाद जासूसी उपन्यास आए, लेकिन किसी पुलिस वाले के नहीं थे। ये सब लेखकों ने लिखे थे या पत्रकारों ने लिखे थे, किसी पुलिस वाले ने लिखे थे। और यही वजह है कि वो लोगों के दिमाग में, बच्चों के, यंगस्टर्स के दिमाग में ये घुस गया कि ऐसा ऐसा पुलिस करती है, ऐसा ऐसा पुलिस के सामने होता है। फिर जासूसी उपन्यास आए। सर मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ओम प्रकाश शर्मा जी ने जब एक उपन्यास लिखा था वर्दी वाला गुंडा, कहते हैं 10 करोड़ कॉपियां उसकी बिक गई। तो इतना क्राइम में लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि क्राइम के
उपन्यास या क्राइम की किताब या जैसे विजय सर की अपनी किताब है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी जो साहित्य है, साहित्य पर बहुत ढेर सारा काम हुआ है, लिटरेचर पे, वो दिल से पढ़े जाते हैं। तमाम रस हैं, प्यार के रस, विछोह के रस, विरोध के रस, वो दिल से पढ़े जाते हैं, और क्राइम हमेशा दिमाग से पढ़ा जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं और नए लोग भी जो आ रहे हैं। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया, डिजिटलाइज हो गया सब। अपना एक्सपीरियंस लिखने में हमें नहीं लगता है कि कोई गलत बात होगी। कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी हाल में आए कि साहब सर्विस के 3 साल के भीतर आप नहीं लिख सकते, कुछ इस तरह की बातें आई हैं। लेकिन अपनी बात तो लिखनी चाहिए, बिल्कुल, और हर हाल में लिखनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा कि हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारा बैड वर्क ही लिखा जाता है, हमारा गुड वर्क नहीं लिखा जाता। हमारे मन में ये रहता है कि साहब अभी तो ट्रायल पर है, अभी हम कैसे लिख दें। भाई आप अपनी फाइंडिंग्स लिखिए, आपका जो आपने किया है। आप कोई ऐसा पुलिस अफसर नहीं है। आलोक लाल सर की किताब जो बाराबंकी पे, मैं भी बाराबंकी करीब 2.5 साल पोस्ट रहा, जो उन्होंने नारकोटिक्स पे लिखी है किताब, वो आप समझें कि वो बेंचमार्क है किसी के लिए जो जानना चाहता है कि नारकोटिक्स कहाँ से कैसे ट्रेवल करता है और क्या करता है। तो इस लिट फेस्ट के माध्यम से मैं सुहेल भाई यही कहूँगा कि पुलिस ऑफिसर्स को भी अपने मेमोरीज, अपने मेमोयर्स, अपनी एक्सपीरियंस, और कैसे कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। सर ने जो बताया, रोए खड़े हो गए, किस तरह से वीरप्पन के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। और अगर आप इसको बुक फॉर्म में सर न ले आते तो 5 साल बाद हमारी नई जनरेशन जान ही नहीं पाती। वो खाली एक मूंछों वाली फोटो और वो साहब कैसे मारा गया, इसके सिवा कुछ नहीं जानती। तो इसलिए क्राइम लिटरेचर बड़ा पुराना इतिहास है। अच्छा, दुर्भाग्य ये है सर कि जासूसी उपन्यास कर्नल रंजीत, वेद प्रकाश शर्मा, इब्ने शफी, ये सब पत्रकार थे। इन्होंने लिखा और लोग उसी को पुलिसिंग समझते हैं, उसी को क्राइम समझते हैं, उसी को क्राइम लिटरेचर समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ नहीं लिखते हैं। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जल्दी से आखिरी सवाल डालूंगा क्योंकि वहां से बुलावा आ गया और उन्होंने बोला है कि और पूछा तो नहीं 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 नहीं, लास्ट क्वेश्चन, सो सॉरी, नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली कल के 2 सेशंस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं, प्लीज। ठीक सो है। सॉरी, सो सॉरी अबाउट इट, क्योंकि मैंने पूछ लिया तो अब ये मेरा एनकाउंटर कर देंगे। नहीं थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह से सेशन हुआ, एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। राजेश पांडे सर और आर के गोस्वामी जी और सुहेल मॉडरेट कर रहे थे। सर, जिस तरह के इंसाइट आपने दी पुलिस को लेके, न केवल एनकाउंटर को लेके बल्कि डिपार्टमेंटल लेवल पे भी जो आपने प्रकाश डाला, बहुत ही जबरदस्त था। मैं लाल सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक चीज बोलना चाहूंगा, इन्होंने प्रकाश नहीं डाला, इन्होंने श्री प्रकाश डाला। श्री प्रकाश डाला है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लाल सर अगर मौजूद हैं, आलोक लाल सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा एक बार उनको बुला लीजिए मोमेंटो के लिए। आगे। जी बिल्कुल। और वाकई में जैसे कि पांडे सर ने बोला कि हर तरह का रस होता है, प्यार का रस है, वियोग का है, विरह का है, भक्ति का है, देशभक्ति का है, उसी तरह क्राइम का भी अपना एक रस और मजा है। तो उसके ऊपर ये पहली दफा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, और जैसा कि मैं सवेरे भी इससे कह रहा हूं कि ये महज एक शुरुआत है और ये आगे जानी है, बहुत दूर तक जानी है। तो आइए सबसे पहले राजेश पांडे सर को फेलिसिटेट करेंगे, फेस्टिवल डायरेक्टर लाल सर, और उसके बाद आर के गोस्वामी सर हमारे पैनलिस्ट, आर के गोस्वामी सर, एंड सुहेल को हम एक दिन पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, कलर कोऑर्डिनेटेड होके आ रखे हो आप, डॉटर और आप हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद बिलाल सिद्दीकी, उनके साथ में सेशन होने वाला है अनुपमा खन्ना, बार्ड ऑफ ब्लड। आपने नेटफ्लिक्स पे उसको देखा है। आइए तो क्विकली हम हमारे, थैंक यू वेरी मच सर, हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू सुहेल। और इसको मॉडरेट कर रही हैं अनुपमा। तो बिलाल सिद्दीकी,
आपको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, नॉवलिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, along with being an author of the Stardust Affair, The Kiss of Life, co-written with actor Imran Hashmi. Bilal Sadaqi, creator हैं The Bard of Blood के, a spy novel which was written when he was 19. कल बात हो रही थी, 18-19 साल के वे थे, और ये अडेप्ट की बाद में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने और नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों ने इसको देखा है। मैं खुद 3-4 दफा देख चुका हूं और बहुत ही कमाल की है। तो बच्चों, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ मुड़ना है। आ जाइए, ये लास्ट सेशन, उसके बाद लंच के लिए आपको ले जाएंगे। आप ही के स्कूल में हो रहा है, आइए, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, तुरंत से आ जाओ। कम ऑन सर, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों को प्लीज बैठा दीजिए। आइए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस सेशन के लिए। अनुपमा, हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और लोग बाहर हैं, वो हमको बीच में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। Hunger is a strong need, Kavya. All right. Thank you so much. And thank you, everyone, for being with us. And Bilal, thank you so much for being here. We really value your presence. Thank you. All right. There are many people here जिन्होंने बार ऑफ ब्लड बुक पढ़ी भी है और नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी देखी है. But for those who have not read the book yet or seen the series yet, I have seen it and I'm very, very excited and I cannot wait to get my book signed from Bilal. I'm going to do that after the session. So what I can personally say is that somebody who is a big, big fan of spy thrillers, I loved the story, Bilal. Thank you. Genuinely loved it. So I would definitely ask everybody to go ahead and read the book. It's a fantastic story. And मैं ज़्यादा book की story नहीं दूंगी because I want people to read it, right? So Bilal, once again, welcome to Dehradun. And also very warm welcome to his friend Aisha, who's here. She's right there, right? Hi Aisha, welcome to Dehradun. Hope you guys are having a good time. All right. So Bilal, the first question, and these are off the cuff. Did you always want to become a writer? I always knew I wanted to write. I mean, I was in school and I think it was the 5th or 6th grade when the only thing I used to actually get the highest marks in was compositions. So I was like, okay, this is something I can do. And then I'd always had a bunch of very encouraging teachers who said, okay, if this is the one thing you can do, then do it well. So English literature, English grammar, subjects like these, history, all of these were things that I was naturally inclined to. And then at some point, I used to read a lot, and reading was something that my dad actually inculcated at a very early age. I think I was in the first standard when I was gifted my first Tintin graphic novel. And that's where it started actually, because from there, books actually became like a thing I had to earn. You know, like as a kid, I had to work to get the next good graphic novel. I had to like study well, then I'd get gifted. So it was always a reward for doing something. And naturally, as time passed, I read a lot. I used to read for leisure, read for fun. Really enjoyed reading more than watching stuff. And that time, actually, there wasn't enough there to watch like there is now. So I think it was around the 9th or 10th grade where I realized that I want to write, but I didn't know how to go about it. And I thought, okay, you know, at some point in life, maybe one book, I will write one book. But I didn't realize that would happen that early, and that's because I actually ended up meeting Hussain Zaidi in my college when he came to give a guest lecture, and he wanted to assemble a group of volunteers to do some legwork, research, go to the different places in Bombay that had these little pockets of history of the crime, stuff like Dongri and stuff. So there were 25 of us who joined that team. And I think over the span of 6 or 8 months, it was just down to 3 or 4 of us. And that was where I realized that, okay, this is the closest I can get to writing, which is assisting a writer. I didn't realize at that point that I would still write. I think I was 18 at that point. But I knew that this is something I'd like doing because I was always inclined towards journalism, and I'd taken that, I was studying that.
And I said, okay, maybe this is how I can use my skill set of writing and stuff to earn. Um, but then I spent some time at several media houses, and I realized that no, that if I'm writing fiction, I'd rather do it on my terms, not, you know. Um, You want that creative freedom, right? Very important. yeah. And then after that, things fell in place. So Sensor one day just asked me that, why don't you think of writing yourself? And I said, I am, sir, but I don't know how to go about it. I'm like young, I know that. I'm inexperienced, I know that too. But I've written some stuff for myself, which I used to do a lot at that time. I used to write plays, I used to write movie scripts, I used to write a few chapters of a novel that I wished to complete, which I would never complete. And I said, why don't you read this? And I sent him the 3 or 4 chapters of what was a very, very initial draft of Bard of Blood. And it was about, because I loved the genre, spy thrillers. I'd read so much of Ian Fleming, Jean Le Carre, all these things, the Jack Reacher series, that I wanted to create an Indian character. And it was okay for me if it didn't leave my laptop. But I sent it to him. And he didn't respond for like a month. So I was like, okay, he's hated it. Let it be. Don't ask him. And then I think after 40, 45 days, he called me up saying, okay, how fast can you complete this book? I said, I can finish it, sir. Why do you think? And He you said, were in college at this time. I was in college, yeah. So I said, I can complete it, sir. You tell me how soon you need it. And he said, okay, I'm going to tell you what has happened. I've sent it to Penguin. They've liked what they've read, but they know that you're 18. They know that this is a subject that deals with Pakistan, Balochistan, Iran, Afghanistan, that whole political conflict in that region. And they don't think that you are Mature mature enough enough to deal with that, which I know I wasn't. But he said what they really like is the world you've created, the character you've created, a Shakespeare professor who was a spy at some point. And they want to explore that. So to give them a better idea, I think you should complete half the book and then I'll send it again. So I couldn't believe what I was hearing. I was like, okay, damn, this is a real chance to get published. It's the only chance probably. So then I discarded those 3 or 4 chapters and started over. And this time, from being the one who assisted Hussain sir, he started helping me. And he helped me with research. He made me meet a bunch of his, what do you call it, people just he knew in the trade, you know, just people who didn't want to be named but were just happy to indulge this 18-year-old kid. And I think within 7 or 8 months after that, I had a first draft of the book. within 7 months. Yeah, because Wow. I just Because wrote it was a very every research day. intensive work. I said it was a very research intensive work. Yeah, it was, but the thing is, we glorify the idea of research to the point that you think that, okay, fine, if I've Googled enough or I've gone met 1 or 2 people, then I've got to take a 10-day break and let it absorb. All that is bullshit, actually. Just put it all down and then get to work. And the most important thing is to get your first draft in place. Because from there you can start tweaking, changing things, but at least you have something to work on. And that's something I still do. Like if I'm paid to write a script for film or whatever, I just in 10, 12, 15 days tops, just write the first draft, even if it's rubbish. So then at least you can send it out. There are 2 things to that. One, whoever's paid you to write things that, okay, he's delivered fast, good, I've paid him to write, maybe I should pay him more. The second thing is that you got the first part of the job out of the way. You know that you're going to have to rewrite whatever you write the first time, and that's something only the writer knows. So same with the book, actually. That's something Hussain sir again taught me, that just get it done and then keep fixing. There's enough time to fix, but at least mentally it's out of the way. You think or you know that you've written it once at least. So yeah, then 6, 7 months later, the book was ready. Hussain sir had 1 pass at it. He said, change this, change that, which I did.
And then it went back to Penguin, and this time they were happy to publish it. So then that's the journey of how that book came about. Great. Thank you so much, Bilal. I love the way you narrated everything because I was very curious to know a lot of those things. So thank you for being very proactive about it. Thank you. And I also think that you did give a very important piece of advice for all writers where you said that, don't try to stretch the research and the first draft too much. Just get done with it and then you work on it. I think that's a very important piece of advice. Yeah, because it's a long process if you just want to break it into two portions. One is research, one is writing. I think you need to write to know what gaps exist in your knowledge, and then just fill those up through research, not the other way around. If you, for example, you're writing on the history of espionage in India, that'll take you a year, 2 years to just read things about on the surface that too. And then if you're going to write a book after that, when are you actually going to end up doing it? So the other way is to just find, like I did, that I knew that I want to set a book with the Balochistan-India conflict in the backdrop. And I know my character, I know the world, I know the plot, I know their journeys. Let me just pen that down and then work backwards and figure where I'm lacking with my knowledge and fill that up. So that's my process. Others may have it differently, and they have been successful with it. Okay, a question that just came to my mind. Of all the places in the world, how did you decide for that particular geographic location? It's because it's a way, I mean, see, the thing with our films is that there's a lot of India, Pakistan, it's been explored. The conflict has been done, and it's been done at a surface level, but it's been done to the point that you're tired of watching it or even reading about it. But there was this one very important facet, which is the Balochistani conflict, which exists for Pakistan, and how India, China, Iran, all these people have a role to play in that. That wasn't explored in popular media, so to speak, be it a book or a film or whatever. So I thought, if we are doing this whole India-Pakistan spy thing, at least let's enter it through a different, subject. So Balochistan was the perfect backdrop to set the story of the spy. So then from there, I researched so much on what they were going through at that point that I just felt that this is a great setting for my story. It was definitely a very interesting setting. And you're right, it was new. That added a sense of novelty to watching the series. Yeah, because I think nobody, at least in our country just yet, has delved into that subject the way my book did. Yeah. So yeah. Absolutely. It was a great choice for the location. Thank you. And not related to Baravalad, but definitely related to you. What's your dream, Bilal? My dream? Yeah, I just got this question. What's your dream? I'm living my dream. I'm happy that I'm getting to write to earn. And yeah, I've got everything. I've got a good house. I've got good people in my life. I'm happy. I don't know. I have superficial dreams. I want better cars and better watches and better all of those things. I don't have a larger goal to work towards. I do want to direct. That's my professional goal. I want to direct a film. So, You want to direct a film? Yeah. One, I love your life philosophy. You know, the fact that you said that I'm already living life in a very content way, I think that's beautiful. So thanks for answering that. And I think you're going to be a fantastic director as well. I hope. You're a good-looking guy. How about acting? Sorry? I said you're a good-looking guy. How about acting? No, Do you I'm think not. you'll ever explore that? No. Okay, so writing I can't throw my voice well enough. and acting. All right. Okay, so Bilal, what were the aspects of the novel that were particularly challenging to adapt to the screen? I think the complexities of the Balochistani conflict that I kind of dealt with in the book. I did it in more detail in the book, but on screen you have to let go of that sometimes so that your narrative focuses on the main arc of the story. And so we simplified it for the series, although the book has that in greater detail. So that's the only great difference, so to speak, between the show and the book. But also the show has a couple of new characters we've done away with. The book has a few that didn't make it to the show. So all those changes have happened, but whatever
makes for the better viewing experience. And that was obviously taken care of by Red Chillies and Netflix and those entities which know how to do this better than I did. So that's... Okay, thanks. I'm sure when the series was being made, it would have been overall a great experience for you to be there. But is there any particular anecdote or any particular incident that comes to your mind that you remember? I think the most special thing about that series is the fact that Imran Hashmi did it. It's because he has a very strange connection to the book itself. So when I had completed writing the book, and as is the norm, you need someone of certain repute to come and launch it. And at that point, I was meeting Imran with Hussain sir, because Imran wanted to pen down his thoughts about his journey with regards to his son's battle with cancer. And so he was looking for a writer to work with. And Hussain sir introduced the two of us. And I think it was in our first meeting itself that Hussain sir said that, you know, I think you should ask Imran to launch your book. I said, but why will he do it? He doesn't know me. Like, this is the first time I'm meeting him. He said, no, ask. What goes in asking? You know, he'll just say no at best, at worst. So I was shy. I didn't ask him. And then Hussain sir asked him himself, say that he wants you to launch his book. Can you come over and do it? And he said yes immediately. And I think that was the sweetest thing. That was the journey of our friendship, actually. Now I've known him for 10 years. So then I wrote his book. He came, he launched my first book. Then I wrote his book, which was my second book. And since then, we've always been in touch. And then the show got picked up by Netflix. And at that point, I remember sitting with him and saying, okay, you know, who do we cast? Like, we need to find someone to play this, because he read the book and he's very excited for me that it was getting made. And I didn't think he would want to do OTT at that point. He's a film star. So we were discussing potential names of who could, you know, be in the show. And not once did I ask him, do you want to, or whatever. And then we actually did meet another actor, and that actor also came on board and all of that. But because of some reasons, we found it very difficult to align our plans with that actor's plans, because he was in a certain look and he had date issues and all of that. So then even we had to move on from him. And then I told Imran, dude, like, now we don't have that actor as well. What do we do? And he's like, well, you never tried asking me. So like, okay. Surprising. Yeah, so then next thing I know, I just set up a meeting with him, with Red Chillies, all of that, and then he ended up doing the role. So it was like 6 years later, after he launched the book, he was in the series. So I think that was a very special thing for me, that I had him be part of it. Absolutely, Bilal. I think that's a very, very uncommon coincidence. I mean, he launched your book and then he acted in the series when the book was adapted. And usually something like that happens if it's planned in advance. Like, let's say if I've written a book and I've met that hero and he wants to do the book, then I'll ask him that, listen, can you come launch it at Comet Events? This just happened by chance, you know. Yeah, absolutely. I mean, this is fantastic. And I think it must have led to a very beautiful relationship, I think, between the two of you, right? And then you wrote the other book also with him. All right. Okay. Now, I would like to ask you as a writer, how do you view the balance between staying true to the novel, to the story, at the same time adapting it for a different medium and audience, you know? I think every medium comes with its set of rules that you have to follow. Sometimes a show has a certain way the narrative has to be structured over a set number of episodes. A book does not come with those restrictions. A book is more free-flowing in the sense that it is the author's singular vision. A film has its own set of norms, much like a show. So for me, because I've done all three now, I just adapt. I love writing books because I don't like, in general, to sit with a bunch of people and decide what to do when it's something like this, when it's creative. But when I'm moving in towards working on a show or something, I know that that's how I have to be. There has to be collaborative, and it's a collaborative effort. So you have to, and you're getting paid for it. It's not like you're doing it out of the goodwill of your heart either. So then you just have to adapt to the norms that come with such a medium. So
yeah, like sometimes films focus more on plot, less on character because you have only that much time. Shows are more character driven, like some of the greatest shows, if you see in India, Scam, Made in Heaven, Sacred Games, all of them actually have time that they spend with the characters. Um, yeah, it's about what medium you're working in and how you decide to adapt your style of writing to it. And correct me if I'm wrong, going ahead, I think you are planning to delve into both novels or books and screenplay, right? You're enjoying both? Yeah, I've already, so I worked on the screenplays of Bart. That was my first official screenplay credit. I've written a few films right now. All of them are in various stages of production. Oh, where originally only you've written a screenplay. It's not a book that's got adapted, but pure screen stories. So one is actually with Sanjay Gupta sir. Then one is with Harman sir, who was also going to come here. He's here. Then one's in production right now. It's a series that's being shot. Red Chillies is producing it again. So I am doing that as well. That's nice. I think, Bilal, you're a huge inspiration for all the young writers in our country. Seriously. And I'll tell you why. I'm not trying to, just make you happy. It is very well founded, in fact, because, when it comes to taking up writing as a career, there are so many people who love writing, right? But the biggest question that comes to the mind is, how am I going to earn, or how will I be commercially successful? And that leads to a lot of people not taking full-time writing, right? They're scared. But I think you represent a person, a young guy who is so successful. So I think for a lot of people, it's a huge inspiration that age is just a number. You don't need to be, from a very star background to begin with, and you can be very successful even financially and commercially and fame-wise as a writer. So I just felt that you deserve this acknowledgement, Bilal. Thank you. So Although I would like to add to that and say that, sometimes, I mean, it is very tough to be a writer. You're not going to get paid regularly. It depends on what your luck brings you. It's all about being in the right place at the right time. For me, I always had the safety of knowing that I'm going to go back to a good home where my parents are taking care of things. That allowed me to, but sometimes people may not have that. So in that case, you are going to have to do another job, but continue writing so that at some point things work out for you on that front. And then you can quit that day job and just focus on it. So I'm aware that I was at the right place at the right time. So you should just know that, whoever. And you definitely have talent also, Bilal. It's a lot of hard work and talent that has come with being at the right place at the right time, for sure. I think it was Stephen King or someone who said that talent is like table salt. It's available everywhere. It's just about who works hard. So I think that stands true. You just have to keep at it. There are a lot of talented people who probably give up because they've failed once or twice. So, and to this, I will add that you're a very humble human being, Bilal, and stay the same. Seriously, that's really, really nice. All right, I know you've already done a lot of books, Stardust, right? And The Phoenix. Is that the latest one, The Phoenix? yes. Okay, so do you already have something in mind about your next work? Right Or now, something that you would love to write, like, okay, ab mere ko ye likhna hai, something like that. Yeah, I actually do have a couple of ideas, but I'm just so tied up right now with the show that's being shot because I'm going on set every day. But I do have two ideas that are very different from any of these things that I've written. And they're not crime either. So one's like a funny book about a Bollywood stuntman who finds his way in the world of entertainment wrestling, and an Indian in US and how he's going to deal with that. So I think that's a funny premise. Yeah, I don't know. I've got ideas all the time, but This is a good one, and so different from The Bar of Blood, yeah, It will be because I great. don't want to be stuck in one genre. It is my favorite genre, and I might keep coming back to it. Like with Phoenix, I did a spy thriller after Bar of Blood, but the ones in between, one was a biography, one is Imran's book, one is something that I was asked to write by Penguin, which is like a Sidney Sheldon-esque thriller, which is very different from a spy thriller. So yeah, I want to keep writing different things because
I would like to. It's not. I think that's fantastic because being versatile in terms of the genre or the subject is not something that comes to everybody naturally. But I'm sure that the very fact that you're getting ideas means that you'll be amazing even at those. So yeah, good luck, and we Yeah, look they may forward to not that be work. great ideas. I might not even do well with them, but now I have the platform. Like, if I have a publishing house like Penguin or someone interested in doing it, then I'll make that attempt. Why not? They'll lose Absolutely. money. I'm sure it'll happen like that. All right. Looking back, is there anything that you would have done differently, either in the novel, Bar of Blood, or on the screen adaptation? Anything that, yeah, you thought that could have been done differently, that could have been written differently? I think when I wrote it, I can speak about the novel because that's completely my Oh, then the novel for fault. sure. Then just the novel, yeah. The show is collaborative. Many people come together to make or ruin things. Yeah, you have a It's point not there. like- Just the novel. Yeah, with the book, I'm to blame or to praise alone. So I think at points, when I read it myself, I realize that this was 10 years back, and this paragraph is like 18-year-old me, and it's like reading a text message of how you would, if you read your text message back from 20 years, you're going to cringe a bit. So that happens. But I don't think I'd change it really, because that's how I spoke then, that's how I wrote then. How I write now is very different from that. But I wouldn't change anything. I think it had quite a journey by itself, that book. So Good, I'm very good. proud of it. And that point you said, that the fact that you said that when you read it, that's how you feel. I think that's true for every writer, because even I'm a writer, right? I'm a journalist. When I read my stories, I'm like, dude, seriously, did I write that? And So I it's think good very- actually, because that's it's a a natural sign evolution, of, I guess. That's a sign of being not a good writer, bad writer, just a writer, that at least you look at your own work and you can criticize it before you praise it. Because if you start praising your own self, then everyone else is going to come and pull you down. Absolutely, Bilal. I think that it's very important to always be a little critical about your own work as well, and not just let the praise go into your head. Absolutely. Yeah, if you're your own harshest critic, then anything anyone else says is not new to you. Just say it to yourself, deal with your own demons, and then whoever can say whatever they want. That's why I'm very indifferent to what people say, even if they actually praise my book or hate my work. I don't care, because I've already done it in my bedroom. And I think, you write for the love of writing. That is why I'm just guessing, I don't know you that well enough as of now, but I think you're very balanced, whether it is a lot of success or praise or even criticism. I don't think you let it go to your head because you write just for the love of writing. But I've not had the kind of success that goes to anyone's head. I don't know what that means, honestly. Like, No, for your age, frankly, Bilal, I mean, what you were 2015 when the book came out, right? Now think about it. Imran Hashmi launched it. That was a big thing for people. I'm just saying, imagine a regular 18-year-old guy, right? So that in itself, a celebrity launching the book could have gone to the head. And then Shah Rukh Khan, Red Chillies, and Netflix making a series on your book, your first book, you're a young guy. That was more than enough material to actually take you to the next level. So I think it's just because you're very rooted and humble that you don't feel that. But yeah, so I would say you've already achieved that level of success. First book. Thank you, I guess. So definitely. All right. I very honestly have so many more questions to ask because, philosophical life and everything else, but I think I'll have to wrap it up for now, and I'll catch you outside and maybe have some of those. And before we conclude this, I just want to ask quickly if there is any question. Okay, Parag and Manas. All right. Anupma spoke about you being an inspiration for a lot of young writers. So as a young true crime writer, I can definitely say Bilal has been an inspiration. Thank you, man. I am older than you, but you are an inspiration for sure. I must say that. Thank you. And I think when I heard you for the first time, it was at the WIC Literature Festival, which used to take place in Dehradun. And as she very rightly said, what came across was your humility, which I see in every conversation I have with you. And I see you're very patient in putting up with a lot of things, in terms of logistics and people. And you're a very sorted person. And I want to understand from a person who's slightly older that where does this maturity come from? It's not maturity at all, actually. I throw my tantrums, I just do it in front of people I know, because I'm very shy otherwise. All right. So I felt that, I spoke to him briefly yesterday also, Manas, and I was like, he's a humble, shy guy with a lot of depth,
and I was like, he's so successful and there's so much fame and spotlight and everything. And It's all a farce, actually. but I think it'll not let him get to him in a bad way. That's I great, think actually. we all have our vulnerable moments in front of the people we love most, but it's wonderful how you're able to, kind of be in public and deal with every person who comes up to you. No one So comes up to me, gratitude. it's fine. Hi Bilal, once again. Yeah. Hi. So I have two parts to this question. The first part is that how important is for young writers that their books get adapted into movies? That is the first part of the question. And the second part is that there's a commercial angle, always a commercial angle when a movie is made out of a book. Uh, does it influence the way you write after that? You get a lot of fame out of that. Whatever has happened, you suddenly shoot up. The fame gets shot up and things like that. So, does it influence in the longer run the way you start writing? Does it change the way you think and write? Do you have that thought at the back of your mind that now I have to add something commercial so that this also gets adapted into a movie? That's very true, actually. So when Bard happened, my next book was actually non-fiction, which I knew is not something that can be adapted. It was about a father who was a popular actor whose son's battled cancer. There's no scope for a movie there. So it was after writing my third book that the rights of Bard got picked up. But by then I realized that, okay, once your work gets picked up to get made into a film or a show or whatever, that's when the actual money comes in, because you're not actually getting paid very well to be a writer. And that's the reality of the situation. You're doing it because you love it. You're not doing it because you're going to earn through it, unless you've reached the stature of someone like Hussain or someone where his book signing gets picked up at a decent, very good, thing. Even then, he has to sell his rights to then have a greater, to live very comfortably. You can live comfortably, but if you're someone like me who's just starting out, you're not going to get paid too well just to write the book. You're doing it because you love it. And at that point, actually, even now, I always have the comfort of knowing that I'm going to go back to a house that my parents have bought. Like I'm not screwed if this doesn't work out, But what happens is when you taste blood of having made that sort of money through selling your rights, then you are, even if you don't like it, going to end up writing things in a way that get picked up. And it's good to recognize that and then do it, write the best version of it despite that. And I think there are a bunch of writers in the West who do it this way and take it on as it is. Like if you see the entire Jack Reacher series, Lee Child knows that these are going to be films, but he's writing great books at the same time for those who want to read it. And they're immensely popular, to the point that I've read somewhere that when Lee Child sold the rights of Jack Reacher to Tom Cruise, the readers had a problem with it because the character was 6'5" and he's a huge guy, and then Tom Cruise is obviously a huge movie star, but not physically. So much to the point that he took the rights back from Tom Cruise and sold it to Amazon or someone, and they've made something and they've cast appropriately. So the thing is to recognize what you're doing and then do it correctly. I won't be under the impression that no, I'm writing this book for its artistic value and all of that. I know that I want to sell it, so let me do both. Let it be a fun book and let me try to sell it as well. So it does factor into your mind. But the thing is to still, how do you find your own voice now within all the things that, come up? Yeah, I wanted to say the same, Bilal. Thank you so much for giving such an honest answer, such a forthright. Not everyone would do that. So, like we said, I think the one message that we want to give to you with a lot of love is please stay the way you are. Because in addition to being a great writer, you are a fantastic human being. You have a good soul and वो बहुत precious है. So stay the same, Bilal. We have a question there. Sorry, I forgot the first part. I'm so honest, I forgot it. Me too, actually.
It's very important, actually. I'm not going to lie about that. Because otherwise, you're unfortunately in a country that's reading habits are dwindling. You're writing a book for only a small subset of people. Sometimes they're not marketed well enough to reach those subset of people as well. And unless it gets picked up or gets made into something, there's no immediate recognition of the book. So it is a tough market to enter if this is the only thing you're doing. Because now every book that is actually being sold or marketed are books written by film stars, wives, sports people, retired sports people, criminals who spend time in jail. So anyone who's done something else in life comes and writes about their experiences, and those sell. But what about writers who want to write new stories? They don't have the exposure. So I think in that regard, when someone picks it up to make it into a film, that is something that puts the writer on the map and then allows him to continue telling new original stories. So it is very important in that sense. Thank you. That's true, actually. And I'm actually working with two of them already. There's Harman, who I think is coming. He's got the rights to Phoenix, my book, and Sanjay Gupta. So it's nice. They followed up with me on the progress of the script. I was avoiding them, but now I met them here. Thank you. We kept them Bilal, happily busy. And they didn't come to you with that. Yes, sir. Bilal, it was great joy listening to you. Thank you. My question is not completely formed up in my mind, but Sir, still I'm trying a little to louder. form a question. See what happens when we write about the factual situations. So facts are there, and the writer weaves around the facts, and it's a lot more easier. Well, someone like you, who's more into fiction writing, how do you negotiate the stereotyping of your characters, of the circumstances, and how do you bring in your creativity there? Because expectations of the reader, and even in the films, the viewers, they don't really give you a lot of margin to think beyond stereotyping. So for example, if a soldier is there, so he has to be very brave and face all the bullets and all that. Similarly, if a policeman is there, he has to be shown corrupt and negotiating and things like that, and a politician. So how do you negotiate the stereotyping in your fiction to keep the originality and creativity alive in your writing? Thank you, sir. That's a very, very good question, actually. And you know, the thing is, so sorry, do you write a little yourself? Fantastic, sir. So you write more than a little then. Okay, so let me tell you my understanding of this. So I've written non-fiction. One is Imran's book which is a very emotional book about how the experiences a family went through when the youngest member in the family had a life-threatening disease. All of those were facts, right? But it had to be told in a way that was very interestingly put, so that any reader who reads it feels that, okay, here, this is something I can relate to, and this is something that I'm liking to read. It's not just a documented journey of someone who's going through something. But let me keep that aside because that's my only non-fiction experience so far. What I've realized is when you're writing a book, you can actually take more time to delve into or create characters that are unique because there's no limit on your page count. Whereas when you're writing a film or a show or a series, what happens is you have a certain plot that you want to tell, and that plot is the part of the original story. Now, sometimes what happens is in telling that plot in a linear way, or however you choose to tell it,
there are a bunch of characters that I introduced along the way that have to serve a certain purpose to that plot. Now, sometimes that character happens to be a cop who is corrupt. Hence the stereotype. These are all tropes. So, like in my version of the book, Bad of Blood, I had tried to layer even the villains in a way that you realize why they're doing what they're doing. Even the henchmen, for example. But in a film, you don't have the liberty of time. So, okay, fine. Is this Taliban? Why is Taliban doing what it's doing? We're not going to spend time on that in the film. We're just going to show them as wearing with the beards and guns and stuff, and you understand. These are tropes that have been set in our mind. What's important to us when watching the film is, okay, is our hero's journey going to be satisfying? So then you forgo a few of these things to, and you, while writing a film or show, you know that this character is stereotypical, but you just have to take it head on and just put it in there so that it serves your main plot in a better way. So I think it's a more technical answer. I don't think anyone actually who's sitting down to write wants to write a stereotypical character, but still they find its way into every story. You can't help it because they are just tropes that come along with whatever genre you're dealing with. You know, like every love story, every every rom-com has a best friend on both sides of the parties. Now, what do you do with that? So it's just part of how you write a story, I think, and you can't escape most of it. I don't know if that answers you correctly. Even it's thank you. Thank you for asking that question, sir, and thank you so much, Bilal. And I'll have to wrap it up for now because we have like a back-to-back schedule. And Bilal, it's been a pleasure talking to you. Thank you so much for coming to Dehradun. And genuinely comes from the heart. Just remember, we love your work. We also, now having known you better, love you for the person that you are. And honestly, just remember that you are hope for millions of young writers. Yes, I'm telling you millions, because your work has gone globally. It's beyond boundaries. So, you know, whenever, just remember that you are actually a hope for millions of people. And I think that's a big thing. So congratulations and look forward. And I'm going to go get all your books as soon as this ends, by the way. I'm going to get them, okay? You're not going without it. And you sign it. Thank you अनुपमा, thank you बिलाल. और बहुत अच्छी बात अनुपमा ने बोली कि सिर्फ पढ़ना और देखना ही नहीं है, पढ़ाना भी है और दिखाना भी है. तो लाइफ में जो यंगस्टर्स हैं, नॉर्मली क्या होता है, राइटिंग लोग सोचते हैं कि पूरी जिंदगी निकल गई, अब ताउम्र के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिखा जाए, बट ज़रूरी नहीं है, वो भी एक तरीका है. मगर उसके अलावा अगर आप शुरुआत से ही आप में वो पैशन है या उस तरह की कोई बात है तो उसको बाहर निकालना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. एंड क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे लोग इसको देख रहे हैं और बाद में रेडियो पॉडकास्ट के ज़रिए इन कॉन्वर्जेशंस को वो सुनेंगे. सो लंच कर लेते हैं और लंच के बाद हम वापस से यहाँ पे ज्वाइन करते हैं. ठीक है जी, चलिए, सी यू देयर. थैंक यू.
जो मुजफ्फरनगर मिला, यहाँ पे सिर्फ 2 गैंगस्टर राज चलता है पूरब में, मोहम्मद शकीम खान का और पश्चिम में चिंटू डेढ़ा और पिंटू डेढ़ा। मेरे बेटे को बचा लो। शॉपिंग
थोड़ी सी देर में इसके बारे में बात करेंगे। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा कल कुछ सेशंस हमारे डिले हुए थे जिसकी वजह से हम 45 मिनट्स थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, बट अगले 2 सेशंस में हम उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर डायरेक्टली भौकाल यहां मचाएंगे। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे सेशन इस वक्त पे होने जा रहा है, निधि कोचर उसको मॉडरेट कर रहे हैं और वैभव विशाल और सौरभ डे, द मेकिंग ऑफ स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी। मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाह रहा हूं वैभव विशाल और सौरभ डे। आप दोनों का ही स्वागत है। और निधि कोचर हमारी दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को मॉडरेट करेंगी। निधि के बारे में अगर बात करें तो डिजास्टर रिकवरी को लेकर बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है और को फाउंडर हैं विमेन इन टेक्नोलॉजी की, अ प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू जितनी भी विमेन हैं उनको किस तरह से टेक से जोड़ा जाए उसको लेके। तो बहुत एक अच्छा बैलेंस उन्होंने बना रखा है लाइफ में, जहां पे अपना पैशन और जो उनका अपना प्रोफेशन है उन दोनों को लेके चल रही हैं। निधि, ओवर टू यू इस सेशन के लिए। तो अगले 30 मिनट हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पे सामने आप सेशन देख पा रहे हैं। थैंक यू। Hello, hello. Thank you so much. You make me sound like a superwoman, which I think I am. All right, welcome everyone. So, we are here to talk about the Harshad Mehta story of scam 1992. कितने लोग हैं? Hello. Sorry, once again, can people raise their hands in the audience who watched 1992? Awesome. Interesting. So today we are in conversation with Mr. Vaibhav Vishal, who is the dialogue writer for the Scam 1992. And we have Saurav Day, who is the screenwriter and for the Scam 1992. All right. Welcome, sir, to the Dehradun Crime Literature Festival. All right. So Scam 1992 does not need any introduction, not in the manner of how the scam happened, and neither the way how you guys have brought it on the screen. So please take us through the writing process and how this came into light, how it came out. Saurav, you want to start? Yeah, I'll start. See, as we all know, it's based on a book, okay, and it's a book based on India's financial scams that happened in the 90s, okay, and it's a book written by Sujita Dalal and Debashish Basu, okay, and which is actually about various scams that happened at the same point of time. The Harshad Mehta chapter is one chapter in the book, okay, it's like 30 to 40 pages. So the whole idea was, I think when we started off, the whole idea was that it is, see, I mean, like in today's world, there's a financial scam every single day. Everyone is getting conned or getting scammed through some app every single day. So it's become a regular thing right now. But like in the 90s, the reason the Harshad Mehta scam stood out actually is because it completely shook up the financial system of the country. And where it was clear that a lot of people coming together are doing unethical things, which completely is going to, you know, bring the country into jeopardy. Because so many people invest in the stock market, and when the stock market is getting artificially inflated, okay, because of a certain scams, the market can fall anytime. And that's exactly what happened. So the market went up till 4,000 points and it fell to 1,000 points, and literally people lost a savings of their lifetime. Sure. And the scam is also about how the investigative journalists found this out and took this out in public. Okay, so it is so the scam also, apart from being a okay, can you hear me now better? This is better, I guess. Yeah. Okay, so the other thing also is that apart from this just being a financial thriller, it's also in a way it's a morality tale. It also something which reflects what India was going through at that point of time as a country. So I think there were many things that we had in mind, and so we tried to put together the whole thing in a way so that it looks compelling and interesting to watch.
So that was the basic structure through which we started. If I may ask, like you said, it's based on the book. How different is the adaptation from the book? See, the adaptation is actually very similar to the spirit of the book, but in terms of our take and the broader story, it's quite different. Because the book is a non-fiction book. It just tells you factually what happened in that era, okay? It doesn't have characters the way the show has characters, like there are 20, 25 characters. The book basically has Rashid Mehta and his brother, okay, whose acts we get to know about through the non-fiction write-up. Obviously, when you adapt non-fiction into fiction, then you have characters, then you give life to characters by creating scenes around them, and everyone looks like living, breathing people in front of you, whose journeys you actually see. So also we had to dramatize a bit of it because, at the end of the day, just facts are a bunch of events that happens. So to put everything together in one coherent, easily consumable narrative is the task of the screenwriter. And to make it fun also, because finance can be very intimidating because most people don't know financial terms. And this scam is not even a stock market scam, it's a money market scam. And it is something which no one really knows about, apart from people who deal with that specific segment of finance. So to explain all of it and to put them together and to make it fluid was a broader challenge. Like when we were making, we were like, हाँ ठीक है बना तो लेंगे, will people understand what is going on? Sure. That was the bigger challenge when we were making it. True. Thank you so much. I'll come to you, Vaibhav. You are the dialogue writer for Scam 1992, and you've done great work with Rana Naidu and Mumbai Saga. That's coming. In terms of writing dialogues for the criminal minds, let's say, how necessary it is to show out, like there are abuses, slurs, and a language which is not something that you would be comfortable when you're sitting with your family. So what is the need, let's say, or is it really how the criminal world speaks with themselves? Like, what is it? Or do we dramatize it because we have to? I'll hit the nail on the head. आवाज clear है? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, आपने जब पूछा स्कैम के बारे में, so all those boys over there सब ने हाथ उठाया और लड़कियां जो बैठी किसी ने हाथ नहीं उठाया. तो clearly पापा मम्मी की बात नहीं सुनते हैं ये लोग और जो नहीं देखना होता वो भी देखते हैं. सब समझ में आ रहा है. See, the abuses have not been invented by the writers. हम समाज का प्रतिबिंब है. We reflect the society. बाहर जो हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, जिस भी पर्दे पर आप देख रहे हैं. बाहर लोग गालियां नहीं देंगे, हम भी गालियां नहीं देंगे. भाई हम तो जो सुन रहे हैं उसको, we are giving a platform to that. So the abusers, because they have not been invented by us, because we it's not as if कुछ होता नहीं था और हमने बनाया और हमारा सुन के सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों का. तो मुझे लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है ना, कि जो अगर हमें ईमानदारी से कहानी कहने का मौका मिल रहा है तो हमारा अधिकार है कि जो बाहर हो रहा है हम उसको दिखाएं पर्दे पर. So morally speaking, yes, perhaps there are dilemmas, I'll be honest, but when one is an honest writer, then you can't do away with it. No. So I would want stuff that I write to be watched by families together. Am I achieving it? No. Am I sad about it? Yes, but would I therefore stop it? No, I don't think so. I'll continue to be honest about my writing, and that's very, very important for a writer to be. Absolutely. You need to be honest. Absolutely. So my next question is to the both of you. When you're writing about such high-profile cases, big people involved, names involved, I'm sure there must be a background story while you are in the process. Was there ever any objection from the actual family or where the story actually comes from? So I'll take this. See, the thing is, in India, there's a rule. I mean, the law says that if there's a book published on a real case, you can make a fictionalized account of that.
Okay, you can put that out. Okay, and we went according to that. I mean, there was no objection because there was no communication actually. So basically today, if you make a film on a book which is already there, which has real people in it, unless it comes out, no one will actually know what you've made. But I can tell you, there have been a lot of interesting and positive takes. Like, for example, the CBI inspector, Madhavan, for example, that character, okay, which Rajat Kapoor played. Like, his family wrote to us saying that our dad is no longer with us, but had he seen his representation, he would have been very happy because he was exactly that no-nonsense cop that you guys have shown him to be. Okay, and we want to thank you for that. Okay, so we have got some of these very positive responses. But you know that show has so many characters and so many people, and there is a universe around it, and rest what they are saying, I'm not really sure. All talk doesn't come to you also, so I mean I'm not very sure actually. नहीं, परेशानियां होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं. अब मैं राणा नायडू का उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पे देयर वाज अ कैरेक्टर दैट वाज बेस्ड ऑन अ रिलीजियस टीचर, एंड यहाँ पे तो religion has become a four-letter word these days. So we had to be very careful about what we were creating, and eventually the creation that we had to let go of that person, that character, and create somebody brand new. Because we started getting feelers from people. अभी एक शो आया है आश्रम, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे. वो एक फिक्शनलाइज्ड कहानी है किसी एक सेक्ट की, लेकिन अब एक खास सेक्ट है जो उनको लग रहा है कि उनकी कहानी है, तो वो पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर. तो ये होता है और आगे भी होगा. उसमें you know, so what we do is that sometimes we combine characters, sometimes we combine character A, character B, and then make a composite character that stands for both the guys and neither of the guys. So वो करके हम निकल जाते हैं. In some cases we don't take names. So Scam 1992 में एक character है जो कि चंद्रा स्वामी पे based था. अगर आप book पढ़ें, उसको खाली स्वामी जी बोला गया है, नाम नहीं लिया गया है. तो वो सारा we find kind of workarounds. Interesting. Nice. Writing is a very personal process, each has their own. When you write about such topics, and it's not a day's job, like it doesn't get done in a day. It's a whole process, goes over months. So how do you separate yourself from the characters that you are developing in your stories? Is it a challenge to be yourself and not be the characters that you are trying to portray? Is there a balance of So no, it is balance? challenging. It is challenging. So again, there are characters that I have written who are very brazen, very abrasive, and you're continuously writing on them. So there are times that you start getting sick of the characters that you're portraying because you become them. As a dialogue writer, मैं अगर वो पात्र नहीं बनूंगा तो मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा. So for that moment, I become them. And there are times, and the trajectory of the character. तो कई बार परेशानी हो जाती है. But ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार हो ही. कई बार you kind of detach yourself while writing. But in some characters, in some cases, you do kind of get to become the person. And it happens more in cases of negative characters. मैं गांधी भी लिख रहा हूँ लेकिन गांधी बना नहीं हूँ. लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब the other characters that I have written, who are not really the nicest people, you do start feeling sometimes suffocated. Sometimes it does play up in your head. Nice. You said that you're writing Gandhi, but you're not relating to it, but you do look like someone we all might know. Yeah, I think very recently you've also, if you know what I mean, your Instagram post. उनकी सफेद दाढ़ी है, उनकी सफेद दाढ़ी सफेद बाल है, मतलब. All right, we'll keep this as an inside joke in the interest of the place that we are at. All right, so talking about in terms of writing, is writing about criminals and the hard action stuff, is this a trait that you picked up over the period of time, or was it
is there an inclination? Like, how does one approaches basically if they Are you want to asking if pursue Saurabh something has like that? criminal instincts? Then he does. You know, I can vouch for that. No, see, I'll tell you one thing. See, I have been interested in crime from a very young age. I mean, in the papers, probably I first read about the criminal incidents in general. So that way, I also tend to understand the law extremely well and the investigation procedure that is. It fascinates me personally. I also keep researching how it's different in different countries. So, for example, how does Latin America deal with it? How does Scandinavia deal with it? And it's like it's one world. I mean, it's all different countries. We are the same people, but we all have different legal procedures for everything. Okay, so I mean, I think it started from there. And writing about criminals is also, see, like in an Agatha Christie book, I think there is this line which says, you know, crime is the most unexplored opportunity that humans have. Okay, because the rewards are staggering, and if you are smart, the chances of getting caught is minimal. But that is the wrong line. I mean, I think anyone who thinks that they are smart enough to fool the investigators eventually gets caught also. Okay, but crime obviously for a lot of people would look like a huge world of opportunity, and that is why so many crimes happen every day. Especially, I think right now, the India as a country is taken off in terms of financial scams. Everyone gets conned every day, literally. I mean, I have a group of friends, and we do this every day. Every day there is a financial scam that happens and someone loses money. We actually share that in the group and we laugh about it. Seriously. Also to make ourselves aware of it. Yeah, Like- yesterday we had a session on cyber encounters, Right, and right. it was one of those sessions that we had to cut it down in between because people had so many questions and experiences. They were like, "What do I do?" It's happening every day with everyone. Also, people have figured out new ways of committing crimes every single day. And I think if the law is not really keeping up with it because you have to make new laws probably to handle some of these cases. So yeah, I mean the interest is there, and then getting into the mind space of like if you've read Crime and Punishment by Dostoevsky, getting into the mind space of a criminal is actually not very different because you know we all have our dark phases, and we actually understand how x plus y becomes z or whatever. Okay, so I think that is the process. But writing is an organic and authentic process, and as you said, that even if you empathize very strongly and get into the shoes of a criminal, I mean you snap back very quickly because that's the job. The moment you say end हो गया खत्म, then you're back. See, मेरा प्रोसेस में थोड़ा सा इट्स स्लाइटली सिंपलर. सो ये जो बैठे हुए हैं लोग ना, मेरे कैरेक्टर को इन तक पहुंचना है. इनको समझ में आ जाएगा तो मैंने अच्छा लिखा, नहीं समझ में आएगा तो बकवास लिखा है. मुझे जितना लग जाए मैंने नोबेल प्राइज का काम किया नहीं किया है. Because it has to reach them, it has to reach the audiences. If they are watching it, liking it, great. If they know रिस्क है तो इश्क है, बढ़िया है. मैंने मेरा जो काम किया था काम कर गया. ये नहीं जानते हैं तो मैंने बकवास काम किया है. तो मेरा अप्रोच बड़ा सिंपल सा होता है इसमें कि भाई अगर मेरा हीरो क्रिमिनल है तो मैं क्रिमिनल ही हीरो है ना, मैं उसको बदल तो नहीं सकता हूं. तो आई विल एंश्योर दैट इवेंचुअली that person appeals to the audiences. That's very, very important because I'm writing for them, not for myself. So my approach is therefore very, very simple there, that whatever character is there, it has to be entertaining enough, intriguing enough, smart enough, sharp enough for the people to kind of identify with him and his journey. Then of course he would fall and they would know about it. But the character has to be smart enough. So that way is, I'm not, for me, more than a criminal, he's my hero. The criminal is the hero, and that's my starting point. See, I have a slightly different take on this because when I write for myself, and I think I'm a very difficult audience to please personally. Okay, so I try to make it a point that I write it and make it as complex and intriguing as I would like it. And then I hope the audience would like it because I don't know who the audiences are. I hope there are many people like me in the audience. So it's a different process, but I think either of them works. Interesting, actually, and that makes me think, how did the two of you work together on this script with? Oh, because that is also very easy because because I, along with Sumit Purohit, we were writing the screenplay of the whole thing. Once the screenplay was over, we also had our indicative dialogues. It would go to V2. I mean, Weber Vishal, we call him V2 because he's Weber and Vishal. Okay, so हम प्यार से V2 बुलाते हैं. So he would have his own interpretation on the characters and the dialogues, and he would write the way he wanted to write it, and then he'll pass it back to us.
And then we'll sit and what we like, we'll say, oh, this is very good. Oh, this is wonderful. What we wouldn't say, at times in Scam, what was happening is it's so technical in the first 3 episodes. Nah? At times we'll say, oh, we have to explain to Vito how this thing works in the stock market. Okay, so we'll again go and say, okay, you know, this is how it works. Okay, now I got it. So these are the processes in general, but it's a to and fro process completely. And at times, if you don't agree with something, you sit and argue it out. And like in any civil discussion, I mean, whoever has the better argument wins. And in that way, it was a very sane space to be in, actually. Absolutely. In fact, we were talking about one of the characters right now. 3 years after the release of Scam, I said, यार मेरा motivation ये था, and he said नहीं तो गलत था, यहाँ पे ये ऐसे नहीं, वैसे सोच रहे थे हम लोग, तुमने ठीक नहीं किया. And I'm like नहीं, eventually हुआ नहीं, but मैं ऐसा सोच रहा था. So of course we would have disagreements also, and but see the writers when they like इन्होंने story screenplay लिखी जो process होता है, I don't know for the kids, let me just tell you, writing का process क्या होता है, I think it will help you guys because you're looking very very bored. तो पहले स्टोरी लिखी जाती है, स्टोरी समझ में आती है ना आप लोगों को, आप लोग क्लास में पढ़ते पढ़ते भी होंगे. स्टोरी लिख देने के बाद उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट किया जाता है, उसको से 100 पेज में एक लिखा जाएगा कैरेक्टर्स के बारे में, डायलॉग्स कैसे होंगे, इंडिकेशन सब कुछ होता है. जब स्क्रीन प्ले लिख लेते हैं उसके बाद फिर डायलॉग राइटर को दिया जाता है, वो डायलॉग लिख के देता है और फिर जो है आपकी फाइनल स्क्रिप्ट तैयार होती है. ये ब्रॉड प्रोसेस होता है. तो हम जिस शो की बात कर रहे हैं स्कैम 1992 की, जो आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने नहीं देखी है, उसके राइटर ये हैं, स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा था, आप लोगों ने भी जी थैंक यू चलो कोई तो है और तो इन्होंने थैंक यू, तो उसकी स्टोरी इन्होंने लिखी है और उसके डायलॉग्स मैंने लिखे हैं. तो ये प्रोसेस आप लोगों को बताना जरूरी है. और जब आप किसी के साथ काम करते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल ऑल्सो बिकॉज यू डू प्रोजेक्ट्स टुगेदर, इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट द पर्सन यू वर्किंग विथ, और वो सिक्योरिटी होनी चाहिए. आई हैव नॉट सीन राइटर्स मोर सिक्योर देन सौरभ एंड सुमित. तो ये अपना लिखा हुआ जिसपे 3 साल से 2 साल से ये काम कर रहे हैं मुझे देते थे, फिर मैं उसमें बदलाव लाता था और इनके पास वापस जाता था. कई सारी चीजें मेरा अपना इंटरप्रिटेशन में डाल रहा हूँ और कभी भी मुझको ये कड़वाहट नहीं समझ में आई सामने से कि क्या कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो, व्हाई डूइंग योर ओन थिंग. सो देन इट बिकम्स अ कोलैबोरेटिव थिंग बिकॉज ये जो मैं अच्छी चीजें ऐड कर रहा हूँ इनको अच्छा लग रहा है और इस प्रोसेस में मैं इनको समझ रहा हूँ और मैं उन चीजों को और अच्छा बना रहा हूँ. सो दैट्स हाउ इट टिपिकली वर्क्स. Interesting. That brings me to another question on same lines. So you make criminals hero basically. Yeah, there's a little difference. Exactly my The question. criminals are the protagonists. We have an objective take towards it. Yeah. See, hero is a different world altogether. See, the hero is someone who's fighting all obstacles to defeat an antagonist. In the Harshit Mehta story, the female journalist is the hero actually, because eventually she defeats the broader, bigger force. But we have taken the protagonist's point of view for you to understand and probably walk in the shoes of protagonist to see what the system is like. Exactly It's what I not in want black to and white. understand, and I also want audience also to understand that where do we draw a line when we are talking about such things? How do we draw that line wherein we are telling that maybe we are bringing this to light, but this is for learning, not that you repeat this? No, you wouldn't Yeah, do that. sorry. I'm sorry, I'm just finishing this sentence. See, you wouldn't want to preach directly. You are going to leave the story as it is, okay? It's for the audiences to interpret it. You obviously show various moments where your protagonist is doing wrong things. Like in Scam, though, in the first episode, he starts rigging the stock market, which is a wrong thing to do. And then he again rigs things. Then again he does, and let's say he bribes someone, for example. And then he goes and he mistreats one of his co-employees. And these are very clear, stark scenes. So it's clear for you that you should not be doing this. But what happens is, because you're engaged in the lives of a person, you normally tend to ignore the bad things they are doing because you're emotionally invested in their life. Also, it's kind of an underdog story because he comes from a really low middle class background and he becomes India's highest taxpayer. And from an aspirational point of view, everyone wants to be like that. So you make them your hero without understanding that the warnings are coming, but we are ourselves ignoring it. I think. Yeah, so see, I'll tell you what.
हमको उनकी कहानी दिखानी है, टू शो देयर स्टोरी, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कैसे दिखा रहे हैं. बाकी ऑडियंस बहुत समझदार है, दे वुड नो कि भाई क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है. वी आर शोइंग दैट इवेंचुअली ये बंदा जो है ये जेल होती है, इसको जेल में बेचारा मर जाता है. अब अगर किसी को जेल जाना है तो भाई फॉलो करो हर्षद मेहता को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो. तो अगर आपको ऑडियंस को ये सीखना है उससे ये कि भाई अनलेस बिकॉज सी when you're writing about a person with a flawed life, you have to be as truthful to the flawed life also, correct? So we are being truthful, and it's for the audiences to pick and choose things that they want to pick and choose. We are showing the bad end also. Had we left it at a high that ye dekho itna crime kiya and crime pays, then we are morally wrong, and then we need to know that okay, this is where we need to draw the line and go beyond that. But we are not doing any of that. We are showing his end. So that's how this works. That's how this operates. Nice. You know, I used a phrase morality tale when at the beginning when I said when we start approaching the subject, because it is also a morality tale because you understand that okay, this guy reached great heights but did not know where to stop, and this is a very important thing to understand also in real life. When you start getting success XYZ, then you completely there's a term called hubris. When you have hubris, you completely start thinking the whole world is stupid. I'm the smartest person. And then you start making mistakes. And once you start making mistakes, there's no stopping there. So I think all of it is captured in the show also, because at the end you see where your ambitious, greedy is the wrong word, where your super ambitious protagonist eventually ends up because he doesn't know where to stop. I think that is the story in one line if you want me to break. That is the view from which we have written the whole thing. How you are going to take it is up to you as an audience, because again, every audience will have their own interpretation of a story. Absolutely. So Sanjay Gupta was here yesterday, and he has made films like Shootout at Lokhandwala, Shootout at Badala, and so on and so forth. अब वो जो हीरोज हैं उनके जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो क्रिमिनल्स हैं सारे, और सारे मरते हैं. मरने के पहले वो एक गणपत दारूला गाना भी गा रहे हैं और लोग ताली बजा के डांस कर रहे हैं. तो भाई ठीक है, क्या करें, मतलब वो कहानी उन्होंने वैसे बनाई है बट उन्होंने मरते हुए दिखाया है ना. सो आई थिंक वो मॉरलाइज करना इस पूरी चीज को एज क्रिएटर्स, I think it's too much to ask for from the creators. Yeah, that takes away the creativity of the artist. Exactly, yeah, exactly. Absolutely. Thank you so much. I think in the interest of time, we should take a few questions from the audience. Anyone has any questions? Mr. Dutt. Can someone please share the mic? Saurav, you just said, if I heard it correctly, you said you follow crime from youngsters, something? Did you say that? Sorry, can you repeat the question? Youngsters may young age say crime. Did you say following crime? No, I have been following crime for a long time as a child. Fine, That's fine. what I said. So I got by the wrong, reading things on papers, essentially. I got the wrong interpretation. Yeah. But crime and criminality are two different things. Criminality is a behavior kind of thing, which has a genetic, which has a psychological, and which has the anatomical correlation. Back in the 70s, they were doing a lot of lobectomies, frontal lobectomies, because these people were predestined to do crime. Right. But later, when we got the MRI and we got the functional MRI and other things, those frontal lobectomies, were stopped because it was thought to be too inhuman to do it. The other point is, you have autonomic parameters to pick up who's the criminal guy. A guy who's very, very focused, very precise, a cold-blooded kind of thing. In the previous session, they said he shot a guy 17 times. Now, if this guy, if you examine him autonomically, he'll have a very slow heart rate, he'll have a very slow pulse rate, slow breathing rate, and no perspiration on his thing. So he's a cool, calculated guy who's emotionless. While the other guy, who does something on the spur of the moment, he'll have a resting heart rate which is high, he'll have a resting breathing rate which is high, and he'll be sweating. So these are some of the parameters that we pick up, and I don't know. There are police officers here, there's some DGP police also here. When we pick up a habitual criminal, do we run him through the battery of tests to see does he have a psychopathology as the basis of his crime? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. sir, Thank you. for Thank your you for sharing insight. that. Do we have any other questions? Murli sir. I have a simple question.
when you're writing a screenplay or when you're writing dialogues, do you have any particular actors in mind, male or female? No, sir, we don't. And actually, that's a good thing. When we were writing Harshad Mehta, Pratik Gandhi wasn't zeroed down on. Harshad Mehta's physicality was very different from Pratik's. And I'm sure, you've seen, so you know. But we were not told about it, and that helped because then, at some level, the writing process takes a backseat, and you start thinking about the character. You start, especially when I'm writing dialogues, I start talking like that, that character. मैं बहुत गंदी भद्दी सी मिमिक्री करता हूँ, लेकिन करता हूँ मेरे in my head कि मैं अमिताभ बच्चन का लिख रहा हूँ तो उनकी आवाज़ में लिखूंगा, तो वो होता है तो ज़्यादा अच्छा ही रहता है कि हम एक्टर बगैर सोचे लिखें. It just makes our task easier, sir. No, but at times it does happen that you're told that this actor has agreed to play this character and he'll have to write for the character, and that becomes a problem. Like there's a show which I was writing and we were told that, like, let's say Amitabh Bachchan is going to play this role, hypothetically speaking, and we all create the character according to him, and then somehow he didn't have the time to do it. Someone else did it, for example. And then you start thinking, oh, this did not work out the way you thought. But again, I mean, these are the pros and cons of the process. At times it can work also. At times, some of the more, let's say, commercial professional actors, when you say, for example, this is the way, let's say, hypothetically, Govinda would speak, for example, what kind of rights to probably write to feed him correctly. So, I mean, it's a combination process, but as Vitu says, it's better if you don't know. Or you can write authentically. That's what problematic हो. सर एक बार मुझे बताया गया था एक डॉक्यूमेंट्री पे अनिल कपूर के लिखने के लिए, तो वो मैंने बिल्कुल लखन वखन का रेफरेंस देते हुए मैं यूं डांस भी कर रहा था लिखते वक्त, और फाइनली जब लिख फिक दिया तो उन्होंने कहा अनिल कपूर नहीं मिला, उसको हेमा मालिनी पढ़ रही है, So it completely bossed things up for me. I had to rewrite, this entire thing. So as a dialogue writer, I would prefer if I'm not told who the actor is, because it थोड़ा bias भी आ जाता है, और फिर आप ज़्यादा ही, उनके तरीके से ही लिखने लगते हो. Also, another thing is, we as writers are trying to make the broader industry less actor specific, because we think there is too much of attention to the actors, and actors hog all the limelight 90% of times. Okay, and this is something I just want to talk about also. So it is better that we don't think about actors and create authentic, organic characters, and then let it, whoever the best can play that's great. But writing as a process should not be subservient to actors, because then you are not being honest about your process. Do the kids have any question for Mr. Saurav and Vaibhav? पूछ लो जो भी सवाल है मन में पूछ लो, मैं जल्दी से आंसर कर देंगे. Any question with regards to writing, how to get started with the process? किसी को राइटर नहीं बनना यहाँ पे? शर्म आनी चाहिए तुम लोग को. यहाँ सारे राइटर्स ही हैं. The question is actually tough. Yeah. Chalo, thanks a lot. I think Harman Yes. is waiting. His session is next, so Yes. we'll call it quits. Thank you. You've been Yes. a fantastic Thank you, Saurav, audience. and You've been thank a you, great Vaibhav, audience. for Thank you this so lovely much. chat. Thank you ever so much. We would request you to be on stage for a couple of more moments. I'm extremely thankful to the panelists. All three of you were absolutely amazing. We truly mean it. And thank you for coming to Dehradun and joining us today. And we have personally seen your work, and I think they're all masterpieces. Thank you. Hope to hear a lot of you all in future. And I would request founding member of Doon Cultural and Literary Society, Mr. Randhir Arora, to please come on stage and present a token of appreciation from us for our dear panelists here. Thank you so much to all of you. Thank you. Thank you so much. We can't wait for your next show. Really looking forward to it. Thank you. It was a pleasure. Absolute pleasure. Thank you so much. Yeah. All right, ladies and gentlemen, and all our dear youngsters here. Good evening. आप लोग लंच खाकर आए हुए हो, मुझे मालूम है.
it'll be really nice if you can give a nice wish back. So can we have a more energized good evening, please? Good evening, everyone. Thank you. See, that sounds better. And before we proceed, I would just like to say thank you so much. We are really happy कि आप सब यहाँ पर हो. And we have a very interesting lineup, okay? So I would say make the most of it and keep smiling like you all are doing right now. Thank you. I love the thumbs up. Thank you very much. And we really hope कि इतने eminent लोगों को सुन के आप में से भी writers, screenwriters, authors, producers or directors, enhance also do that. And good luck to all of you. And never, never, never let your creative instincts die, okay? Even as you go for corporate careers or everything else. So, moving on quickly, अभी कुछ time पहले हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा audio visual teaser देखा था. And all of you, most of you were here then. वो कौन सी series, कौन सी production का था? I look young, I'm old, कान खराब है. Thank you. Now I get that. Yes, and जब वो play हो रहा था, the energy was so pervasive. I could feel that everybody was like, on your edge. अभी पूरा देखने का मन कर रहा है types. And I am so happy to tell you that now we are getting an amazing opportunity उन लोगों को सुनने की, देखने की और समझने की और उसके बाद उनसे questions भी पूछने की अगर हमारे होंगे जो वो लोग हैं इस भौकाल amazing production के पीछे. So ladies and gentlemen and all my dear youngsters here, it gives me immense pleasure to introduce to you this session on, as you can see, you'll be able to see it very soon on Bhokal, and I would request our esteemed panelists to come on stage as I introduce them. So can I have Mr. Navneet Sikera, a very distinguished IPS officer. Thank you so much for joining us. Very happy to have you. आप तो खुद next time अपना character play करना with your awesome presence. So please come. Yeah, definitely. You're most welcome. Thank you. Cannot wait to invite Mr. Herman Baweja on stage. What a pleasure to have you. Thank you for coming. Pleasure. Welcome to Dehradun. Thank you very much. And the writer of the amazing production, Mr. Jai Sheela Bansal. Wow, cannot wait to get into your creative genius. Thank you so much, sir. See, मुझे जितना अच्छा लगता है ये production में उतना जोर की clap कर रही हूँ. So you guys do your bit now. Come on. Thank you. Thank you so much for joining us. हम बहुत excited आपको सुनने के लिए. And all you people, it takes a lot. Kavya, please come on stage. Thank you. Where have you been hiding? I am so honored to introduce and invite on stage my dear colleague, friend, who is very well known in Uttarakhand and beyond. Like we say, Uttar ka Puttar, that's what we call him. I'm sorry about my Punjabi accent. The famous RJ Kavya, as we all know him. Let's welcome him with a huge round of applause. All right. I know it has to be quick, but there's so much to be said about all of them. मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी इनके बारे में आपको बता पाऊँ. Mr. Navneet Sikera, a very distinguished IPS officer, currently Additional Director General of Police, Uttar Pradesh. Now, interestingly, Women Power Line 1090 helpline for women in distress. He's a big hand behind that initiative. That is fantastic. Thank you so much for doing that. We need things like that in our country. And हम वो जब on screen देखते हैं, the production we get like crazily excited about it. बहुत heroic है. But can you imagine? We are so blessed and so lucky. Actually हमारे साथ वो IPS officer बैठे हैं जिनकी heroic life से वो production inspired है. So it's amazing, and we are really looking forward to hearing your experiences. Next on, we have Mr. Herman Baweja. Again, one of those people who needs no introduction. A very eminent part of Bollywood that we love. His film, Love Story 2050, was also nominated for Filmfare, and 2014 animated film, Char Sahibzade. Of course, we remember that. That was a fantastic one. Thank you so much. And sir, we're really excited to hear you, genuinely. Thank you. Mr. Jai Sheela Bansal, like I said, he's the creative mind, he's the writer of Bhokal. What an amazing genius you would be to create something like that. And I think the way he's merged real life incidents with drama is absolutely fantastic. And Kavya, like I said, needs no introduction, but I cannot lose the opportunity. Kavya ने 15 साल पहले अपना career शुरू करा था
in radio, and in these 15 years इन्होंने इंडिया के सबसे prominent media houses में work किया है, and I think it was a blessing for उत्तराखंड जब काव्या ने decide किया कि वो पूरे इंडिया में उत्तराखंड में आ जाएं. We are so blessed to have you, genuinely काव्या. And हम सबको पता है, सब लोग इनका प्रोग्राम सुनते हैं. We used to listen to it on Red FM, and अभी काव्या ने, as we know, कुछ साल पहले अपना digital radio station start kiya. We know it. It's Oho Radio. Thank you so much. We love listening to it. You make our travel so much better. And the one thing I would like to share about him before I let the session begin is that it's very interesting कि काव्या ने एक high profile national entertainment and all of that के ऊपर प्रेफर करा उत्तराखंड पहाड़ और अपने कल्चर को प्रमोट करना. ये ही इज अ फ्रेंड, सो आई नो ये इनकी इंस्पिरेशन थी ओहो रेडियो के लिए. सो आई थिंक वहाँ कहीं ना कहीं हम सबके लिए भी लेसन है. लेट्स ट्राई टू डू समथिंग फॉर आवर ओन लैंड एज वेल, राइट, एज वी रीच फॉर द स्काईज. थैंक यू काव्या. थैंक यू इतना बढ़िया बोलने के लिए. हाँ, थैंक यू. तो क्योंकि भौकाल का जिक्र हो रहा है और हमारे सामने फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड अनिल कुमार रतूड़ी सर, जिनकी मूंछों की आज भी यहाँ दाद दी जाती है कि भाई ये भी जो है पहाड़ी प्रदेश में उन्होंने भौकाल मचाया है. तो सर मैं, क्योंकि हम लोगों ने हालांकि ट्रेलर पहले देखा था लेकिन कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, आपकी परमिशन के साथ में एक बार फिर से हम चाहते हैं कि सभी लोगों के लिए वो ट्रेलर दिखाया जाए और उसके बाद फिर हम यहाँ भौकाल मचाएंगे अगले 30-40 मिनटों के लिए. सर जी, आपका प्रमोशन हुआ है या डिमोशन जो मुजफ्फरनगर मिला? यहाँ पे सिर्फ 2 गैंग से राज चलता है पूरब में, मोहम्मद शकीन खान का और पश्चिम में चिंटू डेढ़ा और पिंटू डेढ़ा. मेरे बेटे को बचा रहा. शॉकिंग गैंग का काम है सर, लोगों को अगवा करके फिरौती मांगता है और नहीं देते ना उन्हीं के खेत में उनकी लाशें गाड़ देता है. शॉकिंग से मिलने का वक्त आ गया है. आइए कप्तान साहब. मैंने त्यागी कहाँ है? लगता है कोई पहली बार मर्द आया यहाँ मुजफ्फरनगर में. तो ये भी अच्छा है कि तुम्हें तो पता चल गया कि तुम मर्द नहीं हो. अब आ गया है वक्त बलि का. अभी भी वक्त है, समझा दे. इसकी तरह सर पिला आया है कोई. अब दोनों में से एक ही रहेगा, या तो शौकीन या सिखेरा. एक मर्द की मौत दे मुझे. तेरी मौत ही पकौड़े की बात होगी. मुझे शौकीन के वारिस को उसका हुसैनपुर वापस देना है. डरा के ना डरा मुजफ्फरनगर. और सबसे पहले डेढ़ों की कमर तोड़नी होगी. इस्लाम तभी अपने दिल से बाहर निकलेगा. वो दोनों भाई दरिंदे हो गए, आपको रोकना पड़ेगा राणा साहब. आग बुझाने का मजा तभी आता है जब आग लगी होती है. आग बुझाई नहीं जाती है, उड़ाई जाती है. टवर को गोली मार दी गई है और तिवारी जी का अपहरण कर लिया गया. ये सब मुजफ्फरनगर में नहीं चलने देंगे. सर आप यहाँ करने आए हैं, बढ़ाने आए हैं? नेहा जी, रिजल्ट एग्जाम के बाद डिक्लेयर होता है, एग्जाम के बीच में नहीं. थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा. सबको इकट्ठा करो. आज मुजफ्फरनगर का भौकाल खत्म कर देते हैं. अगर हम में से किसी से गोली ना चले तो वो खुद को गोली मार लेगा. बेटा भाइयों की आखिरी रात होगी. नए हथियारों के साथ न चाहिए मुजफ्फरनगर में भौकाल. गोलियां मत गिनना आज कोई भी. आप लोगों को जो करना है करिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए. अब मुजफ्फरनगर में ऐसा ही होगा. जबरदस्त. लास्ट में आपने देखा 550 मिलियन प्लस व्यूज. ओह क्या बात है. तो तैयार हैं भौकाल मचाने के लिए? हाँ, हाउस जोश. वहां से थम्स अप आ रहा है पापा की परी का. नहीं, ऑन इंस्टाग्राम. रियल लाइफ में तो पापा की शेरनी. हाँ, और पीछे बैठे हुए मम्मी के मगरमच्छ. तो चलिए शुरू करते हैं. सर, नवनीत सर आपके साथ ही शुरुआत कर रहे हैं. ये जो भौकाल मचा है 550 मिलियन प्लस का,
जब इसको देख रहे हैं इस फिगर को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कहानी है, आपकी पैदाइश से लेकर बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स को मिला के ये बनाई गई है, और जिस तरह से शोकेस हुई है, लोगों का प्यार मिल रहा है इस वक्त पे देहरादून में, ये पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल, दोनों को कैसे जोड़ते हैं? मैं बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि जब से सर आए हैं यहाँ पर, रतूरी सर, तो इनका भौकाल हमारे दिमाग में मचा हुआ है। ही वॉज माई ट्रेनर। जब हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे, सबसे पहले सर के दर्शन हुए थे वहाँ पे। 1 साल जो हमारा रगड़ा हुआ था, तो आज सर को देख के मेरी पल्स, जो हार्ट बीट है ना, कम से कम 50 एक्स्ट्रा चल रही है कि आज भौकाल तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं। तो रियल भौकाल सर। सर, इतना हिम्मत नहीं है कि आपके सामने हम बैठ के बोलें, तो सर आपका इतना आशीर्वाद था, इतना रगड़ के ट्रेनिंग दिया। और मैं जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई, बताना चाहता हूँ डिसिप्लिन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर वॉज सो स्ट्रिक्ट। हम लोग सच्ची में मन में हिम्मत, सामने तो हिम्मत नहीं थी, मन में खूब कर्ज करते थे, यार क्या, जिसे कहते ना, एकदम भयानक सा इंसान है, इसके मन में कोई हृदय ही नहीं है, इतना हमको रगड़ देता है, परेशान कर देता है, समथिंग। लेकिन वो क्यों? सेल्फलेस था। पूरी ट्रेनिंग के बच्चों को शाइन कराना था, फिट बनाना था। और इतना रगड़ा जो लगाया गया था वो इसलिए था कि जो जिस कच्ची मिट्टी थी हम लोग उस वक्त, उस मिट्टी में तो इतनी अच्छी शेप निकले कि वो शेप इस समाज को, इस देश को हमेशा तक कुछ देने के लिए प्रेरणा बने। वो सर आपने काम किया, और उसकी वजह से सर हम लोग आज तक पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं, हिम्मत से काम कर रहे हैं। और वो जो ट्रेनिंग है सर, वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है सर। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपकी दी हुई ट्रेनिंग हमारे साथ रहेगी सर। इसके लिए सर आज इससे बड़ा मंच नहीं है कि मैं आपको सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। और भौकाल की जो कहानी थी, मैं चाहूँगा कि हरमन उसको शुरू करे, क्योंकि इनफैक्ट मैं बताऊँ, मुझे जब मैं भौकाल देखता हूँ तो मैं उसको 10 मिनट देख के बंद कर देता हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता, बिकॉज मैंने उस जिंदगी को जिया है। तो मैं हमेशा से कहता था कि तुम्हारा मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तुम सुनाओ अपनी कहानी। तो आई वांट कि हरमन सुनाए उस कहानी। आप तक कैसे पहुंची ये स्टोरी सर की? Hello everyone, thank you for your patience. I hope you all like the AV. मैंने एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि आपने इससे पहले 1090 की बात कही, तो मैंने एक्चुअली कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था। मेरी मम्मी आगरा से हैं, तो मैं हूँ तो यूपी वाला एक तरीके से। तो वहाँ पे बैठे थे, अमर उजाला में एक आर्टिकल आया था कुछ 1090 के ऊपर, और मैं अपने मामा जी के साथ बैठा था, हम लोग नानी के घर बैठे हुए थे वीकेंड पे। तो मैंने पूछा, ये नवनीत से, सॉरी आई एम टेकिंग योर नेम दिस वे, इसे ये नवनीत से कह रहा कौन है? मैं जानता नहीं था इतना, जो बॉम्बे में बैठे हैं, वन डजंट नो मच। तो उनका बस ये इमीडिएट रिएक्शन था, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो कमाल का काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या काम कर रहे हैं? कहते 109 करे, तो मतलब बहुत काम कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा इंट्रीग्ड हुआ। अच्छा, छुट्टी पे हैं तो थोड़ा वक्त भी होता है, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। थैंक्स टू द इंटरनेट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार 1090 तो इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो तो टुवर्ड्स द लैटर हाफ। इससे पहले इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है जो बहुत एक्साइटिंग है। ऑब्वियसली हमारा जो माइंडसेट होता है, जब हम किसी भी कहानी को पढ़ते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, इट इज़ कैन वी मेक दिस इनटू समथिंग फॉर द वर्ल्ड टू सी, कैन इट बी अ फिल्म, कैन इट बी अ सीरीज। फिर मैंने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, आई रीच्ड आउट टू सर ऑन फेसबुक, क्योंकि मुझे ये था, हमेशा मुझे डर लगता है कि व्हेन यू रीच आउट टू अ वेरी सीनियर पर्सन, आप किसके थ्रू जा रहे हो ना, आपको पता नहीं उनका रिलेशनशिप उनके साथ क्या है। कितने लोग होते हैं बोलते हैं अरे मैं तो जानता हूँ उनको अच्छे से, पता चला कि ये उनकी क्लास लेने के मूड में है तो ये मेरी क्लास ले लेंगे। तो मैंने कहा इससे बेटर है रीच डायरेक्टली। तो मैंने फेसबुक पे मैसेज भेजा था कि हाय दिस इज़ हरमन, आई लाइक टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग समथिंग। तो मुझे याद है 2 दिन बाद मुझे मैसेज आया था सर का, हाउ डू आई नो दिस इज़ द रियल हरमन बवेजा। तो उस वक्त मैंने सोचा, मैंने कहा एटलीस्ट आई नो दिस इज़ द रियल नवनीत से कह रहा। क्योंकि ओनली अ पुलिस मैन विल थिंक लाइक दिस एंड से एक मिनट पहले मैं इसकी वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो फिर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि हाय दिस इज हरमन एंड आई लाइक टू स्पीक टू यू, मैंने फेसबुक पे भेज दिया। तो फिर तुरंत आई थिंक कुछ आधे घंटे बाद इनका फोन नंबर लिख दिया था, तो फ़ोन आ गया था, बोलो क्या काम है। तो मैंने कहा सर आपकी कहानी सुनी है, मुझे बहुत पसंद है। फिर हमारे जान पहचान के हैं आगरा में अरुण शर्मा जी, तो उनको बोला, वो भी जानते थे। एंड देन ऑफ कोर्स आई मेट सर मल्टीपल टाइम्स, एंड आई थिंक धीरे धीरे मैंने फिर वो टीम इकट्ठी की पूरी। ऑब्वियसली जय वाज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट टीम। देन आकाश मोहिमिन, आपको याद होगा, ही वाज द स्क्रीन प्ले राइटर। सो बिटवीन आकाश, माई सेल्फ एंड जय,
हम तीनों बैठ के लिखते थे, और फिर जतिन जिन्होंने डायरेक्ट किया। तो एक टीम बनानी पड़ती है, क्योंकि एक सीरीज़ में क्या होता है 10 एपिसोड होते हैं। अच्छा, और आप एक इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर की लाइफ से प्रेरित होकर एक चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी होती हैं। हमारा हमारा बस चले, हम तो हर चीज़ फिक्शन कर दें टू मेक इट मोर एक्साइटिंग, मोर ड्रामेटिक। एंड आई थिंक जब जब हम उस गली जाते थे, तब यहाँ से एक डंडा पड़ता था कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इसको ऐसे दिखाओ, इसको ये सही तरीके से करो। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम ऑल्सो, इन्होंने भी बहुत पेशेंस दिखाई हमारे साथ, काफ़ी डांटा भी है। तो आई इन अ वे लुक एट हिम एज एन एल्डर ब्रदर, सो आई यूज्ड टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम हिम। आई सेड ठीक है, आप बोलो जो बोल रहे हो, मेरे को बस सीरीज बनाने का फोकस है। बट आई थिंक इट्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द एंटायर पुलिस फोर्स। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ फिल्म मेकर आपके ऊपर, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ फिल्म मेकर, राइट, कि we are making a story which is inspired from Sir's life, but there are millions of other police officers in the police force. We can't make it on everyone, but he is a representation of everyone. तो वो सर का भी एक बहुत क्लियर मायना था कि किस तरीके से आप यूपी पुलिस को दिखा रहे हो, किस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मेंटेन करो। तो ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हुए सेट पे, जो मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। राइट, प्लीज। मैंने एक कंडीशन रखी थी हमन के सामने कि आप जो भी दिखाएं, किसी भी हालत में हमारी पुलिस के बारे में आप कुछ नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक फिल्म में आप देखें 99% पिक्चरों में पुलिस का मजाक उड़ते हुए दिखाया जाता है हमेशा। तो मैंने कहा कि हर जगह तो मजाक उड़ ही रहा है, कम से कम एक जगह तो आप वो सीरियस स्टेप दिखाओ, कितना हार्ड वर्क करती है पुलिस एक केस को वर्कआउट करने में, कितने कम रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। और उसके बाद जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो बात रियलिटी में जानी चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए कि हाँ ये लोग कितनी मुश्किलातों में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, और तो मैं एक बताना चाहता हूँ, हम लोग का काम बड़ा इमोशनल होता है, बहुत दर्द होता है उसमें, इतना दुख होता है उसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देख लेते हैं कि भाई किसी की हत्या हो गई, डेड, किसी को गोली मार दी, अभी वो तो एक घटना थी, लेकिन जब उसके पेरेंट्स, उसकी पत्नी, उसकी माँ आके बिलख के रोती है ना आपके सामने, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता है, मैं क्या जवाब दूं इस बात का। और हद तब हो जाती है कि एक भाई की हत्या हुई और 2 महीने के बाद दूसरे भाई की हत्या हो गई, और वो लोग आपकी आंखों में आंख डाल के पूछते हैं, सर आपको जिम्मेदारी दी थी हमारी रक्षा की, सुरक्षा की, आप क्या कर रहे हो? तो लानत सी लगने लगती है अपने ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। एक घटना हो गई, समझ में आता है, दूसरी क्यों हुई, दैट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ मी। और जब वो उनकी आंखों में आंसू बरसते हैं, आप किन शब्दों से उनको सांत्वना देंगे? बहुत मुश्किल काम होता है, इमोशनली इंसान टूट जाता है उसमें कि मैं कैसे करूं। अब आप ये भी नहीं है कि आप गन उठा के आप किसी को भी ट्रिगर हैप्पी होकर किसी को भी गोली चलाना शुरू, यू कांट डू दैट। हमको लीगल फ्रेमवर्क में रह के काम करना है। तो लीगल फ्रेमवर्क में रहकर इतना जो रियलिटी है उसको किस तरीके से फेस करना बहुत चैलेंज का काम होता है, और उसके लिए बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है, और इतना काम होता है हमारे पास कि हम एक काम करते हैं तब तक दूसरा, एक काम खत्म नहीं कर पाते तब तक दूसरा आता है, दूसरा ही खत्म नहीं करो तीसरा आ जाता है। मैं अभी हरमन से रास्ते में यही बात कर रहा था कि इन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर रिग्रेट बातचीत में, तो मैंने रिग्रेट इसको यही बताई कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका दोस्त भी अभी यहाँ पर है, ये ही इज साथ ही उनके पढ़ा है कॉलेज में, तो सर मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट ये थी कि सर उस दौरान जब वो ग्रो अप कर रहा था, मैं एसएसपी था, मैं उसको, मुझे एक भी पल याद नहीं है उसके साथ मैंने जो बिताया हो, क्योंकि बेचारा बड़ा हो गया, हम बस जुनून में लगे रहे। तो एक सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा ये था कि हमने ये किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर जब दिल से काम करते हैं तो वो अपना परिवार, अपने बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि इनका दुख, मेरा परिवार है उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, ये जो पब्लिक है इसका दुख मेरा दुख है, मैं पहले से हैंडल करूं, वो हमसे बड़ा हो जाता है। जबरदस्त। जय, आपके पास आ रहा हूं। जाहिर तौर पे हरमन के आने के बाद में आपकी एंट्री हुई होगी इस सीरीज को लेके। जब मालूम चला तो जैसा वो कह रहे हैं आगरा वाली लैंग्वेज में, वो यूपी में ऐसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया नहीं हुआ, बोलते अरे बहुत बढ़िया आदमी है यार। तो सर के बारे में जब मालूम चला तो लगा कि ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, कि चलिए एक रियल लाइफ कॉप हैं और कुछ कहानी गढ़ी जाएगी। रियलिटी के कितने क्लोज ले गए आप? आई थिंक आपको याद नहीं होगा, मैं इनको एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ, और मैं ये कहना भी चाहता था। मैं सर के पास एक दूसरी स्क्रिप्ट लेकर गया,
हम लोग का 10-15 दिन काम चला उसके ऊपर, और फिर मुझे सर ने बोला कि यार एक कहानी है और उसके 2-3 सीन लिखकर उन्होंने पूछा कि एक बात को हम बुरा तो नहीं मानेगा? तो आई सेड बुरा मान लो, कुछ कर पाऊंगा आपका? तो आई सेड नहीं। तो मैंने बोल दो फिर। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक कहानी है, उसके 2-3 सीन लिख के दिखा पहले। फिर मैंने सीन लिखे, सीन उनको पसंद आए, फिर मुझे बोला सर के बारे में पता करने के लिए, और इत्तेफाक से मैं उसी बेल्ट से था तो मुझे पता चला सर के बारे में। मैंने कहा यार थोड़ा सा तो खतरा है मिलने में, बताया गया जैसे भी लोगों से। फिर हमारे जो सीनियर थे आकाश, उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी, बताया सारी चीज़ों के बारे में। फिर हम काम करते रहे करते, फिर मैं जब पहली बार नवनीत सर से मिला, और बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई थी सर, और नवनीत सर की आंखें ऐसी है ना आपके अंदर तक झांकती तो आपको झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि यार झूठ बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि वो इस तरह से दिखते हैं ना। जय के जितने पुराने क्राइम थे ना, वो डर रहा था कि ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते कहीं पुराने क्राइम ना पकड़े जाए। तो फिर जुड़े, और मुश्किल कहाँ आती है ना, जैसे ट्रेलर में एक सीन, एक छोटा सा एक शॉट है कि जिसमें अपने जो हीरो हैं वो एक विलन को पॉइंट ब्लैंक पे मार रहे हैं। रियलिटी में तो नहीं हुआ है, पर आपको सिनेमा में दिखाना है क्योंकि वो सिनेमेटिक बहुत अच्छा लगता है, ऑडियंस को मजा आता है। तो इसमें कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो हमको दिखाने पड़ते हैं। लेकिन वो पहले दिन से एक डंडा था यूपी पुलिस का, जिसपे पहले से क्लियर था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की बुराई आप नहीं करेंगे। तो हम लोग बहुत क्लियर थे। मैंने बोल दिया था कि समझ लो तुम यूपी पुलिस से बना रहे हो, अगर हमें पसंद नहीं आया तो फिर हम उत्तर प्रदेश पुलिस हैं। और एक और बहुत कमाल का इंसिडेंट था जो बौकाल 2 के दौरान हुआ, अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो हमने हमारे हीरो का एक जर्नलिस्ट है उनके साथ थोड़ा सा टाका भिड़ाने की कोशिश की कि थोड़ा सा रोमांस आए शो में, अच्छा लगे तो वो इन्हीं का आइडिया था एक्चुअली। हाँ, जर्नली तो वो मेल कैरेक्टर थे, तो हरमन सर ने बोला कि नहीं इसको फीमेल कर देते हैं, थोड़ा सा रोमांस आएगा, थोड़ा सा सीरीज गर्म लगेगी। चलो ओके, चलो लिख देते हैं। वो किया, सीरीज चल गई सब कुछ। सीजन 2 के लिए मैं सर के घर पे गया, तो पहले तो चाय आती है और फिर उसके बाद गालियों की बौछार। मैम इत्तेफाक से वहीं थी, मैम ने पहले क्लास लगाई कि वो लड़की कौन है तो फिर हमने मैम से कहा कि देखिए इस तरह का किरदार नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा कि वो लड़की कौन थी। मैंने कहा कि मुझे तो मिली नहीं, 1.5 साल तो मैं रहा मुजफ्फरनगर में, इसने बनाई है, इससे पूछो। तो हरमन, ये खुद की भावनाएं इनके जरिए निकल रही थी? नहीं नहीं, ये मेरी भावनाएं निकल चुकी हैं, बट आई थिंक एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो सर इससे पहले कह रहे थे ना, आई बी ऑनेस्ट, मेरा आई थिंक बिसाइड सर, मैं शायद ही किसी पुलिस इंस्पेक्टर से या एनीबडी फ्रॉम द पुलिस फोर्स से मैंने शायद हेलो हाई से ऊपर बात ही की हो। एंड एक पर्सपेक्टिव होता है, एंड आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो। एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप पुलिस को, जो ज़्यादातर लोग पर्दे पर देखते हैं, हम उन्हीं को उसी तरीके से सोचते हैं कि ऐसी ही होगी पुलिस। एंड व्हेन आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद हिम, एंड बिकॉज हम मुजफ्फरनगर गए, जय, माई सेल्फ, द डायरेक्टर, हमने वहाँ पे 7 दिन बिताए। अलग अलग सर ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में हमें भेजा, मतलब ऐसे नहीं, मैंने सर कहा कि आप जाके देखो, बॉम्बे में बैठ के आप जो इंटरनेट पे आप क्रिएटिविटी करते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। सो आई मेड इट अ पॉइंट कि आप पहले जाओ, रहो, पुलिस के साथ जाओ, उसकी जो जीप होती है उसमें पीछे बैठ के जाओ, देखो समझो। दबिश तो दबिश, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग दबिश जानते होंगे, बट बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। तो एनीबडी हु हैज़ एन अरेस्ट वारंट और एनीबडी हु इज ऑन द लुकआउट, तो पुलिस एक्चुअली उनको जाके अरेस्ट करती है। अभी सुनने में, हमने तो फिल्मों में बहुत बार देखा है, बट जब आप रियल लाइफ में एक्चुअली वहाँ खड़े होते हो और आप एक देखते हो कि एक आदमी है जिसका वारंट है और पुलिस उसको घेर के उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है और वो वहाँ से भागता है, और एक्चुअल फिजिकल चेज जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी, पुलिस वालों को वो पूरे इलाके को घेरते हुए और उसको पकड़ के फाइनली थाने लाए, फॉर मी इट वॉज अनबिलीवेबल, बिकॉज जो हम फिल्म में दिखाते हैं और जो एक्चुअली रियल में होता है बहुत फ़र्क होता है। फिर जैसे जैसे मैं ओवर एंड अबव दिस इंस्टेंस, जैसे मैं सर के साथ और टाइम स्पेंड किया, यू रियलाइज कि एक इट्स नॉट जस्ट द एक्शन, इट्स नॉट जस्ट गन फायर, इट्स नॉट जस्ट एन एनकाउंटर, एक अलग जिंदगी है। जैसे कि वो अपनी सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे थे, एक इमोशन है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इट फील्स
उसी इमोशन में, वेदर इट्स विद फैमिली फ्रेंड्स, उसी इमोशंस के लगते लगते एक फीमेल जर्नलिस्ट, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी नोक-झोंक, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, वो लाइफ में भी चलता है। तो वो सर ने मुझे पहले वार्न कर दिया था कि यू नो इफ हिज वाइफ इज नॉट हैप्पी विद इट देन आई विल हैव टू बेयर द ब्रंट। बट मैं बच गया कि उस दिन जय वहाँ पे था, तो चाहे उसके ऊपर फेंकी गई ना कि मेरे ऊपर। पर अब हमने उनको फिर शो के एंड तक ऑलमोस्ट राखी बंधवा दी, ताकि वो हम चैप्टर ही क्लोज कर दें। सर भी अपने घर सेफ, हम भी सेफ। नवनीत सर, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जैसा कि आपने कहा गुरुजी यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में, डीजीपी अशोक कुमार सर, वो भी आईआईटी, और उसके बाद और वहाँ फॉर्मर डीजीपी हमारे लाल सर भी बैठे हुए हैं। एक सुबह सेशन हुआ था जिसमें ये जिक्र आया कि जब पुलिस की नाकामयाबी होती है, कभी असफलता होती है, तो वो फ्रंट पेज का हिस्सा हो जाती है, और जब पुलिस बहुत मेहनत से कुछ पकड़ती है तो वो 7वें 8वें पेज में कहीं छोटा सा आ जाता है। इसको लेके आप कैसे, क्योंकि आपकी कॉन्वर्सेशन में बार बार ये आ रहा है कि भाई हम अच्छा काम भी करते हैं और इसको इस तरह से दिखाना इंपॉर्टेंट है, प्लीज। मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैं आम, चूंकि सेशन छोटा है इसलिए हम लोग इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे इसको बहुत ज़्यादा। अगर हम फिल्मों की बात करें तो हमें फ्लॉप मूवीज़ याद नहीं रहती, हमें हमेशा हिट मूवी याद रहती है। अगर हम डिस्कशन करें और वो बड़ी हिट मूवी थी, हमें हमेशा हिट मूवी याद रहती है। जो फ्लॉप मूवीज होती है उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन पुलिस के साथ ऐसा नहीं होता। हमारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, उन्होंने इस बात को वार्न किया कि नेवर बी अ पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी। जिंदगी में एक छोटी सी भी कंट्रोवर्सी अगर हम लोगों के साथ हो जाए, हमारे 100 अच्छे काम हो, हमको उन 100 अच्छे काम में से किसी एक काम के लिए भी याद नहीं किया जाता, हमें उस कंट्रोवर्सी के लिए याद किया जाता। अच्छा वो वाला, यानी उस कंट्रोवर्सी हमारा ना एक रिप्लिका बन जाती है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, जैसे पुलिस लेट पहुंच रही है, हम लोग कहते हैं पुलिस तो लेट आएगी। अब आप पलट के देखो, 24 करोड़ की पॉपुलेशन में हम लोग 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है। कितनी गाड़ियां हैं हमारे पास, कैसे हम पहुंचे, इस पर अगर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग वाकई में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हो नहीं सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो हमारे एसएचओ होते हैं, जो हमारे कांस्टेबलरी होती है, वो 18 घंटे काम करते हैं। 365 दिन में से उसको एक भी दिन का ऑफ नहीं होता है। उसको जब ऑफ होना होता है तो उसको छुट्टी लेनी पड़ती है। मीनिंग भाई, जो हमारे, हम लोग डरते हैं कि सैटरडे संडे फ्री होना चाहिए, हमारा पुलिस वालों का सैटरडे संडे फ्री नहीं होता। हमारे पास 24 घंटे में हम लोग ये नहीं कह सकते कभी भी कि सर अभी हम 12 घंटे काम करके आए हैं, नहीं कह सकते। और ये ट्रेनिंग हमारी दी गई है। आज भी रात को अगर 2 बजे फोन आ जाए कि फटाफट यूनिफॉर्म डालो, सड़क पे पहुंचो, तो मैं पहुंचूंगा। मैं किसी को कमांड करूंगा, वो पहुंचेगा। मुझे पक्का यकीन है पुलिस के, चाहे कितने भी बेकार से बेकार, जिसको कहते हैं ना, जिसको हम लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं अपने पुलिसमैन को, जो खराब हैं, मैं गारंटी देता हूं, और मेरे जो सीनियर सर है वो भी अप्रूव करेंगे, वो भी सर टाइम से 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाएगा। तो ये हम लोग के अंदर ये डिसिप्लिन होता है। कितना बोझा उठाते हैं ये हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स जिनका काम पोस्टमार्टम करना है, वो डेड बॉडी को छूना तक पसंद नहीं करते, छूना तक पसंद नहीं करते। हम लोग उसको उठा के लाते हैं। रतूड़ी सर को तो याद होगा सर, एक डेड बॉडी में आप गए थे सर, उसमें इतना स्टेंस था कि डॉक्टर्स ने अंदर जाने से मना कर दिया। और मैंने देखा कि सर अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हैंकी नहीं था। फटाफट हम लोगों ने बाहर से हैंकी मंगवाए। एक हैंकी से काम नहीं चला, 2-2 हैंकी मुंह पर ऐसे रख के सर अंदर घुसे। हम लोग भी इतनी तेजी से अंदर घुसे और 1 मिनट नहीं टिक पाए, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही थी। स्टेंच वाज सो बैड, बट दिस इज द पार्ट ऑफ अवर जॉब। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये हम नहीं करेंगे। जो काम कोई नहीं करेगा, जब सारे डिपार्टमेंट मना कर देते हैं, वो काम फिर हम करते हैं। वी आर पुलिस, वी आर उत्तर प्रदेश पुलिस, वी आर उत्तराखंड पुलिस। ग्रेट। हरमन, आपके पास आ रहा हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारे लोग इन सेशंस को देख रहे हैं। ओटीटी का जो ये गेम है, मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, कई बार जब इस तरह की स्टोरीज होती हैं कि रियल लाइफ को लेके और पूरे एक लंबे स्पैन की चीज़ों को दिखाना होता है, तो 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। और थिएटर क्योंकि हिंदुस्तान में लिमिटेड है, तो ये जो ओटीटी ने मोबाइल पे एक वो जो पावर दे दिया, जहां हम काउंट करके बता सकते हैं कि जी 55 करोड़ लोगों ने इसको देख लिया है, इस पावर को स्टोरी टेलिंग के नजरिए से आप कैसे देखते हैं? आई थिंक एक बहुत पावरफुल मीडियम है। यू नो व्हेन इट कम्स टू ओटीटी, 2 चीज़ें। एक तो एक यू आर वॉचिंग इट जब आपके पास वक्त है। फिल्म का एक डेजिग्नेटेड टाइम होता है, आप थिएटर जाना है, 3 से 6 का शो है, दिस इज एट योर टाइम,
एट द सेम टाइम द बिगर चैलेंज इज कि वो मोबाइल फ़ोन पे जब आप भोकाल देख रहे हैं, मैं भोकाल की बात करना चाहूँगा, जब आप भोकाल देख रहे हैं तो ऊपर टिंग टिंग करके 4 व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, 6 फॉरवर्ड्स आए हैं, 2 इंस्टाग्राम रील्स आई हैं, एंड एज अ फिल्म मेकर यू हैव टू मेक श्योर इट इज़ सो एंटरटेनिंग कि आप अभी भी उस शो को देख रहे हैं, ना कि उससे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. So the attention span, the average attention span of the consumer has dropped dramatically. In fact, we were discussing this in the afternoon today. कि वो सर बता रहे थे कि यार हर चीज़ मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत फास्ट हो गई है, इवन इन कंटेंट. अच्छा, द चैलेंज इज दिस कि मैं आपको हल्का सा भी ड्रॉप दूंगा, आप वो छोड़ के वो मैसेज में चले जाओगे, फिर रील में चले जाओगे, और एक बार आप रील्स में घुस गए तो फिर आप सब जानते हो वो आधे घंटे बाद ही निकल के बाहर आओगे, फिर सडनली देखो ये क्या हो गया. सो आई थिंक द चैलेंज इज दैट एट द सेम टाइम इट इज़ एक्चुअली वेरी एम्पावरिंग टू अस. क्योंकि वो जो कहानियाँ आप एक फिल्म में कहते हैं, फिल्म आजकल 3 घंटे की तो शायद ही बहुत ही कम बनती है, मोस्टली 2 hours 15, 2 hours 20. उसमें आपके पास होते ही 50-60 सीन्स हैं. बट जब आप एक वेब शो बनाते हो, जैसे हमने भोकाल किया, 20 एपिसोड है इनटू 30-35 मिनट्स, सो यू गॉट ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 मिनट्स. तो आपके पास 6, 6.5, 7 घंटे का कंटेंट है, कभी कभी 10 घंटे का हो गया. उसमें यू कैन एक्सप्लोर वेरी वेरी डिफरेंट न्यूआंसेस. जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्रोटोकॉल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हायरार्की, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग फैमिली, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग पर्सनल इमोशंस एंड चैलेंजेस, जो आप एक वेब सीरीज में बहुत डिटेल तरीके के साथ कैरेक्टर्स के साथ खेल सकते हो, जो फिल्म में एक्चुअली मौका इतना नहीं मिलता है. इट्स अ डिफरेंट मीडियम. इट्स लाइक T20 वर्सेस ODI, if you know what I'm saying. Yeah, it's a different, it's the same thing, but it's very very different. It's a different skill set. आपके पास आ रहा हूं एक राइटर की नजर से. बहुत अच्छा हरमन ने बोला कि T20 और ODI वाली जो बात थी, T20 का फॉर्मेट आया तो हम क्षेत्रों से टीम्स आने लगे, नए नए खिलाड़ियों को मौका मिल गया. कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं इस OTT को, कि जहां पे पहले फिल्मों में आमतौर पे दिल्ली बम्बईया फिल्में दिखती थी और कॉप भी जो है वो मराठी ज्यादा होता था, क्योंकि बम्बई वाले जो है महाराष्ट्र, उस वजह से. अब यूपी के कॉप्स की, उत्तराखंड के कॉप्स की, या बाकी जो हार्टलैंड है जहां से आप हम जैसे लोग आते हैं, वो कहानियों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है. कैसे देखते हैं? देखिए, OTT के आने से ना मुझे लगता है गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी में उतनी अच्छी पकड़ होती नहीं है. और बॉम्बे में अगर आप फिल्मों में 10-15 साल पहले की सोचेंगे तो फिल्में इतनी नहीं बनती थी जितनी OTTs पर आज बन रही है. मेरे ख्याल से हर हफ्ते एक ना एक वेब शो लॉन्च हो ही रहा है, तो उसमें एक्टरों को बहुत मौका मिल रहा है. लोकल, हम अगर उत्तराखंड में या देहरादून में आके शूट करेंगे, यहाँ के लोकल एक्टर्स को बहुत फ़ायदा होता है. लखनऊ जाके शूट करते हैं, वहाँ के लोकल एक्टर्स को फ़ायदा होता है. तो OTT के आने से लोकल्स को बहुत फ़ायदा हो गया. तो अब आपको बॉम्बे में रह के संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है. अब आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि OTT है. जूम कॉल के माध्यम से आप किसी को अपनी कहानी सुना सकते हैं, ईमेल के जरिए भेज सकते हैं. तो ये सब चीज़ें अब आपको पर्टिकुलरली बॉम्बे में रहने की आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों की वजह से. बिल्कुल. तो चलिए, पिछले 25 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं और आगे हरमन की फ्लाइट भी है. मैं चाह रहा हूं कि क्विकली आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, सवालात हो, तो आप लोग हाथ खड़े कीजिए और आपके पास पहुंच रहे हैं हम. अच्छे सवाल जी, प्लीज. पीछे येलो, या हेलो सर, गुड इवनिंग. हरमन जी, मैंने देखा कि आपका अभी बर्थडे आने वाला है 13 को, 13 ऑफ राइट जी. हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. और सर, अनिल जी जो एक्स DGP हैं, उनके रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ, मतलब वैसे तो एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन, बट वैसे बहुत ही डाउन टू अर्थ. और राधा रतूरी मैम, वो भी बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और उन्होंने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करा है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल ना हिचकिचाएं. ही इज़ अ वेरी गुड काइंड हार्टेड पर्सन. हाँ, एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग में जरूर डिसिप्लिन है, पर ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं है. ये मैं कहना चाहूँगा. मतलब थैंक यू. ये बात बहुत अच्छे से पता है. और एक्सरसाइज ट्रेनिंग का इम्पैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट 27 इयर्स की सर्विस के बाद भी अभी भी सर, अगर आप हुक्म करें तो 50 पुशअप अभी मार सकता हूँ मैं. इट्स योर ट्रेनिंग सर. थैंक यू सर. एक्चुअली प्लीज, मैं डिसिप्लिन के बारे एक छोटा सा जो शेयर अ स्मॉल एनेक्डोट. आप बैठ जाइए आराम से. हाँ, हम लोग जब एक्चुअली शूटिंग कर रहे थे भोपाल के, आई रिमेंबर, मैं पुलिस स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम लोग एक रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे. तो वहाँ के जो SHO साहब थे, ही वॉज ट्रेनिंग आवर एक्टर्स टू सल्यूट.
कट टू उसके कुछ आधे घंटे बाद सर वाज हैपन टू बी इन लखनऊ, हम लोग लखनऊ के बाहर शूटिंग कर रहे थे, तो रात का वक्त था, तो इसे चलो मैं अपना काम वाम खत्म करके मैं आ जाऊंगा। तो जैसे ही सर का कॉन्वॉय आया तो एसएचओ साहब सडनली घबरा गया, उनको हमने बताया ही नहीं था कि वी आर बेस्ड ऑन नवनीत सिकेरा, तो वो सडनली घबरा गया कि सिकेरा साहब क्यों आ रहे हैं। तो पहले तो वो नर्वस होना शुरू हो गया कि ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं। तो मैंने कहा रिलैक्स कर, मुझे मिलने आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, उन्हीं के ऊपर है। कट्टू वहाँ पे आए तो वो वहाँ साइड में ट्रेनिंग दे रहे थे हमारे एक्टर्स को कि वो प्रॉपर सल्यूट करें, ना कि जो फिल्मी वाला सल्यूट है। इतने में सर ने आके देख लिया, तो वो हमारे सारे एक्टर्स को ट्रेनिंग देते थे सर कि प्रॉपर सल्यूट करो बिकॉज दैट्स द राइट प्रोटोकॉल। इतने में जो ऐसे जो सर थे वो खड़े थे, उन्होंने बोला एक काम करो यार, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे हरमन से बात करनी है, तुम जरा सल्यूट करके दिखाओ। तो वो जो ऐसे जो थे उन्होंने सल्यूट मारा थोड़ा नर्वस होके, तो सल्यूट उनका हुआ गलत। और फिर उसके बाद जो मजे हमें आए क्योंकि हमारे एक्टर बैठ के तो साइड में बैठ गए, इन्होंने जो ऐसे जो के पीछे पड़ गए, तुम्हें सल्यूट नहीं आता, पहले उनको सिखाया, फिर उनको बोला आधा घंटा तुम प्रैक्टिस करके आओ, तुम भूल गए हो, तुम्हें 20 साल हो गए। तो एक तरफ एक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे, दूसरी तरफ ऐसे जो और सब नॉन स्टॉप। सो या अब तो सल्यूट की जगह बाय हो गया है। सर बिल्कुल सर, आपने यही जो अभी आपने करके दिखाया एग्जैक्टली हमारे सचिव साहब यही कर रहे थे, तो उनको मैंने टोका। और उसके बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि उस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा सल्यूट जो इसके एक्टर्स भी नहीं कर पाए, हरमन ने सीखा करना। और आई कैन बेट ऑन इट कि ये बहुत बढ़िया सल्यूट करना सीख गया। एक बार एक मार दीजिए ना। देयर आर टू मेनी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आई एम नॉट टेकिंग अ चांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, वो mic हाथ में. Sorry. Please. And Navneet, it's an observation of the last bit and come observation of the first one later. You said postmortem house में doctors नहीं जाते हैं and police वाले जाते हैं and doctors हाथ नहीं लगाते हैं, which to a large extent is true. I'm a doctor and I've done autopsies for 20 odd years, 21, right? So I have been into the postmortem houses number of times. It's a fact. Doctors do not touch the body. It's a fact that the sweeper does the opening of the body all across the country, except in the medical colleges where the Department of Jurisprudence, the professor, assistant professor, lecturers, they do it. Otherwise, it is not done by anybody but by the sweepers. It's a mutilating experience what is done in the postmortem house. That is a fact. Admit, second you. मैं चाहूंगा पूरे हाउस से कि सर ने इतनी साफ गोई से इस बात को एक्सेप्ट करा और माना कि नहीं करते हैं हम लोग। एक बार सर जोर से ताली बजाना चाहेंगे सर। इट्स अ फैक्ट सर, आपने इसको एक्सेप्ट करा सर। थैंक यू सर। Anil Saab and I come from the same school. So that's how we can speak like that. Call a spade and let the devil take the hindmost. Thank you. Thank you. And the second thing you said, आपने इनसे कहा कि यूपी पुलिस के बारे में कोई गलत चीज मत दिखाना। There is a crime serial which comes on the mob on the YouTube. It's by Michael Francisci. And they asked him कि was the mob involved with the Hollywood? He said no, the mob was not involved with the Hollywood, but mob was involved to the extent that you are making a movie on the mafia. What I have done you show, but don't show something which I have not done. So to that extent, the mob was involved. So it was the other way around. What you told them, don't show anything which the police has not done. The mob was telling them, you show what we have done, but don't show what we have not done. Thank you. Thank you, sir. Next question, please. जी. Hello, sir. Sir, my question is to Navneet Sigera, sir. Sir, आपका पुलिसिंग में आने की क्या स्टोरी है, सर? आप भोकाल देखिए, उसमें आपको मिलेगा स्टोरी क्या थी। ठीक है सर। नेक्स्ट। हेलो हरमन सर। हेलो भाई। मेरा सवाल विकी कारतूस से है और मेरी फेवरेट फिल्म है डिस्किया हूँ और काफ़ी टाइम बाद देखी है, 30+ बार देखी है और डिस्किया फिल्म मतलब बहुत बेस्ट फिल्म है मेरे हिसाब से। और सवाल मेरा ये है कि आपने लव स्टोरी 2050 करी थी, मैंने वो भी देखी है, तो उसमें जो लाइक VFX जो SFX थे, जो एक वो एनिमेशन था लाइक हवा में आप गाड़ी कार चला रहे हैं, और उसके बाद सीधा आपने वो डिस्काउंट फिल्म करी थी पूरी गन एंड गैंगस्टर की, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताना चाहें। अभी मैंने हालांकि थैंक यू फर्स्टली फॉर वाचिंग इट 30 बार, शायद मैंने ही नहीं देखी इतनी बार, बट द लास्ट थिंग आई डिड वाज आई इनैक्टेड द रोल ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन अ नेटफ्लिक्स शो कॉल्ड स्कूप। तो आई थिंक मैंने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया फ्रॉम बीइंग अ गैंगस्टर टू गोइंग द राइट वे एंड बिकमिंग अ पुलिस ऑफिसर।
बट आई थिंक एज एन एक्टर हमारा काम ही होता है, राइट, टू कॉन्स्टेंटली बिकम डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड प्ले देम आउट. सो आई थिंक वन रियली एंजॉयज. एंड सर मैंने अभी रिसेंटली स्कूप भी देखी थी मैंने हंसल सर की. तो उसमें जब मैंने आपको देखा था तो मैं सडनली मतलब मैं सोच रहा कहीं तो देखा है क्योंकि उसमें पूरा ही लुक चेंज था पूरा, मतलब आप हेल्थी थे. तो जब मैंने सर्च किया, हेल्दी बोल रहे हो आप, बड़े पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हो. नहीं सर, मोटा बोलना चाहते हो दिमाग में, लेकिन बोल हेल्दी रहे. नहीं सर, मतलब फेवरेट कैरेक्टर तो विक्की कारतूस ही है, और विक्की कारतूस इज ऑलवेज यस लाइफ. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नमस्ते सर, और मेरा नाम राजीव ठाकुर है और मेरा सवाल जय सर से है. जब हम ऐसे पिक्चर देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि जो उत्तर प्रदेश है उसका एक नेगेटिव इमेज लोगों के मन में जाता है और थोड़ा डर लगता है लोगों को कि यूपी में इस टाइप का जो क्राइम है लोग देखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब जो सच्चाई है वही दिखाते हैं, बल्कि डर से ज्यादा तो खुशी होनी चाहिए कि ये कॉप है जिसने डर को खत्म कर दिया है. डर था कभी 2001 में, तो एक कॉप वहां आते हैं उस पूरे डर को खत्म कर देते हैं. आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दैट. आई थिंक जस्ट टू ऐड टू दैट सर, यू नो ये सवाल मुझे काफ़ी बार लोग पूछते हैं कि हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, सीरीज बनाते हैं ऑन क्राइम. आई मीन दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस एंटायर लिट फेस्ट. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग वी कांट टर्न अ ब्लाइंड आई. हम लोग ये नहीं सोच सकते कि क्राइम है नहीं. सोसाइटी में क्राइम होता है ज़्यादातर. आई थिंक मेजॉरिटी पीपल आर गुड पीपल, देयर आर सम बैड पीपल, बट इवेंचुअली एज फिल्म मेकर्स अगर हमारा फाइनल मैसेज हमेशा ये रहा है, एटलीस्ट रहना चाहिए, एटलीस्ट मेरी कोशिश तो हमेशा ये रहेगी कि क्राइम नेवर पेज एंड इट इज़ अ गुड दैट विल विन ओवर ईवल. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ताकि अगर यू नो जो युवा है जो सोच रही है कि यार शायद अगर मैं क्राइम कर लूँ तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ, ज़्यादा पैसे कमा लूँ, जल्द अमीर हो जाऊँ, वो पता है कि उसका एंड रिजल्ट इज़ नेवर गोइंग टू बी गुड. And there's a very famous saying, all's well that ends well. And if it doesn't end well, then what is the point of your existence? So I think it's important to make shows which show crime lose. ओके, लास्ट एक दो क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा हो? जी आओ, इधर आओ, इधर आओ. कन्या, तुम लाइट में छुप जा रही हो. Hello, I wanted to ask question from Navneet sir. Since we all know कि ऐसे जैसे operations जैसे भोकाल में दिखाया है, उसके पीछे political pressure भी होता है. तो how did you dealt with that? बोले मेरी बॉडी देखी है तुमने? एक जो लर्निंग मैंने सर से सीखी, जो कि ना सिर्फ एकेडमी में मेरे ट्रेनर थे, बल्कि जब मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग था तो सर एसएसपी थे, तो मैंने सर को बड़े ध्यान से देखा कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, बिकॉज एएसपी एसएसपी के बहुत करीब रहते हैं. और सर की सिंपल हैंडलिंग ये थी, मुझे सही काम को सही तरीके से कर देना है, ये मेरा काम है. उसके बाद अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो वो ट्रांसफ़र कर देगा, किसी को पसंद आएगा तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता रहूँगा. लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा कि मैं इस काम को करूँ कि ना करूँ, करूँगा तो कौन क्या सोचेगा. सर का बड़ा साफ क्लियर कट था. अगर आप इस फेयर में घूम पड़ गए कि अगर मैं ये करूँगा तो ऊपर वाले क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, तो आप कभी भी सही काम नहीं कर पाएंगे और माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा. तो कन्फ्यूजन पैदा होगा तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो फिर ब्ला 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 जितना कुछ हो सकता है सब होता चला जाएगा. इसलिए एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जीने के लिए ज़रूरी ये है कि जो सच लगे अंतरात्मा को देख सामने रखकर अपने ईश्वर को साक्षी मानकर कि इसमें ये होना चाहिए, कर दीजिए. ईश्वर से बड़ा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उसके विधान पे छोड़ दीजिए. जबरदस्त. तो थैंक यू सो मच सर. जी एक बात मैं, जो यहाँ बच्चे आए हुए हैं बस उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है, वो आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे बहुत अच्छे से पढ़ो, वो जरूर करो. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 स्किल सेट आपको बहुत अच्छे से अपने अंदर इम्बाइव करने हैं. ये मैं जब बैठा था मैंने बच्चों को देखा तो मुझे लगा कि ये भोकाल की स्टोरी है, चलती रहेगी. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मैं जरूर करूंगा, और आपसे समय लिया है एक 30 सेकंड के लिए. नंबर 1, अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा करो. एंड सेकंड, राइटिंग स्किल. 2 स्किल सेट आपको बहुत अच्छे करने हैं, क्योंकि जब आप किसी के पास काम मांगने जाएंगे ना तो आप सामने खड़े होंगे, आप मुंह खोलेंगे, पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है. कई बार क्या होता है, आपको आता बहुत है, आप बोल नहीं पाते हैं. तो मैंने जो महसूस किया अपनी लाइफ में,
कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, दो ऐसे स्किल्स हैं जिस पे हर बच्चे को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। यही मेरी एक छोटी सलाह है। और जो यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं उनको मेरी एक सलाह है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 1090 वाला है जो मैंने विमेन पावर लाइन किया, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर हालत में जॉब करना है, आपको हर हालत में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये समझ लीजिए आप, ये वादा है बच्चियों का मेरे लिए, पक्का वादा है। जोर से बोलिए, हम हर हालत में जॉब करेंगे। आप बोलिएगा जॉब करेंगे, हम हर हालत में। नहीं नहीं, ये तो लड़कियों वाली आवाज है, मुझे शेरनी वाली आवाज सुननी है। हम हर हालत में, हम हर हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अनुपमा, थैंक यू सो मच। आई थिंक यहाँ पे जो तालियां इतनी बार हुई आपके सेशन के बीच में और अभी सबके फेसेस पे जो एनर्जी है उससे बिल्कुल पता चल रहा है कि कितना अमेजिंग सेशन था। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। और आप लोग आज एक वी से ना कि ये यूथ हमारा फ्यूचर है, एंड जेन्युइनली आज आप हमारे फ्यूचर को बहुत इंस्पायर और गाइड करके जा रहे हैं, एंड वी रियली वांट ऑल ऑफ यू टू कम बैक सून। सो कीप क्रिएटिंग गुड स्टफ, कीप डूइंग गुड वर्क, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंड आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर अनिल रतूरी, आपने बताया ही इज़ अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर, वी ऑल नो हिम, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तराखंड पुलिस। सर, कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्रेजेंट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू आवर पैनलिस्ट? थैंक यू। लाउड क्लैप फॉर ऑल द पैनलिस्ट एंड फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। डीजीपी सर, अशोक सर, थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है कि मैं अपने सर से जो है कुछ। That's a nice memory, I think. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इन्होंने कितना अच्छा सेशन किया। थैंक यू। Loudly, guys. They deserve a much louder clap. Thank you. Thank you, Harmanji. We love your work. Thank you so much, Jai ji. Shukriya. Let's give them a standing ovation. Come on, everybody. Let's stand up for them. They were so amazing. Harman ji, Navneet ji, Jai ji, here is a standing ovation to thank you with all our heart. Thank you, Kavya. You were, as usual, fantastic as the moderator. Thank you so much. Loved every bit of it. And thank you, our lovely people. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ पर हैं. Keep smiling like you're smiling right now. Thank you. This is for you guys. This is for you all. Pleasure. Yeah. Come back soon. Thank you. Bye. Take care. Thank you. Thank you so much. Super cool. Thank you. Thank you, Kavya. Loved it. दिख रहा है सब कितने ऑड है, लाइक सबकी नजरें वहीं पर है, एंड आई थिंक यू ऑल आर वेटिंग उनको ग्रैब करके, यू वांट योर पिक्चर्स एंड योर ऑटोग्राफ्स. आपको वो मौका भी मिलेगा. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी सीटेड. थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट्स. इज द एवी टीम रेडी विद द क्लिप? Louder, if you can have it louder. Let's give a huge round of applause to Mr. Pankaj and Mr. Kanaj. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, and yeah, once again, thank you to all the panelists. All right, so my dear friends, all the youngsters and the ladies and the gentlemen, हमें से कितने लोगों ने शर्लॉक होम्स का नाम सुना है, या तो मूवी देखी है या बुक, या पता है शर्लॉक होम्स? रेज योर हैंड अगर शर्लॉक होम्स कभी तो सुना है. एंड डू वी एग्री दैट वी लव द कैरेक्टर? यस और नो? लाउडली यस और नो? ग्रेट. सो आजकल की जो यंग जनरेशन है, मैं अभी स्पेशली यूथ से बात कर रही हूँ, मेरी एज वाले और मुझसे बड़े वालों को पता है व्हाट दिस इज अबाउट, बट जितने आप लोग शर्लॉक होम्स के फैन हैं उतने, सर प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू.
Thank you. What an honor to have you, sir. Please आइए. Shukriya, sir. Please come. Mr. Jalaj, can you please join us on stage? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. A huge round of applause. So, my dear friends, it is an absolute honor, like genuinely it is an honor today to be sharing the stage with the creator of India's first Sherlock Holmes. And ऐसा Sherlock Holmes जो आज तक हम लोगों के जहन में है. I am so honored to introduce Mr. Parashar, the producer of the iconic cult television series Karamchand the Detective, जिसका title track हमने अभी सुना कुछ second पहले. And interviewing him, moderating the talk is a civil servant जिनका अगर आप career graph देखेंगे तो लगेगा कोई thriller novel पढ़ रहे हैं, उसमें इतनी variety है और इतने interesting assignments हैं. Mr. Jalaj, it is such a pleasure to have you here with us. I know time कम है, but like करमचंद was such an iconic series कि इसके बारे में इतना कुछ है शेयर करने के लिए, but मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं quickly बताऊँ. So बहुत लोगों ने यहाँ देखा है और आप में से बहुत लोग जो 90 और 90 के बाद बॉर्न हुए हो 2000 वाले, उन्होंने शायद नहीं देखा हो, बट आई वुड लव टू टेल यू अबाउट इट. इंडियन टेलीविजन, केबल टीवी नहीं था, दूरदर्शन, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेलीविजन. 1985 में एक सीरीज स्टार्ट हुई विच टुक द कंट्री बाय स्टॉर्म. लिटरली इट वाज लाइक सब काम छोड़ दो क्योंकि करमचंद देखना है. मिस्टर पंकज कपूर का वो आइकॉनिक कैरेक्टर, इट वाज one of the best detective series that India has seen. और करमचंद में कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है वो गाजर खाता रहता था. एंड आई रिमेंबर बचपन से आई हैव हर्ड इट कि गाजर खाएगी ना तो करमचंद जैसा दिमाग हो जाएगा. सो दैट्स हाउ मच इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. एंड करमचंद हलवा, करमचंद गाजर और वो ब्लैक सनग्लासेस जिस पे करमचंद लिखता था, वो दे वर लाइक इट वाज अ कल्ट जिसकी फॉलोइंग अभी भी है. सो इट इज़ सच एन ऑनर कि आज हम एक्चुअली बात करेंगे, हम देखेंगे और सुनेंगे मिस्टर पंकज पराशर को जिन्होंने वो इतनी ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ बनाई. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस. मिस्टर जलाश श्रीवास्तव, लाइक आई सेड, सर इज़ अ सिविल सर्वेंट. उन्होंने बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पोर्टफोलियोज लिए हैं इन अ वेरी वाइड रेंज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू टैक्सेशन. And he's also been the CMD of Delhi Finance Corporation. It's such an honor to have you both, sir, and cannot wait to know more about Karamchand and Kitty. And sir, you are a genius, and shut up, Kitty, and all of that. Thank you, sir. Thank you so much for joining us. May I begin? Welcome, sir. Deeply honored to be here sharing the stage with Pankaj Parashar ji. I can only say that presently, I think 40 years have passed since Karamchand, and it seems like yesterday. Every odd week, every odd fortnight, you see some write-up about the legend of Karamchand. Karamchand, the cult classic, which was never before in the Indian cinema and Indian cinema stroke OTT. We are talking about the time when it used to be called TV serials, right? In the likes of Hum Log and Bunyad and so on. 40 years back, you can understand that TV 9:40 का शायद slot होता था, sir. It was 10:20 slot. And kids would have to do their homework, finish their dinner, and the entire family would gather around the TV along with the neighbors, right? And it was not just a family, but a group activity to watch Karamchand together. Now let me just address the very young crowd. आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिए कि वो लोग क्या करते थे जब करमचंद का टाइटल ट्रैक बजता था. You go to anybody who's on the right side of 60 like me. We were 20 something at that time. I was freshly out of college and I had just joined IPS, I think, at that time. जब ये shooting कर रहे थे, and by the time it came out, I had gone into the academy. करमचंद वाला ट्यून बजेगा, उसके साथ लोगों का that title track itself was a classic, never done before, because nobody paid so much attention to the importance of the title track. Even today, if you were to go on Amazon and type Karamchand sunglasses, it's there. If you were to Google Karamchand with inverted commas with the Big Bang Theory,
the American sitcom, you will find a clip comes out in which one of the characters says Karamchand. Now, with due regards to Sholay and Mughal Azam and everything, I have not seen any other TV series, OTT or one thing mentioned in this manner, with this kind of a recall value. We are talking 40-year-old. And when you say Sherlock, I would like to just present a thought. Sherlock Holmes, originally very able-bodied, very athletic, almost a bloodhound, completely unaware of his appearance, etc. Hercule Poirot, who came after him, Agatha Christie creation, extremely fastidious, can't walk 100 steps to save his life. I'm not at all athletic. And you have a series of Indian detective, Byomkesh Bakshi, Feluda. There are so many. I mean, let's not go there. But none of them have summed up to this somewhat, begging your pardon, sir, somewhat puny character, short-statured, not impressive till he starts thinking and he opens his mouth. And then he's all brains. He dresses very casually. He's not bothered about his, well, except for his carrot. He's not bothered about anything. He's extremely fastidious about how things are placed because order is important. But ultimately, it's his brain work. Having said all this, let me ask you, sir. You were in your late 20s. So was most of your cast. In this school hall, I cannot ask you, when you conceptualized Karamchand, what were you drinking? But I can ask, what were you thinking? How did this come about, the whole idea of creating this Karamchand? Which, if you'll pardon my saying so, and it's not just a fan, one of the greatest detectives ever created, whom we have seen, and it's still in our public conscience. So I think it's time to get these people off their phones. So now I will tell them about Karamchand. The young people don't know. They must have heard something. You can ask your parents later in the evening. I started reading early. At 7 and 8, I was reading Enid Blyton and then Agatha Christie, then James Hadley Chase. James Hadley Chase had to be between the covers because it was naughty. By 11, 12, I was into Earl Stanley Gardner. And I remember when I was in the 6th standard, I took a book to class, Perry Mason, and the teacher took it and she said, don't pretend you're reading this. I said, I read it. So I was into detective at an early age. There is this game of Rummy, which is a major coincidence in my life, fortunately, because my dad's from the movies. He owned a cinema in Lahore, which he had to leave and come at a young age. And then he was with Guru Dutt and Devanand. And my street was 14th Road, which is where Manoj Kumar lived, Devendra Goyal lived, Ramesh Sippi's office was there, Chitragupt, Madan Mohan. These are 10 buildings. So you had Andaz, you had Sita Gita, you had Sholay, you had Ek Pul Do Mali, you had Upkar, Pura Pachim, Roti Kapda Makan, Karamchand, Chalbaz, Jalwa, everything within those 10 buildings. So you can imagine the milieu that I grew up in. When we used to play cricket, there were these two guys who would come outside CP Films office and smoke a cigarette and tell me, "Teri bowling theek nahi hai, aisa kar." Those two guys happened to be Salim Javed. They were writing their first movie. So I was brought up like Saturday, Sunday was studio. My bench partner in school was Shakti Saman's son. They were making Aradhna at that time. So हर Saturday, Sunday किसी ना किसी shooting के studio में हम होते थे. Coca-Cola पीने या साधना से हाथ मिलाने. We all crazy about her when we were small. I was 9 and 10 when I shook hands with her. I really loved it. And Gurudat used to come to my house. Devanand was like family. So all this, there's a rummy culture in the industry which is not there now. At that time, Saturday, Sunday, सब मिलके पालील में होगा तो एक रम्मी क्लब होगा, एक जू में होगा रम्मी क्लब, where all of them played. शूटिंग के सेट के बाहर रम्मी का टेबल लगता था, जहाँ हीरोइन की मम्मियाँ सारे बैठ के रम्मी खेलती थी. So there was this rummy thing going on in the house, and there was a program at that time called Inspector Eagle, which the older ones would know because it was on radio. The younger ones would not have heard of it. Two people are nodding their heads. So Uncle Vishwamitra Radil used to come home and play cards. I used to hear it. I said, Uncle, last time maza nahi aaya because maine guess kar liya. So this happened 2 Sundays. So he got very upset and he said, "Itna tu janta hai to tu likh ke dekha mere ko." Because it was #1 program. So I wrote 7 plots for him. Maybe
Samba, Agatha Christie, Sambar, Perry Mason. And I gave it to him. उसमें से उन्होंने 4 चुने और मेरे को हर प्लॉट का 5 रुपया मिला. 5 रुपया would last a month at that time. 4 आने का था Coca-Cola. And it came on the air and I used to stand on the street. Street में सब 15 लोग इकट्ठे होते थे, पान वाला वो रेडियो सुनते थे. I used to say ये जॉन ने मर्डर किया, मैं बताता हूँ तुमको, because I had written it. So this happened and life went on. Then later on, I went to the Film Institute. I became a gold medalist. My film, which I shot in the Film Institute, won a Filmfare Award on the mental hospital. The runner-up was Mr. Shyam Benegal. And when I went on stage, they thought a wrong guy had come to take the Filmfare because I was like 56 kilos and not wearing the formal Filmfare clothes. So what happened after that was Mr. Alec Padamsee noticed. He was the doyen of advertising. And he called me and said, do a program called Mashhoor Mahal, which was the original KBC. Usme Doordarshan didn't allow money. So pressure cooker, toaster was a milta tha. So I was asked to do the pilot. I shot the pilot and I put 3 cameras and I got terribly bored because I couldn't move those cameras. Then I went and complained. Then Alec Padamsee called me and said that you are creating a fuss. You want to move the camera. The producer was Ronnie Screwvala, who made Uri and he's a big producer now. And he said, this boy is throwing tantrums. He's not happy. I want to throw him out. So I was called to Ronnie's office and I was told, you are leaving the program. You're out of it. So I said, thank you, Ronnie. And I went back to Alec refused to see me. Ab Lintas 15 male pe, big organization. I'm trying to meet him and tell him he's not, he got upset. He's saying, भाई तेरे को काम दिया है, तेरा ईगो क्या है यार, तू ट्रेन में आता है, जेब में 11 रुपया है, तेरे को पैसा दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, तू throwing attitude. Then I tried for a month to see him. Then I found out Prithvi Theatre में sir rehearsal कर रहे हैं. So I went for the rehearsal and I caught him. And he said, I'm in the car, you come in the car and tell me what is your problem. अब गाड़ी जितनी जा रही है जूहू से पेडर रोड उतना मुझे बस पकड़ के आना है वापस. So I'm trying to convince him, Alec, I want to do a detective. I want to do. He's saying detectives don't run in India, my boy. Have you heard of anything in India, detective? I said, sir, Inspector Regal to tha na. Ah. So I said, I used to write it. So he looked at me. He says, what? I said, at 13, I wrote 4 plots. He said, I don't believe that. I said, Vishwamitra ka number deta hu main. Please meko detective karne do because I know it's going to work. So he said, okay, shoot a pilot. Here is, I'll give you a budget of 20,000. He dropped me off at Mahim. I had to take a bus back. And then I had 20,000 to do a pilot. So I went and shot the pilot. Pilot mein Alok Nath tha. And the pilot, they're exchanging numbers. Mera bhi number le lo. So pilot was sent to Doordarshan. They sent a telegram and said, okay, this is, never seen a show like this before and then please shoot it. I signed a movie. I went off to shoot Picha Karo. And Alec kept saying, shoot, shoot, shoot. I came back, met Alok Nath, who said, कि मेरे को 1500 में मेरे को नहीं करना, मेरे को 2000 में करना है, 3000 में. हमारा झगड़ा हो गया पृथ्वी में. अब झगड़ा हुआ तो मैं बोला, I'll throw you out. So he said, you can't throw me out. Doordarshan has selected me. I said, I can. तो बोले किसको लेगा? I said, किसी को भी ले लूँगा. यहाँ पे वो अच्छा एक्टर आया हुआ पंकज कपूर दिल्ली से नया नया उसको ले लूँगा. So that's how Pankaj Kapoor was cast. And then Pankaj, of course, said, give me 3-4 days to think. I panicked. Then I went to my friend Sudhir Mishra, who was a struggling writer. Jani bhi daro likh raha tha tabhi. So he said, I'll write, but you take my wife. His wife was Sushmita Mukherjee. कोई लेडी तो चाहिए तुमको साथ में. तो I said, चल done यार, तू पंकज को convince कर. That's how she was cast. And then we rehearsed. We did all the character building, everything with Alec's blessing because he was a theatre person. I was a kid. मेरे को बनाया नहीं था ज़्यादा. And then we shot 4 episodes. Now the fun part is, now here comes the part, what happened after that. हमने 4 episode shoot किए और हिंदुस्तान लीवर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये ठीक नहीं दिखता, ये हीरो नहीं दिखता, कैमरा बहुत हिल रहा है, कटिंग टू मच है, म्यूजिक वेस्टर्न है, वो रिजेक्ट हो गई. So Alec got angry and he went to Ulka, another agency, and said, watch this, please sponsor it. So they sponsored it. And it came on the air at 10:20. First episode came on the air and a lot of phone calls came. जो break में जो होता है ना, phone call शुरू हो गए थे. मेरे डैडी को लुधियाना से फोन आया कि कितना तोड़ा पुत्र है, की कचरा आएगा, अशिता नहीं बेचेंगे, गंदा आएगा, all that. So the abuse started. Saeed Mirza was the only guy who called and said, you've done something exceptional, don't worry. And Pankaj Kapoor came next day and he hugged me and he said, how could we have gone totally wrong? I said, you idiot, it's a classic.
डोंट वरी, नहीं यार दूसरा वाला पता नहीं क्या होगा. So दूसरा वाला आया. We had shot 4, so there was no going, there was nothing we could do. All 4 were Doordarshan. Third one was with Rohini Atangade, which was a slight comedy. That caught a bit. The fourth caught a bit. By fifth, Dash Dash hit the roof. By sixth, the first one we had no ad. By sixth, we had about 20 ads. By the eighth episode, we had 40 ads. 10-20 का program 10:45 पे शुरू होता था. And the whole world went bananas. By 10th episode, I'd signed 4 feature films. I did one of them, which was Jalwa. 12th episode, I get a call on my landline from guess who? Kishore Kumar. But Kishore बोल रहा हूँ, घर आते हो? कुछ कमाल कर रहे हो तुम? So I went to Kishore Kumar's house. And he stood up and he said, प्रणाम, क्या सिनेमा कर रहे हो भाई? किसी को समझ नहीं आ रहा, but I'm loving it. तो एक पिक्चर बनाओ मेरे लिए. Then I got a call from Shammi Kapoor. Then I got a call from Manoj Kumar used to call me every week कि शॉट किस तरह लेता पुत्र ये कैसे किया स्टेडी कैम आया नहीं था तभी. I had a shot where the camera comes down the staircase straight like that. चलो क्रेन से लिया होगा. Follows the feet, goes in the corridor, goes out into the house, into the car, comes out of the car and turns around in the same shot. In 1985. Hollywood ने नहीं लिया था ये shot. Manoj Kumar said मेरे को बताओ ये कैसे लिया है. So I had to go tell him we had 2 cameramen and what we did and everything. Then I got a call, sir, this is Kamal. I said, who's Kamal? Sir, Kamal Hassan. So I said, is it Kamal Hassan? Sir, Kamal Hassan, sir, you're a fan, sir. मैं गिर गया, मैं बोला, sir, I'm privileged. I'm at Sun and Sand, can you come? I want to talk to you. That evening was the most brilliant because it's technically a huge, you know what he is. And we only spoke about Karamchand for 4 hours. ये कैसे डेवलप किया, हाउ डिड यू डू दिस, ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग. ये शॉट घूमता है पर नीचे जाता है. ऑफ कोर्स आफ्टर 4 ड्रिंक्स ही टुक आउट नायकन's album and showed me about Nayakan. Then only he spoke for an hour, which is Kamal Hassan. Then बच्चन साहब के यहाँ से फोन आते हैं. मतलब it went bananas. And then I was in a magazine called Gentleman Magazine. I was the top 10 eligible bachelor of the country because of Karamchand, with Anil Ambani, Ravi Shastri, all that, very photo hai. Then the ads started. I was doing 2 ads, 3 ads a week. I was shooting. I wasn't sleeping. And of course, then the money flowed in and life got comfortable. I got a call from Channel 4 London to say, when can you come and meet us? I got a call from LV Prasad down south. Will you do a family drama? I said, no, I don't want to do family drama. But I didn't know what hit me. घर में भाजी वाला आता था, मेरी मम्मी को बोलता था करमचंद लोगे, तो मम्मी उससे मेरा बेटा बनाता है. And I had like 50 people ring the bell every morning for actors. Security थी नहीं तो board लगाया, actors not wanted. And I can go on. I mean, things that happened. Then the Piramals who sponsored it called us for dinner. तो हम बेचारे t-shirt, jeans, चप्पल में उनके घर गए. We felt so out of place. Then I bought my first car, etc., etc. Then of course I did Jalwa. Now the fun is कि 26 episode के बाद मैंने बोला बहुत हो गया, मैं अभी film करता हूँ. मैंने बंद किया. I didn't apply to Doordarshan for an extension and I went and shot Jalwa with Nasiruddin Shah. अब उसमें पंकज कपूर चिल्ला रहा है मेरे को रोल नहीं दिया, तू नसीर को दे रहा है, तो उसको गेस्ट पे ले लिया. अब हम डिनर पे जा रहे हैं, अर्चना, मी, नसीर एंड पंकज. एंड एट on the glass of the restaurant there's a mob in Bombay. And who do they want to meet and sign? Pankaj Kapoor. Not Nasiruddin Shah. करमचंद बैठा है, करमचंद बैठा है. तो उसको भेजा मैंने, बाहर जा तू यार, साइन बन करके आ जा. He was on cover of magazine, highest paid actor in India, वो सब हो गया. तो मैं जलवा शूट करके बहुत, because cinema scope and film and उसकी बात ही अलग थी. वापस आया तो फिर मुझे फोन आ रहे हैं दिल्ली से और लिंटा से कि 13 और करो. ऐसे मेरे को नहीं करना 13 और, मैं अभी फिल्म कर रहा हूँ. I was writing चालबाज at that time. I was thinking of doing a double role with a star. So I was called to Delhi and I met the DG and he told me, भैया 13 और कर लो. I said, मेरे को टीवी नहीं करनी, हो गया ना. I was comfortable, money is coming in, why go back to TV? So he said, come here, I'll show you a room. And you won't believe it, he took me to a room and he opened it and it was full of letters. And the letters said Karamchand, Doordarshan, Delhi. And he opened one. It was written by a 6-year-old. Uncle, aapne band kyun kiya? He said, the children are chewing my brains. They want it back. So I said, मैं 13 और करूँगा, और नहीं करूँगा. I was stupid, I should have done more. But then I did 13 more. That was it. So this is the short story of
Karamchand. And of course, Can I ask a question? yeah. For Karamchand, which made you one of the 10 most eligible bachelors of India at that time, who was Karamchand named after? Okay, it's a good question. When I thought I'll do Karamchand before I met Alec, I was thinking of doing it. So my dad said कि तू यार कुछ कर नहीं रहा, तू ये 2,000 रुपया ले और तू जा गोवा जा, पुणे जा, इंस्टीट्यूट जा और कुछ लिख कुछ कर. If you have a material, then I'll go talk to producers. No, so what I did was I shifted into my friend Colonel Kapoor's house. Colonel Kapoor, the older ones will remember, is a white-haired guy who acted Fauji. He produced Fauji with a mustache. He used to act. He was a Rajnishi. Osho का वो बड़ा member था. तो उनके घर में ओशो की रौनक लगी रहती थी. So I shifted in, and he had a typewriter. So I told him, sir कुछ लिखते हैं detective कुछ ऐसा कुछ बन रहा है शायद. I might do it with Lindas. तो बोले नाम सोचते हैं कुछ यार ऐसा कुछ बॉन्ड. तो बोले हाँ ऐसा कुछ सोचते हैं. पहले कड़क चाय पीते हैं. He was a Fauji, and he had this orderly, or what do you call them? And he called him, Karamchand, do chai la. So his servant was called Karamchand. So I said, abhi tentative titles ka Karamchand likh do. So that's how he was called Karamchand. And it carried on. And the servant cursed me because every time I go to the market now, the Karamchand gajar dikhate hai mere ko. It was named after him. Sir, आपके, I mean, you mentioned Jalwa in between, and of course, Jalwa में there were so many firsts. Again, my question continues. आपने नसीर साहब को सबसे पहली कमर्शियल फिल्म दी. अर्चना पूरन सिंह जी को एक तरह से पहली बार हीरोइन का रोल दिया. जॉनी लिवर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया. Can I talk about Jalwa because it's very interesting? Yes, I was just going to ask you. वो किया. तेजिंदर सिंह was, I mean, you did a lot of firsts. And इसमें दो सवाल. एक तो आप इसमें ये बताइए जलवा के बारे में. दूसरा, humor has played an extremely crucial part, whether it is your OTT or whether it's Jalwa or even तुमको ना भूल पाएंगे, आपकी ज़्यादातर उसमें. Now, you have made all these films and you have made Karamchand and everybody else has changed but you. So all that humor was typical to... Humor comes naturally to me, fortunately. And Pankaj Kapoor and Shushmita, they are NSD people. First episode में इतना humor था नहीं, but we found we couldn't keep away from it. And the first episode when we were shooting, Pankaj Kapoor was ruttering some lines. He's a brilliant actor. उसको पूरा episode याद होना चाहिए, तो रट रहा था. अब ये Shushmita, she played a dumb blonde, but she's a Bengali, she's educated, she's literature, and now she's writing books and all that. And उसका वो बंगाल का खून खोल गया कि मेरा रोल ठीक नहीं है, मैं साइड किक हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही. तो she kept going, मेरे पास नहीं आई, मेरे से डरती थी. वो आके पंकज कपूर बोली यार इसमें थोड़ा बैंटर थोड़ा ज़्यादा कर ले, मैं जोक करूँगी. तो he said, let me learn my line. We were shooting in my friend's bungalow. Then suddenly I saw her go again to him, and she said, shut up. That was the first time, he told her, shut up. तो वो जूनियर थी NSD की, तो चली गई. शी लेफ्ट द बंगलो बाहर खड़ी हुई थी. सो आई वेंट एंड टोल्ड हर क्या नहीं, मेरे को शट अप बोला उसने यार. तो आई सेड, तू थैंक यू बोल दे उसको. तो दिस हैपेंड ट्वाइस ऑन दैट डे. सेकंड टाइम अगेन ही सेड शट अप. तो आई सेड यार ये इसमें कुछ है बात, तो तू थैंक यू बोल दे उसको. तो दिस शट अप किटी स्टक. Now, I have noticed again, whether it is by design, आपने 26 episodes. Let me just interrupt. Now, after 38 years, there is a publication that has gone to Shushmita and asked her to write a book called, guess what? Being Kitty. Oh, so Being Kitty. Being Kitty. That's the name She's of writing a book about Kitty and the character and what happened. There you are. In those 26 episodes, there are 30 times when she says, "Sir, you're a genius," or whatever. So and you he really says, "Shut up, Kitty." Not, it's like snowflakes. No two "Shut up, Kitty" are alike. Was it by design? Was it your contribution? Yeah. We used to think कि कौन सा वाला करें. अच्छा. एक में तो बोलता नहीं है वो. उसका एक था which we can't, if you do Karamchand now you can't do it. That every time he solved a case you light a cigarette at the end, और माचिस के साथ music आता. तो when he takes out the cigarette she says, "Sir, you really are a genius," and he used to shut up and used to light the thing. एक में बोलती नहीं, खड़ी रहती है वो. ये सिगरेट ही नहीं जलाता है, वेट कर रहा है कब बोलेगी. बोलती नहीं है, खड़ी ऐसे देख रही है. When he touches her, says, "Sir, you are a genius," फिर बोलती. So we used to invent all these different ways. आपका
कुछ और बताइए, क्योंकि आपके को एक्टर्स, आई मीन you were in your late 20s, you still are in your 30s, and so were all your co-stars. तो इतना ज़्यादा dynamism, it was like a lot of very young, very dynamic people coming together to create this greatest cult thing. How did it feel? What was your equation with all of them? There was, I'm sure there was a lot of experimentation going on, a lot of improvisation and ad-libbing going on. वो ज़रा सबके साथ See, शेयर करें. because the 3.5 years in the film institute that I spent, the thing was that my whole upbringing was, there was no Bollywood word that time, but it was the Bombay film industry. कभी दोस्त के घर गया तो सिटिंग चल रही है, कहीं म्यूजिक रिकॉर्डिंग चल रहा है, 13-9-10 साल के उम्र में हम लता जी के साथ बैठे हैं. तो दैट होल सिनेमा वाज इनसाइड मी कि सिनेमा ऐसा होता है, राज खोसला होता है, गाने होते हैं और पूरा हिंदी सिनेमा. I had not seen anything of any other cinema. When I went into the film institute on the first day, I was acting precautious. You know, my dad makes movies. मैं तो बनाऊंगा ये पिक्चर और मैं हफ्ता भर रहूंगा, देखूंगा, मूड होता मैं चला जाऊंगा. And I was I think in 2-2.5 लाख लोगों में, ये IAS बाबू को मैं बोलूँ, 2-2.5 लाख लोगों की इंटरव्यू, उसमें से 600 को बुलाया, 600 में से 100 रहे, 100 में से 20 लिए, वो 20 में मैं फर्स्ट आया. So other words, so what happened was, I can't resist saying that. What happened was that first day I saw a movie called Red Circle. Second day we saw Rashomon. And it blew my mind. Ki, what is this cinema? This is something else. Then Ray Saab, at the age of 19, if you're watching him, I was only looking at the editing because he's a fantastic editor. अब हमको वो बंगाली का कल्चर समझा रहे हैं. The professor, God bless his soul, was teaching us about how the background of the child when he was young. I don't want to know. I want to know how he's lit this and how is he cutting like this? He's overlapping dialogues. ये क्या चीज़ है भाई? तो हमको वो रील्स मिलते थे. अगर मैंने ट्रूफो की फिल्म देखी और घंटी बजाने में 6 कट मारे, कौन है? Is God. So I would get the reel to the Steinbeck machine and I could see it. This education was unbelievable. और ये और इंडियन कमर्शियल सिनेमा ये मेरे में भरा हुआ है और मैं अनएम्प्लॉयड ट्रेनों में घूम रहा हूँ भूखा. एड एजेंसी में जाता हूँ तो बोलते हैं ऊपर मत आना, 5 फिल्म करके आना. They have actually told me this. Don't climb these steps to learn 5 film. बस स्टॉप पे बैठ के मैं लिटिल टीयर्स केम एंड ऑल दैट. आई सेड तुझे याद रखूंगा ठाकुर. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट ये दोनों सिनेमा जो है ना, ये मैंने कूट के भर दिए करमचंद. So the camera flying around and Woodstock में देखा था मैंने handheld shots, and then the rock music, which was, I loved jazz rock because when we recorded it and played it the first time, Lintas refused it, the juniors. What is this? This is jazz. How can you have jazz? It was very complex chord progression. I liked it. And that story is unbelievable. Pilot में है वो music piece मुझे कहीं से मिला. पैसे नहीं थे recording के लिए, तो मेरा दोस्त है रवि, the music director, Waqt and Chaudhary Ka Chand and all those. So his son was in our group. Like I told you, all my group was. उसके पास छोटा स्टूडियो था, उसमें Tascam था. So I thought I'll dub. My neighbor was Shri Chitragupta, उनके बच्चे थे आनंद मिलन. तो आनंद को बोला तू कंपोज कर. और एक लड़का आता रहता था, वो बोलता मेरे को गाने का चांस दो. दूसरा लड़का बनारस से आया था, बोले मेरे को लिरिक्स लिखने हैं. तो हम 4 वो घर में गए. I'll just tell you the names of these people. और माइक पे आनंद और ये नया लड़का दोनों ने गाया. नॉट कंपोज, उस म्यूजिक के ऊपर गाया. दैट गाय वाज उदित नारायण. That was, I think the first time he stood on a mic. And the lyrics, जिसने बोला मैं lyrics लिखता हूँ, 26 एपिसोड में lyrics पे आता है. That guy is got the Guinness Book of Records on this planet for writing the maximum songs. His name is Samir, अनजान जी का लड़का. So lyrics in Karamchand was by him. He was paid 1,200 rupees. He never wrote a single word. Except for the word Karamchand, There's it's no like lyrics. singing tequila. I mean, there's just one word in There's the no entire lyrics. song. वो मेरे को पूछते थे lyric आएगा, गाना आएगा, कवाली आएगी, नहीं आई अभी तक. तो समीर अभी तक हंसता है. In fact, चलिए मैं आपसे एक बड़ा ही hypothetical सवाल पूछता हूँ. आज के young actors में, if they were a 30-year-old Karamchand and they were a 20-25-year-old Kitty, आप आजकल के young actors में, निहायत talented actors में किसको लेकर बनाते हैं अगर आप? No one. No one. No one.
You know, back of my mind, I think that was the answer I knew. एक और because you have experimented so much on OTT and films. What do you personally prefer making? I mean, I know that you are an accomplished musician. You have so many paintings of very high order to your credit. उन सब के मद्देनजर आप You have so many paintings का मतलब था you paint. He didn't say that. I really beg He your didn't say pardon. that. You paint. You paint and you are so much into music and you're so much into filmmaking. आप OTT versus films में क्या prefer करते हैं और क्यों? Films naturally, because the audience, when you see with them and the milieu of that, going for the atmosphere and all that is different. You know, OTT तो घर में बैठ के देखते हैं. So films definitely, there's no two ways about it. Okay. What next, Pankaj ji? Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. There are a lot of things. There are 3 films I'm planning. One of them is a comedy in one location. Honeymoon Hotel it's called. I'm planning a OTT which is going to be on a very big platform and very exciting, which is being written as we know. And we are on NDA, so I can't reveal the name and the cast and all Perfectly that. good. Perfectly But good. we are on. In fact, परसों ही sitting थी. So that's going to be fun. So again, I'm going to try and I mean, how many people after 38 years get a chance to reinvent themselves? But when we meet in a sitting, sorry you young guys out there, they say, yeah, young writer ko lao. I said, young writer is half my computer, half my GB. He has half my memory, half my emotion. The young writer mat kiya karo aap. Because the amount of movies I've seen are twice as much, what I've read, plus life. You've seen so much. When we did Karamchand, तो वो innocence तो कमाल की थी ना, कुछ दिखा ही नहीं था. But comedy डाली सब कुछ, because we could not think of layering at that time. So picture भी अभी बाकी है और OTT भी अभी बाकी है. हाँ बिल्कुल. चलिए साहब. कुछ और चीज बताइए जो कि इसकी जलवा से कनेक्ट करें. Beg your pardon? जलवा से कनेक्ट करें. जलवा से. I don't know how many people have seen जलवा Jalwa. या चालबाज. But it's See, I'll tell you something. Every bit of work, whether it's a novel or it's a movie or it's a OTT, has its own janam patri. वो अपने आप ही डिसाइड करती है कि कौन रहेगा, कौन कैसी बनेगी. तो आप कुछ भी जोर लगा लो. You know, like John Lennon said, if you want to make God laugh, tell him your plans. There was this big producer, Purnachandra Rao, who called my father and said, I've seen Jalwa. There is L.V. Prasad who said, कि Jalwa, you must call the director and just blindly sign him because he's new. Jalwa में इतनी नई चीजें हमने की थी. So my father said, this is Purnachandra Rao, तू चुप रहना. वो 7 पिक्चरें बना रहा है, अमिताभ के साथ बना रहा है, कमला सिंह. He's the biggest. He was like Yash Chopra, Aditya combined into one. When you go to his house, don't talk. Just say yes. Just nod your head. He'll say, 2 रुपए दे रहा हूँ. हाँ, yes sir. इसको लो, yes sir. पिक्चर साइन करके आना घर. अपना ज्ञान मान मत देना उसको. So I was going up the steps and I was thinking Amitabh Bachchan. And I entered the house and said, "Shit, sir, any idea you have, sir?" मेरे मुंह से श्रीदेवी निकल गया. I said, "Do you know Sridevi?" So he said, "Puppy like house." मतलब puppy is a घर जैसी है. So I said, "Sita Gita." वो क्या? Done. It was 3 lines and Chalbaz was done. So that's how Chalbaz was just planned over, what, 10 seconds? 10 seconds. And he shouted Venkat, and then when 11,000 rupee check came. No script was written, of course. We knew we were doing Sita Gita. So this was because of Jalwa. You have, in probably one of the only kinds of guest appearances, taken Amitabh ji. How did that happen? That Jalwa mein? He was. Can you give me some idea? It's a very Satish long story. Kaushik and Akash when Khurrana. Mr. Gulanan, who had made Chashme Baddoor and all that, he saw Karamchand 10th episode. He called me and said, "I want to meet you. Let's make a movie." And Tarzan had become a big hit those days, and he was deciding, I think monetarily. I'm sorry, Tarzan. Tarzan. Okay. Hemant Birje and Kimi Katkar. So Kimi Katkar had done some census shots and all that, census that part. The big hit it was. So he said that let's have. He also had a story that there is a plane going with Miss India that crashes, and there are 11 of them in the jungle, and with various stages of undress they go through, and Tarzan rescues them. So we went and met Hemant Birje, and we met Kimi Katkar, and it was all being written. Then there was a friend of mine,
No, see, this is how God plans to change your path. There's a friend of mine who had acted in Karamchand. She loaned me a book and said she abused me. कि किताब वापस नहीं होगी, महीना हो गया. So I went to a house to throw the book at her, and then there was a party going on in the house, and Shri Nasiruddin Shah was sitting on the floor and he was having a glass of rum, and he said, "क्या बना रहा है?" I said, "मैं हेमंत बिरजे के साथ करमचंद बना रहा हूँ, so जलवा बना रहा हूँ." तो इसे तेरा दिमाग खराब है क्या? हेमंत बिरजे के साथ टार्जन बनाएगा, तू FT आएगा, गोल्ड मेडलिस्ट है, तूने करमचंद बनाया, दिमाग खराब है तेरा. I said, "You keep drinking here, don't advise me," because he had done Par. I said, "तू तो आर्ट सिनेमा करता है, वो मेरे को करना नहीं है." Then I came back and he said, "मैं टार्जन करूंगा." So I laughed at him. I said, "What are you smoking, brother? तू टार्जन कैसे करेगा?" He was 67 kilos at that time. He had lost weight for Par. He won Best Actor in Berlin for Par. That's another story. नहीं, award तो Nasir. So I came home and I met Gul and I said, "Okay, I met Nasir," and he says, "Okay, I want to play Tarzan." So Gul Anand said, "Oh, that's fantastic. Nasir can play anything. Let's go meet him." So that's how we went to meet him. But when we met him, I said, "This story won't do. Let's change it to Jalwa." But Nasir started pumping iron and everything. And then we went and we shot. Pankaj Kapoor was there in it. And then Shri Satish Kaushik was there. तो सतीश कौशिक का क्या होता था कि हमारी एक यूनिट की बस थी, उसमें वो खड़े होके पैकअप के बाद सब एक ही बस में होते थे, हीरो हीरोइन रिकॉर्डिस्ट असिस्टेंट सब. वो खड़ा होके सतीश यूज्ड टू परफॉर्म, यूज्ड टू डू मिमिक्री, स्वराब मोदी की मिमिक्री, ओम प्रकाश की, बिकॉज दैट वाज हिम. एंड इन दैट बस देयर वाज अ न्यू एक्टर हु हैड कम फ्रॉम बॉम्बे. सो ही सेड, "सर मैं थोड़ा मिमिक्री मैं भी जानता हूँ, मैं भी करता हूँ." तो आई सेड, "करो." तो खड़ा हो गया. उसने जब मिमिक्री की मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी हालत खराब हो गई. मैंने असिस्टेंट को बुलाया. असिस्टेंट कौन था? संजय गुप्ता, जिसने यहाँ पे टॉक दिया था 2 दिन पहले. he was 18, he was my assistant. I said, "ये नोट कर यार, ये बंदा क्या बोल रहा है." नोट किए जा रहा है. I said, "ये सीन करते हैं, ये सीन करते हैं." सतीश, that was Johnny Lever by the way, जो मिमिक्री कर रहा है. He was unheard of that time. फिर रात को सतीश कमरे में आया मेरे होटल में. "सर ये तो खा जाएगा मुझे, ये तो आप उसका सीन बढ़ा रहे हैं, मेरा रोल नहीं है, ये क्या है, नाइंसाफी है, वी नो ईच अदर, ये वो तो गेस्ट अपीयरेंस में किसी को लाओ." I said, "कौन करेगा गेस्ट अपीयरेंस यार? नसीर है, तू है, who is going to do?" I said, "Let's take अनुपम खेर." अनुपम स्टार बन गया था तभी, he was doing Dr. Dang and all that. अब सतीश एंड अनुपम आर क्लासमेट्स, और सतीश उससे जलता था, वो चिल्लाने लग गया, "अनुपम काय का स्टार है यार, मैं रियल स्टार बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को लाओ." उसके मुंह से निकल गया. मैं पहुंच गया बच्चन साहब के पास. मेरा थ्रू सम फ्रेंड्स ही वाज डूइंग शहनशाह. तो I said, "बच्चन साहब, I'm from FT, I have done this. Yeah, करमचंद, I know." I said, "आप कैसे?" कभी कभी फोन आता था कि एपिसोड मिस हो गया तो मैं आपको भेजता था. Yeah, I like the editing very much. I said, "गेस्ट अपीयरेंस करना." बोले, "I don't do guest appearances." बैठा रहा. 1 घंटे के बाद फिर गया. I said, "सर एक ही वर्ड है, आपको खाली नो बोलना है." He says कि मैं अमिताभ बच्चन को जानता, आप पीछे से आके नो बोलते हो. Only one word. No, I don't want to do. मैं बैठा रहा. Then I went to him, I said, "Sir, you just step out of the studio." फेमस में था अपना फिल्म सिटी. हम एक कैमरा, एक रिफ्लेक्टर, एक रिकॉर्डिस्ट है, 5 लोग हैं. जब भी आप फ्री हो गए, आप आके नो बोल के चले आना बस. तो बोला, यार इतना परसिस्टेंट है बंदा. अच्छा सामने कौन है? I said, "नया लड़का है, सतीश कौशिक." ओके. हीरो कौन है? Said, "नसीरुद्दीन शाह." He didn't react. He said, "How much you going to pay me?" So I said, "1 rose." So he laughed. So he said, "Done, but I don't know when." तो अगले दिन हम जाके वेट करे, लगा के सतीश कौशिक यूनिफॉर्म पहन के खड़ा है. साहब आए नहीं, सारा दिन वेट कर रहे हैं. ना इमेजिन अस किड्स वेटिंग फॉर अमिताभ बच्चन इज गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट हिम, एंड सतीश इज अ न्यू गाय गोइंग टू एक्ट विद हिम. ही डिडंट कम. आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. तो बैठे बैठे क्या हुआ कि मैंने बोला, "सतीश ये एक लाइन ऐड करें कि तो हमारा दोस्त है, जब भी गोवा में आता है हमसे आके पूछता है, रामू भैया ये शूटिंग कहाँ चल रही है?" तो आई प्लेड अमिताभ एंड ही वाज सतीश. सो आई वाज डूइंग दिस 1 लाइन. तो सतीश बॉट 1 more लाइन, हमको फोन करता है, फोनवा घुमाता है, ट्रक. तो मैं दोनों ट्रक किए जा रहे. तो शाम तक सीन बन गया. अब अगले दिन सुबह 10:30 बजे मैसेज आया कि 11:15 बजे सर आएंगे, 12 बजे निकलेंगे, कुर्ता पजामा पहने. अरे एक्साइटमेंट हो गया. सर आए तो ऑफकोर्स फोटो बुके दिया उनको, पेज दे दिया. तो बोले, "तुम तो नो बोल रहे थे, ये क्या है?" I said, "Sir, वेट करते करते बन गया." No, you have to keep your promise. I'm just going to say no. This is a full scene. I'm not going to do a scene. I have to go. Satish बोलता है, "Sir, I'll just do and show you." Now Satish was so deadly that he played both the parts.
And he showed him. Confidence उस बंदे का देखो, अमिताभ बच्चन के सामने. बच्चन साहब हंसे. I like this. Give me. और सर 3.5 मिनट में उन्होंने रट लिया. पहला टेक परफेक्ट जो अमिताभ बच्चन ने किया. सतीश तो रिहर्स कर रहा है. Hats off to that man. He finished it and everybody clapped. फिर गले वाले मिले. फिर वो चले गए गाड़ी में. फिर मैं बैठ के देखा सतीश रो रहा था. I think in the memory of late Satish Kaushik ji, he was again one of the greatest. And How he had the confidence to do this, and then we waited. Studio पे बैठ के रोया. He had done a scene with Amitabh Bachchan. So this is the jalwa. With this as the happy note, Yeah. sir, आप और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे सब viewers सारे? संदेश कुछ नहीं, बस keep on entertaining people. That's all. God has been kind, so give me opportunity to do it. Remain humble. Which Rajnikant told me. Kamala Hassan said the opposite. Because they are directing Rajnikant and Chalwal, the most humble man, unbelievable. He was superstar at that time. So he told me, remain humble, sir. God has been kind. Bus conductor became star. So remain humble. So any question? Very enriching life. Movie Mughal, because you have given chances. Sanjay Gupta, now a movie Mughal in his own right, was your assistant director in Jalwa. Farhan Akhtar, Yeah. I think he was an assistant cameraman. Assistant. He was an assistant. Akshay Khanna, Himalaya Putra, you gave him the break. And so, Anubhav Sinha also. Anubhav Sinha, yes, in which He was my assistant. which film? Asman Se Gira. That was a children film which you did. So, Yeah. I mean, Thank you. it's a very impressive list. So please give a big hand to this movie Mughal. नहीं sir, और जोर से बाहर तक आना चाहिए. Thank you. Another, I mean, I'm incidentally your Facebook friend. Okay. So one thing I want to, then another, your first film as a director, it was the first film of Anand Mil. Yeah. It was the first film of the, lyricist Sameer. Yeah. And it was produced by two struggling actors, Yes. Girija Shankar and Alok Nath. Correct. I mean, just two struggling actors and they produce a film. So, sir, how was that experience? Please elaborate on that, how quickly. Very quickly. How could strugglers, produce a film? Because, I mean, for the young people who aspire to be filmmakers, it would be... We have 2 minutes, otherwise... Yes, sir. Just about. Okay. This was, we were all strugglers. पृथ्वी में जाके रोज बैठते थे, तो वहाँ पे आलोक और गिरजा की दोस्ती हुई हमारी, और आलोक was engaged to some lady and she dissed him and he was angry, so that's why he wanted to make a movie to show her. That was why Abhay Gamasa was made, because he got jilted. So he went home and he blackmailed his father and he took out FD 4 लाख के ले आए. फिर हमने दुकान खोली पृथ्वी में, रोल चाहिए 1 लाख दो, तो राजा बुंडेला आ गया 1 लाख दे दिया, रवि बसवानी, गिरिजा शंकर सेठ में 4 लाख देता हूँ, तो इसलिए 9.5 लाख इकट्ठे हुए and we made the movie in Delhi. Yeah. Afaq Hussain, that's right. Yes, I think the only experienced person was A.K. Beer, the cinematographer. Bang on. He full marks he deserves. Chalo, any So- question? Couple of quick questions, if any. Satish Kaushik also as a writer. Yeah. Yes. You gave him a Yeah. second. Yeah, I am one of those who have been seeing your serial, is Karamchand. And if I remember, you had a trademark there for the Karamchand Jasus. It was a carrot. Yes. So what led you to make that carrot as a trademark for him? May I interrupt? I'm adding to the question. Was it inspired by Asterix having his magic button? No. Or Popeye taking a spinach? Those comics I'll come later on. No, none of them. My mother used to make me eat a carrot every day when I was small. Now I come to the main point. The main point is that many parents that time, they used to take that cue from there and ask their children to take carrot, and then they will get their brain and they will study good. So that was one of the takeaway from there. It was just my mother. I loved aloo paranthas, but she would say, have this whole raw carrot before you eat that. And that's what the other mother also said to other kids. Okay, thank you. Thank you. Thank you really so much. Any
A last quick question, otherwise we are ready to close. Very good evening, sir. Sir, I just wanted to ask, like, what is the difference when you, the audience of 80s and the audience right now? Like, what is the difference you're facing? Or, yes, sir. The attention span is very small now of the audience. Choice is huge. Because if something doesn't interest them, 1-1.5 minute में बंद कर देते हैं. But उस time पे there used to be Basu Bhattacharya, Basu Chatterjee middle movies which people used to go to the theater and watch. That people don't go to the theater anymore. They see on OTT. And the audience is very diverse. Now, even amongst you, half of you will have seen something, half will have not seen. When I was younger, if there is a hit movie, everybody's seen it. If there's a headline in the Times of India, there's only one Times of India. There's only one Doordarshan. So everybody had seen everything or not seen. Now you'll say, I saw this series, fantastic, maza aaya. Agle bande ko naam hi nahi pata uska. I'd gone to Lucknow for some interview in a radio station. This girl came and she said, sir, I'm your fan. Ye, sab kuch. So then she looked at me blankly. So I said, yeah. She said, haven't you seen my work? I've done 400 episodes. I said, oh, what? Usne naam liya, maine naam hi nahi suna. So that's the difference between then and now. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Up to the organizer. Hello, sir. You are the director of Chalbaz, and there is a news surfacing that Chalbaz 2 is under making. So what are your views about your film being remade? We are writing it. But what we are up against is too big. Because these guys, Anupam, Shakti Kapoor, Rajnikant, Rohini, they are demons in terms of acting and in terms of the characters. And uske upar hai Sridevi. Uske upar tha music. So that is what we are up against. So we are writing. I might make it. I'm not saying I'm making it. But we are writing it. Okay, thank you, sir. These are actually several years, and if I know film world just a little bit, वो 5-7 projects एक साथ शुरू होते हैं, उनकी अलग-अलग timelines होती हैं और वो एक के बाद एक किसी तरह से somehow, I mean. But every film has its own horoscope. अपने आप ही decide करता है. आप कुछ भी कर लो. Kavya ji, would you like to? Yes, absolutely. No more questions? Thank you, sir. Right. So I hope I entertained you. There is a lot of stories. Thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful session. अब मैं DGP अशोक कुमार सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पंकज सर को फेलिसिटेट करने के लिए एक बार अच्छा मेरा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा 2 बजे का था। हमारे फेस्टिवल डायरेक्टर लाल सर, आप दोनों ही आ जाएं एक बार। लाल सर, मैंने बोला ना हर चीज की जन्मपत्री होती है। मेरा 2 बजे टॉक था, मैं 4 बजे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। तो सभी लोग इस हॉल में बैठे रहें और आगे आपके लिए और भी जबरदस्त सेशन हम लोगों ने यहाँ पे लाइन अप किए हुए हैं। अगला जो सेशन होने जा रहा है टेररिज्म इन तराई, अशोक कुमार सर, आलोक लाल सर और फॉर्मर डीजीपी अनिल रतूड़ी सर यहाँ पे मौजूद हैं। उनके साथ में ये सेशन है और मॉडरेट करने जा रही हैं अनुपमा खन्ना। और उसके तुरंत बाद यानी कि अगले आधे घंटे के बाद में ज़िशान कादरी और जमील खान जी यहाँ पे मौजूद हैं। सिद्धांत अरोरा उसको मॉडरेट करेंगे और वो सेशन भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। वासेपुर को लेके कल से ही एक्साइटमेंट बनी हुई है, तो बस उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं श्री अशोक कुमार सर, आलोक लाल सर और अनिल रतूड़ी सर, आप तीनों से ही निवेदन रहेगा
आप मंच पे आ जाएं और इस सेशन को मॉडरेट करने जा रही हैं अनुपमा खन्ना। Thank you very much, Kavya, and good evening once again. आप सबको नमस्ते. And it's an absolute honor आज इतने ज़्यादा distinguished IPS officers को यहाँ पर उनके साथ बात करने के लिए. Mr. Alok Lal, Mr. Anil Turi, Mr. Ashok Kumar, it's an absolute pleasure to be here with all of you. Thank you. And I know बहुत सारी बातें करने के लिए हैं और time कम, इसलिए I would like to dive straight into the topic. Terrorism in the Terai. But I just want to share one thing quickly. When I was asked to moderate this session, so at a personal level, it touched me a different chord on me because उस time पे my dad was he was in the UP State Electricity Board. So उस time पे वो actually तराई region में posted थे, हम काशीपुर में रहते थे. So I would just like to share क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद उस time पे they were very young. So they've not lived that time. But I would like to tell you, I was around 4 or 5 years old, 1988, 89, 1990 का time है. We were living in Kashipur. And I have some facts for you. 1990 में 6 Feb को bomb blast हुआ था at a crowded Lakshmi Talkies हल्द्वानी. It killed 6 people और 64 लोग injured हुए थे. उसके बाद 12th March को 3 suspected terrorists shot dead a constable on a highway. 13th April, armed terrorists raided a farmhouse, killing the owner and his wife. 17th April, one Balkar Singh was killed. उसके 5 दिन बाद his son was killed. तो ये उस टाइम पे एक पीरियड आया था जब तेराई हॉटबेड बन गया था टेररिज्म का और ये नॉर्मल लाइफ होती थी वहाँ पर. एंड आई रिमेंबर हम लोग स्कूल जाते थे बासपुर में बिकॉज कॉन्वेंट स्कूल वहीं था. सो थोड़ा दूर था घर से एंड मुझे याद है मैं 5-6 साल की थी तब भी मुझे याद है कि जीप होती थी, जीप में आर्म्ड गार्ड्स होते थे हमें स्कूल छोड़ने और लाने के लिए और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि अकेले कहीं नहीं जाना. तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो नहीं जिया बट पर्सनली मैं खुद उस रीजन में रही हूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू दिस ताकि आप इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझ पाएँ जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं. और इसके अलावा आज इतने सीनियर एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं दैट आई वुड वांट कि वो हमसे इस टॉपिक के बारे में बात करें. आई ऑल्सो हैव अ रिक्वेस्ट. मेरे जो क्वेश्चंस हैं मैं ऑफ कोर्स एड्रेस एक ऑफिसर को करूँगी पर आप तीनों ही इतने डिस्टिंग्विश्ड हैं कि प्लीज़ जस्ट फील फ्री टू आंसर व्हाटएवर क्वेश्चन यू वांट टू. सो वुड जस्ट लाइक टू से दैट. हाँ अच्छा हाँ जी आलोक साहब कुछ कह रहे हैं. कर रहा है सर कर रहा है. आवाज आ रही है उसकी? आप बोलिए ना आवाज. आलोक से आप ये लो. हेलो. हाँ मैं माइक के लिए कह रहा था ये माइक काम नहीं कर रहा है. एक्चुअली द फैक्ट इज दैट इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है जितनी अनुपमा की है. इत्तेफाक की बात देखिए अनुपमा, अशोक, अनिल और आलोक सभी का नाम आ से शुरू होता है. टीम. And I think in the alphabetical order we should have come first of all. Anyways, this is not a bad time to start talking. Talking about the terrorism in Tarai, luckily we can see that we have already seen the back of it. However, one must acknowledge that it depends entirely on what is happening somewhere else. The terrorism in Tarai was also related to what had happened in another state. And thanks to officers like KPS Gill and officers like Ribeiro and the fantastic police force of Punjab of that time, they fought the terrorists tooth and nail. So the militancy which was being witnessed in that state had shown signs of dissipating or had actually dissipated completely. And so these people who were armed and had become used to committing crime, and they saw another day coming for them to prosper, thought of going to other areas where they could find
a possible shelter for the time being. And this is what happened at that time in the 1990s, early 90s. When they left Punjab, they found some kind of protection, if I may say so, maybe incorrectly to some extent, in these areas which are known as Tarai. So starting from this state, going westwards, going eastwards, the entire Tarai area has a very strong population of Sikhs. So they thought that Sikhs will support us, will help us, will give us protection for the time being. But when they came here and saw the prosperity of the community, they thought there was a lot more to be gained here. So that is how we started seeing the development of the crime that we collectively called militancy. But there are many aspects of it. As we go on, we'll come up with them. Exactly. Anil Raturi sir, will you like to add to this? Mr. Lal has very well sort of given the backdrop to the whole issue. I would just add one thing, because there are very young people sitting here behind, that you are now living in a country which is very relatively prosperous compared to what it was when we were young. And if you look at the global scenario today, you will see many nations which were good, doing well, and suddenly they just collapsed. So this, the order in society is something which everybody has to work towards. And it's something like what happened in Syria. Or, I mean, you have a bank balance your parents have a bank balance in the bank, and suddenly the system collapses and the people are leaving, running away from the country. You have nothing because everything is lost. That all in the context of terrorism, insurgency, and things like which sort of completely erode the writ of system. Now, in that backdrop, what Mr. Lal mentioned, that there are very few examples in the world where terrorism or insurgency has been defeated successfully. Very few examples. Punjab, for instance, Tripura, Sri Lanka, IPAKF. Otherwise, generally, the insurgency has always prevailed. So in that backdrop, our Tarai was affected of Uttar Pradesh at that time, and part of Uttarakhand also, which was part of Tarai. And the young people who obviously were not at that time, you were not born, the young students and young ladies and gentlemen sitting behind. My request would be to follow the next 15-20 minutes about what happened, so that, as they say, those who don't learn their lessons from history are condemned to repeat them again and again. Ashok ji, will you like to add anything to that? सर ने काफ़ी बड़ी बात बोली. मेरे जस्ट प्रेडिसेसर रहे अनिल रतूड़ी सर, फॉर्मर बॉस एंड डीजीपी. तराई का जो आतंकवाद है, उसको अगर हम बड़ी बैकग्राउंड में देखें तो बड़ी बैकग्राउंड ये है कि 1971 के वार के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि वो इंडिया से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता. 47 में उसने ट्राई किया था कश्मीर, फिर 65, 47 के वार की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल है, कुछ पाकिस्तान, हमारा कश्मीर का हिस्सा उधर है, कुछ इधर है, फिर 65 और फिर 71. तो 71 के बाद उन्होंने सीधी लड़ाई की पॉलिसी को डंप कर दिया और उन्होंने प्रॉक्सी वार की पॉलिसी को अपनाया. हम सभी जानते हैं ISI, और उनका डिक्लेयर्ड मोटो था ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स. इंडिया में इतने छेद कर दो कि वो अपने आप ही खून निकल के खत्म हो जाए. तो इस प्रॉक्सी वार की पॉलिसी का फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था टेररिज्म इन पंजाब. 80s में शुरू हुआ तो 7-8 साल लगते हैं एक ऑपरेशन को करने में. उसके पीछे बाकी जितने भी बैकग्राउंड रही हो, तो ओवरऑल बैक में कौन था? ISI. अचानक रातों रात इतनी AK-47 थोड़े आ जाएंगे देश में, कहां से आएंगे? उन दिनों फेंसिंग नहीं थी बॉर्डर पे.
तो इतने सारे वेपन्स आ गए, इतने सारे टेररिस्ट पैदा हो गए, सब वेल ट्रेंड हो गए, सब उनकी ट्रेनिंग बॉर्डर पार थी, वेपन्स बॉर्डर पार से आ रहे थे। और फिर हम सबने वो दौर देखा जो जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा अभी अनुपमा जी ने की। तो ये दौर बहुत खतरनाक था और मेन तो पंजाब में ही था, उसका कुछ हिस्सा स्पिल ओवर जो है तराई, यूपी की तराई को भी फेस करना पड़ा। तो ये आज का सेशन तराई के आतंकवाद पे है। तो तराई का जो टेररिज्म था, ये स्पिल ओवर था पंजाब का, वहाँ से लोग भाग करके यहाँ पे आके शरण लेते थे और वो इम्पैक्ट उसका जो है यहाँ पर था। उस इम्पैक्ट का एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। मैं एएसपी इलाहाबाद था, फर्स्ट प्रमोशन पे मेरा पोस्टिंग हुआ एडिशनल एसपी नैनीताल। आईपीएस ऑफिसर्स को शुरू में असिस्टेंट एसपी किया जाता है, कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि एएसपी हो एडिशनल एसपी, नहीं, हम लोग सहायक पुलिस अधीक्षक होते हैं, फिर प्रमोशन पे अपर पुलिस अधीक्षक। तो आई थॉट कि बहुत बढ़िया हो गया, मैं तो नैनीताल की वादियों में घूमूंगा। मैं बरेली स्टेशन पे उतरा, मैं आगे पीछे 2 फुल प्लेटून एस्कॉर्ट, पायलट एस्कॉर्ट। मैं बड़ा हैरान कि एसपी को इतनी सारी एस्कॉर्ट कब से मिलने लग गई भाई। तो जब उन्होंने मुझे ला करके पंतनगर के गेस्ट हाउस में छोड़ा, तब मुझे समझ आया मेरा हेडक्वार्टर नैनीताल नहीं है, रुद्रपुर है। जो तराई के जितना भी एक्सट्रीमिज्म तराई ने देखा 10 साल, तराई में पीक रहा 84 to 94, these 10 years were peak of terrorism in तराई। उसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर जो है वो रुद्रपुर था। So I was supposed to be SP operations of Nainital district of Tarai, that part of Tarai which was under Nainital district। और मैंने एक चार्ट बनाया था, पूरी स्टडी की थी। अकेले नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 100 आतंकवादी घटनाएं हुई और जो गैंग चार्ट बनता है पुलिस का, उसमें 44 गैंगस्टर थे, 44। और सबसे बड़ा कांड था उनका अक्टूबर 91 में रामलीला में ब्लास्ट, रामलीला ग्राउंड में, जिसमें 71 लोग मरे थे, 71, वन सिंगल इंसिडेंट। सो इट वाज दैट डेंजरस, बट बाय गॉड्स ग्रेस और देश को, जैसा लाल सर ने कहा, बड़े अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स मिले पंजाब में, केपीएस गिल सर और बाकी सब, हम लोग तराई में सबने मेहनत किया। फाइनली जो है वो आतंकवाद 0 पे आ गया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अब हम सबको इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत बेटर नॉलेज हो गई है, उन सबको भी जो उस टाइम पे आप बहुत ही छोटे थे और वर नॉट बॉर्न। एंड आई थिंक अभी इट्स द राइट टाइम फॉर मी टू टेल ऑल दीज पीपल, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे दैट दीज ऑफिसर्स हु आर सिटिंग विद अस are actually those officers who genuinely put their life at risk, fought those terrorists and wiped it out. So I think they do deserve a lot of applause for that. Thank you so much to all of you. It's very easy घर पे बैठ के movies देखना on terrorism and all that, but to be out on the field and fight it out is a different game altogether. Thank you so much. And so you want to add something or can I move on? Okay, okay. Okay, sir, now to all of you, my next question is, अब हमें understand, we have a good understanding of what was happening. उस टेररिज्म को फाइट करने की प्राइमरी स्ट्रैटेजीज क्या थी जो अडॉप्ट करी, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल रहा? अनुपमा, कुछ सच्चाइयाँ हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता। उनमें से एक सच्चाई ये है कि जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ मिलिटेंसी का दौर, तब यहाँ की पुलिस को कुछ आइडिया नहीं था कि इस अपराध के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, साजो सामान कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग का वक्त नहीं था। वही कांस्टेबल जो उससे पहले किसी जेब कतरे को पकड़ रहा था, यह कहा कि वो बिग साउंडिंग नेम से डील करने लगा। सो देयर वाज अ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड वी वर सर्टेनली नॉट ट्रेन्ड टू डील विद हार्डन्ड मिलिटेंट्स। We could deal with hardened criminals of other kinds. The difference between a militant and other criminals lies in one basic fact. The militants are driven by a certain ideology. That ideology may or may be the basic reason to start it, but then it becomes a habit. Maybe it becomes a thrill for some.
Maybe it becomes an expression for some, a source of identity for some. So a lot of people join this. This becomes some kind of a mela. But these people have the same intent of creating a terrorist situation. टेरर होगा तो उनकी पूछ होगी, और उनकी पूछ होगी तो हमारे पीछे सब लोग पड़ेंगे, वो चाहे आपके जैसे जर्नलिस्ट हो या चाहे सरकार हो। लेकिन दूसरी बात इसमें ये और कहनी है कि अगर पुलिस फोर्स तैयार नहीं था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था, कोई ये तैयार नहीं था मानने के लिए कि वास्तव में मिलिटेंसी आ गई। क्यों अनिल, आप मानते हैं इस बात को? और जिन लोगों ने यूपी पुलिस kept denying it for many years. एक सेकंड, जिन लोगों ने कहा कि मिलिटेंसी आई है उनसे सरकार नाराज हो गई, उनसे कहा तुम यहाँ से चल दो। मैं 2 जिलों में मिला के तकरीबन 2.5 साल रहा इन तरह के इलाकों में। तो पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अनिल भी बाद में एसपी बन के आए थे। तो जब मैं वहाँ एसपी था मुझे वो सिर्फ 7 हफ्ते बर्दाश्त कर पाए। उसके पहले मेरे जो प्रेडिसेसर थे एसपी श्रीवास्तव, उनके साथ भी वही हो चुका था, लेकिन सच्चाई तो लिखनी थी ना कागज़ पे। तो एसपी श्रीवास्तव और उस टाइम के डीएम थे, उन्होंने लिख कर भेजा सरकार को, मिलिटेंसी हो रही है यहाँ पर, टेररिस्ट पंजाब के आ गए हैं। हाँ। तो सरकार ने कहा कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, इनको हटाओ यहाँ से। सच्चाई सुनने को तैयार नहीं थे, therefore the messenger was killed. Then I was the next messenger who was killed again after just 7 weeks. The one who followed me adopted a scheme, which is the worst scheme that any police force in the world can adopt. उन्होंने एक रोज़ ये डिसाइड किया कि इस तारीख में बसों को रोक लिया जाए, किसी बस को रोक लिया जाए जिसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, उसको रोक के उसमें 3 हिस्सों में बांटा उसको, और एक ही रात में 10 या 11 लोगों को मार डाला। 10 या 11 इसलिए कह रहा हूँ कि 10 पहले गिने गए थे, एक बाद में मिला था, तो कुल 11 लोग। खुशी की बात यह है कि वो लोग जिन लोगों ने ये सब काम किया था, 57 लोग उसमें से आइडेंटिफाई हो गए सीबीआई इंक्वायरी के बाद। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का असर ये हुआ कि 47 ऑफ देम हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर लाइफ। ना ये तो हो गया, लेकिन उनका मेथड सही था या हमारा मेथड सही था कि हम पहले इंटेलिजेंस तो गैदर कर ले? वी हैड नो इंटेलिजेंस, नो रियल इंटेलिजेंस। माय प्रेडिसेसर हैड डन अ ग्रेट जॉब, but he was transferred despite the fact that he was ready to go get after them. I was transferred because I started asking for some help from the government. This is what happens. We are not ready, we are not prepared, therefore the police force fails, and therefore the government throws you out. The responsibility over, if ever, falls on just the shoulders of the police. Absolutely, absolutely. अच्छा क्या सर, आप बोलिए, माइक दो। अब ऑन है सर, ट्राई करना। ऑन है। अभी लाल साहब ने बहुत मेरे से पहले कुछ 1-2 चीज मुझसे पहले लाल साहब एसपी पीलीभीत रहे। अभी बात जैसे हो रही थी पंजाब में जो टेररिज्म हुआ, अगर जो हम डेट लगाएं तो 1983 में गोल्डन टेम्पल के बाहर एक डीआईजी थे अटवाल साहब, जिनको गोली से मार दिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, और उनकी बॉडी उठाने के लिए कोई पुलिस वाला वहां जा नहीं पाया, ये हालत थी। और फिर आप जानते हैं 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें फौज गोल्डन टेम्पल में गई। फिर 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, जो केपीएस गिल और एनएसजी ने करा था, जिसमें उसमें अंदर नहीं गए, लेकिन उन्होंने इट वाज लाइक अ सीज, और वहाँ पानी बिजली बंद करके फिर टेररिस्ट को मारा गया। उसका जो इफेक्ट, जैसा अभी लाल साहब ने बताया, वो हमारे तराई में हरियाणा के जो पूरा एक तरीके से आप लगाइए, अमृतसर से जो गन्ने का खेत शुरू होता है, वो वहां से पूरे पंजाब, हरियाणा, हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर और जहां तक तराई उत्तर प्रदेश का जाता है, आज हमारा उत्तराखंड का भी, ये गन्ने के खेत में आप वहां से चलें तो सीधा इस एक्सट्रीम लखीमपुर खीरी तक आप निकल सकते थे।
तो ये सारा जो इफेक्ट उसका यहाँ आया, और जैसे अभी हालात बताए तो करीब लेट 80s में ये हमारे तराई में इसका इफेक्ट आना शुरू हुआ। उसका अगर जो आप एक ट्रेंड को देखें, जो सिख टेररिज्म था उस जमाने का, तो 1991 में अपने पीक पर पहुंचा, 1991 में अपनी पीक पर पहुंचा, और फिर 1992 में, मैं उसका नाम भूल गया, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था जो वहां मारा गया, और केपीएस गिल साहब दोबारा से वहां जब बने, और फिर 1992 में पंजाब में इलेक्शन हुआ, उसमें अधिकांश लोग वोट डालने नहीं गए, बहुत कम लोग गए, लेकिन जो एक लेजिटिमेसी चाहिए डेमोक्रेसी में उतनी वो सरकार बनाने योग्य वहां सरकार बन गई, और बेअंत सिंह साहब वहां के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद पंजाब में जो केपीएस गिल साहब आर्मी और उसके भीतर जो एक तरीके से उसको टर्न अराउंड किया, तो उसका लाभ इस तरफ भी हुआ। हालात हमारे तराई में ये थे, जैसा अभी अशोक कुमार साहब ने बताया, यहाँ हमारा उधम सिंह नगर का पार्ट जो था, मैं पीलीभीत में था, आप भी पीलीभीत में थे, खीरी, रामपुर, ये जितने जिले सारे, इनमें सब में टेररिस्ट घटनाएं होती थी। एक घटना में पीलीभीत में 29 लोग मारे गए, एक ही, बच्चे औरतें सारी। एक घटना में 14 लोगों को एक साथ मार दिया, एक घटना में 13 लोगों को एक साथ मार दिया। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर लोग तो पब्लिक के मारे गए। पीलीभीत जनपद की बात बता रहा हूं जहां हम एसपी थे, और वहां थाना अध्यक्ष हजारा था, उसकी गाड़ी उड़ा दी, वो मर गया। इंस्पेक्टर पूरनपुर पूरे ऑलमोस्ट 5-6 हजार आदमी के साथ कोमिंग कर रहा था जंगल में, उसको मार दिया। एक डिप्टी एसपी यादव थे, वो आपके खटीमा साइड में उस समय वहां उनकी पूरी जिप्सी उड़ा दी थी, वो चले गए। हालत ये थी जिले की, जब मैं 93 के जनवरी में मेरी पोस्टिंग पीलीभीत में हुई थी, और वहां ऐसी पोजीशन थी, प्रकाश सिंह उस समय डीजीपी थे यूपी के, आपने शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने मुझे न्यू ईयर के दिन मुझे बुलाया और कहा कि आप जाएंगे पीलीभीत, क्योंकि वहां उस समय 29 लोग मारे गए थे। और ये था कि उसके बाद एक एसपी का पोस्टिंग हुआ था जो गैलेंट्री मेडल वाले थे, लेकिन वो अस्पताल में दाखिल हो गए जाके। ये स्थिति थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम जाओगे तो बताओ, नहीं तो मैं तब सरकार से बात करूंगा, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। बस जो है 5 बजे के बाद नहीं चलती थी रोडवेज की, रेलवे ने अपनी रेल चलानी बंद कर दी थी उस जिले में, और जो पुलिस का जो पैरोकार है, हर थाने से जो कोर्ट आते हैं लोग, सिपाही जो कोर्ट के प्रोसेसेस को करते हैं, वो बस में प्लेन क्लोथ्स में आते थे। हर थाने में ये स्थिति थी कि 5 बजे थाना बंद हो जाता था, और उसके छत पर लोग चले जाते थे एलएमजी लगाकर। जिले में जितने पूरनपुर, अगर जो आपने देखा होगा, वहां बहुत सारी शुगर मिल और राइस मिल्स हैं, करोड़ों, ये मतलब बात आ रही है लेट 80s और 90s की, तब 1-1 करोड़ की फिरौती के लिए लोग किडनैप होते थे, और लोग जो बड़े बिजनेसेस वाले थे सब भाग गए वहां से छोड़ के। और एक प्रकार से वहां कोई मंत्री, कोई पॉलिटिशियन, कोई और सीनियर ऑफिसर उस जिले के इर्द गिर्द नहीं जाता था, ऐसी स्थिति थी। तब वहां मुझे भेजा गया था, और जब मैं गया था तो जैसा अभी अशोक कुमार साहब ने कहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा, मैं लखनऊ में एसपी था, और वहाँ से मुझे सडनली वहाँ भेज दिया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो हालत ये थी कि जो आपने तो देखा है वो बंगला, जो एसपी का बंगला था, करीब मेरे ख्याल से 8-10 एकड़ का था, उसमें हर 20 गज पर एक अलार्म लगा हुआ था, और एक कंपनी स्ट्रेंथ यानी कि करीब 100 से ऊपर सिपाही केवल एसपी के रेजिडेंस के प्रोटेक्शन में थे, और सारी लाइटें लगी हुई थी। उसका कारण ये था कि जो 2 संतरी माउंटेड होते थे, वो बाहर जो बंगले के थे उनको भी मार दिया गया था। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उस घर में पहुँचा, बड़ा खूबसूरत मकान है वो, और मेरे ख्याल से यूपी पुलिस के अच्छे मकानों में से एक है। बाहर बैठे हुए थे हम लोग, मौसम सर्दी का था, धूप का मज़ा ले रहे थे। मज़ा क्या ले रहे थे, वो संडे होने के बावजूद मैंने मीटिंग बुलाई थी अपने सारे ऑफिसर्स की। मानस यहाँ बैठे हैं, उस वक्त बिल्कुल छोटे से थे, कुछ ही महीने के, 3 महीने के शायद थे। तो इनको मैंने थोड़ी देर सुबह गोदी में घुमाया, ये सोच के कि पता नहीं सारे दिन कब मुलाकात हो।
उसके बाद मीटिंग शुरू होनी थी. I was conscious that other officers had gathered, the meeting had to be held. So I sent him in. And as I advanced towards the point where the officers were sitting and waiting for me, there was some movement across the boundary wall. वो बहुत लंबी बाउंड्री वॉल जो सामने पड़ती थी, उसके पास एक गोला सा बना हुआ था जिस पे अक्सर बैठा करते थे. तो उस तरफ जब मैं जाने लगा तो वो मूवमेंट कुछ दिखा, लेकिन I didn't realize that that could be very dangerous. As I was about to sit in the seat, which I thought was safe, I heard a shot. And as luck would have it, there was a man who came from behind. वो मेरे ऊपर कूदा और उसने मुझे वहाँ नीचे गिरा दिया. उसके इस एक्शन की वजह से मैं उस शॉट से बच गया. I have written a book about this which will come to you early next year. उसमें सब मैंने पूरा किस्सा बयान किया है. और वो जो हुआ, वो आदमी कौन था, उसने मुझे ऐसे क्यों बचाया, उसने मुझे आगे चल के क्या मदद की, how he was instrumental in sort of giving us certain inputs, what was his background, वो सब बहुत मज़ेदार एक बातें हैं, वो किताब में आप पढ़िएगा. लेकिन this is how it was. So it was decided on that morning that at least the SP's house should be better protected. So we started making those embankments and all to save ourselves. Exactly, like I said, sir, आप लोगों ने अपनी और अपनी families को बहुत बार risk पे डाला है, so that all of us can stay safe. So as well, I think a big salute to every cop and every man who fights so that the others can be safe. Big salute, genuinely. Thank you. अमर आप आगे आ जाओ, हमारे बैचमेट अमर पांडे जी हैं बेंगलोर कर्नाटक. आगे आ जाओ, फ्रंट रो में आ जाओ. Welcome, sir. We are very happy to have you with us. Thank you for joining us. So आगे continuing with the session. आगे बढ़े, हाँ जी. अशोक सर, आपने अपनी बुक में भी टेररिज्म इन तराई और कैसे वो वाइप आउट हुआ उसके बारे में बात की है, जिसमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट विच इज़ वेरी नोटेबल इज वो एनकाउंटर वाला इंसिडेंट, एंड वी वुड रियली वांट टू नो मोर अबाउट इट. जो मैंने पिछली बार जोड़ा था उसकी कड़ी में एनकाउंटर के बैकग्राउंड में मैं 2-3 मिनट लूंगा, फिर आप समझ सकते हैं पूरा माहौल, तब समझ आएगा. जैसे मैंने कहा, जब हम ज्वाइन करे तो आगे पीछे एस्कॉर्ट लगता था, एक प्लाटून चलती थी. सर ने कहा एक कंपनी एसपी के घर पे रहती थी, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते थे, कोई पूरा बाजार सन्नाटा, कहीं कोई बाहर नहीं निकलता. तो मैं शुरू में गेस्ट हाउस में रुका. तो पहले दिन सुबह वहाँ पे जो सर ने बात किया, डिप्टी एसपी थे मिस्टर यादव, यंग बैच के थे, 2-3 साल की सर्विस रही होगी. उनकी विडो आई और उनका फादर, साथ में गोद में 1 साल का बच्चा, 1 या 2 साल का. तो उन्होंने कहा कि इसको सरकारी नौकरी लगवानी है. देन वी वर शॉक टू नो द इंसिडेंट कि वो डिप्टी एसपी थे, उनकी जिप्सी को जो है उड़ा दिया गया था और 50-50 मीटर तक जो है बॉडी के पार्ट्स फैले हुए थे, पेड़ों पे लटके हुए थे. सो यू नो एनीवन वुड गेट टेरिफाइड. दैट वाज द सिचुएशन कि टेररिज्म का ये स्टेटस है. बट स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू द ग्रूव. मेरा जो पोस्टिंग हुआ था वो 25 जून 93 को हुआ, बिकॉज 24 जून 93 को उसी बाजपुर में जहाँ ये डिप्टी एसपी की जिप्सी को उड़ाया गया था, वहाँ एक एनकाउंटर हुआ. पुलिस ने टेररिस्ट को घेरा और 4 लोगों को गन्ने के खेत में घुसते देखा. तो एनकाउंटर हुआ, 2 लोग मारे गए उनमें से, तो 2 लोग गन्ने के खेत में रह गए. तो रात भर घेरा डाला गया, 1000 से ज़्यादा पुलिस आ गई, सीआरपीएफ भी आ गई, सब आ गए. अर्ली मॉर्निंग टेररिस्ट ने एक चांस लिया सनराइज से पहले 4-5 बजे की, ये इस टाइम पुलिस सो रही होगी या घेरे वाले जो है थोड़ी बहुत आधी निद्रा में होंगे. तो वो उन्होंने चांस लिया, AK-47 से बस्ट फायर मारते हुए निकल गए. उसमें 2 पुलिस वाले मर गए. ठीक है, तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ फेल्ड एनकाउंटर कि जिसमें 2 पुलिस वाले मर गए. तो एसपी का ट्रांसफर हो गया, 9 दिन बाद एसएसपी का भी हो गया. तो उस एसपी का जो ट्रांसफर हुआ उसकी जगह आई वाज पोस्टेड. सो फॉर मी दैट वाज द टारगेट कि इस टेररिस्ट गैंग को जरूर पकड़ना है. वैसे जो सर ने ईयर वाइज बताया, 91 वाज द पीक और 92 से ढलान थोड़ा शुरू हो गया था. 92-94 वाज द एंड ऑफ टेररिज्म, पंजाब में भी और तराई में भी. सो आई वाज देयर 93-94, इस फेज में था.
तो मेरा जाते ही इसका मतलब पहला टास्क था कि इस टेररिस्ट गैंग को जरूर पकड़ना है। और वही गैंग था जिसने रुद्रपुर में रामलीला में ब्लास्ट किया था, 71 लोग मारे थे। इसको बोलते थे भिंडरा वाले सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान, BST के। स्वर्ण सिंह जवांदा इसका हेड होता था। तो मैंने ये हुआ कि भाई ये टास्क मिला है तो इसको पूरा करना है। सो यंग ऑफिसर भी कुछ बैठे हैं, 6 महीने तक हम तराई की खाक छानते रहे कि इसको जरूर पकड़ना है। तो हमने जो फील किया शुरुआती दौर में कि हम जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी वो 1 या 2 दिन पुरानी होती थी कि आज यहाँ है, यहाँ रुके थे, यहाँ से खाना गया था, इस गन्ने के खेत में थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कहा इसको कैसे इस टाइम गैप को कम किया जाए, तभी सफलता मिलेगी। तो व्हाट आई रियलाइज वाज कि टाडा होता था उन दिनों, TADA, टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, और वो काफी उसको बाद में काला कानून कहा गया और खत्म कर दिया गया। तो टाडा के तहत जो आदमी किसी को शरण देता है टेररिस्ट को, वो भी टेररिस्ट है उसी लेवल का। तो पुलिस को एक हथियार मिल गया जिसका यूज कम हुआ, मिसयूज ज्यादा हुआ, ठीक है, दुरुपयोग ज्यादा हुआ। टाडा के नाम पर जो है पुलिस ने ऐसे लोगों को बंद करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रुके थे टेररिस्ट, तुमने तो खाना पहुंचाया था, और उनको जेल भेजना शुरू, उसके नाम पे दलाली भी शुरू हो गई। तो मैंने पब्लिक मंच से बोला कि जो शरण देगा उसको हम जो है इस तरह जो जबरदस्ती शरण देते हैं उसको हम जेल नहीं भेजेंगे, पब्लिकली बोल दिया। इट वॉज ए वेरी बिग एंड बोल्ड स्टेट, बिकॉज मैंने जो स्टडी किया साइकोलॉजिकल कि वो जो टेररिस्ट को शरण दे रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं दे रहे, वो तो AK-47 के दम पे दे रहे हैं। कौन चाहेगा पंगा लेना? तो इसलिए हमने कहा नहीं, आप हमें सूचना दो, आप हमें बताओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। तो पब्लिक मंच से जब ये बोलना शुरू किया उसका इम्पैक्ट है, तो हमें सूचना और जल्दी आने लगी। तो एक दिन सुबह जो है, बात है करीब 8:30 बजे की, रुद्रपुर में सो रहा था और हमारे बेडरूम में AK-47 टंगी रहती थी, क्योंकि सर ने बताया गाड़ी में भी हमेशा साथ रहती, जाने कहाँ से गोलियां आ जाए। तो फोन आया कि जो है जिसको आप ढूंढ रहे हो गैंग लीडर, वो बगल के गन्ने के खेत में, यहाँ आपके घर से 9 किलोमीटर दूर, उसने लोकेशन बताया, वहां छुपा हुआ है। तो मैं समझ गया, बात करने से ही पता चलता है कि रियल है। तो हमने अपनी गार्ड उठाई, जो गाड़ी में रहते हैं उतने, और जो हमारे घर की गार्ड में होते, हमने रिड्यूस कर दिया था, पब्लिक से डर कम हो, तो पूरी प्लाटून कंपनियां हटा दी थी। तो मैं 4 लोगों को लेके वहां पे पहुंच गया और हमने उसको गन्ने के खेत को चारों ओर से घेर लिया। और वो सूचना इसलिए आई थी कि there were 4 terrorists. 2 of them were sent to रुद्रपुर। उनके पास भागते भागते 6 महीने से भाग रहे थे, पैसे की कमी हो गई थी कि हम किसी बड़े राइस मिलर के बेटे को किडनैप करेंगे। 93 में 50 लाख, 22 जनवरी 94 की बात है, तो 50 लाख रुपया फिरौती मांगेंगे तो हमारा सारा मैनेज हो जाएगा। तो उसके लिए रात को इन्होंने रात के 11 बजे 2 बंदों को भेजा मोटरसाइकिल देके कि रुद्रपुर जाओ, सुबह सुबह जब बाथरूम या जहाँ जाता, खेत में अपने मिल पे जाता, उस टाइम उसे उठा के किडनैप करके ले आओ, राइस मिलर के बेटे को। मुझे तो नाम भी बताएंगे, पर यहाँ नहीं बताएंगे। तो उन लोगों का खाने पीने पे झगड़ा हो, जो दोनों आए, और उस झगड़े में एक जने ने बोल दिया, उसकी बहन के बारे में कोई कमेंट कर दिया, दूसरे टेररिस्ट की सिस्टर, उसने उठा के उसे चाकू मार दिया। सो वन ऑफ द टेररिस्ट किल्ड द अदर। नाउ ही वाज वरीड कि अब मैं गया वहां पे बिना किडनैपी के, रैंसम के, और ये पता चल गया गैंग लीडर को कि इसने दूसरे टेररिस्ट को मारा, तो मैं भी गया। तो वो किसी माध्यम के थ्रू उसने मुझे सूचना पहुंचाई। सो in one of my hands was the terrorist and another hand was the AK-47. So we started the operation, but we couldn't have taken the risk कि हम 4 लोग फायरिंग शुरू करें। हमने पूरे जिले से फोर्स मंगाई, बॉर्डर के जिलों से फोर्स मंगाई। उन दिनों पहले कोई नहीं जाता था, सबसे पहले हम गए। एनीवे 1-2 घंटे में फोर्स आई, 3 घंटे एनकाउंटर चला, 3000 गोलियां चली, यस 3000 गोलियां चली। फाइनली वी सक्सीडेड इन दैट एनकाउंटर।
आपको डर नहीं लगता आप लोगों को? आपको सर मतलब डर लगता ही नहीं कभी? वो नहीं बोले। I'm sure these two gentlemen share my feeling. When you are actually in the middle of all this action, कतई डर नहीं लगता. याद ही नहीं आती. I don't know what happens. एक total numbness to the sentiment of डर. By the way, इन तीनों लोगों को आप देख रही हैं. मैं 1991 जनवरी में वहाँ पहुँचा था. 2 साल बाद ये जनवरी में उसी जगह पहुँचे. उसके कुछ साल बाद अशोक उन एरियाज में एक्टिव हुए. तो मुझसे जो कहानी शुरू हुई थी, जब लोगों ने कहा था कि अब टेररिज्म अभी नहीं है, उस टाइम से बाद तक सबने स्वीकार किया कि हाँ टेररिज्म है, और उनके टाइम तक करीब करीब खत्म हो गया. So fascinating. I mean, seriously, this is so fascinating. It's a wonderful trail, Amazing. isn't it? I mean, seriously. हाँ जी सर. जो अभी आपको अशोक ने तो एनकाउंटर की बात बताई, और उन्होंने भी बोली और आलोक साहब ने भी बोली. इसमें कुछ पुलिस की गलतियां भी रही जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट होता चला गया. एक तो शुरू में जब हम देखेंगे पंजाब में जब ये शुरू हुआ था, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं बेसिकली किसी भी टेररिज्म को शुरू करने में, कहीं भी इंसर्जेंसी जो होती है. और उसमें जब ये शुरू हुई थी तो कुछ उसमें एक्चुअल में, चाहे वो मिसगाइडेड ही सही, कुछ एक्चुअली में शरीफ किस्म के ईमानदार जो धार्मिक लोग थे वो भी इसमें एज टेररिस्ट दे एक्चुअली बिलीव्ड इन द कॉज. ऐसे लोग शुरू में आए थे और उस समय कम्युनिटी का सपोर्ट था उन्हें. लेकिन जैसा अभी और दोनों अधिकारियों ने बताया, धीरे धीरे उसमें कुछ लोग ऐसे सम्मिलित होने लगे जो अपने अनएम्प्लॉयड हैं या उनकी प्रवृत्तियां आपराधिक हैं, जो उससे अपना एक तरीके से उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वो भी सम्मिलित होने लगे. पुलिस प्रिपेयर्ड नहीं थी, पहले पंजाब में भी नहीं थी. 1983 में जब अटवाल डीआईजी को गोल्डन टेम्पल के बाहर मार दिया गया था, सारी पंजाब पुलिस के पास 303 की राइफल थी. और ये सारी AK-47 जो 1979 में सोवियत रशिया जब अफगानिस्तान में घुसा, तो वहां से जो सारी कालिशनॉव जो हैं पाकिस्तान के जरिए इन टेररिस्ट को ISI के माध्यम से मिल गई. तो पुलिस तैयार नहीं थी. उत्तर प्रदेश में तो जैसा अभी लाल साहब कह रहे हैं, ये मानने को भी शुरू में तैयार नहीं थे कि यहाँ आतंकवाद है, तो वहां भी तैयार नहीं थी. तो नेट रिजल्ट क्या था? फील्ड पर जब घटना कोई होती थी, कोई एक्चुअल में सूचना आती थी, पुलिस मौके पर पहुंचती नहीं थी एकदम से. और जब पहुंचती नहीं थी तो जो घटना करते थे वो अपना जो भी टेरर फैला के चले जाते थे. उसके बाद पुलिस उसका कागज का पेट भरने के लिए जाती थी और उन लोगों को पकड़ती थी जिन्होंने खाना दिया. अब वो नहीं, अब खाना मांग रहे हैं तो वो मार देंगे, वो तो वो उनको बंद कर रहे हैं, या उनको वो कर रहे हैं जिन्होंने रात में सोने की जगह दी, वो टाडा में बंद हो गए और असली टेररिस्ट भाग गए. तो जो सपोर्ट था पब्लिक का वो पुलिस से और चला गया. तो जब हम गए वहां, अभी तो आपने एनकाउंटर की बात करी, हम लोगों पे भी बहुत गोलियां चली और एनकाउंटर्स भी हुए, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे. मैं ये बताऊंगा आपको कि विश्वास प्राप्त करना कितना जरूरी है. जब मैं वहां गया तो मैंने ये पाया, जब जेल में गया तो मैंने देखा कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई महिला, ये टाडा में बंद हैं और जो टेररिस्ट हैं वो सब घूम रहे हैं. तो हमने एक पहले तो सारे गुरुद्वारों में जाके एक ऑपरेशन गुडविल चलाया कि आप हमें सूचना दीजिए, गुमनाम दीजिए, कैसे भी दीजिए, आपका नाम नहीं बताएंगे. कहीं खेत में कोई हथियार दबे हुए हैं, आप हमें बता दीजिए, हम आपका नाम नहीं बताएंगे, हम आपको बिल्कुल बीच में नहीं लाएंगे. और सबसे बड़ी बात, जो जेल में लोग थे उनमें जो 60 साल, 70 साल, 80 साल का आदमी भी था, एक महिला भी थी. तो ऐसे 11 लोग मैंने छांटे जो टाडा में बंद थे. और मैंने उस समय डीआईजी बुआ सिंह साहब थे, जो पहले 83 में जब वो घटना अटवाल साहब की हुई थी तो उनको यूपी से एसएसपी अमृतसर बना के भेजा गया था. तो वो मेरे डीआईजी थे, उनसे मैंने बात करी और एक बाकायदा लिखित में उनको मैंने दिया कि मैं इन 11 आदमियों की बेल को अपोज नहीं करूंगा, इनको बाहर आने दो, जो कि कोई रिस्क लेता नहीं इस टाइप का टाडा के समय में. बोल्ड स्टेप था सर. तो वो 11 लोग मैंने बाहर बेल कराई उनकी अपने आप, जो पुलिस ने बंद करे हुए थे, और उससे काफी लोगों का विश्वास हुआ.
ऐसे करीब 50 गुरुद्वारों में जाके उनसे मिले, और जो ऐसे टेररिस्ट थे, तब तक टाइड वाज टर्निंग अराउंड इन पंजाब आल्सो. सो द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड ऑफ दैट प्लेस, एक था सुखदेव सिंह चीना, छोटा चीना बोलते थे उसको. उसने 29 लोग, 13 लोग, 14 लोग का जो मारा थे, उसमें वो लीडर था, और वो भाग गया था पंजाब. और पंजाब में उस समय ऑपरेशन नाइट डोमिनेंस चल रहा था केपीएस गिल साहब का. तो रात में वो एक खेत के पास सोए हुए थे और वहां पुलिस पहुंच गई. तो एक जो लड़का था उसमें, वो वहां था, और ये जो सुखदेव सिंह चीना यहां से भागा हुआ था, ये अपना ही टू यूरिनेट ही वेंट इनटू द केन फील्ड. तो जब पुलिस आई तो ये गन्ने के खेत में था, और पुलिस उसको ले गई. तो उसके बाद वो तो मिला नहीं पंजाब में, जो जिसको ले गए थे. ये दौड़ के वापस यहां आया. इससे पहले बैकग्राउंड ये थी कि उनके जो पिताजी थे सुखदेव सिंह चीना के, उनके पिताजी, उनके भाई, उनके मामा, उनके चाचा को मैंने बुलाया अपने ऑफिस में, घर पे, बंगले ऑफिस, और उन्हें कहा कि ये गलत रास्ते पे चला गया है. इसने भले ही 100 से लोग ऊपर मार दिए हैं, लेकिन ये कानून अपना काम करेगा. हम इसके खिलाफ कोई भी गलत, जैसे पुलिस का होता है कोई गलत एनकाउंटर, ये वो सब नहीं करेंगे. इसको सरेंडर करा दो आप. जब उन्होंने, वो माने नहीं मेरी बात, वो चले गए. लेकिन जब वो घटना हुई वहां से, तो वो वापस फिर तराई में आया, और कहीं उसने संपर्क किया होगा अपने माता पिता से. तो एक दिन सुबह 11 बजे मैं ऑफिस जा रहा था, और उस टेररिस्ट के पूरे 5 स्टेट्स में हर थाने में फोटो था उसका. तो वो उसके, मैंने देखा गेट के बाहर जो है उसके माता, फादर, उसके भाई, चाचा, वो सब 4 लोग आ गए, और वो मुझे अलग से ले गए बात करने के लिए. उन्होंने कहा साहब आप तुसी कह रहे सी कि कुछ होने का नहीं है यदि हम ले आए तो. मैंने कुछ नहीं होगा, मैंने बैठा लिया. मैं तो एकदम समझ गया ये अब हो सकता है इसके कहीं उसमें है. तो वो गए कि हम लेके आते हैं, 3-4 घंटे में ले आएंगे. सारे जो रास्ते में बैरियर्स होते थे उस समय, तराई आप जो जानते हैं, हर बैरियर पर कम से कम 50 आदमी का फोर्स होता था वायरलेस के साथ, और हर गाड़ी चेक होती थी. तो उनका यह डर था कि वहां से लेके आए तो रास्ते में पुलिस ना मार दे आपके पास लाएंगे जब. तो मैंने उस दिन वायरलेस पे, उस समय टेलीफोन, ये लैंडलाइन भी काम नहीं करती थी, मोबाइल तो था ही नहीं, खैर लैंडलाइन भी काम नहीं करती. सेट पे सारे थानों को अपीयर कराया, बोला आज सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई चेकिंग नहीं होगी, सारे बैरियर खोल दीजिए. वो सारे बैरियर खोल दिए. करीब शाम को 4 बजे, उसको तो मैं पहचानता था क्योंकि सारे फोटो लगे हुए थे. वो गेट पर एक लिहाफ ओढ़े हुए सर्दियों में वो खड़ा था. तो अब मैं तब ऑफिस नहीं गया क्योंकि वो इतना बड़ा कैच था. दिन भर मैं उस लॉन में बाहर बैठा रहा बंगले के. वो गेट पर जब पहुंचे चारों उसके साथ, मैंने उसको देख लिया, संतरी, उसको पहचाना नहीं. मैंने आवाज लगाई अंदर आने दो. डर मुझे ये था क्या पता ये कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, कोई बात क्या कह सकते हैं. तो लॉन में एक कुर्सी पे मैं बैठा था, 9mm की पिस्टल मैंने अपने नीचे रखी हुई थी. एक पेड़ के पीछे मेरा AK-47 लिए हुए गनर था. मैंने उसको कहा ये मेरे पास आएंगे, यदि इन्होंने मुझ पे गोली चलाई तो ये वापस नहीं जाएंगे, तुम ये देख लेना, मैं तो चला जाऊंगा. वो आए और वो सीधा पैर में पड़ गया मेरे आके, और उसके बाद वो सरेंडर हुआ. आपको जैसे बताया टाडा में एक सेक्शन था, सेक्शन 15, confession recorded by a police officer is not admissible in court under the CRPC, in the law. It is not admissible. But in TADA, there was section 15 in which if the superintendent of police recorded a confession, it was admissible and would be used as evidence against him in court. So then I recorded his confession, and आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद सरेंडर की लाइन लग गई. मतलब सारे जो है सरेंडर होने लगे. और जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी चला गया 4 साल बाद, जब मैं हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैं गया था वहां पीलीभीत में, तो मैंने आपको हालत बताई. जब मैं 1 साल के बाद वहां से लौटा तो रेल चल रही थी वहां, बसें चल रही थी, सारे ऑलमोस्ट जो नाम के जो टेररिस्ट थे ऑलमोस्ट 31, वो सारे अकाउंटेड फॉर थे. और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर तो आप भी आज विकिपीडिया खोल लीजिए, मैं सुबह क्योंकि यहाँ था मैंने एक उस पर नजर डाली थी,
पंजाब के पूरे टेररिज्म में कम से कम 6-7 लाख आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री लगी हुई थी. At the peak of that movement, you know how many terrorists do you think would have been at the peak in terms of numbers? Any guesses? Only 6,000. जब मैं पीलीभीत गया था तो वहां फोर्स जो था लगभग 8,000 आदमी का फोर्स मेरे पास था उस समय एक जिले में. और वहां टेररिस्ट कितने थे? 37 टेररिस्ट थे जो एक्चुअल टेररिस्ट थे, जो मतलब वो थे. तो अगर जो एक बार सरकार की या किसी की रिट जब स्लिप करती है तो फिर हाथ से जब निकल जाती है तो फिर पब्लिक उस टेरर का नाम ही उस टेरर में आ गए तो जो सरकार की रिट है वो खत्म हो जाती है. थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सबको दिल से सलाम. सल्यूट टू ऑल ऑफ यू. एंड ये इतना सिग्निफिकेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बहुत लंबी बात हो सकती है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर पैनलिस्ट हु आर हियर, अब मैं और सवाल आप लोगों से नहीं करूंगी. एंड ऑडियंस में भी प्लीज, आई एम सॉरी, बट around 3 questions मैं ले पाऊंगी because of time constraints. So if you have any questions, you can raise your hand now. Sure, can somebody pass the mic to the lady and then I see hands there. अभी जब आप बात कर रहे थे तो आपने बोला गलत एनकाउंटर. So I'm very curious. I won't perhaps prod Ashok ji to answer it because he's still serving, but I can definitely ask the two of you, not getting into any controversy. But what is your take? आप क्या सोचते हैं गलत एनकाउंटर पर आपका क्या विचार है? I have absolutely no two opinions about it. I am fixed on one opinion, that a staged encounter, a fake encounter, an encounter which has been sort of orchestrated for the purpose of showing so-called good work, is absolutely unacceptable to me in any situation. But should there be a situation where you have no choice? For instance, he said that when those people came to me, I had it in my mind that they could be part of a conspiracy to attack me. Now, had that happened, it would have been certainly entirely plausible, acceptable, and correct to kill them in retaliation. There, the encounter would have been perfectly justified in the interest of law, in the interest of justice, as per the Constitution. I don't agree with the encounter that took place, for instance, in Hyderabad, when a lady was raped, and 4 persons were picked up and killed to show that these were the people who did it. And ultimately, a Supreme Court appointed committee decided that this was all fake. So I'm totally opposed to the idea of what is known as encounters, because that is what is loosely a word being used instead of fake encounters. Add to that. That's a very relevant question you asked, actually, because as he mentioned that just before he went there, perhaps was it after you, that incident about the 10, 11 people? Just after me. Just after you, yes. So in Pilibhit itself, where he was SP, I was SP, there was an incident in which now the Supreme Court has also finally agreed that it was an encounter. Therefore, those 47 people were sentenced to life imprisonment. Police people. There was a false encounter, which as per law has been proved in a court of law now, where these people were killed. Now, obviously, why were they doing it? They were doing it because they wanted to bring back that writ of the system which had been lost. There was no other interest. It was misguided, and maybe some people wanted some glory which was false. But the fact remains that it took away the credibility. It took away the credibility. We as people who are in charge of the law enforcement are creatures of law. Basically, all the powers that we derive are from law. If we ourselves start flouting that, then we become Frankensteins. But yes, having said that, and having agreed with him that my own view was also that if somebody is firing on you, you have the right to fire.
But if somebody has surrendered, then that's a surrender. Then the law takes its own course. But this is a normal situation. In Punjab, for instance, I'll just give you a 2-minute scenario, what happened there. The situation was so bad that the police, as I said in Pilibhit, it was like that. The police was also, in the initial period, half of its police had some sympathies on the other side because of that those idealistic reasons which were there. Then they were ill-equipped. Apart from that, what happened was that when the terror reached its climax and peak, when some people were arrested also, if they were not killed, if they were arrested also, they were taken to the court. The judge would not allow the person to be brought into his chamber because he was so scared. And the remand used to again go back to the jail. So no time, every aspect of the system's apparatus had absolutely collapsed, had absolutely abdicated of their responsibility. So now what was the choice? The choice was either you cede that state, to those people who were the machinations who were trying to do that, and two, all your liberal rights, fundamental rights and human rights and all, that can only happen if the state exists. So the state at the very inception has to exist. So I'm not saying that kind of a situation happened in Tarai, but Punjab was different. I think sir has, summarized very simply and in a very straightforward way. First point is कि फेक कोई भी चीज जो फेक है, चाहे वो एनकाउंटर हो या कुछ भी हो, that cannot be justified in a normal society. ये क्वालिफाई कर लीजिए. दूसरा, in a war-like situation, the rules of the game are different. Should be different, have to be different. Otherwise, you will not survive. Thank you. Thank you very much. Because of lack of time, हम अभी यहाँ पर सिर्फ एक question ले पाएंगे, but the officers will be, I think, around. I'm sorry, अगर और questions हो गए आप उन्हें personally पूछ लीजिएगा. One more question. So, okay, can we please pass on the mic to this gentleman? Very good evening to all gentlemen and ladies. Sir, मेरा सवाल ये है कि कल एक बहुत बड़ी सभा हुई राजधानी के बीच मैदान में. एक रिलीजियस लीडर आए थे, तो जो राज्य के मुखिया हैं सीएम साहब भी वही थे. एक कल उन्होंने एक टर्म फिर कॉइन किया है जो अक्सर हम लोग सुन रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, हिंदू राष्ट्र की कल्पना. तो जैसे सर ने अभी बताया स्टेट फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, तो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरे को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लगता है जब भी हम पॉलिटिकल थॉट की प्रिवेल करने की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं. लेकिन प्रियम्बल जस्टिस में सोशल और इकोनॉमिकल होने के बाद पॉलिटिकल जस्टिस के नेचर की भी बात करता है. तो राज्य के जो पुलिस के मुखिया हैं एक रिलीजियस स्टेट के बारे में और इस तरह का जो एक चीज़ें हो रही हैं उस पर आपका क्या चिंतन है वो जानना चाहता हूँ. देखिए ये बड़ा टॉपिक है और इस पे मैं इस स्टेज में कमेंट नहीं करना चाहूँगा. एंड आपका क्वेश्चन को आप करिए. बहुत सही है क्योंकि वो तो अभी कुर्सी पे बैठे हैं. मैं इस पे आपसे बोलता हूँ. देखिए ये प्रजातंत्र की, आप क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, ये हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि कोई भी आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है. आप भी कर रहे हैं, कोई और भी कर रहा है. सवाल आपने ट्यूशन की करी है, प्रियम्बल की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. आप कुछ भी लागू करना चाहें, आप भी कुछ लागू करना चाहें, उनको ना पसंद आए तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट डिसाइड करेगा, कानून डिसाइड करेगा. थैंक यू सो मच. विद दिस हम ये वाला Sorry. Can I ask a quick question? Yeah. I don't know if this is a valid question, but how does I'm from a armed forces background, my father was armed forces, but how does police work differently than army in dealing with terrorism, like Kashmir versus Terai? Do we have the time to answer this right now? Or one-on-one? एक मिनट में मैं बोल देता हूँ. देखिए पुलिस का रोल और आर्मी के रोल में कई जगह बहुत बड़ा
गैप है। आर्मी जो है बॉर्डर्स पर है और पुलिस अंदर है, राइट? जैसा मैंने बोला 71 के बाद सिर्फ एक वार हुआ है, वो भी छोटा सा 99 वाला। वार भी नहीं कहेंगे उसको, 1/10। तो पिछले 40-50 साल से आर्मी को बड़ा वो नहीं फेस करना पड़ा। पुलिस को रोज वार झेलना है, रोज, डेली इट्स ए वॉर ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट। तो पुलिस को टेररिज्म अगर किसी स्टेट में है, जैसे कि हमारे देश में 3 बड़े थिएटर माने जा रहे हैं, पंजाब के बाद कश्मीर हुआ, नॉर्थ ईस्ट आज़ादी के टाइम से ही है ऑलमोस्ट, और 70s के बाद नक्सलिज्म आया, वी ऑल नो अबाउट नक्सलबाड़ी एंड ऑल। तो ये तीनों थिएटर्स में प्राइमरी रोल पुलिस का ही है, प्राइमरी। फिर उसको असिस्ट करती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPFs, ठीक है। इन तीनों में से जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट है, वो चूंकि बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से, वहाँ आर्मी का भी रोल है। तो नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में तीनों ने कोऑर्डिनेट किया आपस में, आर्मी, CAPF और स्टेट पुलिस। और नक्सल एरिया में कभी आर्मी नहीं आई, ठीक है। वैसे ये बता दूं, तीनों थिएटर में पिछले 8-9 सालों में भयंकर सफलता मिली है। ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट तो 1/10 हो चुका है, कश्मीर भी 1/10 हो चुका है, और नक्सलिज्म 1/3 पे रह गया। दिस इज द रेट ऑफ सक्सेस। थैंक यू। Just one sentence, Nukma. Sure, sir. पुलिस और आर्मी जब अपने सामने वाले से डील कर रही होती है, तो इसमें एक बड़ा डिफरेंस नॉर्मली होता है। पुलिस जब डील करती है तो वो अपने सिटीजन से डील कर रही है, उनमें से जो लॉ ब्रेकर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और प्रोटेक्ट कर रही है उन लोगों को जो लॉ की इज्जत करते हैं। इन द केस ऑफ आर्मी, सामने जो है वो नॉर्मली दुश्मन है जिससे वो डील कर रहे हैं। सो यू मे बी डीलिंग विद समबडी फ्रॉम अनदर नेशन or some other identified entity which is known as dushman. And as he said, police की primary responsibility है, और army comes for the assistance of the civil administration at the request of the civil administration. तो वो एक अलग situation हो जाती है, वहाँ command civil की रहती है। Thank you so much. With that, we are ending the session. And I would just like to say one line कि आप लोगों ने हमें जितनी knowledge दी है आज about terrorism और अपने insights दिए, आप लोग कैसे fight करते हो, 2 चीज़ें बोलूँगी। I think हम सब as citizens ज़्यादा aware हैं about terrorism, जिससे हम inspired हैं और ज़्यादा empowered कि हम भी contribute करें to fight terrorism in our country. So I think we are going back with this thought. Thank you so much to all of you. Thank you. Shri, over to you. Thank you so much, very, very esteemed panelists and our dear moderator for the evening, Anupama. We really, really cherish your presence here. I would please request K. Vijay Kumar, sir, to come up on stage and felicitate our esteemed panelist, Anil Raturi ji. Thank you for your insights this evening, sir. Vijay Kumar sir is 75 batch, who was head of operation in the Virappan case, Tamil Nadu cadre. He was my boss also in CRPF. Thank you so much for being so patient and absolutely wonderful this evening, the audience members. A round of applause for all the accolades that we see collectively upon this panel. Thank you. With this, we are now headed towards the evening round of panels that are lined up for you. And with bated breath, I think the next session comes up, the making of a cult classic, Gangs of Wasipur. May I please request Zishan Kadri ji, Jamil Khan ji, and our moderator of the evening, Siddhant Arora ji, to make their way to the stage. Well, I take this opportunity to introduce them. Zishan Kadri, an Indian writer, actor, director, and producer who wrote the story and co-wrote the screenplay for the Bollywood crime genre film Gangs of Wasipur. He also acted in Gangs of Wasipur Part 2. He has also directed and produced the film Meratia.
Jameel Khanji, who's also with us this evening, a very talented and versatile actor, known for his roles in Gangs of Wasipur, Baby, and Gullak. The Crime Literature Festival welcomes Jameel Khan, widely known for his roles in several other independent film productions. We have today the moderator of the evening, Siddhant Arora, an actor, playwright, director, publisher, and bookseller. He is an alumnus of the Seagull School of Publishing and Drama School of Mumbai. Introducing Siddhant, who also happens to run the bookstore called Book World, one of the oldest running stores in Dehradun. Over to you, Siddhant. Hello. Hi. How many of us are here for this session? I've been waiting for it desperately since yesterday. Give it up for these two gentlemen right here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Both of them have been gracious enough to accommodate it today. And thank you to Jameel sir, who had to cut short a visit to Missouri. He was there visiting family, and thank you. So thank you to both of you. Thank you for taking it so well. I would like to start by asking Zishan bhai, जब लिखी थी सोचा था कि थिएटर वर्कशॉप में, एक्टिंग ट्रेनिंग में, राइटिंग ट्रेनिंग में गैंग्स ऑफ वासेपुर पढ़ाई जाएगी. मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि फिल्म कांस में सेलेक्ट हो जाएगी. और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं तो जब फिल्म बन गई थी, एडिट हो गई थी, तो अनुराग सर ने उसको कांस के लिए अप्लाई जब किया कि कांस में ये जाए, तो मैं ऐसे ही ऑफिस पहुंचा टहलते हुए, तो सर अकेले बैठे हुए थे अपने केबिन में. तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, सर बड़ा टेंशन में दिख रहे हो. कह रहे, अरे तुझे नहीं पता है, कांस भेजी, पता नहीं सेलेक्ट होगी कि नहीं होगी. मैंने, सर कांस तो सेलेक्ट हो जाएगी. अगर सिटी ऑफ गॉड और ऐसी फिल्में जो बनी है, तो मैंने भी फिल्म देखी है, ये कांस में सेलेक्ट हो जाएगी. कह रहे नहीं, इतना आसान नहीं है. तो उस पर थोड़ी सी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने, सर अगर कांस में फिल्म सेलेक्ट नहीं हुई ना, तो मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा. बोले, अगर तू इतना कॉन्फिडेंट है, तो अगर कांस में फिल्म सेलेक्ट हो गई ना, तो मैं तुझे कांस लेके चलूंगा. तो द डे इट वॉज सिलेक्टेड, अनुराग सर सेंड मी 1000 euros विद द वीज़ा. मतलब पासपोर्ट लेने आ गया बंदा उनका कि पासपोर्ट दे दो, वीज़ा लगेगा. एंड वी वर सो हैप्पी. तो फिल्म हमारे हाथ में नहीं होती कि कितनी बड़ी बन जाएगी, बस फिल्म को ऑनेस्टली बनाना होता है. ये चीज़ सीखी और देखी है. और ये कांस की कहानी से मैं भी ये जोड़ दूं कि मैं नहीं जा पाया था कांस. और मैंने अनुराग साहब जब पूछा, मैंने बोला भाई मुझे क्यों नहीं याद किया. कहने लगा, सर आप तो अपने आप चले जाओगे सर, और लोगों को मौका दे दो, आप फिर कभी चले जाना. मैंने कहा भाई गैंग्स के साथ ज़्यादा तो बात और थी. बट having said that, it's a great honor to be there for the Cannes. Gangs of Wasipur turned out to be a cult film, and we are here because of that largely. सर मुझे ये पूछना है कि इतनी सारी स्टोरीज है इसकी कास्टिंग के अराउंड. तो एक तिग्मांशु जी की स्टोरी है कि रामाधीर सिंह का कैरेक्टर दे दिया है, उनको फ़ोन पे बोलते हैं कि आ जाओ, पहुंच जाना. तो वो पूछते, अरे स्क्रिप्ट तो दे दो, लाइन्स तो दे दो, स्क्रिप्ट तो दे दो, लाइन्स तो दे दो. वो कहते हैं अच्छा तुम आओ तो सही. आप सर आ जाओ. फ्लाइट लैंड करी, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से सेट तक गए, वहां पे लाइनें बोल दी, वो वापस चले गए फ्लाइट लेके. पता ही नहीं था क्या हो रहा है. आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? अरे भाई ये अनुराग का ना बहुत पुराना ये तरीका है. ये क्या करते हैं कि जब स्क्रिप्ट मुझे मिली पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अच्छा सरदार खान के साथ असगर ठीक है, लेकिन असगर कर क्या रहा है. तो कह रहा भाई कर लेंगे ना. मैं क्या कर लेंगे भाई, कुछ स्क्रिप्ट में तो बताओ. अरे अरे वहाँ करेंगे ना. वहाँ पहुँचे तो दूसरे या तीसरे दिन सुबह सुबह आके वो मेरे कान में फुसफुसाते हैं कि भाई आपने सुर पकड़ लिया, बस पकड़े रहो. मैंने कहा कौन सा सुर था जो मैंने छोड़ा हुआ था जो अभी पकड़ लिया. नहीं नहीं नहीं, आप जो सुर में आ गए, बस पकड़ लो इसको. ये और उसका तरीका ये है कि वो कुछ नहीं बताता, वो आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन ही लीव्स यू एंड ही सेज प्ले.
And that's the kind of liberty which very few directors give their actors. And he trusts his actors, trusts his entire team tremendously. And that is why I think it is very organic. His films are very organic. And they turn out the way they turn out because everyone contributes their best. और मुझे लगता है कि जब मैं ये स्क्रिप्ट में सीन में भी बहुत कुछ ऐसा होता था कि हो सकता है ये एक साजिश मनोज भाई ने की हो कि उनको बता देते हो और मुझे बताते नहीं थे बिल्कुल, तो मैं तो आई वॉज ऑलवेज ग्रोपिंग फॉर स्टफ कि भाई क्या करें। मनोज भाई कुछ करते थे तो मैं रिएक्शन में कुछ करता था, तो वो बस एक जुगलबंदी बन गई हम लोगों की, और बनते बनते फिर द कल्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर बन गई। बहुत सारे, आई वुड से 90% ऑफ द सीन्स वर, द लाइन्स पर्टिकुलरली वर नॉट रिटन। वो हम लोग को समझा देते थे कि भाई हाँ अब ये आपका है, टेक इट फॉरवर्ड। और जितना सीन समझाते थे उससे कहीं ज़्यादा हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करके ले जाते थे। और इनफैक्ट बनने के बाद अनुराग का ये कहना था कि भाई अगर मैं चाहूँ ना तो उसमें 3 हिस्से बना सकता हूँ मैं, इतना मटीरियल है हमारे पास। तो मैंने कहा फिर कह रहा नहीं वो तरह टाइट है अभी ना मामला, तो उसको रहने देते हैं वैसे। सो दैट मच मटीरियल ही हैड। जमील साहब, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली अभी कि असगर खान क्या करेंगे सरदार खान के साथ, क्योंकि सबसे मुश्किल कैरेक्टर वो मिलता है इंसान को जो ब्लेंड इन ब्लेंड आउट कर रहा है। इसको ढूंढा कैसे आपने? आपका कोई प्रोसेस था? मतलब व्हाट इज योर प्रोसेस टू फाइंड अ कैरेक्टर? मेथड, जैसे इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट है, मतलब चेकोवियन है, स्तानिस्लावस्की है, आप कोई पर्टिकुलर मेथड फॉलो करते हो या आपका अपना कोई कंकॉक्शन हो? नहीं, see as an actor I think one has to अपना एक तरीका आपको ढूंढना पड़ता है। और मेरे साथ जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है वो। मुझे जो चीज़ किसी सीन में लगता है कि ये मेथड काम करेगा तो मैं उसको एम्प्लॉय कर लेता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ देता हूँ बिल्कुल, कि देखेंगे व्हाट हैपन्स इन द मोमेंट। एंड अ लॉट of the times I leave it for the magic to happen in the scene, wherein you're not prepared, you don't know what's going to happen, you just are there in the moment and you're acting and reacting, giving and taking in the scene, and the scene just develops into something magical at times. It might fall flat at times, but that's the beauty of, organic process. The spontaneous process that we at times follow. There are times when आपको चीज़ मिली हुई है, bound है, there are directors who will tell you कि भाई इतना ही है, इतने में ही है, इतना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आपको डिपेंड करता है कि आपके साथ डायरेक्टर कैसा है, क्योंकि it is a director's medium. Theatre is an actor's medium. वहाँ मान सकता हूँ मैं, लेकिन ये डायरेक्टर का मीडियम है तो डायरेक्टर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जो उसका स्टाइल है, जो उसकी सोच है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स हिज पेंटिंग दैट्स गोइंग टू शो, इट्स हिज विजन। तो डायरेक्टर के हिसाब से काम करते रहते हैं भाई। थैंक यू। जिशान भाई, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। जब आपने पूरी लिखी है ये मूवी, तो आपने सरदार खान का रोल क्यों नहीं मांगा? आपने डेफिनेट का ही क्यों मांगा? और डेफिनेट के बारे में बताइए जनता को, जो आपने मुझे कल बताया। डेफिनेट कौन था, इंस्पिरेशन क्या है, और जनता को बताइए वासेपुर के उन बच्चों के बारे में जो ये आप मूवी से थोड़ा बता पाए हो ना, वो थोड़ा प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ। देखो, अगर मांगने पे चीजें मिल जाती, शायद मिल भी जाती, पर वो चीजें वैसे उतरती कोई जरूरी नहीं था। तो जैसे अगर मैं बैठा था जब अनुराग सर के साथ और डिस्कशन चल रहा था, तो उस टाइम पे मैंने वासेपुर लिखी नहीं थी, दोनों पार्ट। हाँ, तो 8 पेज का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उनको पसंद आ गई थी, उन्होंने बोला वासेपुर जाओ, पूरा लिख के लाओ। मगर डील वही हो गया था कि मैं डेफिनेट का कैरेक्टर करूँगा और मैं पूरी फिल्म लिख के लेके आऊँगा। अब जैसे दिमाग में तो आता ही है कि सरदार खान मांग लूं क्या, तो फिर पीछे से बैकग्राउंड में आवाज भी आती है औकात में तो वहीं दिख रही थी औकात भाई, डेफिनेट था कि ठीक है। मुझे तो भाई बहुत
तो मैं अंदरूनी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी स्टेज पे ऐसे नॉर्मली शेयर भी नहीं किया और मौका भी नहीं मिला। मेरे हाथ से तो डेफिनेट भी चला जाता। ये भी सुनो तो, अरे चला मुरारी हीरो बनने, वासेपुर से दिल्ली में जॉब किया, बॉम्बे पहुंच गए कि क्या है एक्टिंग, डायलॉग ही तो बोलना, बोल देंगे। पता थोड़ी था एक्शन बोलने के बाद पसीने छूट जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, अब क्या बोलना है, हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। तो वो जब हुआ मेरे साथ, जब मैं अनुराग सर के साथ एक शॉर्ट फिल्म कर रहा था, वन नो मोर करके, तो अनुराग सर ने बोला यार तू तो बड़ा कैमरा कॉन्शियस है। मैंने हाँ सर वो तो हूँ, अभी क्या करूँ बताओ। तो फिर वासेपुर को एक टाइम लगा है, 1.5 साल 2 साल। तो 1.5 साल 2 साल जब हम फ्लोर पे जाने से पहले लिखा, और लिखने के बाद जब फिर ये सारी चीज़ें हुई, उसमें जब घुसना शुरू करा, और परफॉर्मेंस में नवाज भाई हो गए, या जो जितने साथ के लोग थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिर समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, और हम लोगों ने, मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। तब फिर धीरे धीरे चीज़ें आई। फिर फाइनली ये हो गया कि तू ये रोल मत कर, तू वो रोल कर ले जो मुकेश छाबड़ा कर रहा है। तो मैंने बोला सर या तो मैं ये करूँगा या तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेहनत जितनी मैं करूँगा। तो मेहनत होने के बाद फिर ये हुआ कि चल तू ऑडिशन दे। तो वो जो सीन है ना, वो सांप लेके मैं आता हूँ गले में, हाँ कि सेक्सी लग रहा था, तो वो सीन हुआ, उसका ऑडिशन हुआ। सर थोड़ा सेटिस्फाई हुए, बोले ठीक है थोड़ी और मेहनत है, ये है वो है। और एक चीज़ के पीछे पड़े रहे कि यार तू ना तू थोड़ा वेट लूज कर। अब मैं बोल रहा हूँ यार, मैं कहाँ, मतलब मैं यार खाने पे ही रोक लगा दे रहा बंदा, भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो कैसे कैसे करके उस टाइम पे भी मैं ठीक ठाक हेल्थ था यार, तो बड़ा वेट लूज करा कि ठीक है डाइटिंग छोड़ देता हूँ, एक्सरसाइज कौन ही करेगा, बड़ा आलसी आदमी हूँ। तो ऐसे ऐसे करके वेट लूज करो, फिर फाइनली उस कैरेक्टर में फिट हुआ, और वो कैरेक्टर बना डेफिनेट कि हाँ चलो मैं यही करूँगा। कौन है डेफिनेट, ये तो बता दो अब। डेफिनेट है, कौन? मोहल्ले के 2 लड़के हैं, दोनों का के कैरेक्टर को मिला करके मैंने एक कैरेक्टर बनाया था, तो उसका नाम डेफिनेट था। तो जब ये नाम पढ़ा सर ने, तो बोले यार इसके साथ जो 2 दोस्त हैं उसका नाम परपेंडिकुलर और टेंजेंट कर देते हैं, तीसरा नाम पैरेलल लेके ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं हमें वरना एक पैरेलल भी होता तो ये सारी काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। और वासीपुर यार अपने आप में एक बहुत मज़ेदार जगह है। मैं तो वहाँ पे, मॉम डैड अभी भी वहीं है, वहीं पे पला बड़ा हूँ, तो बड़ी कमाल की जगह है। मतलब मैं इतनी बोलूँगा कि जितना आपने देखा है वो शायद 10% है हार्डली। जब आप 10% कह रहे हो, ये क्या मतलब इससे भी ज्यादा है? मुझे डर लग रहा है सोच के थोड़ा ना। नहीं 10% देखा आपने मैं तो बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत एक छोटा सा आपको अभी इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी मैं धनबाद में ही था, तो वासेपुर में, तो मैं अपने घर के पास टाइल्स लगवा रहा था। तो टाइल्स लगवाते टाइम पे 1-2 लड़के काम करते, मजदूर जो थे, तो वो डेली सुबह आए, इस्लाम भाई ये भाई वो भाई, ठीक है। तो एक दिन वो फोन पे बात कर रहा है मजदूर, और कॉन्ट्रैक्टर को कह रहा है कि क्या चाह रहा है, मजदूरी छोड़ दूं? और कॉन्ट्रैक्टर भी वहां से कह रहा है नहीं नहीं, अब तू बुरा क्यों मान रहा है, मैं आ रहा हूँ ना, मैं कर दूंगा। तो जब कॉन्ट्रैक्टर आया पप्पू, तो मैं उससे पूछा, मैंने भाई तू इतना क्यों इसको इंपॉर्टेंस दे रहा हो, डर क्यों रहा है? कह रहा आपको नहीं मालूम है क्या? मैंने नहीं। कह रहे पहले ये काम करता था ना बॉस के लिए, तो 3-4 गोली इसको भी लग गई थी, फिर इसने 3-4 साल जेल काटे हैं, फिर घर वालों की डांट वाट सुन करके अब वो मजदूरी कर रहा है। तो वो मजदूरी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दे रहा है, क्या चाह रहा, मजदूरी छोड़ दूं? तो मैंने यहाँ तो मजदूर भी ऐसे हैं जो धमकी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को। तो बहुत कमाल की जगह है यार। हम देखो, हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है। अभी मैं एक पार्टी में था धनबाद के, तो एक हम लोगों का एक रोड है, एक वासेपुर में एक रोड है, उस रोड का नाम है कमर मखदूमी रोड। तो उसी रोड में मेरा भी घर है, जो बॉसेस हैं उनका भी घर है, जो एक आईएएस ऑफिसर है उनका भी घर है। तो एक बंदे ने बोला कि यार पब्लिक इंस्पायर इस आईएएस ऑफिसर से नहीं हो रही, वहां के बच्चे इस क्रिमिनल से हो रहे हैं। समझना उस बंदे ने क्या बोला मुझे, कि उसी रोड पे आप भी हो, आपसे इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, उसी रोड पे आईएएस ऑफिसर है उससे इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, उस रोड पे एक क्रिमिनल है उससे इंस्पायर हो रहे हैं। मैंने बोला जब उनको भूख लग रही है ना, तो ना आईएएस अफसर आ रहा है और ना जीशान कादरी आ रहा है, पर जो क्रिमिनल के बच्चे हैं ना वो पहुंच जा रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, ले 5000 रुपए, तो वो उनसे ही इंस्पायर होंगे ना। गलती कहीं ना कहीं हमारी भी तो है। जी, आप रिकंसाइल कैसे करते हो अपने अंदर? मतलब आप वहीं रहते हो, एक डायकोटमी बैठ जाती है ना, कि जैसे समझो मैंने एक मूवी बनाई और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैंने दिखाया मेरे यहाँ क्या हो रहा है, एक कल्ट लाइक मूवी बनाई, और उससे इतना ज़्यादा आप इंस्पिरेशन बन गया और इतनी सारी सीरीज बन गई, एक लहर आ गई है क्राइम की दुनिया में।
particularly what type of TV shows are being made. Do you think the adaptation is factual? Wasipur, everyone's inspired by Wasipur. Do you think Wasipur also gets the due credit it deserves, being the point of inflection? Have you felt like that? See, sometimes it's good if you are inspired. It's not bad. है ना? Even Wasipur was inspired, might be. है ना? बहुत बार मुझे रेफरेंसेस दूसरी फिल्म से देखता हूँ तो लगता है यार ये वासेपुर. Even I was inspired by City of God and I wrote Gangs of Wasipur. It's not bad if you're inspired. It's not bad. But when you try to copy things which doesn't go. Say for example, I will tell कि बहुत सारे लोगों का ये था कि यार बहुत गालियां थी वासेपुर में. मैंने कहा यार मैंने गालियां इतनी लिख दी ना, फिर मैंने एक कहानी डाल देता हूँ. यार वो जगह वैसी है. If you're telling about वासेपुर और वो ऑथेंटिसिटी चाहिए, वो आपने क्या पहले बिहार की फिल्में नहीं देखी? देखी, बहुत फिल्में देखी आपने बिहार की, पर आप शॉक नहीं हुए. पर ये बिहार की फिल्म देख के आप शॉक क्यों हो गए? क्योंकि आपको बहुत रियल लगा, आप बहुत क्लोज हो गए कि यार ऐसे ही होता है, ऐसे ही सुना है, ऐसे ही देखा है. करेक्ट. उसका बहुत सारे लोग जब वासेपुर से आगे जब सीरीज बनने लगी तो बहुत सारे लोगों ने मिसयूज भी किया, कॉपी भी किया. मिसयूज भी ऐसा किया कि यार गालियां भर दो, गोलियां भर दो. तो बहुत बार सर भी दर्द होने लगता है. आपको मैं बताऊं, मैं पिछले वासेपुर के बाद जब OTT एक पीक पे आई है और चीजें आई हैं और चीजें चल रही हैं, मुझे अगर आप अभी पूछोगे ना आपको बेस्ट शोज कौन से लगे, तो मैं 2 नाम लूंगा, एक पंचायत और एक गुल्लक. जो सर की है Let's have it for big round of applause for sir. इतना क्राइम और वो भी कोई ऐसा क्राइम पे सीरीज नहीं हो जो देख करके आदमी. बहुत रिसेंटली मेरा ही एक फ्रेंड है, अभी उसका सेशन होगा, रणदीप. उसने ट्रायल बाय फायर बनाया, तो मैंने बोला कि यू नीड गट्स टू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म. तो वो वेब सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे कोहरा बहुत अच्छी लगी. तो कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं कि मुझे खाकी बहुत अच्छी लगी, वो भी बिहार से है. वो भी चीजें मगर बहुत मजा आया खाकी देखने में कि हाँ यार ठीक है, ये नाम चेंज किया है मगर मैं उन IPS अफसर्स को जान रहा हूँ कि अच्छा ये इनका कैरेक्टर ये है, चाहे आशुतोष सर हो जो उन्होंने प्ले किया है, और भी सारे हैं. तो थोड़ा मजा भी आता है, आप रिलेट करने लगते हो बहुत सारी चीजें. तो वो चीजें हैं. मगर जब आप कोई चीज बनाते हो और रियल हो और आप कॉपी मत करो. मैं बहुत बार फिल्में देखता हूँ, मैं ये बोल के देखता हूँ कि भाई यार मैं ये फिल्म इसलिए देख रहा हूँ कि इससे कुछ उठा ना लूँ, मैं थोड़ा दूर ही रहूँ इससे. तो वो नहीं होना चाहिए. और जब आप रियल चीजें, बहुत सारे लोगों ने उंगली उठा दी कि यार गैंग्स ऑफ वासेपुर तो गॉडफादर देख के बनी है. तो मैंने उस फैमिली को, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की फैमिली है, उसको थोड़ी गॉडफादर की बुक 60 साल पहले दे दी थी कि ऐसी पढ़ना और ऐसी जीना. मैंने तो रियल फिल्म बनाई, जो हुआ वो दिखा दिया. तो ये भी है. मुझे जस्ट टू ऐड अ बिट टू दैट, एंटी हीरो जो होता है ना वो बड़ा ग्लैमरस लगता है, और गलत काम करना बहुत आसान है. गलत काम करना बहुत आसान है सर. सच्चाई पर टिके रहना, ईमानदारी से काम करना, उसमें वक्त लगता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें एक कैरेक्टर लगता है. तो वो शायद बोरिंग ज़रूर लगती हो. अब हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सच रिनाउंड डेकोरेटेड ऑफिसर्स हियर, इनकी ज़िंदगी बड़ी नॉन ग्लैमरस सी होती है, लेकिन कितनी दुश्वारी होती है, कितनी मेहनत करते हैं ये लोग हमारे समाज को सही रखने के लिए. सही हीरोज़ तो ये हैं, एंटी हीरो तो ग्लैमरस है बस. तो मैं ये कहूँगा कि आसान रास्ता चुनना बहुत आसान होता है. अरे गलत रास्ता चुनना बहुत आसान होता है. सही रास्ते में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो नॉन ग्लैमरस होता है. That's very well said. Jameel sir, like Zishan bhai mentioned कि आजकल अब जैसे बहुत ज़्यादा abuses आ रहे हैं shows में ना. तो इसका गुनहगार मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, और मेरे ख्याल में गैंग्स ऑफ वासेपुर से गालियों का सिलसिला नहीं, गालियों का पहली बार मैं जब शॉक्ड हुआ था कोई फिल्म देख के गालियों के साथ, तो वो थी जो सीमा विश्वास मैम की फिल्म थी, ये अपनी बैंडिट क्वीन. वहां पे मुझे शौक लगा कि क्या रियल सिनेमा बनाया है, क्या ये किया है. और उसके फिर वासेपुर हुई, और मेरा हमेशा अनुराग सर से एक ही क्वेश्चन था ड्यूरिंग शूट कि सर ये इतनी गाली पड़वा रहे, फिल्म रिलीज होगी
कह रहे तू टेंशन क्यों ले रहा है, ए सर्टिफिकेट पे करेंगे रिलीज, तू चल। मैंने कहा पहली ऑडियंस नहीं और ये ए सर्टिफिकेट कर देंगे। बताओ। मैं सही मायने में मेरे घर में गाली का इस्तेमाल कतई नहीं है। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज़ हुई और मेरी बहन जो बाहर रहती हैं वो आई हुई थी, उनके बच्चे थे कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो 8-10 बच्चों को लेके हम गए स्क्रीनिंग के लिए। तो मैं बड़ा सहमा हुआ बैठा हुआ था कि मेरी बड़ी बहन और मेरे बहनोई भी थे बच्चों के साथ में, बच्चे एक तरफ और इधर बड़ी बहन और बहनोई, और एक तरफ बहनोई मेरे, एक तरफ मेरी बहन बैठे हुए, मैं बीच में, मैंने फंस गया मैं। तो फिल्म देखी, इंटरवल हुआ, तो मैं इंटरवल जैसे ही लाइट ऑन हुई मैं निकल लिया, मैंने कहा चाय समोसे कुछ लेके आता हूँ। तो फिल्म ख़त्म हुई, वापस जाने लगे तो खामोशी थी, बाजी कुछ बोल, मेरी बड़ी बहन जो कुछ बोल नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा बाजी फिल्म कैसी लगी आपको? तो नहीं, फिल्म तो अच्छी थी लेकिन इतनी गालियाँ देना ज़रूरी था क्या? तो मेरे बहनों ही बड़े ज़ोर से हंसे। जिस रियलिटी की ये बात कर रहे हैं, मेरे बहनों ने कहा कि आप सड़कों पे निकलती नहीं है इसलिए आपको वहाँ की सच्चाई नहीं मालूम है। इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे बचा लिया। अपने आप को बचाने के लिए फिर एज माई रिडेम्पशन, जो एक ट्रेंड सेट किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर ने, वही साफ उसी के पलट साफ सुथरा एक शो लेके हम आए, गुल्लक, जिसने मुझे रिडीम कर दिया कि बहुत साफ सुथरा फैमिली एंटरटेनर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी माफ़ी हो जाएगी। सर मैं आपको सेम रिलेटेड चीज़ बताऊं, उस टाइम पे वासेपुर रिलीज हुई थी और मैं मेरेठिया गैंगस्टर का एक फिल्म था जो लिख रहा था और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट करना था मुझे। तो मेरे मॉम डैड आए हुए थे दिल्ली सिस्टर के पास और मैं मेरठ गया हुआ था। तो मैं मेरठ से जैसे रिटर्न आया गाजियाबाद, तो मालूम चला कि ये लोग थिएटर गए हुए हैं, तो मैं वहाँ पहुँच गया हॉल में। तो वो फिल्म जो है अब सेकेंड हाफ चल रहा था और मैं बैठा हुआ, मैंने एक चेयर ले लिया वहाँ पे, मतलब सीट ले ली, बैठा हुआ था। तो जब मेरा कोई सीन है और गाली दूं तो मेरे डैड यूं देखें। अब रिफ्लेक्शन तो पता चल रहा है कि फादर देख रहे हैं और मैं हिल नहीं रहा, मैं मतलब फिल्म ही देखूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। और अंदर अंदर सोच रहा हूँ कि अभी क्या होगा, ये पूरे इनको पता है सारे डायलॉग्स मैंने ही लिखे हैं, अभी हो गया मेरा, बस काम खराब कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। मगर जैसे फिल्म खत्म हुई और ऑडियंस ने में से एक ने मुझे पहचाना और दो ने पहचाना और चार ने पहचाना और जो घेरना शुरू किया, फिर फादर कह रहे हैं नहीं ठीक है, गाली गलौज तो ठीक है, अब वासेपुर बनाओगे तो क्या ही दिखाओगे। तो फिर सब नॉर्मल हो गया, बोले ठीक है यार चलो। जमील सर, अगर कल सुबह फोन बजे और अनुराग कश्यप आपको कॉल करें और बोले कि तीसरी मूवी बन रही है, तो अब आप करेंगे? हाँ बोल दोगे एकदम से? भाई ये तो मैं बिल्कुल भाई, हाँ मतलब विदाउट बैटिंग एन आईलिड। लेकिन ये अब ये अनुराग और ये जीशान वगैरह ये लोग डिसाइड करें कि थर्ड पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। अनुराग की हिम्मत शायद नहीं हो रही है, लेकिन छोड़ो ये जीशान बता पाएंगे। कुछ और बनाएंगे। नहीं ये हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत कहानियां कहने के लिए मेरे दोस्त, कुछ और नई कहानी कहेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 2003 से 2023 तक वासेपुर कैसा है? वो जो तब दिखाए थे 2003 तक वासेपुर में जो स्थिति दिखाई थी, 2003 से 2023 तक क्राइम और बढ़ा है? बढ़ा है, धंधा हो गया भाई। बिजनेस है क्राइम वहां। एंड व्हेन यू से क्राइम, दैट डजंट मीन, सर विल अग्री विथ मी, कि किसी को गोली मारना ही क्राइम है। व्हेन यू डू क्राइम देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइम, एंड आई एम सिटिंग इन अ कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ब्रदर। तो वहां पे अनदर लेवल क्राइम है, वहां पे आप सोच नहीं सकते हो। ऑन क्राइम दे हैव मेड दैट अ बिजनेस। आज आपको एक बात बताता हूं, आप बहुत छोटी सी चीज है, वहां पे एक हार्डली 28-30 ईयर्स का लड़का होगा, वो आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, वो डेली धमकी देता है, डेली बिजनेसमैन को कॉल करके धमकी देता है, और बिजनेसमैन अगर उसकी बात नहीं सुनते तो उनके घर पे गोली चलवा देता है। गोली चलाने वाले कौन लड़के हैं? यही लोकल लड़के हैं। और मैं कह रहा हूं डेली, आई एम नॉट सेइंग वंस इन अ मंथ। अभी पुलिस ने पूरा जाल एक घेरा और उसके
जो पता चला कि फंड्स कैसे जा रहे हैं उस तक तो मालूम चला कि यहाँ पे उसने अकाउंट्स खोल रखे हैं और उससे फंड्स जा रहे हैं और वो फंड्स उसको वहाँ आउट ऑफ इंडिया मिल रहे हैं और उससे वो गुजारा कर रहा है। तो उन्होंने 62 अकाउंट्स को पकड़ के सीज कर दिया। तो वो हंस रहा है, कह रहा है बस इतनी पता चले कि आपको। तो अनदर लेवल क्राइम वहां पे चल रहा है। और अभी जैसा सर कह रहे थे कि गलत राह पे चलना बड़ा आसान है, अगर उनसे ये बात कहोगे ना आप तो कहेंगे अच्छा आसान है सर तो चल के दिखाओ। कितना मुश्किल है हम जानते हैं, कितना टफ है, कितनी बार पुलिस की गोलियों से हम बचे हैं, कितनी बार पुलिस के इनकाउंटर से हम बचे हैं, हम कितनी बार बम चला के भागे हैं, पब्लिक घेर लेती है हमें। तो उनके लिए तो बड़ा टफ है वो मेहनत है। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें, उससे समझोगे। छोटा मोहल्ला है यार वासेपुर। तो किसी ने कॉल कर दिया, मेरे एक दोस्त है वहां पे तारिक करके, उसको कॉल कर दिया, बोला तारिक भाई थोड़ा सा जो बॉस है उनको बोलिए कि मेरे से पैसा मांग रहे हैं, ना मांगे। तो तारिक बोला यार आज तक तो मैं गया नहीं, मैं जाता हूँ देखता हूँ। तो ये भाई साहब पहुंच गया वहां कि भैया वो हाँ फोन आया था, आपने उसको फोन किया था फलाने बिजनेसमैन को, तो मना कर रहा था कि मुझसे बोल रहा था कि अगर आप सिफारिश कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला ठीक है तारिक भाई कोई बात नहीं, चाय पीजिए। और तारिक के का बिजनेस है टायर का। तो उसको बोला 6 टायर जो है ना ट्रक के मुझे चाहिए होंगे, भिजवा देना। तो बोला यार ये भिजवा देना और पैसा? बोले पैसा किस बात का? तो बोला यार अरे मेरा बिजनेस है। बोला वही समझा रहा हूँ, मेरा भी बिजनेस है। करदारी लेके मत आया करो। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आई थिंक एक अलग सेशन नेक्स्ट ईयर बनेगा, पुलिसिंग इन वासेपुर। इस पे बनना चाहिए। I'd like to open the floor for questions. किसी के भी सवाल हैं प्लीज कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, और all the fan moments can happen outside. These can be relevant questions. My name is Amar Pandey, and I am from the same place as you are, from the coal capital of India. मैं बोकारो से हूँ और धनबाद और धनबाद काफी देखा हुआ है जी सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था, गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुझे जैसा लगा कि it's a story of street gangs coming together, and just one notch above they have operated, because it's a very localized crime, very localized local gang, and the rivals also local. तो एक सवाल तो ये उठता है कि कहीं आपने वहाँ पे जो फेमस कैरेक्टर्स हुआ करते थे, नाम मैं अब भूल रहा हूँ उनका, सूरजदेव सिंह, तो कहीं उनसे मिलती जुलती स्टोरी है क्या? क्योंकि दे ऑल्सो केम एज मसल मैन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। बीपी सिन्हा was a leader also, became a leader later. उनके पहलवान हुआ करते थे वो। फिर धीरे धीरे जो हुआ उससे काफ़ी मिलता जुलता, जो वासेपुर का पहला आपने बनाया उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो कहीं इंस्पिरेशन का सोर्स वो तो नहीं है। और दूसरा, धनबाद, बोकारो, बिहार इन जनरल, उसका एक अपना फ्लेवर है और अगर बिहार का फ्लेवर उसको क्राइम से मिला दें तो ये बड़ा डेडली कॉकटेल बनता है। तो इज इट नॉट लाइक व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट वासेपुर बिकमिंग वासेपुर? बिकॉज बिहार में जैसा आपने बताया सिद्धांत को कि व्हाट यू हैव शोन इज नॉट इवन अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो what would be the potential of criminality being screened by Bollywood? Okay, sir. So let me start with the first question. So of course, these all characters are real, and from Dhanbad, we have changed the name, we have changed the timelines, and again, बहुत inspired था। और मैं तो जब अनुराग सर के पास लेके पहुंचा था तो ये कुछ 250-300 पन्नों की नॉवेल थी जिसमें बहुत कुछ रियल था, नाम भी रियल थे उस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्ट लेवल पे थी।
टाइमलाइंस चेंज हुए, नाम चेंज हुए, बहुत सारी, चूंकि डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी थी हमें, हमें एक फिल्म बनाना था, उसमें एंटरटेनमेंट रखना था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज की उसमें। अब हालांकि मैं आपको बताऊं, एक मैं शो लिख रहा हूं जिसका नाम है ब्लैक डायमंड, और अब ब्लैक डायमंड जब मैं लिख रहा हूं तो वो स्टोरी शुरू हो रही है 1756 से, जब पहली बार कोल मिला था ब्रिटिशर्स को। मगर वो कहानी वापस स्टार्ट होगी धनबाद से 1942 से, जब बीपी सिन्हा का राइज हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस से लेके टिल डेट जो आज तक चल रहा है उस पे। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ऑफ कोर्स जिससे हम इंस्पायर्ड हुए थे, चीज़ों को उठाए थे, 2 कैरेक्टर्स को मिला दिया, 4 कैरेक्टर्स को कर दिया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक वासेपुर में एक सीन था कि फिल्म में वो सीन था कि फर्स्ट पार्ट में कि एक लड़की उठा ली जाती है और फिर ये जाते हैं मनोज वाजपेयी माइक लगा के और हजरात 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 करके बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये वासेपुर के लड़के उठाए थे और फलां ने किया था। बहुत लोगों का कहना था कि नहीं नहीं, हीरापुर के लड़के उठाए थे और फलां ने किया था। तो हमें जो लगा ये इंसिडेंट इस कहानी में ऐसे जा सकती है, तो हमने वैसे डाला, क्योंकि हमें वो फिल्म बनानी थी और वो इंटरटेनिंग फिल्म बनानी थी, मजेदार फिल्म बनानी थी। तो ये चीजें। दूसरी चीज का जवाब ये है सर कि जैसे अभी पुलिस की अगर मैं बात करता हूं तो पुलिस पे बहुत सारी फिल्में बनी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं सिंघम, गंगा जल, अमित कुमार आईपीएस, बहुत सारे आईपीएस हैं जो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं यंग जनरेशन के कि यार अमित कुमार जैसे आईपीएस। मगर एज अ ऑडियंस जब मैं खाकी देखता हूं अक्षय कुमार की फिल्म, तो मुझे अक्षय कुमार का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है कि अमिताभ सर उनसे पूछते हैं कि अरे ये घड़ी कितने की, वो बेटी की शादी के लिए बात करता, बोलता 5,000, तो बोलता है ये घड़ी है 5,000 की, कह रहे सर $5,000 तो वो भी मुंह देखते हैं कि यार तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो कैरेक्टर मुझे देखने में, देखिए मैंने एक फिल्म लिखी थी हलाहल, अभी जियो के प्लेटफॉर्म पे या इरोस के प्लेटफॉर्म पे होगा। तो उसमें एक कैरेक्टर था यूसुफ, जो कि करप्ट पुलिस वाला है, बिल्कुल ही करप्ट है, उसको हर चीज में पैसे चाहिए, और एक बहुत ही ऑनेस्ट फादर है जिनको ये पता करना है, डॉक्टर हैं, कि उनकी बेटी को पूरी दुनिया बोल रही है सुसाइड, बट उनको लगता है कि मर्डर हुआ और मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। एंड ऑफ द स्टोरी ये है, गुड बिकम बैड एंड बैड बिकम गुड। फादर करप्ट हो जाते हैं और इंस्पेक्टर इतना सही हो जाता है कि वो मर जाता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना पुलिस में भी, तो वो मुझे लगता है ऑडियंस को देखने में बहुत मजा आता है। मेरे फादर इंजीनियर है सर, अगर मैं अपने फादर पे फिल्म बना दूंगा ना गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम पे, इंजीनियर ऑफ वासेपुर, कोई नहीं देखेगा, और सुबह उठे शेविंग मगर गैंग सबको देखना है सर। तो वो मसाला तो सर चाहिए ना सर लाइफ में। मैं एक बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो उसने एक बात बोली सर पुलिसिंग पे, तो हंसी भी आई मुझे और मैंने बोला यार सच भी। वो उसने बोला कि अगर गवर्नमेंट का क्या है, वो तो सीधा फाइन डाल देती है, अच्छा सीट बेल्ट नहीं पहना 10,000 फाइन, फिर पुलिस कहती है नहीं हम है ना 200 रुपए तो सर सुनने में हंसी भी आ रही पर रियलिटी भी कि हाँ चलो भाई बच गया, चलो यार। तो ये आप सोचो कि इसको मैं जड़ से करप्शन को खत्म कर दूंगा तो ये नहीं खत्म होगा। बात सही है, इस करप्शन को मैं कैसे खत्म कर दूं? यहां तो मैं खुद ही भागीदार हूं भाई, 200 रुपए प्लीज, क्योंकि मैंने ही सीट बेल्ट नहीं पहना है। तो ये रूट में ऐसा चीजें हैं। मगर जब मैं इस चीज को अगर स्क्रीन पे दिखाता हूं और रियल है तो आप रिलेट करते हो, तो आपको मजा आता है। ये भी है, बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होती है जिससे हम इंस्पायर्ड होते हैं सर। एक लास्ट एग्जांपल दूंगा, एक फिल्म आई थी शोले। सर गब्बर को मारा किसने? 2 आईपीएस अफसर ने नहीं मारा, 2 चोरों ने मारा। जय और वीरू चोर थे सर, मतलब लास्ट में तो मार ही दिया ना उसको किसको मार देंगे क्या? तो मेरे कहने का मतलब है कि वो पुलिस वाले को भी 2 चोर मिले कि लोहा को लोहा काटता है, तो वो इंटरटेनिंग है। 2 पुलिस वाले भी हो सकते थे कहानी में, मगर ठीक है सर, इंटरटेनमेंट का माध्यम है, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेके नहीं चलना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो बच्चा माँ बाप से नहीं सीख रहा है, स्कूल में टीचर से नहीं सीख रहा है, सोसाइटी से नहीं सीख रहा है, अपने दोस्त से नहीं सीख रहा है, वो मेरी फिल्म देख के क्या ही सीखेगा यार तो एंटरटेनमेंट लो और घर We जाओ। have time for last question. एक सवाल किसी को अगर Well पूछना said. है जल्दी, Thank you, sir. आलोक Thank you. अंकल प्लीज। सवाल आप दोनों में से किसी से भी पूछ सकता हूं, लेकिन शायद जमील साहब से ज़्यादा पूछना चाहूँगा। आपने कुछ देर पहले कहा था कि जब आपका कैरेक्टर बहुत क्लियरली लिखा होता है और डायरेक्टर आपको बता देता है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो एक साइड होती है। द होल स्क्रिप्ट इज़ नोन टू यू, यू हैव बीन गिवन अ मंथ टू स्टडी इट, सो यू हैव वन सिचुएशन। द अदर इज़ कि जैसा बता रहे थे, रास्ते में कार में बात की कि तुम्हें ये रोल करना है, ये लाइनें बोलनी है, तो आपने कहा वो जो फ्रीडम मिलती है अनुराग जैसे डायरेक्टर से,
वो एक अच्छी चीज़ है। कभी कभी इसकी वजह से ये कन्फ्यूजन नहीं होता होगा कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, और शायद उसकी वजह से इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल माइट बिकम डिफ़िकल्ट। तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा कारगर होती है? Sir, again, I would say it depends on the director. I personally, as an actor, surrender to my director. And I think that's the best way to go about it, because ultimately it's the vision of the director, and he's the captain of the ship. So I go by his conviction. Having said that, I feel when the script is मुझे जितनी अच्छी तरीके से मालूम हो तो उसको करने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि आपने उसको तैयार किया है। लेकिन जब वो तैयार नहीं किया हुआ होता है तो वो जो एक धुकधुकी होती है ना कि ये क्या होगा, व्हाट इज इट गोइंग टू टर्न आउट टू बी, दैट इज वेयर यू हैव टू हैव एन इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर डायरेक्टर कि नहीं। इनफैक्ट अनुराग टोल्ड मी दिस, जब व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट एंड देयर वाजंट एनीथिंग serious there in it for me to do in terms of just accompanying Sardar Khan. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ये क्या है, and Anurag and I knew each other for a long time from my theatre days. तो मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भाई एक तो एक ज़माने बाद तुमने मुझे याद किया है, और याद किया भी तो इसके लिए है क्या इसमें। कहता भाई ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। दैट्स अ ग्रेट कंफर्टिंग comment to come from a So director. wonderful, so wonderful. I will give you one more example. There are two kind of directors. मतलब बहुत सारे हैं, मतलब जो जिनकी बनी तो उनको भी दिखाना चाहिए कांस में कि ऐसी नहीं बननी चाहिए फिल्में। मगर जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं उनमें दो तरह के लोग होते हैं जिनका मैं एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। एक अनुराग सर हैं, अनुराग कश्यप, जो इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं और उनको अपना काम इतने अच्छे से पता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये ही चाहिए, और बहुत बार वो स्क्रिप्ट्स नहीं देते हैं। क्योंकि मैं खुद राइटर था और एक्टर था उसमें, तो मुझे मालूम था कि क्या हो रहा है। नॉर्मली सबको नहीं पता चलता है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो स्क्रिप्ट्स एक्टर को नहीं देंगे, वर्कशॉप करेंगे, चीज़ें समझाएंगे, उन पे आप फेथ करके चलो और वो वहाँ पे डिलीवर करवा लेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पर कुछ डायरेक्टर्स के एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे नीरज सर है, नीरज पांडे सर। तो अगर मैंने सुना है ऐसा कि अगर वो डायलॉग भी एक वर्ड चेंज हो जाए तो वो आके रोक देते हैं कि नहीं नहीं ये लाइन नहीं थी, ये लाइन थी। तो बोला सर मैं इसको ऐसा कहना चाहता, कह रहे कि हमने इतने दिन से लिखा, मेहनत की, तो बेकार थोड़ी की है भाई, तो इसको ऐसे ही कहो जैसे हमने लिखा है। तो ये दो तरह की चीजें होती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन आई एम गोइंग विद जमील सर की यू हैव टू कंप्लीटली फेथ। वो थिएटर के एक्टर्स अक्सर वहाँ इनोवेट करते हैं, कुछ नया लाते हैं, शायद फिल्मों में वो नहीं हो पाता। जी जी, मौका नहीं मिलता। इसी बात को नीरज, आई वर्क विद नीरज ऑल्सो इन बेबी, और नीरज का भी स्टाइल बहुत ही यूनिक है, एंड ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स इन टर्म्स ऑफ द एडिट ऑल्सो, एंड ही विल। मेरा इनफैक्ट जब ये जो सीन था जो वायरल हुआ था, तो मैं वो सीन हुआ तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि उनका ओके, तो मैंने कहा हो गया, तो मैंने कहा एक और कर लेते हैं, नहीं भाई हो गया, आई गॉट इट। तो मैंने कहा मेरी तसल्ली के लिए एक टेक और ले लीजिए, ठीक है आप चाहते हैं तो ले लीजिए, बट आई हैव गॉट माय शॉट। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, 2 टेक 4 टेक 10 टेक। यहाँ एक डायरेक्टर है जो लिखा है उसने, और जो उसको चाहिए था वो मिल गया, ही वांट्स टू मूव ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Guys, a big round of applause for these two gentlemen here. Thank you for having us here. Thank you. Lovely talking to you all. Thank you. Thank you so much. May I now request our festival director, Alok Lalji, to come up on stage and felicitate our very, very renowned actor, writer, director combo, please. Thank you so much, sirs, for taking time out. Honestly, thank you. We really appreciate it. Thank you, sir. जीशान कादरी जी एंड जमील खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। आपने इतना समय निकाला और इतनी पेशेंस दिखाई, बहुत मजा आया इस सेशन में। धन्यवाद। राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, आई थिंक इट्स ओनली ड्यू।
Thank you, sir. Thank you so much. With this, we come to an end of this session, and may I request, in just a moment, may I request our very own Ashok Kumar ji to take the stage now. Accompanying him is Ajay Singh ji and Lokesh Ohri ji, with the moderator of the session, Ms. Richa Anirudh ji. और मैं ये समय लेना चाहूँगी अपने बहुत ही eminent panelists को introduce करने का. Ashok Kumar ji obviously needs no introduction by this time. He's been a guiding force and a mentor, sir. उन्हीं के साथ आ रहे हैं अजय सिंह जी, जो कि हमारे present SSP Dehradun हैं, an IPS officer of the 2014 batch. He was previously the SSP of Haridwar. He has also headed the SIT, which has unearthed the irregularities and paper leaks in series of recruitment examinations here. Sir has also been part of several crackdowns on drug trafficking to achieve the Chief Minister's mission and vision of drug-free Devbhoomi by 2025. Alongside him, we have the very renowned anthropologists of India, Lokesh Ohri ji, जो कि एक लेखक, historian और cultural activist भी हैं. उनकी जो campaigns हैं, वो preservation of natural and cultural heritage of Doon Valley की तरफ हैं. Lokesh Ohri ji is also the founder of Been There and Doon That. Everybody on Facebook, I think, and majority of the audience has seen and shared. All volunteers, please be seated. May I also request people at the back to take a seat? Thank you so much. People who are walking in the back, if you may take some seats right there, they're available. Thank you. जी, जैसा मैं कह रही थी, Lokesh Ohri ji has also founded Been There, Doon That, an educational initiative that spreads awareness about the natural, social and cultural history of the Doon Valley through walks, lectures and workshops. Thank you, sir, for taking time to be with us today. और इस सेशन की मॉडरेटर हैं एक बहुत ही खास हस्ती, मिस रिचा अनिरुद्ध जी. She is a prime-time news anchor and I believe needs no introduction, but still I will take the opportunity to say that she's one of the most loved faces of Hindi television news. Over the years, she has lent her inherent and natural credibility to every single issue she has discussed. With that, I'd also like to share her repertoire of work with the help of a video. So if we may... अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे के सावन जिंदगी बैठ कर आमने सामने हम बात करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे. जिंदगी with Richa. दिन हो चाहे रात, देना मेरा साथ, हो मौसम कोई भी, धूप या बरसात. दिन हो चाहे रात, देना मेरा साथ, हो मौसम कोई भी, धूप या बरसात. जब भी जगे नींद आँखों से, एक नए ख्वाब की हम बात करेंगे, एक नई सुबह तलाश करेंगे. जिंदगी with Richa. जब हो अंधेरा रोशनी करना, मुश्किल आ जाए हौसला बनना. जब हो अंधेरा रोशनी करना, मुश्किल आ जाए हौसला बनना. हौसला बनना. घर खो गए हम राह में,
एक नई सुबह तलाश करेंगे। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू। थैंक यू सो मच। इस सेशन का नाम है खाकी में इंसान कितना संभव। तो इस बारे में हम अब सुनेंगे। ऋचा जी, ओवर टू यू प्लीज। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अशोक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मतलब आप में से जिन लोगों ने किताब पढ़ी होगी, आई एम श्योर यू एग्री, क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल की तो ये बुक ही नहीं लग रही मुझे। इतनी फील गुड, जैसे वो चिकन सूप फॉर द सोल या जो जिस तरह की किताबें हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वेरी पॉजिटिव। तो कहीं तो हम सोचते हैं, मतलब मुझे जब उठाई तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है इसके अंदर, लेकिन इतनी खूबसूरत किताब आपने लिखी है जिसको पढ़कर इंसानियत पर, सबसे बड़ी बात है इंसानियत पर भरोसा शुरू होता है। लेकिन जो कितना संभव वाली बात हुई, जो एक चीज़ नहीं हो पाती वो ये हो पाती है कि इन कहानियों पर भरोसा। क्योंकि मैं यहाँ से शुरू करूँगी, थोड़ा नेगेटिव साउंड करेगा कि पुलिस को लेकर एक जो छवि मन में बनी हुई है, अजय सिंह जी, आई एम सॉरी कि हमेशा ये होता है कि पुलिस उस केस में मिली हुई थी, पुलिस ने पैसे खा लिए, मतलब हमेशा हम लोग बहुत नेगेटिवली, जब तक किसी को मदद ना मिल चुकी हो, एक ओवरऑल इंप्रेशन ये रहता है। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस इंप्रेशन को तोड़ने के लिए, लेकिन अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस को किताब में समेटने का ख्याल कैसे आया और इतने बिजी करियर में टाइम कैसे मिला आपको? देखिए, ख्याल का तो जवाब ऑलमोस्ट आपने खुद ही दे दिया है। आपने कहा कि पुलिस की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। नॉर्मली पुलिस के नाम आते ही, डरते मैंने बात बोली है कि बगल में अजय सिंह जी बैठे हुए हैं। अरे भाई, मैं भी तो पुलिस ऑफिसर हूँ। तो इसका मतलब कम से कम मेरी इमेज बदल चुकी है। आपकी इमेज चेंज हो गई ना किताब पढ़ के। तो नहीं, वो भी एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। और ख्याल इसलिए आया है कि पुलिस की इमेज जनरली इतनी खराब क्यों है, तो इसको बदलने की ज़रूरत है। और पुलिस में भी, खाकी वर्दी में भी हम ही इंसान लोग ही हैं। भाई, मैं आईपीएस बनने से पहले आईआईटीएन था, तो आईआईटीएन पे तो कोई उंगली नहीं उठाता, समाज में बड़ी हाई रेपुटेशन है, ठीक है ना। किंतु जो ही आप आईपीएस में आए तो आप एक पुलिस खाकी का हिस्सा बन गए। तो कहीं ना कहीं एक आईपीएस जो पुलिस के साथ एक लीगेसी चल रही है, मैं बोलता हूँ कहीं अंग्रेजों के ज़माने की लीगेसी चल रही है, ब्रिटिश डेज की लीगेसी चल रही है, वो जुड़ गई आपके साथ। तो उस इमेज को तोड़ने की ज़रूरत है। सच्चाई यही है कि पुलिस खाकी में भी इंसान ही बसते हैं, और अगर समाज में नेगेटिव लोग हैं तो पुलिस में भी हैं। पुलिस में इंसान कहीं और से तो आ नहीं रहे, समाज से ही आ रहे। जितना परसेंटेज समाज में समझ लो नेगेटिव आदमी का, उतना ही पुलिस में होगा, जाहिर सी बात। तो इसलिए उस इमेज को तोड़ने के लिए ये किताब लिखी गई कि खाकी में भी इंसान ही बसते हैं, ठीक है। और जो मैंने थ्रू आउट पुलिसिंग एक बात को जिया है, और हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी सिखाया, जवानों को भी सिखाया कि पुलिस का डर जो आम इंसान में है उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पुलिस का डर सिर्फ बदमाशों में होना चाहिए जी। आम इंसान को तो पुलिस को देख के खुशी होनी चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए। सो दैट इज द थीम, दैट इज द थॉट बिहाइंड इट। अब आपने कहा इतना टाइम कहाँ से आया? टाइम की तो कमी है, और ये किताब जो है ना लगभग 2/3 मेरी डायरीज में थी, ठीक है। तो उस टाइम की कमी को पूरा करने के लिए मैंने को-ऑथर लिए लोकेश होरी जी कि जो एक तो मेरी पहली किताब थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ये हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में लिखते रहे थे, तो हमने कहा कि कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल भी ना बन जाए और थोड़ा मेरा टाइम वाला फैक्टर भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आपसे मिल करके आपके साथ हमने ये किताब पूरी की। अगला मेरा सवाल ये होने वाला था, लेकिन आपने डायरीज का जिक्र कर दिया कि भाई इतने करियर में आप इतने केसेस सॉल्व करते हो, तो ये कहानियाँ आपको याद कैसे रही? और आपने सीधे ट्रेनिंग की घटना कि किसी, आप बड़े शॉक रह गए, आपको लगा मैं तो जनता की सेवा करने आया हूँ, लेकिन वहीं किसी ने कह दिया कि अरे सब बातें हैं, ये तो हम तो अपना पद और पावर एंजॉय करने आए हैं। और फिर आप बांदा गए, बांदा मेरा, मैं बुंदेलखंड से हूँ, वो पूरा आपका पढ़ा मैंने। तो ये सारी चीज़ें आप तब से डायरी में लिख रहे हैं? एक्चुअली किताबें डायरीज की वजह से लिखी गई, क्योंकि जब भी मैं डायरी लिखता हूँ तब जब मुझे कोई एक्सट्रीम फील होता है, कोई फीलिंग होती है ना, जिसे गहन संवेदना बोलते हैं हिंदी में बोलें तो उस दिन आपका मन करता है जो बात आपके दिल में अंकित हो गई कि अब इसको लिख डालना चाहिए। तो वो ऐसे एपिसोड्स मैंने डायरी में लिखे हुए थे।
तो उनका ये एक प्रकार से वो निचोड़ निकाल करके ये किताब जो है पहली किताब हमने प्रस्तुत की। आई एम श्योर लोकेश जी आप कुछ शेयर करना चाहें, जब आपने वो डायरी देखी होगी या पढ़ी होगी, आप भी उतने ही शॉक थे जितनी मैं हुई किताब पढ़कर। व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस? हाँ, मुझे सर ने थोड़ा बैकग्राउंड तो दिया था कि किस तरह से लिखना है और क्या वो चाहते हैं, लेकिन शुरू से ही मेरे मन में ये बात थी कि जो सर ने जो लिखा है वो एक पुलिस ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से लिखा है और मैं उसको एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करूं कि जो एक नागरिक है वो जब पुलिस के बारे में सोचता है तो क्या सोचता है और उसके मन में क्या ख्याल आते हैं। तो मुझे लगता है ये जुगलबंदी अच्छी रही क्योंकि आपने जो डायरीज में लिखा था और कई बहुत अंतरंग बातें थी, बहुत कविताएं थी जो बहुत मुझे जिन्होंने बहुत प्रभावित किया। तो उन कविताओं और जो इंसिडेंट्स इनकी लाइफ के थे, जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स, और जैसा आपने कहा कि जब बहुत ज़्यादा भावनाएं थीं तो तब आपने लिखा, तो वो मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज़ एक किताब की फॉर्म में आ सकती है जो कि दोनों डायमेंशंस को एक्सप्लोर करे, दोनों तरफ से इस चीज़ को एक्सप्लोर करे कि एक आम नागरिक भी क्या सोच रहा है और एक जो पावर में है, जो पुलिसमैन है, वो क्या सोच रहा है। अजय सिंह जी, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब ये बात हो रही थी, और अशोक जी ने हर केस में कहीं ना कहीं जैसे थाने अध्यक्ष की या ऐसे बात की है कि नीचे कई बार लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार वो भी डरे होते हैं कि भाई समाज में एक आपने कहीं कहा इस जाति वर्ग के कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे तो ये हो जाए, विद्रोह हो जाएगा। ये ऑफिसर्स के लिए या पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग मैनुअल जैसा हो सकता है कि कैसे बहुत सेंसिटिवली इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस को सुलझाया। कहीं अगर एक बूढ़ी लेडी आई हुई है या एक रेप विक्टिम आई है, कैसे एक पुलिस अधिकारी को उनसे बात करनी चाहिए, कैसे केस को हैंडल करना चाहिए। ऋचा जी, आपने एकदम ठीक कहा कि जो सर का जो बुक है वो एक तरह से हम अगर उसको पढ़ते हैं और इंसिडेंट्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रोज़मर्रा के जो हमारी पुलिसिंग है उसमें कहीं ना कहीं हमें सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन थोड़ा सा बुक से अलग भी मैं जाऊँगा, चूँकि अब यहाँ पर बुलाया गया तो दोनों चीज़ पर बोलूँगा। फर्स्ट थिंग, जो आपका जो पहले सवाल था कि जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मतलब खाकी में क्या इंसान हो सकता है, तो ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ कि पहले इंसान में इंसान है कि नहीं है, क्योंकि सभी इंसानों में इंसान नहीं है, ये भी सबको पता है। तो जब अगर सब इंसान में इंसान नहीं बस रहे हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट हमारी खाकी में भी आ ही जाएगा। सेकेंड, आप उसको उस चीज़ को नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है, तो पॉजिटिव तभी हो सकता है जब, जैसा सर के हमने कहा कि सर के इंस्पिरेशनल्स कुछ उसमें एपिसोड्स हैं मदद करने के, जैसे एक शाहजहाँपुर का भी बड़ा अच्छा था, लेडी का जो जिसके साथ रेप भी हुआ, फिर बाद में अगर गलत काम किया हमारे अधीनस्थ ने तो हमने वो भी पनिशमेंट भी दी और सुधारा भी उसे। तो लेकिन उसके लिए बड़ी बोल्डनेस चाहिए, उसमें समाज का साथ भी चाहिए, क्योंकि जब हम कभी अपने ऊपर अपने अधीनस्थ पर एक्शन करते हैं तो पॉजिटिव उसका रिफ्लेक्शन हमारी फोर्स पे जाता है कि हाँ भाई गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए हमें अच्छा काम करना है। लेकिन जो समाज उसको सोचता है वो दूसरे तरीके से सोचता है, मीडिया सोचता है दूसरे तरीके से सोचता है। वो कहता है देखो पुलिस वाले भी ऐसा करते हैं। अगर एक इंसिडेंट हम अपने सिपाही और अपने अधीनस्थ को परिष्कृत करते हैं तो उसको लोग पॉजिटिव ना लेकर उसको नेगेटिव प्रचार करते हैं कि देखो ये चोरी कर रहा था पकड़ा गया पुलिस वाला, ये पैसे ले रहा था ये पकड़ा गया। पकड़ा भी तो किसी ने, हम ही लोग ने पकड़ा है ना। तो सिस्टम में सफाई के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा और उसको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। चूँकि जैसा मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि सर की जो बुक को अगर एक तरफ देखता हूँ, उसके इंसिडेंट्स को देखता हूँ, पुलिसिंग को देखता हूँ और वर्तमान जो पुलिस की जो अपेक्षाएं, जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं, जो हमारी पब्लिक को अपेक्षाएं हैं, सबको अगर मैं देखूं तो ये तो मानना पड़ेगा कि पहले जैसे मैंने खुद कहा कि उसका जो सोशल परिवेश है जो पुलिसकर्मी का, उसका वो बिहेवियरल एटीट्यूड क्या है वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो खुद ही शराब पीकर जाकर अपनी बीवी को गाली गलौज करता है तो अगर विक्टिम आती है उसके सामने उसी तरह की, तो नेचुरल सी बात है उसके लिए लगेगा ये तो आम बात है, तो मैं भी करता हूँ। तो इट मीन्स कि पहले सुधार जो है हमारे इंटरनल, हमारी सराउंडिंग, हमारी सोशल सराउंडिंग, हमारे खुद का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है या जो नेचुरल हमारी सोच है वो उसमें आना चाहिए। जिस दिन हम ये करने लगेंगे, कर भी रहे, और एक रोल मॉडल ज़रूरत है कि पुलिस में हो, किसी भी फील्ड में हो, रोल मॉडल होता है तो उससे सब लोग सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। जैसे इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत लोग इंस्पायर होंगे या हुए हैं, ठीक, उसके इंसिडेंट्स को पढ़ने के बाद लगेगा कि ऐसे ही मैं, मेरे सामने भी आया था, मुझे भी अच्छा करना है।
तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है। तो इंसान में अगर इंसान बस जाएगा तो खाके में इंसान हमेशा रहेगा, ये एकदम 100% मैं मानता हूँ उसे। अशोक जी, आपकी एक लाइन में पढ़ रही थी जहां मुझे थोड़ा सा डाउट कहें या डिसएग्रीमेंट कह सकते हैं आप। एक जगह कहीं आपने ये लिखा है बाद में कि जब ये कह दिया जाता है कि अरे ये पैसा लिया जा रहा है, ये ऊपर के अधिकारियों तक जाएगा, ये बात गलत होती है, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं आपने पूरा जनरलाइज नहीं कर दिया? मतलब ऐसा लग रहा है सिर्फ नीचे जो करप्शन है वो नीचे है, ऊपर नहीं है। whereas we as public feel कि that's not true। अगर करप्शन है तो ऊपर से नीचे तक सब जगह है। देखिए, आप भी सही हैं और जो मैंने लाइन लिखी है वो भी सही है, क्योंकि ये वो जो हंसे तो मैं मनसेरा जी एनडीटीवी में रहे हैं बहुत लंबे समय तक, तो सच्चाई दोनों है। ऐसा नहीं है कि करप्शन खाली नीचे हो और ऊपर ना हो। और ये भी सच है कि बहुत बार हमारा सबऑर्डिनेट जानबूझ करके ऐसा बोलता है जिससे पब्लिक कन्विंस हो जाए कि ये तो ऊपर तक पैसा जाता है, क्योंकि जो चेन ऑफ कमांड है उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो सच में 100% डेड ऑनेस्ट है, ठीक है, फिर भी उसकी पेट लाइन हो गई और जनता का भी बिलीफ हो गया ऊपर तक पैसा जाता है। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है कि सीनियर अधिकारी को पता है कि नीचे गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो जानते हुए अपनी आंख बंद कर ले, ये तो होता है ना? नहीं, ऐसा आम तौर पर नहीं होता है, यही मैं आपको कहता हूँ। कहाँ से हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं, हो रहा है? नहीं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो है ना एक हमेशा एक लाइन पकड़ी है पुलिस में कि पुलिस के पास ट्रिपल पावर है, ठीक है, कंपेयर टू ऑल अदर डिपार्टमेंट्स पुलिस हैज ट्रिपल पावर। मैं इसको मैंने एक कॉइन किया है नई टर्म, और वो है पहले यूनिफॉर्म की पावर, वर्दी देख के लोगों को कुछ को डर लग जाता है। दूसरी वेपन की पावर, वेपन्स का अधिकार किसको है देश में? एक लाइसेंस लेने के लिए कितने चक्कर काटता है आदमी, यहाँ तो पूरी आपके पास पिस्टल छोड़िए, आप पूरे AK-47 भी हैं पुलिस वालों पे, तो बहुत बड़ा अधिकार है ना, तो यू कैन यूज इट फॉर फॉर सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी, इसलिए अधिकार दिया है ना। और तीसरा अधिकार है पावर ऑफ लॉ, कानून का अधिकार, IPC CRPC का अधिकार, लोगों के खिलाफ FIR करने का अधिकार, लोगों को जेल भेजने का अधिकार, ठीक है, क्रिमिनल्स को। तो ये तीनों अधिकार हमें सदुपयोग करने के लिए दिए, आम आदमी की रक्षा के लिए दिए, बदमाश के खिलाफ यूज करने के लिए दिए गए। किंतु इन ट्रिपल पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज शुरू हो जाता है। उस मिसयूज को रोकना, हम जो सीनियर लोग हैं, अगर आप पुलिसिंग की बात करें ना ग्राउंड लेवल, तो आम आदमी को थाने से मतलब है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है किसी का। हम सब थाने को सुपरवाइज करने के लिए बने, SSP हो, DGP हो, हमें ये देखना है कि थाने वाला इस ट्रिपल पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, उसे रोकना है, वही मेरी प्राइमरी भूमिका है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में एक साल में हमारी एवरेज 350 लोगों के सस्पेंड करते हैं, 350 पुलिस वाले, तो डेली एक सस्पेंशन। यस, बहुत बड़ी एवरेज। मैंने बोला ना, जो ट्रिपल पावर है, एक अथॉरिटी जैसे कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो एक अथॉरिटी जब आती है आपके पास तो उसके मिसयूज की संभावना हमेशा रहेगी, तो उस मिसयूज को रोकना बहुत जरूरी है। तो आप जो सोचते हैं ना कि आप देख के आंख मूंदते हैं, ऐसा नहीं है, आंख नहीं मूंदी जाती। अगर हमारे नॉलेज में आता है तो एक्शन जरूर होता है। सारे DGP या सारे SSP जिस पद पे आप रहे हैं, वो सब आपके जैसे नहीं होते ना, वो क्यों नहीं? वो सिस्टम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं? That we have more officers like you। नहीं, उस पर तो मैं तो क्या कमेंट करूंगा, लोकेश जी आप कुछ बताइए पहले, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि पहले जर्नलिस्ट कमेंट आना चाहिए। हाँ, तो मतलब मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम में जो ज़्यादातर लोग हैं वो ऑनेस्ट हैं और वो कमिटेड हैं इस समाज की, देश की सेवा के लिए, और तभी ये सिस्टम आज तक चल रहा है, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो गया होता। तो वो जो गुड एक एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, उसमें आम जन भी हैं और ऑफिशियल्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, उसको हमें, मुझे लगता है कि एक सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए, और उसको सर जैसे ऑफिसर्स या और जो पीपल इन पोजीशंस ऑफ पावर, अगर वो उस चीज़ को मैग्नीफाई करेंगे, उस चीज़ को और बढ़ावा देंगे, तो ये समाज बेहतर हो सकता है। तो वैसे तो ये क्राइम फेस्टिवल है तो सब लोग क्राइम पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस पुस्तक में हमने ये मतलब जो ह्यूमन सेंसिटिविटीज हैं
उसके ऊपर ये बात करने की कोशिश करी। मुझे लगता है सर जैसे बहुत लोग हैं पूरे पुलिस सिस्टम में, और करप्शन है वो भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम मैग्नीफाई द गुड जिसको बोलते हैं, अगर जो अच्छा जो तबका है अगर उसको मैग्नीफाई करने की कोशिश करेंगे थ्रू लिटरेचर लाइक दिस, तो तब उसका इम्पैक्ट पूरे समाज के ऊपर मुझे लगता है बेहतर होगा, और वही कोशिश की है इस किताब ने। और आपने देखा होगा ऋचा जी, हमने किताब में कोशिश की है आइडेंटिफाई करने की कि पुलिस में भी एक दलाल तंत्र है जी। जो लोगों को सीधे थाने जाने से रोकता है। थाने के बाहर ही चाय की दुकान पे अड्डे बन जाते हैं दलाली के, ठीक है ना। और कैसे एक रेप की पीड़िता के हस्बैंड को ही उठा करके झूठा ड्रग्स में जेल भेज दिया, तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है। या कैसे पुलिस वाले जो है सेवक ना होकर के साहब की तरह बिहेव करते हैं, है वो प्रॉब्लम्स वो आइडेंटिफाई की हैं। बट जैसा आपने कहा, हम भी एक ओवरऑल बड़े सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं इस बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो हम आइसोलेशन में भी नहीं काम करते। तो कहीं कहीं तो एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, जो मैंने बहुत स्ट्रांगली इसमें आइडेंटिफाई किया है। दूसरी कहानी जिसको हमने बोला है कि भाई सेवक नहीं साहब हैं हम, थोड़ा सा टायरिकली। और ये परसेंटेज खाली पुलिस में नहीं, हर जगह है। अगर आपने नोट किया, जो अप्रोचेबल भी नहीं होंगे, जो बड़ा तन के चलेंगे, जो पब्लिक को तो छोड़िए अपने ऑफिसर्स को ही अप्रोचेबल नहीं है, तो फिर वो क्या डिलीवर करेंगे, आप सोच सकते हैं। तो पब्लिक डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बात सही है कि सारे लोग इतने संवेदनशील नहीं होते, बट यस सिस्टम में सब तरह के लोग हैं और सब तरह के लोग सर्वाइव भी कर रहे हैं। बहुत एरोगेंट भी हैं, बहुत हम्बल भी हैं, बहुत करप्ट भी हैं, बहुत ऑनेस्ट भी हैं। तो वी आर ऑल वर्किंग इन अ बिग सिस्टम। जी, अब मैं आपसे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूंगी, क्योंकि बहुत ईमानदारी से आपने अपनी किताब में बताया कि यहाँ ये गलत कर रहा था, इसको निलंबित किया, अपने नीचे के सबके लोगों का आपने बताया। लेकिन मतलब तो एक तरह से विसिल ब्लोअर हो गए आप, और जब आप उस पद पर रहे होगे और तब भी जब आपने अपने टीम में या किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया होगा, एक विसिल ब्लोअर होना आसान नहीं होता, क्योंकि आप अपने ही डिपार्टमेंट में अपने खिलाफ बहुत सारे दुश्मन भी बना लेते हैं। आप कभी डरे नहीं कि, और उसके बाद फिर किताब भी लिख दी उस पर, आपको डर नहीं लगा कि मैं अपने ही डिपार्टमेंट की बुराइयां बाहर बता रहा हूँ? देखो डर तो मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लगा। पहला पॉइंट, यस उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने जरूर फेस किए हैं, वो अजय भी जानते हैं और मेरे बाकी कुछ ऑफिसर 3-4 और बैठे हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब आप अपने डिपार्टमेंट के कमियों को ढूंढ सकते हैं, उसके अंदर के माफिया को अटैक करते हैं, क्योंकि माफिया सिस्टम सब जगह कहीं ना कहीं काम करता है। ट्रू। मतलब आपने मतलब खाली ये नहीं कह रहा कि खाली पुलिस में, हर जगह है, कुछ परसेंटेज में हर जगह ऐसा सिस्टम बन गया है जो नेगेटिव है। तो जब आप उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे, परिणाम झेले आपने? मैंने झेले, परंतु मैंने उनको इग्नोर किया। आज को शेयर कर दीजिए, किताब में कहीं नहीं है वो कॉन्सिक्वेंसेस। अब वो कुछ ऐसा झेलने पड़ते हैं कि नहीं, उस पर अजय से कमेंट लेना, मैं शेयर तो अभी रिटायरमेंट के बाद कभी लिखेंगे, अभी तो क्या बोलेंगे। तो आप शेयर करिए कि ऐसा होता है कि नहीं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं अजय। मतलब आप अनपॉपुलर तो हो जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट का 99% आदमी आपका साथ देता है, क्योंकि उनकी इंटेंशंस गलत नहीं है। सिर्फ 1% आदमी है डिपार्टमेंट में जो रियल में, जिसको जो फिल्में दिखाती थी ना, बड़े वाला माफिया है, जो बड़े माफिया से जिसके तार जुड़े रहते हैं, जिसके इंटरेस्ट आम पब्लिक वाले इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक जनहित में नहीं है, सिर्फ उसके इंटरेस्ट हिट होते हैं, सिर्फ वो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करता है, बाकी पूरा डिपार्टमेंट आपका साथ देता है। इसमें मैं थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूँगा कि जो पुलिस वालों का जो कार्य है उसको भी बड़ी संवेदना के साथ उसमें दिखाया गया है कि एक सिपाही जो है वो इतने घंटे ड्यूटी देता है, खड़ा रहता है, सबको सलाम करता है, तो उसकी क्या सिचुएशन है लाइफ में और उसके ऊपर क्या बीत रही है वो भी दिखाया गया। तो उससे मुझे लगता है कि एक डिपार्टमेंट में भी एक पॉजिटिव मैसेज इस पुस्तक का जाता है। तो अजय जी मैं आपसे इनफैक्ट हाँ बस एक इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, जो सर ने भी कहा था कि जो पूरी बुक का जो सार कहेंगे या जो कहेंगे बेसिक पुलिसिंग का जो आज के समय की ज़रूरत है, वो सब जाके फोकस कहीं ना कहीं पीड़ित की होती है। जो न्याय का जो पहिया घूमता है या हम जो भी सिस्टम में चीज़ें करते हैं कहीं ना कहीं पीड़ित के लिए करते हैं। और तो जो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग की बात जो सर कह भी रहे हैं और जो बुक में भी एक झलकती है उसमें
कि प्रायोरिटी पीड़ित को होनी चाहिए। पीड़ित और खासकर पीड़ित वही होता है जो सक्षम नहीं होता है, जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता, वही पीड़ित होता है। नहीं तो अगर वो सक्षम ही होगा तो पीड़ित ही नहीं बनेगा वो। तो अगर हम अपनी पुलिसिंग में और जो इस बुक का सार कहेंगे, निचोड़ कहेंगे, अगर हम उसमें विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग, पीड़ित को केंद्रित करके अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो पुलिस की होती है किसी भी तरह की हो लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जो खाके में इंसान वाला जो सर का बुक का जो चरितार्थ करने की जो भावना है, वो तभी भावना उसमें आ सकती है। लेकिन क्या होता है कभी कभी सिस्टम में, जैसे बताया सर ने कि पुलिस भी एक सिस्टम, बड़े सिस्टम का छोटा सा पार्ट है। इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट सिस्टम अपने आप में है कि जो मैं रन कर पाऊंगा या आप रन कर लें या कोई भी रन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बीच बीच में छोटी छोटी अड़चनें आती हैं, तो वो हो सकता है कि वो एक सिस्टम में ज़रूरत कहिए या नेसेसरी इवल कहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कर्तव्य से आपको कोई हटा सकता। अगर आपकी दृढ़ता है तो आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो वही जो सर का है कि जो खाके में इंसान उभर के आता है, मतलब वो इंसान ही अंदर, और जैसे इंसान के दूसरे इंसान के साथ परिस्थितियाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ कभी उन परिस्थितियों से हार कर या डर कर या दब कर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। उसी तरह एक इंसान जब खाकी में होता है, वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम में या उसकी अपनी व्यक्तिगत कुछ कहीं लालसा आ गई या कहेगा लोभ आ गया, कुछ आ गया, तो गलतियाँ कर जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो 100% यही हो रहा है। आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं जो समय समय पर कभी कभी देखने को मिलते हैं। मैं यही पूछना चाहती थी, हर कहानी में ना अशोक जी मुझे ये जरूर लग रहा था कि ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से सॉल्व हो गया क्या, ऐसा थोड़ी होता है। तो अजय जी, इनफैक्ट आप दोनों से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे हम ये कह रहे हैं कि चलिए जो इंटेंशन अच्छा है वो अधिकारी करना भी चाहता है, लेकिन जो सिस्टम की आप बात करें, ऊपर से किसी नेताजी का फोन आ गया, या वो जो दबंग है वहां से कहीं किसी को धमकी आ गई, पीड़ित आपको लग रहा है कि पीड़ित के लिए ज्यादा ही करेंगे, पीड़ित को और ये नुकसान ना हो जाए, मतलब बहुत 100 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनसे कैसे आप लोग डील करते हैं? आप करना भी चाहे, कई बार सिस्टम को रोक देता है ना आपको हालात। बोलो पहले पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसकी मेजोरिटी लेवल क्या है? कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम कभी नहीं चाहता है कि मेरा जो चाहे पुलिस हो सिस्टम हो, चाहे कोई और विभाग हो या कोई अधिकारी हो, वो गलत काम करे। ये सिर्फ एक एक्सेप्शंस के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मैच्योरिटी के इस लेवल पर है कि वो भी समझता है कि जनता के हितों के लिए ही उसके हमारे लिए आते विश्वास हैं। करना बहुत मुश्किल है होगा नेचुरली, क्योंकि आप मीडिया में तो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए ना, आपको क्रॉस क्वेश्चन हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ, तो मैं इस चीज़ को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना मैच्योर है कि उसमें हम खुल के यहाँ पर पुलिसिंग उत्तराखंड में खुल के कर सकते हैं और सच्चाई से कर सकते हैं। इतना ही मैं कह सकता हूँ दावे से। मैं इसमें ये ऐड ऑन करूँगा। पहले तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग मैंने टर्म कॉइन किया, तो उसको एक्सप्लेन कर दूँ, जो अजय ने मेंशन भी किया है। तो विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग ये है कि समाज में पुलिस किसको चाहिए, जस्टिस किसको चाहिए? तो मैं कहता हूँ पीड़ित को चाहिए, विक्टिम को चाहिए। क्योंकि रिच और इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं, दूसरा शब्द मैंने इन्फ्लुएंशियल यूज किया, उनको तो जस्टिस मिल ही जाता है या वो मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो रह गया कौन? जो गरीब है, जो असहाय है, जिसपे न पैसा है और न पावर है, न इन्फ्लुएंस है न पैसा है। तो इन लोगों के साथ पुलिस की जरूरत है किसे? इनको जरूरत है। बाकी लोग तो मैनेज कर ही लेते हैं, किंतु अगर पुलिस भी इनका साथ नहीं देगी तो इनका साथ देगा कौन? देयरफॉर मैंने पूरा लाइफ इस पे फोकस किया है कि पुलिस को विक्टिम के साथ खड़ा होना चाहिए। पर इस पूरे सिस्टम में करप्शन कौन डाल रहा है? क्रिमिनल। क्योंकि क्रिमिनल को बचना है, पुलिस को भी वही करप्शन में डालेगा, आम उसकी मतलब मुठ्ठियां गर्म करेगा, जेब गर्म करेगा। फिर आगे जो बाकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंग हैं, चाहे सरकारी वकील हो, बाकी भी जितने बहुत सारे फैक्टर है, मैं सबका नाम भी नहीं ले सकता। तो पूरे सिस्टम में क्रिमिनल ही तो इसको करप्शन बढ़ाएगा ना। तो अगर मैं क्रिमिनल का साथ देता हूं करप्शन लेकर के, तो पीड़ित का साथ कोई नहीं बचा। तो हमें विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग करनी है, ये हमने लाइफ लॉन्ग स्टैंड लिया है, पहला पॉइंट। अब आइए दूसरा आपका जो पॉइंट है, जिस पे अजय ने भी बोला कि वो कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप लोग तो जो दूसरी साइड में तो नहीं है, जो अंदर पिलर हैं जी, न्यूज़ मतलब हमारी ही डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर है प्रेस। तो वो ये बिलीव नहीं कर पाते कि पुलिस न्यूट्रली काम कर रही है वगैरह वगैरह। तो उसका मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक पिलर है इस डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, और उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस सिस्टम में।
हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम हवा में थोड़े काम कर रहे हैं, हम जो पावर ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेरा कोई रोल है तो उनका भी रोल है, ठीक है, जनप्रतिनिधि का भी रोल है। कानून वही बना रहे हैं, कानून को लागू मैं कर रहा हूँ, जुडिशरी कर रही है कि नहीं? तो उस रोल को डिनाई करना पहली बात वो गलत है, नंबर एक। नंबर दो, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रॉन्ग साइड पे होते हैं, ये मैं बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूँ। सारी फिल्में हमेशा दिखाएंगे कि जैसे कि पॉलिटिशियन हमेशा रॉन्ग साइड पे, ऐसा नहीं है। मीडिया भी यही दिखाता है। पर ऐसा नहीं है, कई बार मैंने देखा है, मैं सच बोल रहा हूँ, कि हमारे पुलिस वाले गलत कर रहे होते नीचे। जो मैंने बोला ना, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, पैसा भी है और करप्शन भी है और वो भी है, इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है ना? तो कई बार आप देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि आपको कॉल कर रहा है तो वो सही साइड पे होता है। आपके नीचे से कहीं गड़बड़ हो रखी हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होती, एरोगेंट लोग बैठे, इसलिए वो फिर आपको अप्रोच कर रहा है। उसकी सीधे आप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं, इसलिए पॉलिटिशियन के थ्रू आपको कह रहा है, ठीक है? तो कई बार वो सही भी होता है। तो मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं तो अब 35वां साल है, रिटायर होने के करीब हूँ, और 95% टाइम मैं फील्ड में ही रहा हूँ हमेशा। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर मेरे पास 100 लोग आए एक दिन में, एवरेज है ये यूपी के जिलों की, मेरे फर्स्ट बॉस बैठे हैं विभूति नारायण राय सर, तो ये इलाहाबाद में थे, तो वहाँ तो रोज के 300 आते हैं, बहुत बड़ा जिला है वहाँ तो। 14 MLA थे, शायद 3 MP थे एक जिले में। वहाँ की आपने कहानी भी हाँ, लिखी मैंने है। कहानियाँ भी लिखी। तो जो नॉर्मल साइज जिला है ना यूपी का, और अपना हमारे यहाँ का हरिद्वार वगैरह में, हरिद्वार भी रहा, SSP मथुरा भी रहा, शाहजहानपुर रहा, वहाँ पे रोज के 100 आदमी आते, ठीक है, जिनको आपकी SP से मिलने, थाने लेवल पे और ज्यादा होते होंगे। तो 100 आदमी आए तो मेरी सोच है 90 में कोई वो नहीं आता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप उनको जस्टिस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, तो कम से कम 90 को तो दो। फिर रह गए 10, मान लिया 10 में लोगों ने आपको अप्रोच किया, तो 5 काम तो उसके सही होंगे। मैं लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमारे लोगों ने उसके साथ जाति कर रखी होती है। बाकी 5 को आप अगर नेता को बता देते हो ना कि ये पॉसिबल नहीं है, तो 95% नेता मान जाते हैं। यस, तो ओवरऑल 10% का 5%, मुश्किल से 1% मामले फंसते हैं, फिर उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो हम भी 9 जिलों में SSP रहे, नहीं तो 1-2 महीना बैठे रहते। 9 जिलों में SSP रहा ना मैं। अगर ट्रांसफर नहीं होता तो कहीं ना कहीं मामला फंसता तो ट्रांसफर हो जाता, क्या फर्क पड़ता है, अगली जगह जाएंगे। इनमें से आपकी अपनी सबसे पसंदीदा या जो आपको भावुक कर देती आज भी कौन सी कहानी है? कहानियां इसकी सारी बहुत अच्छी हैं। मैं तो जब हम पहली कहानी दोनों मिलके चुन रहे थे कि पहले किसको रखा जाए, मैं और लोकेश जी, तो बड़े दुविधा में थे, असमंजस में थे, क्योंकि जो दूसरी कहानी है कि जहाँ मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं कहीं चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गया, मैं जिन आदर्शों को, जिन आइडियल्स को सोच करके आए थे हम सर्विस में, कहीं मैं गलत तो नहीं फंस गया। शुरुआत में मुझे लगता था इलाहाबाद में कि 300 लोग आ रहे हैं, ऐसे ही भेज रहे हैं दरखास्त, जिस SHO के खिलाफ दरखास्त है उसी को जांच में जा रही है वो, और फिर वो क्या अपने खिलाफ क्या रिपोर्ट लिखेगा। सो मुझे लगा ये तो बड़ी बेकार जगह आ गए हम, कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूँ। बट धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये जो है सिस्टम में अगर आप चाहते हैं डिलीवर करना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जो मैंने पूरी लाइफ का अभी निचोड़ बताया कि हमने हमेशा हेल्प किया, रोज के 95 लोगों का तो मिनिमम हेल्प हुआ। तो इसलिए मैं सोचता था उसको पहला चैप्टर बनाए, या ये शाहजहांपुर वाली जहाँ गैंग रेप की पीड़िता के हस्बैंड को ही पुलिस जेल भेज देती है झूठे केस में ड्रग्स के, या वो जो एनकाउंटर वाली कहानी है जिसमें, हाँ, तो वो है, इसमें बहुत सारे, मतलब खासकर शुरू के 8, 9, 10 तो बहुत ही सारे दिल के क्लोज हैं जी। मेरे पास एक सवाल बचता है, लेकिन आई थिंक समय भी कम हो रहा है, तो 1-2 सवाल हम नीचे से ले लें, देन वील क्लोज विद द क्वेश्चन ऑन हाँ जी, रिफॉर्म्स। 4-5 ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्टूडेंट से शुरू करें, बड़ों से? चलिए, ये मनसेरा जी आपसे शुरू कर लो, एक और फिर पत्रकार। बच्चों से लेंगे। हाँ, चलो, उससे पहले मैं ले लेता हूँ। मेरे ख्याल से आपका पुलिस का सफर और मेरा पत्रकारिता का सफर लगभग बराबर है। पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। पत्रकार वैसे कभी रिटायर नहीं होता, और लेखक भी कभी रिटायर नहीं होगा, आप भी रिटायर नहीं होंगे, आप और कुछ लिखेंगे ऐसी उम्मीद है। आपने अभी 3 पावर की बात करी, लेकिन एक चौथी पावर भी आपके पास होती है। कौन सी?
सरकार की छवि, आप बिल्ड करते हैं सरकार की छवि। अगर आपके अंदर ही वही 1% आदमी गड़बड़ कर जाता है तो वो पूरी सरकार की छवि पे धब्बा लगाता है। तो कंट्रोल जो करना होता है वो जो 1% है उसको आप कैसे करते हैं? आपने कहा ट्रांसफर है, आपने कहा कि हम सस्पेंड करते हैं, लेकिन कुछ और भी कारण होते होंगे जो आप कभी कभी छुपा जाते हैं। क्या आप उसको प्यार से डील करते हैं, सख्ती से निपटाते हैं, कैसे करते हैं सर? पूरा क्वेश्चन मुझे अच्छे से तो क्लियर नहीं है, किंतु दोबारा दोबारा पूछे करेंगे, थोड़ा और क्लियर करें, थोड़ा और क्लियर करें। अच्छा, गलत लोगों से कैसे डील करते हैं? नहीं नहीं, जो पावर में है उनको बता दिया जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जो मैंने कहा भाई, जो आपने ठीक है जो करने लायक हो कर दिया है, और मान लिया 1% एक्स्ट्रा हेल्प भी कर दिया किसी का, वो वहां तक कर दिया, उसको बियॉन्ड बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, और ये स्टैंड हम क्लियरली लेते रहे। और उस जब वो बता देते हैं तो ऐसे में कभी कभी ट्रांसफर भी हो जाता है, ये सच्चाई। इसमें बस मैं एक लाइन सर बड़ी अच्छी कही थी उन्होंने, जो कि जो पुलिस विभाग की जो कार्य प्रणाली है या उसकी जो छवि होगी वो सरकार की छवि को रिफ्लेक्ट करती है, और एकदम मैं इस चीज को बहुत एकदम बढ़िया सहमत लाइन हूं बोली इससे। आपने। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा रिचा मैम ने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि आज के डेट में पुलिस को देख के किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को घबराहट होती है, ना कि सुरक्षा महसूस होती है। इस छवि को आप कैसे समाज के प्रति बदलिएगा? मैं तो सोचता था कोरोना से बहुत बदला है। कोरोना से पहले पुलिस का ट्रस्ट कोशेंट देश में 30% था, और कोरोना के दौरान 90 तक पहुंच गया था। पुलिस ने इतना लोगों का हेल्प किया, पर उसके बाद वापस जरूर हुआ तो इतना 30 पे तो नहीं गया। पहले तो समाज में पुलिस की छवि थोड़ी तो बेहतर हुई है, और बाकी जैसा मैंने बोला कि जो ही सारी की सारी पुलिस इस थीम पे आ जाएगी कि पुलिस का डर सिर्फ बदमाशों में होना चाहिए और आम आदमी को पुलिस को देख के खुशी होनी चाहिए। जब सारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक के इसी थीम पे आ जाएंगे तो जरूर सुधार होगा। बट ये छवि बिगाड़ने में क्या बॉलीवुड को भी आप लोग जिम्मेदार मानते हैं? बहुत बड़ा। बहुत कम फिल्में, मतलब मुझे याद नहीं आ रही कोई फिल्म अच्छे अधिकारी पे बनी हो कि अच्छा। डेफिनेटली देखिए, अब वो गलती से किसी ने एक दो अच्छी मूवी बना दी है, वैसे तो पुलिस का रोल नेगेटिव ही रहता है। और ये आप ये मान के चलें कि जैसे सर ने शुरुआती उसमें कहा था, लिगेसी वाली बात कही थी, जो पुलिस की छवि हमने अभी तुरंत में नहीं बनाई, चली आ रही। पहले मैंने कहा जो रूलर होगा या जो गवर्नमेंट होगी या जो उसका रोल मॉडल होगा वो उस चीज़ों को चलाता है। अंग्रेज सिर्फ ऑफिसर में थे, पुलिस जो काम करते थे डंडे चलाने वाले वो हम ही लोग थे। इसके बाद कुछ चेंजेस आते गए, तो वो चेंजेस जैसे जैसे आते गए, गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेसी आई उस हिसाब से चेंजेस आए, धीरे धीरे पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा सुधार, मतलब आप कहेंगे एटीट्यूड वाइज तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। और जिस दिन जैसे मैंने कहा कि ऑफिसर लेवल पर एटीट्यूडनल चेंज हुआ है, वैसे नीचे डाउन टू अर्थ भी एटीट्यूडनल चेंज हुआ है। ये बात दूसरी है कि पहले जो पुलिस में आते थे, फौज में या कहें यूनिफॉर्म जॉब में, या कुछ जॉब ऐसी है, डॉक्टर्स हैं जैसे ये, वो हमेशा डेडिकेशन चाहिए, वो डेडिकेशन वाली जॉब होती है जिसमें सेक्रीफाइस चाहिए आपको ना। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले की लाइफ फ्री नहीं होती, वो नहीं होती, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब क्या एटीट्यूड है, ये प्रोफेशनल के लिए आ गए। अब वो सेक्रीफाइस के लिए कोई नहीं आता। किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ और मैं पुलिस, वो जैसे ही फॉर्म भरने का जैसे निकलेगा उसको लगेगा मैं किस तरह का एलिजिबल हूँ, मेरा मेंटल लेवल क्या है और मुझे नौकरी चाहिए। तो ये जो चेंज आया है, जो प्रोफेशन के रूप में पुलिस को देखने लगे या किसी एक जॉब के रूप में, तो कहीं ना कहीं आप उस सेक्रीफाइस जो चाहिए था उसमें कमी तो आई है, और वो नेचुरल है। वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि वो डेडिकेशन में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन फिर भी जो आपने अभी क्वेश्चन किया था कि पुलिस की इमेज बॉलीवुड ने खराब करी, आपका भी रोल है वैसे तो ज़्यादा, और काफ़ी दिखाते हैं, लेकिन मैं इसको मैं वैसे लाइटर मोड में बोल रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में इमेज भी कोई बनाता है तो मीडिया ही बनाता है। किसी को भी अगर हीरो बनाएगा तो मीडिया ही बनाएगा, और जीरो बनाएगा तो मीडिया ही बनाएगा। तो जो फिल्मों की बात करें ना, पुराने जमाने की फिल्में जो थी वो हीरो को हीरो बनाती थी और पुलिस को जो जीरो बनाती थी। अगर उन्होंने पुलिस को हीरो बना दिया तो फिर हीरो का क्या होगा, है ना। अगर पुलिस सब कुछ करेगी तो वो हीरो जब सब कुछ कर लेता था, मारपीट करके सब फिट फाट कर लेता, तब पुलिस आती थी।
अगर पुलिस पहले आ गई तो हीरो क्या करेगा भाई? ये जोक चला भी था। दूसरा पॉइंट मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये पुरानी बात है। उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जिसमें पुलिस के फेवर में कहानियां आने लग गई, जैसे सिंघम, जैसे अर्थ सत्य से शुरू हुआ था और सिंघम तक आया। तो मैं ये कहता हूँ कि न तो सिंघम सच है और न ही दबंग सच है, क्योंकि वो तो वो बहुत एग्जैजरेटेड हो जाती है, बहुत दूसरी तरफ exaggerated। exaggeration सच हो कहीं है तो सच रियल नहीं सच से है। तो दूर हैं सब फिल्में। अगर वो रियल सच दिखाएंगे तो उनकी बिकेंगे नहीं, वो ये बोलते हैं। अभी बोल के गए गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले हैं। चलिए, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं जय एक हिंद बच्चों से जरूर पूछना रिचा जी। मैं ये लास्ट में बच्चों कहूंगा खाकी में इंसान, मैं कहूंगा खाकी में भगवान। पहले तो ये मैं बता दूं, मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस में नहीं है। मैं रिटायरमेंट के बाद पुलिस जरूर ज्वाइन किया हूं, लेकिन मैं अपना इंडिपेंडेंट व्यू दूंगा। एक मेरा स्टूडेंट बेंगलोर का कमिश्नर बना, मैं जियोलॉजी पढ़ाता था 90 बैच का, कमल पंत, और एक आशुतोष शुक्ला। मैंने 4 साल पढ़ाया। मेरे को टीचिंग नहीं मिल पाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे ने तो कई और स्टूडेंट्स होते जो पुलिस में होते हैं, आर्मी में होते हैं। कोविड टाइम के अंदर हमने देखा जैसे चेंज आया। मैं तो ये कहूंगा खाकी में भगवान। अगर मेरे को किताब लिखने के लिए आज कहा जाएगा तो मैं कहूंगा खाकी में भगवान। चलिए, आपने एक टाइटल दे दिया, थैंक यू। नेक्स्ट टाइटल वो मैं आपके साथ मिलकर नहीं, दूंगा कोरोना सर। के दिनों में तो सच में लगता था मैं ऐसा तो लोगों पहले को। चाहूंगा आपको सर एक्सटेंशन मिल जाए, आपको बर्थडे की नहीं, मुझे तो मांगा ही नहीं था, मुझे चाहिए, मेरा तो हो गया काम। सर अगर सवाल ना हो तो हम बच्चों से पूछे, रैप अप करने के लिए बोला जा रहा है खाकी मुझे। में भगवान इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक 40 पे 80 का प्लॉट लेता हूँ, मेरे को थाना नहीं पता, बसंत विहार। मैं सीधा पुलिस हेडक्वार्टर में, कोई मेरे को बताते हैं लाल हैं, मैं उनके पास पहुंच गया। वहां से मैंने कोर्ट में लीगल सिस्टम को सीखा। अब मैं पुलिस में आया, मेरे को लगता है मैं पहले क्यों नहीं पुलिस में आया। हमें डरना नहीं है, क्रिमिनल से डरना नहीं है। और जो यंग लोग बैठे हैं, मैं कहूंगा आप पुलिस या आर्मी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और लास्ट रिटायरमेंट के बाद जो लोग रिटायर हो बच्चों गए से ले पुलिस लीजिए। जरूर ज्वाइन ये कीजिएगा। स्टूडेंट्स जो Thank थे you। ना, उनसे लास्ट तो मेरे क्वेश्चन। लिए यस, खाकी में भगवान। वो बोल रहे। Greetings, sir. I have a suggestion, more of a doubt. Like don't hear much about the people who are caught for corruption, like inspectors suspended and all. So I believe if we make a big fuss about them, like the one who are imprisoned or taken action against, then it will encourage the people to trust the police. At the same time, it will chill the bones of those who promote or support corruption. Thank you, sir. पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा स्लो करो, माइक थोड़ा सा दूर रखो। Sorry, sir, my bad. Sir, हिंदी में बोलूं? बोल दो, Yes, sir. हिंदी में बोल दो। सर मेरा सवाल ये है कि जो लोग करप्शन के लिए जिम्मेदार हैं, हम उन लोगों को बहुत प्रमोट क्यों नहीं करते, जो जब पकड़े जाते हैं, वो जब वो पकड़े गए, किसी को सजा हुई तो न्यूज़ में दिखाएं, मीडिया में ज़्यादा दिखाएं, ताकि जो लोग आम लोगों को लगे कि हाँ पुलिस कुछ एक्शन ले रही है, और जो कर रहे हैं उनको डर बैठे कि ये करना खतरनाक है, आजकल इस ज़माने में ये नहीं चलता। थैंक यू सर। देखिए, एक्शन होता है, आपका पॉइंट सही है कि वो ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं पाता है, क्योंकि आती है, न्यूज़ भी आती है, ऐसा नहीं। मीडिया आजकल तो मीडिया, सोशल मीडिया तो सबके हाथ में आ गया है। बट समहाउ अभी तक का जो पुराना ट्रेंड रहा है कि मीडिया को चटपटी खबरें ज़्यादा अच्छी लगती हैं इनके बजाय, ये प्रॉब्लम है, ज़्यादा चटपटी खबरें अच्छी लगती हैं। यस मैडम, इन द माइक, ऑन द माइक। सर जस्ट ऑन अ लाइटर मोड, मोदी जी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा में पुलिस का उससे पहले डायलॉग से पहले क्या रिकॉर्ड था और अब क्या रिकॉर्ड है 1 to 10? अभी डाटा तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो एक एवरेज डाटा आपको दिया कि डेली जो है मतलब एनुअल फिगर उत्तराखंड पुलिस की सस्पेंशन की 350 के रेंज में। वो मैंने एग्जैक्ट डाटा तो कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले क्या था 14 के पहले या 14 के बाद क्या है। ठीक। और एक बात और बता दूं, पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा में ज्यादा उसका इम्पैक्ट दिखेगा। चलिए 1 to 1 बात करेंगे बाकी, क्योंकि चलिए मुझे रैप अप करने के लिए कहा जा रहा है वेरी क्विकली। अशोक जी, और सवाल लेने हैं? एक ले लो, सारे बहुत सारे बच्चे चलिए हैं। एक। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल मना रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक भी जो आम पब्लिक है उसके बीच में पुलिस की इमेज बहुत क्लीन नहीं है, जबकि फैक्ट्स कुछ और ही पिक्चर्स देते हैं। फैक्ट्स बताते हैं कि आज तक पुलिस के पार्ट पर कोई भी बड़ा स्कैम रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो या तो फैक्ट्स झूठ बोल रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि
99% ऑफ द सिस्टम सही होता है, 1% जो लोग होते हैं वो करप्शन करते हैं। सर मैं बात के साथ पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। मेरे पापा अभी इस समय उत्तराखंड पुलिस में ही सर्व कर रहे हैं, और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस करप्शन के लिए बहुत बड़े स्केल पर जिम्मेदार है, पुलिस में सैलरी जितनी महीने की मिलती है, आप रिटायरमेंट तक एक घर भी बना पाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं सर जवाब दे दूं? मैंने क्या कहा कि आप नौकरी में आते हैं तो बाई चॉइस है, बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है ना? तो आपने अगर चूज़ किया है किसी प्रोफेशन को तो बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है, आपकी ज़रूरत होगी तो आप आएँ। और बहुत बेहतर सैलरी हो गई है। खैर अब इस चीज़ को तो फोरम पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन लेवल भी है, फोर्स पे भी है, चाहे किसी भी लेवल का हो। और ऐसा है नहीं, मतलब इंडिविजुअली हो सकती है कि कुछ समस्या पारिवारिक हो तो उसमें कुछ दिक्कतें हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं सर कि नहीं, ऐसा। बिल्कुल ठीक है। और बड़ा टॉपिक है आपका, फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऋचा जी टाइम दिला रहे हैं नीचे याद। हाँ, एक लास्ट सेशन बचा है मुझे एक शायद। लास्ट क्वेश्चन बस जी, आप जी। दोनों से ही पूछना है कि पहले तो मीडिया ही, मतलब न्यूज़ चैनल वाले हर बात में कि क्या हुआ, कार्रवाई, अपराधी कब पकड़े जाएंगे, इतने सवाल रोज शाम को शुरू हो जाते थे। अब सोशल मीडिया भी आ गया है, सबके हाथ में स्मार्टफोन हो गए हैं। कोई भी वारदात होती है तो 10 क्लिप्स उसकी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। कितना बड़ा चैलेंज है आज पुलिस के लिए ये? देखिए, सोशल मीडिया आने से हमारा चैलेंज एक्चुअल में बहुत बढ़ गया है। जब हमने एज एसपी एसएसपी शुरू किया था तो 10-15 पत्रकार होते थे एक जिले में, ठीक है। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो 30-35 हो गए, जी न्यूज़, सहारा न्यूज़, ये न्यूज़, वो न्यूज़ करके, तो टोटल 30-35 हो गए। तब तक भी ठीक था। अब सोशल मीडिया आ गया तो हर आदमी के हाथ में मीडिया है, वो तो सीधा वायरल कर देता है कोई भी फोटो वीडियो। और तो और एक एक्सीडेंट से कोई गाड़ी बैक करने में डेथ हुआ तो उन्होंने कहा तो मर्डर का केस लिखो और थाने पे डेड बॉडी ला के रख दियो, फेसबुक पे लाइव हो रहा है, फेसबुक पे लाइव हो रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ेगी तो वही थाने में पथराव भी होगा, आगजनी भी होगी, तो मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो जितने बड़े अभी भी केसेस हुए हैं, मैं पर्टिकुलर केस का नाम नहीं लेना चाह रहा, तो जनता को किसी भी रूप में गुमराह करने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल हो गया है। तो जो आप जानते हैं डॉक्टर्ड वीडियोस, डॉक्टर्ड फोटोज, तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ गई है सोशल मीडिया के आने से। तो इट्स ए बिग बिग चैलेंज फॉर द तो पुलिस। आप जब एसएसपी थे और अब अजय सिंह जी तक, चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए अजय जी? डिफरेंट हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आतंकवाद की बात की थी, तो डिफरेंट हो गए। डेफिनेटली जैसा सर ने कहा कि चैलेंजेस बढ़ गए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कि कुछ कभी नेगेटिव चीज़ वायरल हो जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम टोटल एस्पेक्ट को देखते हैं, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबको एक मीडिया के रूप में देखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हमें जो नहीं पता चल पाती हैं वो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाती है और हम उसमें एक्शन ले लेते हैं या इंटरवेंशन कर लेते हैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चीज़ है कि एक जागरूकता का प्लेटफॉर्म है, पब्लिक के लिए भी एक बोलने का प्लेटफॉर्म हो जाता है। उसको कोई बात कोई कहीं नहीं सुनी जा रही, चाहे झूठ सच हो, लेकिन वो अपनी बात को कह लेता है। तो अगर ये नेगेटिव फैक्टर के अगर कुछ चीज़ें, जैसा सर ने भी साइट आउट किया कि जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं, फेक न्यूज़ कुछ वायरल हो जाती है, उसको अगर हम 10% इस चीज़ों को छोड़ दें तो मुझे लगता है 90% ये हेल्पफुल भी है और पुलिसिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। हम अपनी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, हमारे बहुत मीडिया बंधु भी बैठे थे, शायद मेरा इंतजार न किए चले गए होंगे, तो वो अच्छा लिखते हैं। तो पुलिस की इमेज को मैं देखता हूँ, अगर कोई बनाने वाला भी है तो मीडिया ही है, और तभी वो पब्लिक तक बात हमारी पहुँच पाती है। जो उससे कनेक्टेड नहीं है उसको लगता है पुलिस कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब उससे कनेक्ट होता है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो सही चीज़ें 90% तक पहुंचती। 10% तो ये ह्यूमन नेचर है, प्रोफेशन आपका भी है, मीडिया का भी प्रोफेशन है, तो नेचुरल बात है, जो जनता को पसंद है वही चीज़ छपती है, वही चीज़ दिखाई जाती है। तो वही कहा, जो इंसान, जैसे सब में मैंने कहा कि अगर इंसान के अंदर इंसान आ जाएगा तो खाकी में भी इंसान हमेशा रहेगा, एकदम याद रखिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank बहुत you, सारे सवाल everyone. रह गए, बट मुझे लगता है ऑफ स्टेज भी जिन Off लोगों को stage सवाल one to one पूछने हो पूछ लेंगे पूछ हम। सकते हैं जी, आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी आपका, सबसे पहले इतना उम्दा मॉडरेशन करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आर बिलवेड अशोक जी, जो कि हमारे मेंटोर भी हैं और एक मार्गदर्शक भी, अजय सिंह जी, लोकेश ओरी जी, और इसी के साथ I'd like to invite our festival director Alok Lal ji upon the stage, please, to felicitate our very eminent panelists. Big round of applause and a massive gratitude for all of them to take time out of their busy schedules and make some time for us. Thank you.
Lokesh ji, thank you so much. अजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए. And last but not the least, Richa Anirudh ji. Please, one more. Of course. Thank you so much. And with that, we've reached the penultimate session of the evening, and I'd like to invite my co-MC, Anupama, to take over and introduce our, for the last session, indeed, sir. Anupama, would you please like to take over? Thank you very much. Thank you very much, Shrishti, and thank you to all of you present here for your very engaged participation. पता नहीं आप में से कितने लोग उस टाइम पे कहाँ होंगे, बट 13th जून 1997 उस समय बॉर्डर फिल्म रिलीज़ हुई थी. तब OTT भी नहीं था, तो फिल्म्स और उसका रिलीज़ वाज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट. एंड बॉर्डर वाज अ वेरी नेशनलिस्ट फिल्म, तो बॉर्डर को लेके बहुत ही पेट्रियाटिक एक्साइटमेंट थी. एंड it was a 3 p.m. show, South Delhi Green Park, a very famous cinema hall, Upar Cinema, जिसमें बॉर्डर का शो चल रहा था. And just imagine हम लोग पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक के साथ मूवी देखने गए with a lot of excitement. And then a fire broke out at the cinema. 59 people died and 103 people were seriously injured. It was a tragedy that shook the nation because एक picture hall में आग लगने से suffocation में इतने लोग मर जाएं is something you rarely imagine. And इस sensitive subject पे Netflix पे वेब सीरीज आई, Trial by Fire, and needless to say, it is such a magnificent production that it has been a huge hit and critically acclaimed. IMDb gives it a high 7.8 rating, which we all know is a huge rating to get for a show. It was streamed in January 23. Like I said, it's based on this true story of the Upar fire tragedy, beautifully made production. And ladies and gentlemen, and all my dear young friends here, it's an absolute honor to welcome the team that's been an integral part of it. We are so happy to have you here with us. Thank you so much, Mr. Randeep Jha and Ms. Rajshri Deshpande. Can we have a huge round of applause for them, please? Thank you. I invite you to come on stage, please. Thank you, please. Let's really cheer for them. That's a great work that they've made, guys. I also invite our moderator, Mr. Manas Lal. I thought मैं मानस को बाद में बुलाऊं so that everybody can see this man here who has been the backbone of Dehradun Crime Literature Festival of India. Let's just clap for him, guys. There's a huge team that has gone into it, and trust me, we were on a tight schedule. We worked like a family, and I mean it. उसमें सिद्धांत हैं. There are so many people who worked. So Siddhant, thanks to you as well for the hard work to everyone. And Manas, I thought ये मैं ज़रूर mention करूँ when I called you on stage. Please have a seat. We're honored to have you. So like I said, Randeep Jha, director, writer, actor. अभी मैंने बात की Trial by Fire जिसमें अभय देओल हैं and Rajshri Deshpande. इसके अलावा रणदीप is also very famous for his work कोरा. हम सब ने कोरा देखा है. We know about it. देखिए, I'm sorry. A thriller set in Punjab. Right. But I would like to mention that Randeep made his directorial debut with Halahal in 2020, which was also inspired from a real life incident, the Vyapam scam. उसमें एक प्रोटैगनिस्ट है सचिन जो ट्राई करते हैं अपनी डॉटर की डेथ के बारे में ट्रूथ अनकवर करने में. सो आई थिंक ही हैज़ अ नैक फॉर वेरी सेंसिटिव नॉन फिक्शन स्टोरीज. थैंक यू. इट्स एन ऑनर टू हैव यू, रणदीप. थैंक यू. Rajshri, the beautiful lady sitting here, simple and graceful and exuding a lot of charm, I would say. It's great to have you, Rajshri. She's an internationally acclaimed actress, and I think that's fantastic for an Indian to make a mark internationally. Kudos to you for that, for some very, very interesting and bold roles. Thank you. Thank you.
Rajshri plays the lead in Trial by Fire, but इनके accolades और भी बहुत हैं. We all know her as the Subhadra in Sacred Games, directed by Anurag Kashyap. What a series again. And after that, she also played an Indian Urdu novelist, Ismat, in Nandita Das Manto, right? Thank you so much for joining us. Manas, like I said, this young lad sitting here, as I said yesterday also, he's like the tip of the iceberg. There's so much to him, but अभी time कम है, तो मैं try करूँगी short में आपके बारे में बताऊँ. He's the author, co-author of best-selling true crime books, Murder in the Bylanes and On the Trail of Thugs and Thieves. इसके अलावा बहुत सारे इनके क्राइम सेंट्रिक बुक्स हैं जो पाइपलाइन में हैं और उनमें से काफ़ी हैं जो ऑन स्क्रीन अडेप्ट होने वाली हैं. ऑथर होने के अलावा मानस ने hundreds of articles लिखे हैं for reputed newspapers, so he also has a journalistic bent of mind. A software engineer by qualification, he has used his technological expertise to develop a very unique style of digital painting, and we would love to see that sometime, Manas. Also a TEDx speaker, and like I said, an integral core part of this festival. Thank you so much, all of you, for joining us. Over to you. Excited to hear you. Thank you. Thank you. Thank you. I must acknowledge you, Anupma, for all the work you have done through the festival as MC. Thank you very much. And I'm very grateful to the entire team. I think she gave me too much credit. We're all a family. We've worked together and very hard to put this together. तो जो लोग यहाँ अभी हैं, please आप थोड़ा जोश बना के रखिए, because I promise you, you have two very talented people on stage, and you're going to hear a lot of wonderful things. Actually, I've been wondering मैं किससे शुरू करूं, because there is so much work to talk about. But yes, I'll actually ask you this first. As an actor, I have seen you step into so many characters. And before I come to Trial by Fire, I feel like Sacred Games, gained widespread recognition, but she mentioned the role in Manto and other places. Which of these roles has personally given you the maximum satisfaction as an artist? All of them. I think each of my role is very, very special to me and very near and equally taken my life. See, I have come into this industry after working in advertising and being a lawyer. मैंने एक वक्त पे ऐसा हुआ था, मैं जब काम कर रही थी, तो I thought I'm creatively not growing because मैं एक थिएटर आर्टिस्ट थी और सडनली होता है ना, एक प्रोटोकॉल होता है लाइफ का, भाई पैसे कमाना है, पढ़ाई करनी है, काम करना है, तो उसमें आर्ट ये बहुत ही दूर की चीज़ होती है. तो मैंने भी वही प्रोटोकॉल फॉलो किया कुछ वक्त तक कि भाई पढ़ाई 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 करो, नौकरी 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 करो. तो घर वालों को लगता है कि बच्चा सेटल्ड है. तो ऐसे में मैंने वो एक दिन में, एक वक्त में मैंने डिसीजन लिया कि आई वांट टू क्विट एंड आई वांट टू डू समथिंग विच आई रियली लव. तो मुझे लगता है कि इतना सब जद्दोजहद करके मैं जिस इंडस्ट्री में आई हूँ, तो मैं हर किरदार में ऐसे चुन के करती हूँ, मुझे जिसमें मज़ा आए, मुझे जिसमें लगे कि हाँ मैंने कुछ काम किया है. तो दैट्स इट. मतलब आपको जो चीज़ बहुत पसंद है वो आप बहुत मेहनत से करते हो, बहुत दिल लगा के करते हो. सो एवरीथिंग. सो इन दैट आंसर आपने बहुत ब्रीफली अपने थिएटर के स्टिंट के बारे में बात करी. सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट एंड हाउ यू होन्ड योर क्राफ्ट and whether there is a specific method of acting which you believe in or a school of acting you belong to. See, of course, I come from a very small town. औरंगाबाद से हूँ मैं. I've raised in villages. तो मेरा बचपन सारा गांव में ही गुजरा है. मेरे पापा एक वक्त खेती करते थे और तो हम एक छोटे से घर से आए हैं और तब वही था कि एक्टिंग और थिएटर और डांस और कुछ भी ये चीज़ें होती है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहीं जाती है. आई डोंट नो यहाँ पर क्या है, पर हमारे यहाँ पे वही होता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है भाई, ये मतलब ये स्कूल के बाद करने की ये चीज़ है, मतलब टाइम पास कर लो, छुट्टी में कर लो टाइप. तो वहाँ पे तो इतना थिएटर का जितना भी मुझे मिला उतना मैंने सीखा. पर मुझे लगता है कि मैं डांस भी करती थी, मैं ऑर्केस्ट्रा में भी गाती थी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें करती थी जिससे समाज से बहुत जुड़ी थी मैं.
तो लिटरेचर से भी काफ़ी जुड़ी थी मैं। तो इस वजह से अलग अलग फोक सीखना और अलग अलग आर्टिस्ट को देखना, उनसे मैंने जितना सीखा है उतना ही मैं लेके आगे चली हूँ। ऑफ कोर्स जब मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ा और मैं जब मुंबई आई, तब एक 10 साल के बाद मैंने फिर से थिएटर शुरू किया था। तो मैं विस्लिंग वुड्स नाम के एक फिल्म स्कूल है, वहाँ पे गई थी। इनफैक्ट जमील सर जो बैठे हैं मेरे टीचर भी हैं, उन्होंने भी मुझे एक्टिंग के लेसन्स दिए हैं। तो वही तब से फिर एक 10-12 साल हो गए मेरी ये जर्नी शुरू है। पर एज एन एक्टर आई फील कि आप जितना लोगों से जुड़े हो, एज एन आर्टिस्ट आई फील कि आप जितना लोगों से जुड़े हो, आप जितना एक दूसरे की कहानी जानते हो, उतना ही आप अपने मतलब जो भी आर्ट है उसको, उसकी स्किल को बढ़ा रहे हो। तो वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Very inspiring. Whistling Woods is a name which I think many of us will identify with. And it's great to know that you're an alumnus from there. Talking of your journey, रणदीप जी, मैंने पढ़ा आप AD थे, पहले आपने अगली और भी अनुराग जी की फिल्मों पे असिस्ट किया, मुक्काबाज and others. And now you're a director with fantastic work to your credit. Hala Hal, Trial by Fire, Kohra. Tell me something about this incredible journey. आई मीन जर्नी शुरू ऐसे ही हुई थी, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ फिल्म मेकर बनना है। लाइफ का एक पॉइंट था जब मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। पढ़ाई चल रही थी, बट लग रहा था कि यार कहीं लैंड कर नहीं रहा हूँ मैं। एंड उस वक्त मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ से बस जर्नी शुरू हुई। शुरू था कि अपने आप को एक्सप्लोर करना है और 4 साल थिएटर किया मैंने दिल्ली में बैरी जॉन के साथ। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत कमाल था। मैं अपने आप से कंफर्टेबल होने लग गया। मैं बहुत ही शाय चुपचाप से रहने वाला लड़का था। धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा मैंने वहाँ पे। और उसके बाद जब आप शुरू करते हो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा आपका जो ये शौक है या जो आप ये कर रहे हो इसको आप धीरे धीरे प्रोफेशन में चेंज कर सकते हो। जैसा भी राजश्री ने बोला कि जब आप स्कूल कॉलेज में रहते हो, अभी सिनेरियो चेंज है, बट जहाँ से हम लोग आते हैं, मैं भी अगेन बहुत ही छोटी जगह से आता हूँ, तो वहाँ पे वो शौक होता है कि अच्छा शौक अपने बाद में पूरे कर लेना, पहले सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। बट जब आप बड़े होते हो, थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, आपको पता चलता है कि ये शौक नहीं है, ये एक व्यवसाय है, एक सीरियस प्रोफेशन है। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी उस प्रोफेशन की। एंड देन फिर थिएटर किया, फिर बॉम्बे में आए और सिनेमा देखने की लत लगी। और सिनेमा भी क्योंकि हम लोग हिंदी फिल्म्स देखते थे जो कि हमारे इधर बनती हैं, धीरे धीरे वेस्टर्न फिल्में देखनी शुरू की, यूरोपियन फिल्म्स देखनी शुरू की। एंड देन कहीं ना कहीं लगा कि यार ये बहुत ही बड़ा क्राफ्ट है, बहुत ही बड़ा आर्ट फॉर्म है और इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती है, की जा सकती है। उसको फिर समझना शुरू किया और इसी दौरान कुछ डायरेक्टर्स थे जिनके साथ काम करने का बहुत मन था। उसमें विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी। मैं लकी था कि मैं दिवाकर बनर्जी और अनुराग कश्यप के साथ मुझे मौका मिला काम करने का। और वहाँ पे मैंने फिल्म मेकिंग का एक क्राफ्ट सीखा और समझा। एंड उसके बाद मैं अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। एंड तब जिशान भाई जो है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी हलाहल। मेरा बिल्कुल भी वो वर्ल्ड नहीं था, मैंने कभी भी वो वर्ल्ड देखा नहीं, क्योंकि वो अगेन व्यापम स्कैम पे था। वेस्टर्न यूपी में सेट फिल्म थी मेरे लिए। बट मुझे लगा कि अच्छा हाँ, इस फिल्म में ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वर्ल्ड में आप ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो वैसे मुझे पहली फिल्म मिली हलाहल, मैंने वो डायरेक्ट किया। एंड देन उसके बाद की जर्नी धीरे धीरे आप, एंड आई थिंक एक फिल्म के बाद अब जब दूसरा प्रोजेक्ट करते हो तो आप भी समझने लग जाते हो, आपकी समझ बढ़ती है सिनेमा को लेके, सिनेमा की जो पोइट्री है उसको लेके आपकी समझ बढ़ती है। तो ग्रेजुअली ऐसी जर्नी शुरू हुई। आपका जवाब सुन के 2 सवाल आए हैं दिमाग में। दूसरा सवाल आप दोनों से, तो पहला वाला पूछ लेता हूँ। ये बैरी जॉन साहब का जो थिएटर ग्रुप है, इसका क्या रहस्य है? There is so much talent which has come from that one group of artists. मैंने इनफैक्ट बैरी जॉन का मैंने नाम सुना था, मैं मनोज वाजपेयी जी की का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, और उन्होंने वहाँ पे बहुत मेंशन किया था। तो मैं भी ढूंढ रहा था कि मैं किन के साथ काम करूं।
और उस वक्त सत्या, शूर, ये सारी फिल्में आई थी और मनोज वाजपेयी बहुत बड़े हमारे लिए तो मतलब थे कि हाँ यार ऐसा कुछ काम होना चाहिए फिल्मों में। तो वो एक फर्स्ट रीज़न था उनको ज्वाइन करने का। लेकिन उसके बाद जब काम करना उनके साथ शुरू किया तो आपको पता चलता है कि आप खुद ही अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो, रात दिन आपको कोई सिखा रहा है, बता रहा है, प्रीच कर रहा है, ठीक है, एंड आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहे हो। वो जो एक उनका एक तरीका है, बहुत अजीब सी चीज़ है, बट वो कभी कुछ बोलते नहीं थे किसी को कि ये करो वो करो, सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं वो। और तो वो बहुत कमाल है, वो जो आई थिंक रेयरली मिलता है। मतलब कि बाकी सारे बहुत से लोग पुश करते हैं आपको कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो आपको पुश करते हैं आप अपना ट्रुथ खुद ढूंढो कि आपका ट्रुथ क्या है, आप खुद ढूंढो, अपनी सोच खुद थोड़ा सा डेवलप करो। तो वो एक है प्रोसेस जो शायद बहुत लोगों को हेल्प करता है वहाँ पे, और बहुत से लोग शायद इसीलिए वहाँ पे जाते भी हैं। जी, स्पीकिंग ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ्स एंड एक्सप्लोरिंग ह्यूमन इमोशंस जिसकी आपने बात करी, ट्रायल बाय फायर as a series is an exploration of emotions, and for me at least the lens of that story was the mother's character, Neelam Krishnamurthy's character. 97 में जब ये tragedy हुई, for all those sitting I'll just set some context. 97 में जब उपहार सिनेमा में आग लगी थी, a lot of people lost their lives, and among those there were these parents, Neelam and Shekhar Krishnamurthy, who wanted to fight for justice because they had lost their children in that fire. So stepping into that character, tell me about the emotional tumult, the process, and also working with this very talented man here. Of course, Neelam was I can say the toughest one, because वो journey काफ़ी बड़ी थी, उसमें 20 साल दिखाने थे, from her the tragedy to till 2020 fight. तो काफ़ी लेयर्ड स्पेस था वो, और उसको ये मतलब बेसिक फर्स्ट ब्रीफ जो प्रशांत ने मुझे दिया था, प्रशांत नायर, another director and a writer also and a showrunner of this show, तो प्रशांत ने दिया था कि एक तो हम मिले नहीं थी, मैं मिली नहीं थी नीलम कृष्णमूर्ति से, और ना ही मैंने किताब पढ़ी थी, क्योंकि प्रशांत ने कहा था कि तुम अभी सिर्फ स्क्रिप्ट से ही खोजो उसे। एंड फॉर मी इट वॉज मोर ऑफ अ इंटरनल प्रोसेस, मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस टू फाइंड हर। तो मैं बार बार वही सोच रही थी कि क्योंकि बहुत कम चीज़ें थी ऑनलाइन नीलम की, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मेरे लिए ये था कि मुझे नीलम को इंटरनली ढूंढना है। तो मेरा वही प्रोसेस था कि जितना मुझे स्क्रिप्ट से मिल रहा है उसमें मैं उसकी कहानी कैसे बनाऊं। और एक ऐसी चीज़ होती है कि एज एन एक्टर यू कैन रीच टिल देयर बट यू कांट एक्सपीरियंस एग्जैक्ट व्हाट हैपेंड, बट यू हैव टू रीच टिल देयर कि जहाँ पे आप वो कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वही जर्नी रही, क्योंकि उसे फिज़िकली भी मुझे एक मुकाम पर लेके जाना था, जितना मेंटली एंड इमोशनली। तो मेरे लिए वही मायने रखता है कि आप कितना उसे रियलिटी के स्पेस में ले जा सकते हैं। तो वही एक्टर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है वो पूरा प्रोसेस बयां कर पाना कि एग्जैक्टली उस मोमेंट पे, क्योंकि मैंने जैसे कई एक्टर्स के साथ बात किया है तो उनका हमेशा रहता है कि वो जो प्रोसेस इतना यूनिक सा होता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। उस ऑब्वियसली क्राफ्ट होता है, आप एक क्राफ्ट के साथ एक एक्टर आता है, बट उसके अलावा कुछ एक अलग सा डिवाइन कुछ चीज़ है या क्या है कि वो यूनिक सा होता है हर फिल्म के लिए। आई एम श्योर नीलम कृष्णमूर्ति के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जो एक प्रोसेस रहा होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा बाकी किसी और मतलब फिल्म बाकी के लिए। किरदार जो है निभाए, मतलब जैसे मैंने सेक्रेड गेम्स किया था, या फेम गेम में मैंने शोभा त्रिवेदी का कॉप का किरदार किया था, तो ये इन सब की अलग अलग जर्नी है। जैसे नीलम की जर्नी अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। तो वही है ना कि आपको, मुझे जैसे लगता है कि एक आर्टिस्ट कभी भी छुट्टी पे नहीं रहता है, हमें हमेशा ही ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। मतलब आज भी अगर देखूँ तो मैं शायद कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, जहाँ से मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाए जो कहीं ना कहीं तो मैं किसी किरदार में इस्तेमाल कर लूँ।
तो मेरे लिए वही एक प्रोसेस है कि मैं जितना समाज से जुड़ी रहूं उतना मैं उन किरदारों को और अच्छी तरह से और रियलिस्टिक वे से बना सकती हूँ। तो वही है नीलम, ये कहानी तो नीलम है, पर नीलम हम सब में है। हमारी सबकी कहीं ना कहीं तो वो जर्नी है। मतलब मुझे याद है कि मेरी माँ ने जब पहला एपिसोड देखा, उसने पहले तो किताब ख़त्म की, फिर उसने एपिसोड देखा, और मुझसे जब बात करते वक्त उसने एक उसकी एक दिल की भड़ास मुझे निकाली कि जब मेरा सबसे बड़ा भाई गुजर गया था अस्पताल में, तो वो इट वाज अ मेडिकल नेग्लिजेंस, एंड देन व्हेन शी शेयर्ड दैट विथ मी दैट कि मैं कुछ नहीं कर पाई। एंड आई एम सो ग्लैड दैट नीलम जैसे लोग यहाँ पर हैं जो 20 साल तक आज भी लड़ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ हर you know, my 77-year-old mother is getting that strength to actually open up and say this. That means she's in all of us. And so I don't have to kind of, you know, find ki ye hai. She's there. So Absolutely, and your conviction comes through as a man watching that show, experiencing very different emotions, the different emotional spectrum. आप जब वो CCTV footage देख रही हैं and छान रही हैं कि क्या हो रहा है, so that's a scene which is imprinted in my mind because I see the expressions of the actor. And tell me in this process, because there is this tendency that you see the actor on screen, लेकिन पर्दे के पीछे जब आप बात कर रहे हैं ना सीन लाइक दैट, या फिर जो कोहरा में एक सीन है जिसकी मैं आपसे बाहर भी बात कर रहा था, जिसमें वो घर जाते हैं and then he suddenly takes out his frustration on his daughter's boyfriend. तो ये जो आप, what are your instructions in a scenario like that? एक चीज़ तो है कि सिनेमा में ना एक चीज़ मुझे आज भी अमेज करता है, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि लोग अपने पर्सनल इमोशन के साथ कनेक्ट कर गए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, बट मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं जो कि कहीं से भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद मैं कनेक्ट किया हूँ। लाइक मैं जब कोहरा इनफैक्ट जब मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो बलबीर और उसकी जो बेटी का जो पूरा ट्रैक था, तो हम लोग ने 5 दिन शूट किया था वहाँ पे, और वो बहुत ही टॉक्सिक सा वर्ल्ड था, बाप बेटी के बीच का रिलेशनशिप। और 5वें दिन वाकई में मुझे ऐसा हो रहा था कि यार थैंक गॉड ये ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए खुद के लिए मतलब कि टॉक्सिक होता जा रहा था वो। और मैं सोचा था कि यार इसमें से कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो अभी मतलब कि मेरी वो उम्र हुई नहीं है जहाँ पे अभी बलबीर सिंह का कैरेक्टर है, उसके बावजूद वो मुझे इतना हिट क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सिनेमा वो इनएक्सपीरियंस इमोशंस और वो सारी चीज़ें आपको हिट करती है, और वो क्यों करती है पता नहीं। या फिर आप कोई वेस्टर्न फिल्म देखते हो या फिर यूरोपियन फिल्म देखते हो, आपका वो वर्ल्ड है नहीं, उसके बावजूद भी आपको वो हिट करता है। तो वो एक आई थिंक सिनेमा का पावर है। जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर, बॉम्बे में बैंड्रा जगह है, वहाँ पे रहने वाले लोग जिन्होंने कभी वासीपुर देखा नहीं है, इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा टाउन में रहे हैं और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज देखी है, इनफैक्ट वो देख के इमोट हो रहे हैं, वो देख के एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उनका वो वर्ल्ड भी नहीं है वासीपुर। तो वो मुझे लगता है कि यार ऐसा क्यों होता है कि सिनेमा में आपका वर्ल्ड नहीं है फिर भी आप इतना एंजॉय कर रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो। सो वो एक कमाल का पावर है आई थिंक सिनेमा का, जो कि और किसी आर्ट फॉर्म में शायद इतना नहीं है। बिल्कुल। एंड स्पीकिंग ऑफ कोहरा, जो कैरेक्टर है बलबीर जी के जिसके बारे में आपने बात करी, उसमें देयर आर दिस ग्रेज इन द कैरेक्टर। तो आप पहले जब एज ए पुलिस ऑफिसर उनसे आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत ईमानदार आदमी लगते हैं, एंड यू फील लाइक यू आर रूटिंग फॉर दिस कैरेक्टर, एंड देन सडनली दैट फ्लिप्स ऑन इट्स हेड व्हेन यू सी द रिलेशनशिप विद द डॉटर, and obviously the way he unleashes himself, all that frustration on her boyfriend, and a lot of other things which happen through the series. There is a tendency that मैंने अक्सर ये देखा है, blacks and whites में characters बहुत पेंट किए जाते हैं, पर from all your work, from हलाहल and then to trial by fire and then to कोहरा, मैंने ये देखा है ग्रेज हैं आपके हर कैरेक्टर में, even कृष्णमूर्ति's show their flaws. How do you manage to capture these grays so beautifully? तो एक तो ये बात है कि मेरी कोशिश रहती है कि कैरेक्टर्स को जज ना किया जाए। जैसे कोहरा में एक था, कोहरा शुरू करने से पहले ये था कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, सबको लगता है कि यार मैं विक्टिम हूँ, ये जो सारे हालात हो रहे हैं, और सबका अपना ट्रुथ था, हर कैरेक्टर का अपना ट्रुथ था। बलवीर था, उसको लगता था कि मेरी लाइफ में मैं सब कुछ इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे को कोई समझ क्यों नहीं रहा है। बेटी को लगता था कि मेरे को कोई क्यों नहीं समझ रहा है। तो सब अपनी अपनी दुनिया में थे। तो एक कोशिश रहती है कि यार कैरेक्टर को हम समझें ना, उसको ऑब्जेक्टिवली देखें और हम उन कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें। तो एक वो, और शायद इसीलिए इनफैक्ट हलाहल में भी जहाँ तक कोशिश की गई थी कि
चीज़ों को इस लेंस से ऑब्जर्व किया जाए कि आपको वो घटना दिखे, रात दिन आप कैरेक्टर को जज करना शुरू करते कि अरे ये तो बहुत बुरा इंसान है, आपको लगे अच्छा इस मोमेंट पे इस आदमी ने ये किया था। और एक चीज़ मेरा मानना है जो मैं कोशिश करता हूँ फिल्म जब भी मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, कि आपको भी पता नहीं है कि कैरेक्टर कैसे बिहेव करने वाला है अनटिल अनलेस उसके पास वो सिचुएशन ना आए। नॉर्मली होता है कि लोग कैरेक्टर्स को पहले ही वो खांचों में बांध देते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही करेगा। नहीं, जब उसके पास सिचुएशन आएगी आपको पता नहीं है कि उस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है कि आपने जिस इंसान को अभी तक सोचा कि यार ये तो बहुत सीधा साधा इंसान है, और क्योंकि अभी तक उसके पास ऐसी सिचुएशन आई नहीं है कि जहाँ पे उसको उस तरीके से बिहेव करना हो, शायद वो अभी तक उस हालात में रहा हो जहाँ पे वो सीधा साधा काम चल रहा था, और अचानक से ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे उस सडनली आपको लगता है अरे यार मैंने तो कभी सोचा नहीं था ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है, एंड देन आप क्वेश्चन करने लग जाते अच्छा मैंने गलत जज किया था। तो वो एक कोशिश रहता है कि हालात को एक्सप्लोर किया जाए रादर देन उस इंसान के कैरेक्टर्स को आप एकदम एक ब्लॉक में बांधने लग जाओ। तो वो रहता है एक। So Rajshri ma'am, actually picking up from that answer, you have had so many wonderful co-artists, जैसे नवाज साहब थे in Sacred Games, and now you have worked recently with Abhay and so many others. आपने इनके process से obviously कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, but are those learnings things you immediately imbibe and take on in your work, or do you like to keep your process very singular and individual? Yeah, it's a very collaborative space and तो वही प्रोसेस यही है कि हमें एक दूसरे के साथ एक किरदार की तरह से काम करना है, एक रिस्पेक्ट की तरह से काम करना है. So it depends, like some of my co-actor wants to do the rehearsals, wants to discuss about the scenes, the characters. Some just wants to come and just shoot. तो हर एक का अलग अलग प्रोसेस है एंड आई रिस्पेक्ट देयर स्पेस एंड देयर प्रोसेस, और मैं उनको जिस तरीके से है उस तरीके से मैं खुद को ढालती हूँ. और क्योंकि एज बीइंग working in this industry but whatever few years and whatever work I have done, I have learned myself कि okay अगर ये नहीं कर सकते हैं, इनको नहीं करना है रिहर्सल, तो अच्छा इनको किस तरीके से इस चीज़ को मैं मतलब सीन्स को कैसे कर सकते. तो या सो वी आर प्रोफेशनल नाउ एंड वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्रोसेस. This tragedy took place, the trial by fire tragedy in 97. You told this story so many years down the line, 25 years down the line. Tell me about recreating the time, one, and secondly about making people of today realize the scale of the tragedy. Where did you establish that connect? कि आज भी जो एक इंसान है जिसको नहीं मालूम है about that time, वो इस कहानी से connect instantly करे. तो मेरे पास ट्रायल बाय फायर आया था, प्रशांत नायर जो है जिन्होंने इस बुक को अडेप्ट किया था, और तो ट्रायल बाय फायर 2 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किए, प्रशांत नायर और मैं. तो प्रशांत नायर उन्होंने जब पहली बार मुझे कॉल किया और उन्होंने बताया कि अच्छा ये शो है और हम लोग ये बना रहे हैं. 97 में मुझे याद है कि मैं बिहार में था और ये 97 की घटना घटी थी, और मैंने रेडियो पे सुना था ये पूरा. उस वक्त मधुबनी के पास में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे था मैं, और रेडियो बहुत उस वक्त चला करता था, और मैंने रेडियो पे ये घटना सुनी थी कि अच्छा उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी है और ये हुआ है. उसके बाद इतने सालों बाद जब प्रशांत ने जैसे ही बताया कि उपहार पे हम लोग शो बना रहे हैं और ये है, और मेरी सारी मेमोरीज फ्रेश हो गई. क्योंकि उसके बाद जब ये केस चल रहा था मैंने फॉलो करना शुरू किया था, कुछ कुछ पढ़ा था, और मुझे लगा इतने सालों बाद, जबकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा है, जो भी फुटेजेस देखे हैं, और मेरी मेमोरी अगर इतनी फ्रेश हो सकती है, लोगों ने जो वहाँ पे रहे हैं जिनको पता है, आई थिंक काफ़ी पावरफुल इंसिडेंट है वो, इसका मतलब. क्योंकि एक सिनेमा हॉल में जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो, जब ये चीज़ आप अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे ये होगा. मतलब कि सोचिए कि आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो जहाँ पे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार उनके साथ कभी वहाँ पे कुछ गलत हो. सेम सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, अपने 2 घंटे 3 घंटे अपने भूलने के लिए जा रहे हैं अपनी जो भी इनकी ज़िंदगी है, और वहाँ पे ये घटना घट जाती है. तो मेरे लिए था कि यार ये बहुत ही कमाल की पावरफुल स्टोरी है, इसको बोली जाए. एक चैलेंज था कि क्योंकि ये घटना कई बार न्यूज़ में आ चुकी है, कहीं ये डॉक्यूमेंट्री ना लगे, इसकी सिनेमेटिक लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जिस पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया. एंड देन उसके बाद
R&D करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं कि कैसे वो ऑथेंटिक रहे उस घटना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद ना भी पता हो इस घटना के बारे में। तो देन वो प्रोसेस होता है उसको कैसे सिनेमैटिक लैंग्वेज में तब्दील किया जाए। एंड ट्रायल बाय फायर टाइप की फिल्म में क्योंकि टेक्निकल भी बहुत था, आप वापस से पूरा रिक्रिएट कर रहे हो, आप एक पूरा सेट बना रहे हो, उसमें आग लग रही है, लोग हैं, तो वो प्रोसेस था जो टेक्निकल, जो काफ़ी प्री के टाइम में काफ़ी लोग थे, डीओपी जो हमारे सौम्यनंदा साही हैं, उनके साथ काफ़ी हम लोगों ने टेक्निकल रिहर्सल्स करी थी कि इसको किस तरीके से, ताकि शूट के दौरान कुछ हादसा ना हो, वो भी एक था। तो दो चीज़ें थी, एक तो इमोशनल ट्रैक था पूरा कैरेक्टर्स का, उनकी जर्नी थी, और दूसरा जो तो टेक्निकल पार्ट था, जब वो एक्सीडेंट होता है उस वक्त लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वो उसके बीच का बैलेंस जो कि एक प्रेप का पोर्शन वो होता है, एक प्रोसेस, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट या मुझे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि जैसे ही बुक एडाप्टेशन होती है तो इसको थ्रिलर की तरह से भी बना सकते थे ये लोग, पर इन्होंने वो एक जर्नी जिस तरीके से दिखाई, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को भी दिखाया कि वो जो मेन थ्रेड जो रखा था नीलम और शेखर का, कि जब ट्रायल कोर्ट से रोज़ रोज़ सुबह उठ के ट्रायल कोर्ट जाते हैं और कुछ नहीं होता है, और वो घर जाते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं और फिर जाते हैं, ये जो उनकी जर्नी दिखाई है उन्होंने, और जहाँ पर मतलब बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप उसको ओवर द टॉप भी बना सकते हो, मतलब आप उसको फुल ऑन कोर्ट ड्रामा और कोर्ट रूम ड्रामा और पता नहीं क्या भी कर सकते हो, पर इन्होंने वो इमोशनल थ्रेड रखा कि जब बच्चे का बर्थडे होता है और वो केक आता है तो क्या रिएक्शन हो सकती है, रोज़ सुबह उठते हैं और बच्चों का कमरा देखते हैं तो कैसा लगता होगा उन्हें, काम पे जाना है, पर मैं भी बोल रही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब वो टिटिलेट नहीं करी कि अरे पता नहीं क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपको छोटे से हिस्से पर इतना वो दिल को छू जाती है, क्योंकि आप उसमें देखते हो खुद को, आपको महसूस होता है कि अरे ये ऐसी चीज़, जैसे अभी इसने कहा कि हम सिनेमा हॉल में एक एंटरटेन करने जाते हैं, अपने दुख दर्द छोड़ के हम कुछ डांस ड्रामा कुछ चीज़ें देखने जाते हैं, पर ऐसे जगह पे ये सारी चीज़ें होना, और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या गुजरा होगा, वो लोग घर कैसे जाते होंगे, वो तो ये जो डेली रूटीन लाइफ उन्होंने दिखाया है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को टच कर गया है। और या और एक चीज़ मुझे लगता है कि जैसे सिनेमा में सिनेमा बेसिकली एक म्यूजिकल पीस होता है, लाइक 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, और हर उसका आपको रिदम ढूंढना पड़ता है कि अच्छा इसका रिदम क्या होगा, लाइक ट्रायल बाय फायर का रिदम क्या होगा। ट्रायल बाय फायर आप किसी और रिदम में नहीं बना सकते, जैसे म्यूजिक होता है कि क्लासिकल म्यूजिक है, ये पॉप म्यूजिक है, अच्छा इसका ये रिदम होगा, वैसे आपको फिल्म में ढूंढना पड़ता है अच्छा इस फिल्म का रिदम क्या होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करें लोगों के साथ। तो वो थोड़ा सा मुश्किल, कई बार होता है कि शायद फेल भी हो जाए, हो सकता है आपके जजमेंट गलत भी जाए कि अच्छा मुझे लगा था कि ये इतना सटल होना चाहिए था बट ये बहुत ज़्यादा सटल हो गया। तो वो बैलेंस में खेलते रहते हैं थ्रू आउट फिल्म मेकर्स की, अच्छा ये बैलेंस क्या होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे आपकी बात, क्योंकि अक्सर लोग परफॉर्मेंस के सुर की बात करते हैं जी, लेकिन आप लय की बात कर या रहे हैं। लय की, मैंने इनफैक्ट या मुझे इनफैक्ट हलाहल जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे याद है कि एडिट में उस वक्त 1 घंटे 30 मिनट की फिल्म है हलाहल, जो मुझे पर्सनली मुझे उसमें मेरा काम काफ़ी मुझे लगता है कि हाँ इसमें कुछ शायद मैंने कुछ ढूंढा था, और वो 1 hour 45 minute का था और पूरी कहानी वर्क कर रही है, सब कुछ वर्क कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जिनको भी मैं दिखाता था वो पॉज कर देते थे कि यार इसके बाद है ना थोड़ा सा बोर हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता कि बोर क्यों हो रहा है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट आ रही है, सीन करेक्ट जा रहे हैं, फिर बोर क्यों हो रहा है। एंड बार बार हम एडिट कर रहे हैं, एक पॉइंट के बाद मुझे रिदम का समझ में आया कि अच्छा इसका रिदम ऑफ जा रहा है, क्योंकि ये सीन थोड़ा सा इतना छोटा होना चाहिए था, इसके बाद ये सीन इस पॉइंट पे चला जबकि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारी। एंड द मोमेंट मैंने वो रिदम करेक्ट किया, किसी ने नहीं बोला कि यार बोर हो रहा है, वो एक फ्लो में खत्म हुई, जैसे म्यूजिक के साथ होता है। नुसरत फतेह अली खान साहब का 20 मिनट 30 मिनट का आप सुनते हो, वो आप उसका जो रिदम जिस तरीके से आता है कि शुरू के जो इंस्ट्रूमेंट्स जब आते हैं, फिर एक पॉइंट पे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर एक अलाप दूसरा आता है, मैंने कहा अच्छा ये रिदम का गेम है, जो कि मैंने हलाल करते वक्त बहुत सीखा, एंड देन फिर वो बाकी के काम में मैंने यूज़ करना शुरू किया। बिल्कुल, तो हालात से शुरू करके हम फिर
मुझे लगता है सेशन के एंड की तरफ भी पहुंच रहे हैं धीमे धीमे। मैम जस्ट वन क्वेश्चन, आपने बुक टू स्क्रीन की बात करी अपने पिछले जवाब में, तो जब किताब पढ़ते हैं उसको ऑन स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, was reading the book a part of your research? Because we are at a literature festival, I wanted to understand your love for reading and whether reading the book on the Upahar cinema tragedy was an integral part of your research for the character. नहीं, मैंने किताब बाद में पढ़ी, शूट होने के बाद पढ़ी मैंने। दैट्स व्हाट प्रशांत had told me not to read the book. पर वही, because literature is of course very close to me. I think who I am, what I am and what I'm doing and what I perceive to do is all literature. मतलब मुझे लगता है कि जब मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ के मैं एक्टिंग की तरफ आई, तो लिटरेचर ने ही मुझे रास्ता दिखाया कि ये है, ये समाज है, ये कहानियाँ हैं, ये इमोशंस है, ये लोग हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं। क्योंकि आप सडनली ऐसे दुनिया देखते हो ना उससे, और वही से मतलब जो प्रेमचंद हो या मंटो हो या इस्मत हो या उदय प्रकाश हो, निर्मल वर्मा हो, सो मैनी पीपल, तो उन्होंने ही रास्ता दिखाया है। सो लिटरेचर इज़ अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, इवन वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो। तो वही से मतलब मैं समाज से भी मैं उसी से जुड़ी हूँ। मतलब मैं एक नॉन प्रॉफिट चलाती हूँ, मैं किसानों के लिए काम करती हूँ मराठवाड़ा में। तो वहाँ पे मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एज अ आर्टिस्ट एक उतना ही दे सकती हूँ, पर एक इंसान बन के मैं बहुत कुछ दे काम कर सकती हूँ ऑन ग्राउंड। तो वही तो वही मुझे लगा कि एक आर्टिस्ट से मुझे एक इंसान के इसमें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वहाँ से ही आर्टिस्ट बनी हूँ। तो इस वजह से मैं और ये सब भी मुझे लिटरेचर से ही मिला है। मतलब प्रेमचंद पढ़ के मेरी आँखों में मतलब आंसू ही आए हैं, और मैं मंटो की या चुगताई की कहानी सुन के या गोदी माडगुड़कर से लेके विजय तेंदुलकर की कहानी सुन के मेरा दिल टूटता है, बहुत सारी ऐसी। और मेरा अगर दिल टूटता है तो मैं वहीं पे उसे नहीं रखना चाहती हूँ। मैं इवन मेरे किरदारों से भी मेरा जब दिल टूटता है तो मुझे लगता है कि मेरे वो लोग वैसे ही हैं। मतलब मैंने एक एस दुर्गा, सेक्सी दुर्गा जिसका नाम था, एस दुर्गा नाम की फिल्म की थी। तो मुझे पता है कि ऐसी कई सारी औरतें हैं जो आज भी गाड़ी में किसी गाड़ी में बैठती हैं, आज भी मॉलेस्टेशन का शिकार होती है, आज भी अनसेफ है। तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस दिखा रही हूँ कि गॉडेसेस में एक औरत है जो कोर्ट केस पे चल रही है, नीलम कृष्ण थी, स्टिल फाइटिंग द केस अबाउट, एंड शी इज फाइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस डूइंग फायर एंड सेफ्टी लॉ रेगुलेशन इन इंडिया। सो व्हाट एम आई डूइंग? आई नो आई एम पोर्ट्रेइंग दोज पीपल ऑन स्क्रीन, पर मैं ज़मीन पे जाके क्या काम कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि मैं उतना तो कर ही सकती हूँ। तो इतना योगदान। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, what I am, who I am, what I perceive to be is all literature. I think there can be no better note to open this to the audience actually. So, yes Manoj ji, please. So, I'll forget because I'll take the advantage of being older than you. रणदीप, मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जितनी भी आर्ट फॉर्म है वो स्वांता सुखाए होती हैं या परांता दुखाए भी हो सकती हैं, लेकिन एनीवे स्वांता सुखाए में जैसे आप म्यूज़िक गाना गा रहे हैं या कोई पेंटिंग कर रहे हैं, मानस पेंटिंग कर रहे हैं, तो मेरे अपने दिल की खुशी के लिए होता है। लेकिन आपका जो आर्ट फॉर्म है वो ऐसा है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू भी है। तो आप कोई भी काम जो कर रहे हैं, जो आप पिक्चर बना रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक कि आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी कि मेरी खुशी, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो जो आप रिदम की बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कितनी लंबी चले, क्या चले, ये आपको एक इंस्टिंक्टिवली पता चलेगा कि इसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या आपके दिमाग में ऑडियंस भी रहते हैं कि अगर मतलब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट यू परसीव टू बी artistically nice, perfect, and which may not go very well with the audience. So do you face that conflict sometimes? Do you compromise with that kind of situation, and how do you resolve that issue? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है।
मैंने 3 प्रोजेक्ट किए हैं, हलाहल, ट्रायल बाय फायर, कोहरा, और तीनों में कभी भी ऐसा नहीं आया कि अच्छा ये ऑडियंस को पसंद आएगा नहीं आएगा। इनफैक्ट जब हम लोग कोहरा कर रहे थे, कोहरा का रिदम बहुत डिफरेंट था। इनफैक्ट जब स्क्रिप्ट पढ़ा था, स्क्रिप्ट का रिदम बहुत डिफरेंट था, बहुत ही शांत, ऐसा लग रहा था जैसा कि ठहरा हुआ पानी हो, और उसके अंदर का जो उथल पुथल है जो कि कोहरा में दिखता है। और जब बना भी रहे थे तो ये था कि ऑनेस्टी के साथ बनाते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है, इसका जो ट्रुथ है उसको एक्सप्लोर करते हैं, रादर देन कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। इसीलिए उसका रिदम भी बहुत डिफरेंट है। इनफैक्ट एक डर था जब हम एडिट पे थे, तो ये डर था कि यार हो सकता है शायद पसंद ना आए। फिर ये था कि नहीं ठीक है, लेकिन हमने अच्छा बनाया है, शायद 2-3 अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे, क्रिटिक रिव्यूज़ तो आ जाएंगे, बुरा तो नहीं बनाया है। बट कभी ये नहीं था कि यार ये ऑडियंस को ये अच्छा लगेगा, ये करते हैं। शायद हो सकता है बाद में ये करप्शन आ जाए, बट टचवुड अभी तक वो करप्शन नहीं आया है। एंड मुझे लगता है कि आप ईमानदारी के साथ आप काम कर सकते हो। आपको पता नहीं, क्योंकि अगेन बहुत बड़ी जनता है, आप कितना ध्यान रखोगे, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद नहीं आएगा। आप अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ कर सकते हो, और जितनी आपने अभी तक समझ इकट्ठी की है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और समझ इकट्ठी होगी, उसमें कितना ईमानदारी रहता है, कितना करप्शन आता है, वो डिपेंड करता है, और वो काम में दिखता भी है कई बार। इनफैक्ट काफ़ी फिल्में इसलिए ख़राब हुई हैं क्योंकि ऑडियंस को पहले ध्यान में रखा गया है, और वो ऑडियंस जो आपको पता ही नहीं है कि है कौन। मतलब कि आप मेरे को 1000 लोग दिखा दो कि ये आपका ऑडियंस है, जिनको मैं जानता हूँ तो समझ भी सकता हूँ कि उनको मैं समझता हूँ, बट ये तो ऑडियंस वो है जो आपको फेसलेस ऑडियंस है, आपको पता ही नहीं कि कौन ऑडियंस है। तो किसके बारे में आप सोच रहे हो? और इंसान यहाँ पे हर पल बदल रहा है, उसके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, वक्त बदल रहा है। जो चीज़ें आज से 3 साल पहले लोगों को अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लग रही है, शायद हो सकता है, या वापस अच्छी लग रही हैं। तो इनफैक्ट कोहरा लोगों को पसंद आया, वो मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, जबकि इसके अंदर कुछ भी बहुत बड़ा हैवी ड्रामा नहीं था, कुछ वैसी चीज़ें नहीं थी, मासी चीज़ें नहीं थी। सो या थैंक यू। Yeah, good evening once again, and thank you for that excellent, thought process that you're trying to sort of put forth. One question each, if I'm permitted, Manas. Rajshri ma'am, I think it's really remarkable what you're doing with, work on screen, but primarily, the socio-political context that you're trying to unravel with your nonprofit. So I'd like to see how, or if you could shed some light on how do you make time, and in your mind, how do you work out that balance? Because I know if you're doing that, you're doing it with full passion, but the craft that you're part of is also requiring a lot of heart and mind and soul. So how do you really balance the two? And I know it's possible because you're doing it, and I'd really like to see many more, artists embark on that journey. For you, Randeep sir, I think one of Balbir ji, I think, has been, kind of the central character here for your drama. I thought Idris Elba was one of the most brilliantly characterized police officer in the BBC series Luther, I believe. And I was wondering if there was any inspiration there or otherwise at all, from the Western context. And if so, and if not, how do you really bring them to the South Asian world? Because there's so many layers. So there are inspirations from around the world, which I thought I did see some parallels which were brilliant. So if you could shed some light on that for me. Thank you. अरे, तो उन्होंने कह दिया ना कि मैं बैलेंस कर पा रही हूँ, तो मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ। बट या एक्चुअली इट्स पॉसिबल, आई फील कि हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, पर हम जब अगर पूछे खुद को कि कितना बिजी है, तो खुद ही को आंसर मिल जाएगा कि नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि मैंने मोबाइल थोड़ा सा दूर रखा है, और पर वही है कि मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ या ये है। आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट। आई फील कि मतलब जैसे सेक्रेड गेम्स के बाद मैंने 2 साल तक मैं एक स्कूल बना रही थी, तो मैंने उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये स्कूल नहीं बनी तो अगले साल ये बच्चों के, मुझे बताया कि काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। सो आई फेल्ट कि मतलब वो काम करने से अच्छा है कि मैं ये अगर 1-1.5 साल यहाँ पे डट के गांव में रहूँ, और लोग बच्चों को, गांव वालों को समझा बुझा कर वहाँ पे स्कूल बनाकर अगर बच्चे वहाँ जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने
काम छोड़ के बहुत कुछ किया है, पर मैंने ये देखा है कि मुझे इस वक्त की क्या ज़रूरत है, तो उस तरह से मैंने बैलेंस किया है। और बहुत कम काम करती हूँ, वैसे मैं रोज़ काम नहीं करती हूँ। मुझे साल में 1 या 2 प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जो मेरे दिल को छूते हैं वो करती हूँ मैं। बाकी वक्त गांव में रहती हूँ, तो आपको शायद मैं कोई मैगज़ीन कवर पे शायद ना दिखूँ, या कोई मतलब कोई ऐसे अवार्ड फंक्शन, बहुत कम ऐसे फंक्शंस में मैं बहुत कम दिखूंगी शायद, व्हाट आई एम वेयरिंग, पर मैं गांव में ज़रूर दिखूंगी। तो बस वही है, आप कर सकते हो बैलेंस, सब कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम बिजी है, बट एक्चुअल में हो सकता है। एंड नहीं, वो रेफरेंस पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट कुछ ब्रिटिश शोज थे, ट्रू डिटेक्टिव, और जो कि हम लोगों ने देखा हुआ है। कुछ द वायर करके एक शो है, तो कुछ शोज हैं जो मेरे फेवरेट शोज थे। तो हमेशा लगता था कि यार हम लोग इस तरह के शोज क्यों नहीं बना रहे हैं। तो कोशिश थी, बट हाँ ऐसा कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं था उसके लिए कि एग्जैक्टली ऐसा कुछ क्रिएट हुक, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई हुक फिल्म है कि अच्छा यहाँ, तो वैसा नहीं था इसमें। या रणदीप, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि फिलहाल अभी आप करप्ट नहीं हुए हैं और इसको कोशिश करेंगे कि आगे लेके जाएं और सिनेमा पे ज़्यादा ध्यान दें। नॉर्मली जब मुझे ऐसा लगता है कि जब नए फिल्म मेकर्स आते हैं, फिल्म बनाते हैं, और तो वो चाहते हैं कि वो बोलना चाहें जो वो बोलना चाहते हैं, उस तरीके से बोलना चाहें, हमेशा ईमानदारी रहती है उसमें। मगर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मैं ये भी देखता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस की, जब आप फिलहाल डायरेक्ट कर रहे थे तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैंने चीज़ों को संभाल रखा था कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जो वहाँ तक नहीं जाने चाहिए, चलो आप फ्री माइंड होकर के डायरेक्ट करो। आने वाले टाइम में अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको फिल्म आती है, ऑफर आते हैं, और उसमें शायद आपको मज़ा ना आ रहा हो पढ़ने पे, या आपको लगता है यार ये आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग द वे आई वांट टू, मगर वहीं पे आपको रिलेशन भी बैलेंस करना है, बिकॉज सी फिल्म मेकिंग इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट लाइक राइटिंग अ बुक इन अ रूम, यू नो, कि सब कुछ आपका है। फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क, प्रोड्यूसर्स, फिनेंसर्स, फंड, कमर्शियल, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उसको आप कैसे बैलेंस करोगे कि वो रिलेशन भी चले और वो फिल्म भी आपकी बन जाए? तो अगेन फिल्म मेकिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म है फिल्म मेकिंग। मतलब कि आप लोग अगर किसी ने कभी फिल्म शूट देखा हो, या फिर अगर कभी वास्ता पड़ा हो, तो फिल्म शूट करते वक्त कई बार आपको पुलिस, वहाँ पे बॉम्बे में जो हम लोग शूट करते हैं, शूट कर रहे हैं, और आपको पता नहीं अचानक से कुछ पुलिस वाले आ गए, आपको उनको रिश्वत भी देनी है, बिना परमिशन के भी आप शूट कर रहे हैं। सेम टाइम जैसे हम लोग एक बार शूट कर रहे थे और कुछ वहाँ के लोकल गुंडे आ गए थे, अब हम चुपचाप उनको भी पैसा दे रहे हैं, इधर शूट भी कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हो रही होती है फिल्म शूट में, जो कि जो बाहर के लोगों उनको शायद नहीं पता चलता, और ये कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी होता है, इंडी फिल्मों में भी होता है। देन जब आप स्टूडियोज़ के लिए फिल्म बना रहे हैं, तो काफ़ी बड़े जो स्टूडियोज़ के हेड होते हैं वो आप पे प्रेशर डालते हैं कि नहीं नहीं आपको ये नहीं नहीं ये नहीं लोग देखना चाहते हैं, अभी ये देखना चाहते हैं, और आप बोलते हो कि हाँ हाँ हम वही बनाएंगे। उस वक्त आपको प्रोड्यूसर चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर जो कि आपको बैक करे। मुझे याद है हम लोग हाल की मीटिंग चल रही थी स्क्रिप्ट की, और स्टूडियो में बैठे थे, और स्टूडियो हेड जो थे वो कह रहे थे कि अच्छा इस सीन को ऐसे कर देना, इस सीन को ऐसे कर देना, और जिशान भाई ने बोला कि सबको हाँ हाँ बोलते रहना कि हाँ हाँ इसको एग्जैक्टली ऐसे कर देंगे, और जब बाहर निकले बोलना कि हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोल दिया है ना, बना वो जो तेरा मन कर रहा है। और बाद में आई थिंक 2 साल बाद उन्होंने जब फिल्म बन के तैयार हुई, उनको कुछ याद नहीं था कि 2 साल पहले उन्होंने उस मीटिंग में क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। तो अगेन बहुत ही मैनिपुलेटिव आर्ट फॉर्म भी है जो कि आपको सीखना पड़ता है। हाल फिलहाल में मेरा ऐसा मानना हुआ कि फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल डिजीज भी है, कि आप फिल्म सेट पे हैं, आप ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं जो ये कारस्तानी है, कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको झूठ बोल रहे हैं। आपको स्टूडियो हेड ने बोला कि यार इस सीन में ये कर, हाँ एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा आइडिया है, आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, आपने वही किया जो आपको पसंद है। तो वो डिसऑनेस्टी, अगर आप इसको डिसऑनेस्टी बोलें, लेकिन आपकी ऑनेस्टी अपने काम के साथ है। जब आप सीन शूट कर रहे हैं, वहाँ पे सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लाइट है, ये है, आपको सब पता है, लेकिन द मोमेंट आप मॉनिटर देखते हैं, आप एकदम से खो जाते हैं उस सीन में, और आप खुद बिलीव करने लग जाते हैं कि ये सच में हो रहा है। तो वो जो स्विच होता है, मतलब कि आपके बिहेवियर का,
डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, मैनिपुलेशन, बट सेम टाइम ऑनेस्ट रहना, वो थोड़ा सा वियर्ड है. एंड अगेन फिल्म मेकिंग, जैसा जिशान भाई ने बोला कि राइटिंग से शुरू होती है. अगर राइटिंग ना हो तो शायद इंडस्ट्री नहीं होगी. और राइटिंग किताबों से आई है, फिर उसके बाद सिनेमा आया है. उससे पहले तो फोकलोर हुआ करते थे, लोग बोल के कहानियाँ सुनाते थे. फिर उनको लिखना शुरू किया गया, किताबें आई, और फिर उनको स्क्रीन प्ले में तब्दील किया गया जब सिनेमा आया. तो मेन बेस तो राइटिंग है, राइटिंग होती है, और वहाँ से फिर सारी चीज़ें शुरू होती है. सो या एंड देन उसके बाद एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो या बिल्कुल. दैट यंग मैन देयर हैज अ क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल. मैं उनको मायूस नहीं करना चाह रहा हूँ, आप उनको जरा. इनफैक्ट हम लोग शूट कर रहे थे गाजियाबाद में और हलाहल, और कुछ लोग गन वन लेके भी आए थे. और अब आपको पता है कि ये असामाजिक तत्व है, आपको सिखाया गया, लेकिन आप उनको अच्छा भैया, अच्छा सर, सर अच्छा हाँ सर 2 मिनट सर हो जाएगा सर, और आप शूट कर रहे हैं और चुपचाप से निकल जा रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी होती है फिल्म शूट करना है. तो ये जो बिहेवियर का स्विच होता है, आप बुरा नहीं मान रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप शूट कर रहे हो और निकल जा रहे हो. तो फिल्म मेकिंग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. Great. Hi, sir. Thank you so much for the opportunity. My name is Vansh. I have a very simple question, small question, but it's pretty intriguing to me. So we've seen the transition of the industry moving on from the, romantic per se genre to the realism now, to the place where we are now going towards based on true events, sort of series and movies. My question is that do you think that this has taken a dip in the entertainment and the imaginative genre of our industry? तो अगेन आपने इमेजिनेटिव जॉनरा बोला. इनफैक्ट मैं भी पिछले कुछ साल से ये मुझे धीरे धीरे लगा, जैसे हमने शुरू किया था रियल स्टोरीज से शुरू किया था हमने. रियलिज्म सबसे पहले जो चीज़ मुझे सिनेमा में हिट की थी वो रियलिज्म, क्योंकि हम लोग फिल्म देख रहे थे वो बहुत ही अलग स्पेस में हो रही थी. मैंने कहा यार ये रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी तो नहीं है, या फिर जो मैंने देखा है. तो रियलिज्म सबसे पहले हिट किया. धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, सिनेमा और कहानियाँ जो है वो रियलिज्म से एक नॉच ऊपर है. वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन का गेम है. आपको वहाँ पे ले जाना चाहिए जहाँ जहाँ पे कि ये समाज, अभी हम लोग वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं रियलिटी में. तो राइट, अगेन मे बी हो सकता है वो डिप इसलिए आया क्योंकि हम लोग रियलिज्म से बहुत दूर चले गए थे. हम लोग सडनली ना वो इमेजिनेटिव था. आप मतलब कि ऑफ लेट कोई भी फिल्म बताओ, कोई भी इमेजिनेटिव फिल्म नहीं है. वो सब की सब या तो कॉपी पेस्ट होती है या फिर इमेजिनेटिव तो नहीं है. मतलब कि मुझे किसी एंगल से आज तक कुछ रेयर फिल्में हुई हैं जो मैंने देखा, मुझे लगा कि वाह यार क्या कमाल का इमेजिनेशन है. उसके अलावा अगर आर्ट फॉर्म में इमेजिनेशन नहीं है, जैसे राइटिंग में इमेजिनेशन यूज होता है बट सिनेमा में लोग यूज नहीं कर रहे हैं. सीन अगर दो फिल्म में लिखा हुआ है कि 2 कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो वो एज इट इज शूट कर देंगे. अच्छा 2 कैरेक्टर खड़े हैं बात कर रहे हैं, आपकी इमेजिनेशन कहाँ है. तो वो एक डिप आया है. हम लोग धीरे धीरे, बट आई होप कि धीरे धीरे वो चीज़ें वापस से आएंगी. बाहर के सिनेमा में तो है, हमारे इधर अभी वो नहीं आया है शायद. इनफैक्ट मेरे काम में भी मुझे लगता है कि हाँ वो यार इमेजिनेशन वाला जो एक है वो थोड़ा सा, जो कि मैं अभी नेक्स्ट में कोशिश कर रहा हूँ, वो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है और इमेजिनेटिव फिल्म है वो, जिसमें मतलब कि उसकी रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है. जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग है कि देखते हैं वो कैसे होता है. सो या बट लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से रियलिज्म से शुरू हुआ था, शायद अब वहाँ जाना चाहिए, या हम लोग जाएंगे वहाँ शायद. Yeah, hi. Rajeshri, hi. My question is for you. First of all, I want to congratulate you on your social work that you do. I've been a friend of yours on Facebook since 2013, and the updates are fantastic. So God bless you. More power to you, so that you can save and touch more lives and things that you do. अंग्रेजी में एक शब्द है, पता नहीं उसका हिंदी अनुवाद क्या है. एम्पैथ कहते हैं उनको, जो बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं उनके सर्कमस्टेंसेस से, उनके सराउंडिंग से, जो मुझे लगता है कि आप हैं. आप बहुत ही पावरफुल एम्पैथ है, और यू रियली टेक थिंग्स इनटू हार्ट एंड यू गेट अफेक्टेड वेरी वेरी मच. And I know you since 2012, and I've seen you grow as an actor. So fabulous. You are one of the most honest, and I'm not bullshitting, sorry, there are kids around, but you are one of the most honest and true actors that I have seen. You're so honest to your craft. So God bless you. My question is, how long does it take for you to come out of character? How long do you live with your character after the project is done?
how does the character affect you? Does the character refuse to go away? It takes time. Of course, it takes time. But जैसे मुझे लगता है कि like my first film, Angry Indian Goddesses, Lakshmi character. तो जैसे मुझे लगता है कि हम जितने किरदार करते हैं वो कहीं ना कहीं तो रह ही जाते हैं हमारे साथ. ऐसे नहीं है कि वो पूरी तरह से चले जाएंगे. Of course, मैं नीलम कृष्णमूर्ति के साथ मैंने आप spent a lot of time on a whole 1 year and 20 year of journey I lived. So it, of course, it affected me in a very, it was a very difficult for me to get out of that space. पर आज तक के मैंने जितने कुछ किरदार किए हैं वो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट हुए और वो रहे हैं. कुछ ऐसे हैं जो जिनको मैंने खुद ही से मतलब आई हैड डन अ फिल्म विच इज़ वेयर आई एम प्लेइंग अ साइकोपैथ. तो it's about a girl who's a CCTV camera operator. तो उसकी एक जर्नी दिखाई थी जिससे मैं जैसे हम इसने कहा कि हम किरदार को इतना जज नहीं करते. वी जस्ट सी इट द वे इट इज़ एंड देन वी गो थ्रू दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सो कुछ किरदार होते हैं जिनको आप दूर रखना चाहते हो क्योंकि वो समाज से परे नहीं है. बट कुछ ऐसे हैं जिनको मैं कितना भी करूँ मैं उनको मैं नहीं निकाल पाऊँगी. मतलब मैं दुर्गा को नहीं निकाल पाऊँगी. मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं तो हिट करेगा जब भी मैं कुछ पढ़ूंगी देखूंगी और मुझे पता है कि अरे ये मैं थी उस वक्त उस स्पेस में. जैसे इस्मत है, जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं जैसे मुझे इस्मत की बहुत याद आती है कि मैं किस तरीके से उससे गुजरी थी. या जैसे शोभा त्रिवेदी है जो जहाँ पे मैंने एक गे पुलिस ऑफिसर का रोल किया था फेम गेम नाम के शो में. तो मैं जब भी पुलिस ऑफिसर्स को देखती हूँ उनकी जर्नी को देखती हूँ मुझे पता है कि वो किस किस तरीके से हैं. तो मैं उसमें जेंडर के बारे में नहीं है बट एक वुमेन पुलिस ऑफिसर who's going through such space in her life is still part of me. तो वही है वो है कहीं ना कहीं तो बस वही है कि हमें उनसे डील करना सीखना पड़ेगा. इसी वजह से हमें मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे मैं कितना काम करूं. मतलब जिस पे मैं खुद पे काम करूं क्योंकि दर्द तो होता है. इंसान है हम. दर्द तो होगा ही. आप पढ़ो देखो सुनो हर चीज़ से दर्द होगा. तो मैं तो इस इंसान के साथ गुजर रही हूँ तो मुझे भी दर्द होगा. पर वही अगर हम हमारे दर्द के ऊपर काम करना शुरू करें अपने खुद के मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करें और उसके लिए तो आपको वही है लोगों की बातें सुननी है लोगों के साथ रहना है हमारी अपनी बातें लोगों तक पहुंचानी है. क्योंकि मेरे लिए वही एक वे आउट है. थेरेपिस्ट है जिनके साथ मैं बात करती हूँ. मेरे दोस्त हैं उनके साथ बात करती हूँ. लोग हैं जो मेरे गांव के लोग हैं जो भी जिन जितने भी लोग हैं उनसे बात करना उनके सामने मेरी बात रखना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. तो उससे ही मैं हील होती हूँ और ये प्रोसेस हमेशा रहेगा और ज़िंदगी भर रहेगा भले ही मैं किरदार करूँ या ना करूँ. पर हीलिंग का प्रोसेस और लर्निंग का प्रोसेस रहेगा ही. तो वही है वही जर्नी है. Thank you. Thank you so much, audience. Chatting with both of you has been anything but a trial by fire. It has been an absolute pleasure. Wonderful talking to the two of you, and I think there could have not been a more fitting end to the sessions of our festival. Thank you. And thank you to each and everyone. यार तुम लोग रुके मतलब thank you so much. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत शुक्रिया. एंड इतनी इमोशनल पॉइंट पे ये एंड हुआ है दैट इट्स रेंडर्ड ऑल ऑफ अस स्पीचलेस. बट आई वुड लाइक टू से दैट योर्स was the last session at the Crime Literature Festival of India, and honestly bilkul dil se we could not have had a better talk than this. Genuinely thank you so much to all three of you, to Manas, to Randeep and to Rajshri. Thank you for being so honest. Takes a lot I think to be honest, and we really wish you the very best in your work and in your life as well. Keep coming and keep making good work. Thank you so much.
And I would request Mr. Alok Lal, the festival director, to please really express our huge gratitude to Randeep and Rajshri. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. And Rajshri, I love what you said, you know, that talking to people is important for healing. Absolutely. If you, Yeah. If you connected to how people can go to the worst extents because they don't talk. So, Alok Yeah. sir, please, I was just talking जब तक आप ऊपर आ रहे थे. नहीं, seriously, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Randeep. Thank you very much. बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारा काम देखते रहिए और बस फिर एक क्या Yeah, please be seated. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं. We want them to give away the prizes. Thank you. Thank you. एंड आप सब लोग जो अभी तक यहाँ हैं, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज 7 बजे एंड होना था, 8:30 है, एंड द फैक्ट कि आप लोग अभी भी यहाँ हैं Hello. इज बिग फॉर अस. यस Sorry, आप बात प्लीज यू वांट टू से समथिंग. एंड मुझे पता है कितनी देर हो गई है, इसलिए मैं डेफिनेटली आई प्रॉमिस आई विल बी द क्विकेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट. लेकिन क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हमारा एंड हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि हम कुछ भी ना कहें. सो जस्ट अलाउ मी 2 minutes. वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू से, हम चाहें या ना चाहें, क्राइम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड क्राइम लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स दिस डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर. और बुक्स और जो स्क्रीन अडेप्टेशंस हैं उनकी, वो हमारी सोसाइटी में वायलेंस की जितनी लेयर्स हैं, क्राइम की जितनी लेयर्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. और डून कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी ने एक बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर इंटेंशन से इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा और उसे एग्जीक्यूट किया. एंड जेन्युइनली वी वांटेड टू एक्नॉलेज and we wanted to celebrate this genre of literature. So this is a very heartfelt shout out for all writers and producers and directors and actors who are working in the crime genre. We really, really celebrate your work, and that's the intention. So thank you for being with us. Thank you for participating. And we really look forward to having all of you again. And the official vote of thanks definitely will be done by Alok sir in a bit. Sir, please have a seat. It's lovely to have you on stage. You're adding a lot of charm to the stage. And उससे पहले promise बस 2 minutes और. हमारी टीम ने बहुत what do I say, बहुत पैशन से, बहुत एक्साइटमेंट से एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया which highlights the events of today. Can I please request that team to play it for everybody?
से एक अभी भी हमारे साथ हैं, even though we are late, and it's an honor and a pleasure to acknowledge and thank Dr. Nishant Mishra. तालियों से उनकी पॉपुलैरिटी भी पता चल रही है. Not an easy title to play. The Dean of Student Welfare at the famed UPES, University of Petroleum and Energy Studies. It's so evident your children love you. Sir, can we please request you to come on stage to accept our token of appreciation? Thank you so much. Can we have that here? And thank you to all the UPS community. You all were an amazing, amazing part of our fest. Cheers to you guys. Keep rocking. Yeah. Thank you, Dr. Mishra. और आगे बढ़ते हुए बिफोर आई इनवाइट मिस्टर लाल, एक और चीज़, यहाँ पे 3 यंग एडल्ट्स हैं जो बहुत एक्साइटमेंट से बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक चीज़ का. हम लोगों ने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट किया था बेस्ड ऑन क्राइम लिटरेचर और बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा और उस सब में ये 3 यंग एडल्ट्स हैं हु वन द कॉन्टेस्ट एंड ये बहुत एक्साइटेड हैं कि इनको कब उनका गिव अवे मिलेगा. सो द विनर्स ऑफ द बुक गिव अवे कॉन्टेस्ट, आई वुड लव टू इनवाइट यू ऑल टू कम हियर ऑन स्टेज एंड take your prizes from us. Aditya Vats, are you here? Please join us if you are here. I know we got very late, but are you still here by any chance? Thank you. Thank you for waiting. I would request Rajshri and is Randeep still around? Okay, Rajshri and Jameel and Abhi, come. It will be very nice if all of you, come and present the books. Please come on stage. Thank you. Thank you. आदित्य वत्स एंड रोहित नेगी एंड राहिला सिद्दीकी, अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आइए. आई नो आप तीनों से ये बुक लेना उन लोगों के लिए बहुत बड़ी encouragement होगी. So that's why it will mean a lot to them. Thank you and congratulations. Good job on the contest. Well done. And you can take your pictures from our social media accounts, all right? I think this is like the last round of applause. Can we have a big one? Whoa! Good luck for your future. All the very best. Keep reading. Keep watching good stuff. Thank you. Thank you very much. Congratulations, Rahila. Good luck. Keep smiling. Absolute honor to invite Mr. Alok Lal, the director of our festival, who has worked so hard and I think has been the anchor, guiding all of us. And like I said, we were a family. Sir, please, the word of thanks, and it's amazing to hear you. वोट ऑफ थैंक्स जब कहते हैं अनुपमा तो बड़ा फॉर्मल सा लगता है और हम परिवार के बीच में बात कर रहे हैं तो कहाँ फॉर्मेलिटी की जगह है, लेकिन कुछ ऐसी औपचारिकताएं होती हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है. उनमें से एक ये है कि जिनके नाम ऊपर लिखे हैं हम उनको दिल से शुक्रिया अदा करें. हंस फाउंडेशन, ONGC और डिजिटल पार्टनर क्राइम टॉक को. हम जानते हैं कि ये हमारा पहला प्रयास था और इसमें लोगों का आगे आकर हमारी मदद करना उनकी दरियादिली का एक बहुत अच्छा नमूना है कि वो लोग इतना हम में विश्वास कर सके कि हमारी टीम यह कुछ डिलीवर कर पाएगी. मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी इस सोसाइटी की टीम को, जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, ये जो दून कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी है ये भी हाल में ही पैदा हुई है, लेकिन उसमें मेंबर्स देखिए कितने शानदार हैं. मनोज आइए और
मानस, सृष्टि, अनुपमा और सिद्धांत, चले आइए प्लीज़, आप सब लोग मेरे पास आइए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत मजबूती है। आइए, रणधीर आप ज़रूर आइएगा प्लीज़। और मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो ये समझ लीजिए कि आप खुद चल के चले आइए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जब हमने अब से 3 दिन पहले शुरू, अरे कहाँ है नवनीत? नवनीत मालूम है किसको कहते हैं? नवनीत का असली मतलब मक्खन होता है। तो बिना मक्खन के ना तो टोस्ट अच्छा लगता है और ना ही कोई बात अच्छी लगती है। नवनीत कहाँ हैं आप? और कौन है जो हमारी टीम के यहाँ पर नहीं है अभी? खैर, तो मैं ये चाहता था कि हमारे मेहमान जो बाहर से आए हैं यहाँ भी बैठे हैं और जगह पर भी बैठे हुए हैं, आप सबका नाम तो अभी नहीं लूँगा, वक्त की कमी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये कहूँ कि न सिर्फ वो मेहमान जिन्होंने इस स्टेज को सुशोभित किया, यहाँ कर हमारा दिल बढ़ाया, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ वो बातें बताएं जो हम सब के लिए आगे आने वाले वक्तों में बहुत काम आएंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लोग जो ऐसे फंक्शंस में, ऐसे इवेंट्स में जाते रहते हैं, आपने कुछ न कुछ इसमें कमियां पाई होंगी। एक तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि वो जो घड़ी पीछे चल रही है वो बहुत तेज़ चल रही थी, तो इस घड़ी को हम ठीक करा देंगे, तो अब ये सही चलेगी। लेकिन बाकी जो कुछ भी गलतियां हमसे हुई हैं उसके लिए तो माफ़ी मांगता हूँ मैं। आप लोगों को डिस्कम्फर्ट हुए होंगे। ये शहर उतना बड़ा नहीं जितने बड़े शहरों से आप लोग आए हैं। यहाँ पर अवेलेबल फैसिलिटीज़ भी ग्रो कर रही हैं, लेकिन हमने अपने दिल आपके सामने खोल दिए। हमारी इस पूरी टीम ने पूरी कोशिश की कि ऐसी कोई चीज़ रह ना जाए कि आपको शिकायत करने का कोई मौका मिले, लेकिन आप प्लीज़ शिकायत करिए और हमें वो मौका दीजिए जिसकी हम तलाश में हैं, कि अगले साल जब हम आप लोगों को याद करें तब तक हम ये गलती अपनी सुधार लें, एक अच्छा खासा प्रोग्राम अगले साल करें और इससे अच्छा हो, इसकी कमी हम दूर कर सकें। मेरी टीम पूरी इसमें कोशिश करेगी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर इतने स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे अपना क्लास छोड़कर, अपना काम छोड़कर, ऐसे लोग जिनके इम्तहान सर पर हैं वो अपनी तैयारी छोड़ के यहाँ पर आए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसे अभी डीन साहब आए थे, इनका शुक्रिया हमने अदा किया और इनके माध्यम से हम उन सब स्टूडेंट्स को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो यहाँ पर आए नहीं हैं, पराग, आप भी चले ही आइए। पराग, मेजर पराग जो हैं, ये फौज से जल्दी अलविदा कहने के बाद पूरी टीम ले आई आप। और ये जो क्रिएटिव्स, आप खूबसूरत क्रिएटिव्स देख रहे हैं, यूपीईएस के वॉलंटियर्स और बाकी जो भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी और जगह से जो आए हैं, प्लीज़ चले आइए। तो जैसा कि अक्सर थिएटर में होता है कि पूरी कास्ट से मिलवाया जाता है, मुझे खुशी इस बात की है कि कास्ट इतनी बड़ी है कि इस स्टेज पर पूरी तरह से आ नहीं पाई, लेकिन जितने लोग आप आ रहे हैं प्लीज़ आइए, हमें ज्वाइन करिए और इस स्टेज की शोभा बढ़ाइए। So thank you very much team, thank you very much all of you. We could not have expected such a wonderful response in such a short time. This idea was conceived only a short time ago, and the fact that we have done it and we are doing the last bit of it gives me a huge amount of satisfaction. Thank you very much team. Thank you very much everybody here. Thank you.
that beautiful song that you heard with our, the anthem that you heard has been sung by one of our friends here. Arushi, Arushi, come, थोड़ा सा एक बार और हो जाए. Arushi has such a wonderful voice. देखो ऐसा है, ये बॉलीवुड तक आवाज पहुंच सकती है. First of all, it's an honor to do this for the first ever crime literature festival that's being held, that too in Dehradun, and it's an honor to me. It's you appreciate it, everyone's appreciated it. So I'll just go along with the jingle now. Okay. In a land full of vibrant tales, there is a crime fest where suspense leaves a trail. Thrillers, mystery, and secrecy, all dark and bold. At Crime Lit Festival, let all the secrets unfold. Oh, thank you, Arushi. Thank you, Arushi. सबसे इम्पोर्टेंट बात. See you at the next edition. अच्छा, अब हम एक इंटरनल बात कर रहे हैं, आप सब सुन लीजिए. आज से 2 या 3 दिन बाद हमारी टीम मिलेगी और हम लोग सब साथ साथ मज़ा करेंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे और खुश हो जाएंगे. So kind of you, all of you. Thank you so much. थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे. Thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. मजे मिलते हैं, बहुत जल्दी से achievement में. Also, have some fun.